GPL उत्सव 2024 हाकांनी स्वल्प वेळाची चालन मेळटा. GPL उत्सव 2024 जयकार स्ट्रायकर्स तशीची मुंबई पल्तान्स दोन टिमाचे कॅप्टन आणि देखोरनो पिच्चर घेवका. आता मी टॉस घरचे मुखांतर मॅच हाका चालन मेळटा.
मुंबई पलतानसाचे ओनर आणि कॅप्टनान पिचाला घेवका तशेंच जयकार स्ट्रायकर्स टिमाचे कॅप्टन आणि ओनरान पिचाला येवका. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಮಿತ್ GPL उत्सव 2024च्या फर्स्ट मॅचाचे टॉस जावच्या जयकार स्ट्रायकर्स आणि मुंबई पलतान्स टीम दोन्ही रेडी झालेले आसा. GPL उत्सवाक अधिकृत जावन मॅचा तर्फेनची चालन मेळटा. खंयचे एक कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे देवाल प्रार्थना मी करू का अशें जावन गोपी भट म्हणटा की हांव निमून घेतास. ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु, शुभं शोभनमस्तु. इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. देवा वीर व्यंकटेश व्यास रघुपति नरसिंह 3 दिवस चोलची कार्यक्रम निर्विघ्नारी विजृंभणेरी चला सुंदी देवा. फर्स्ट मॅचाचे टॉस आता जावचार आसा तशें जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे आमगे व्हॉलंटियर्स शिवण्ण आसा, जयकार स्ट्रायकर्स तशेंच मुंबई पलतान्स टिमाचे मुंबई पलतान्सान हेड्स म्हणला बॉलिंग चूज केला मुंबई पलतान्स.
హలో స్మిత్ సాంగ్
Hello, check. The 12th man of both the teams are requested to come to the commentators box immediately. We need the 12th man of Jaika Strikers Moodbidri as well as Mumbai Paltans here at the commentary box. So hello and welcome to this Sahyadri College ground. Good morning everybody. This is Suresh Bhatt speaking in the microphone. Welcome all up to this Sahyadri College ground here at Mangalore. This is the GSB Premier League 2024 limited overs tennis ball cricket tournament is being conducted by Kodiyal Sports Association of Mangalore. 16 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy. And at the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. So the meantime, we have the first inaugural match of this tournament, which will be played between Jaika Strikers Moodbidri versus Mumbai Paltans. And the news from the center is Mumbai Paltans have won the toss and they have decided to field first here. Meanwhile, the players of Mumbai Paltans have already entered into the ground to set their field placement. This match is now going to be a very interesting match, really a fast-hitting game because both these two teams are very, very favorite teams. So this is going to be an exciting match, and I think it has a real close finish. Deepak Kamath is the skipper of Mumbai Paltans, leading from the front, playing a sheet anchor role here. So this morning, after winning the toss, the captain of Mumbai Paltans, Deepak Kamath, has decided to bowl first here. So very cool atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is yet to come. 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Sahyadri College ground. We can see some colorful banners, advertising boards all around the ground. We are thankful to those who have supported us in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. And we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future as well. So this is the Arch Pharma Labs GPL Season 8. Arch Pharma Labs Limited are the title sponsors of this tournament, and Youth of GSB Worldwide are the broadcast partner. So Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament. So people from all corners of the world can watch each and every matches of this GPL Trophy 2024. How many overs? 7, huh? 7. First 2 over power play. First 2 over power play. 2 over 7. So it's a 7 overs match. First 2 overs will be a mandatory power play overs. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle during the
first two power play over. Meanwhile, the two openers of Jaika strikers Moodbidri are already in the middle. Shivanand and Prasad are the two openers. Meanwhile, the umpires are making their way towards the ground here. The two umpires officiating for this match are Sriniket Rao Urva and Dinesh Acharya Kulai, very experienced umpires. Hello. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. Hello check. Mic testing 1 2 3 check. Hello check. So Dinesh Acharya Baikampadi and Sriniket Rao Urva are the two umpires officiating for this match. This is the first match of the day number 1 of this GPL Season 8. This tournament is brought to you by Kodiyal Sports Association of Mangalore. For the 8th time, they are organizing this fantastic cricket tournament for GSB community players. Cool atmosphere here today at Sahyadri College Ground, a beautiful venue. We can expect a huge crowd tomorrow and day after tomorrow. The final match of this tournament will be played on Sunday at around 8 o'clock. After 8 o'clock, we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive GPL Trophy 2024. Shivanand is the man on strike, one of the hard hitter of the ball, a good chimer of the ball. He will be taking the strike. Archit is his nickname. And Rachit will be the non-striker. And the opener bowler for Mumbai Paltans will be Ratan. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Dinesh Acharya Baikampadi. And here is the first delivery of the first over now. Ratan will be bowling to Shivanand. Five men on the onside for Shivanand and 4 on the offside. There is a long on and there is a deep mid wicket. Here is the first ball. Well, the ball takes the leading edge of the bat and wicket-keeper Deepak Kamath makes no mistake, takes that catch. The ball takes the leading edge of the bat and Shivanand will have to move back to the pavilion. A big blow for Team Jaika strikers Moodbidri in the very first ball of this tournament. Shivanand has gone for duck. Ratan is the very successful bowler who has picked up that very, very important wicket. Shivanand is very disappointed there. This is a very good wicket for Team Mumbai Paltans. Mumbai Paltans have already won 2 GSB titles, GPL titles so far in 8 years. Now, for the 7th time, they are participating in this GPL cricket tournament. So Shivanand has gone for duck. To replace him, the new batsman now joining is Sohan. Sohan, meanwhile, taking guard from the umpire. Another right-handed batter. Sohan will have to play with cool mind now. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Here is the next delivery played elegantly onto the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. So with that single, Sohan is straight away off the mark. He opened his account. So first run from the bat of Sohan for Team Jaika strikers Moodbidri. So left-hander will take the strike now. Prasad is a left-handed batter who is going to take the strike and he will be facing Ratan now. The fielding team is again making some change in the field placement for this left-handed batter here.
Played elegantly onto the onside, drives the ball to the long on. They come back for the second, direct it there, will have to wait for umpire decision. That was a very, very risky run, but fortunately the batsman survives here. Very lucky indeed. They were looking for the second run, and the batsman Sohan was rushing towards the danger end, and fortunately he survives. No damage done. Couple of runs have been added to the total. With those 2 runs, the scorecard of Jaika Strikers now slowly moves on to 3 with 1 wicket down. The man out is Shivanand for Duck. Without making any score, he's back in the pavilion. He was caught behind in the very first ball of the over. Now Ratan will bowl in the round the wicket fashion. The batter wanted to go for a switch hit here, and meanwhile the ball went above the waist level of the batter, and hence the umpire says it's a no ball. So there is a free hit chance for the batter now. The left-handed batter Prasad is on strike. Let's see whether he will be able to take the advantage. Oh, his ball hitting the stumps, but since it's a free hit delivery, there is no damage for the batsman here. No danger at all. No runs resulted. Score remains on 4 with 1 wicket down. Jaika Strikers Mudbidri after putting into bat first. Ratan once again with a long run up from the far end. From the river range, right arm round the wicket balls. That's a very fine delivery there which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of any run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper Deepak Kamath collects the ball behind the stumps and he returns the ball back to the bowler. That's almost a Yorker length delivery there, pitching right in the block hole, and the batter Prasad wanted to flick the ball onto the onside, but the ball is not coming onto the bat. The pace deceives the batsman. Good over from the bowler Ratan. That's the end of the over number 1. So after the completion of first over, it is 4 with 1 wicket down. Team Jaika Strikers Mudbidri. So you are watching GSB Premier League 2024, proudly organized by Kodiyal Sports Association of Mangalore, and we are in the first match of the day number 1 of this tournament, which is being played here between Jaika Strikers Mudbidri versus Mumbai Paltans. Mumbai Paltans captain, after winning the toss, he had decided to field first, and he made his intention clear in the way he decided to field first, and he employed his bowler in a very good manner. And the opener bowler Ratan has given a very good breakthrough for his team. So it is 4 with 1 wicket down, Jaika Strikers after the completion of first over. Sachin Gadiyar is the new bowler. That was a very fine delivery there, pitching outside the off stump. The ball beats the batsman, and wicket-keeper does the rest of the job. No runs resulted. First ball is a dot delivery. Once again, Sachin on his way to the right-handed batter. Crashing drive to the offside. Lovely cover drive. Played that shot towards the cover point region, and easily the batter Sohan gets a single. With that single, Sohan's individual score moves on to 2, and that single will bring left-handed batter Prasad on strike now. Prasad is batting on 2. Prasad meanwhile taking guard from umpire Sriniket Rao Urva. Prasad is a good timer of the ball, one of the hard hitter of the ball. He's a technically sound batsman. He has got a good responsibility on his shoulders now. Well, he wanted to go for a big hit. The pace, this is the batsman, and the ball hitting the middle stump. Prasad is out. Second wicket has gone down for Team Jaika Strikers Mudbidri, and they are in trouble now. That was a very, very fine delivery there, pitching in the right spot, and Prasad wanted to go for a big hit. He wanted to pull the ball onto the onside, but the
pace. This is the batsman. Ball betrays the batsman and directly hitting the stumps. So second wicket has gone down. Jaika strikers Mudbidri have lost their vital wicket. Two backbones are now back in the pavilion. The first man out was Shivananda without making any score. He's back in the pavilion, and after that they lost the one more important wicket, the opener batsman of Prasad, who contributed only 2 runs in his individual account. So it is 5 with 2 wickets down. Jaika strikers Mudbidri. Sachin Gadiyar is a very experienced bowler. So he has become the most successful bowler on that occasion by picking up that important wicket. Now Hari Prasad is the newcomer, left-handed batter. He has come in, and meanwhile he's taking guard from the umpire. Ball is in the hands of the bowler, successful bowler Sachin Gadiyar. Once again from the college end. Turned away nicely onto the onside, but there is a protection, good piece of fielding there by the fielder. He has saved a couple of runs for his team. The fielder collects the ball and throws it back to the wicketkeeper, but before the throw reaches the wicketkeeper, there is ample time for Hari Prasad to pick up an easy single. So with that single, Hari Prasad is off the mark. He opened his account, and Sohan will take the strike now. Sohan is batting on 2. Hari Prasad is at the non-striker's end, batting on 1. Ball is in the air, simple lollipop catch to the fielder at silly mid-off region. The batter, Sohan, wanted to hit the ball over the head of the fielder, but unfortunately not a perfect placement, not a good timing. The ball went straight in the throats of the fielder who was standing at silly mid-off region. Prashant, the fielder, makes no mistake, caught it beautifully. So third wicket has gone down here. Shashank is the fielder who takes that catch. So wicket number 3 has fallen down for the team Jaika strikers Mudbidri, and they are in trouble now. Sachin is the successful bowler who has got that second wicket here in this over. We are in the second over of the innings. This is a power play over. That's again a very fine delivery there. New batter Vignesh Shenoy was not able to make any contact with the ball. Hence the ball goes to the wicketkeeper, and wicketkeeper Deepak Kamath collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Pretty good over there by Sachin Gadiyar. Conceded only 2 runs in that over, and he picked up 2 important wickets. So that's the end of the over number 2 after the completion of 2 overs. Runs on the scoreboard is 6 with 3 wickets down. And I think Ajay Nayak will bowl the third over of the innings. Another experienced bowler who plays for Udupi team. Now in this particular tournament is playing for Mumbai Paltans, and Ajay Nayak is all set to bowl the third over of the innings, and he will be operating his over from the river range. Arch Pharma Labs Limited are the title sponsors of this fantastic cricket tournament. So 4 valuable runs from the bat of Hari Prasad, which takes their full score to 10 now. Ajay will have to improvise. He's bowling now. Again, that was a full toss delivery, converted that into full toss, goes for a sweep shot, swept away nicely onto the onside. The throw was not quite good enough. As a result, the batsmen have taken the great advantage. There was no backup, and because of that misfielding, these 3 batters were very, very quick. Good understanding there. Good aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So 3 runs have been added to the total. With those 3 runs, their score now moves on to 13 with 3 wickets down. 13 for the loss of 3 wickets. The bowler Ajay Nayak will have to improvise his bowling now. Meanwhile, he's making some change in the field placement here.
He has to bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required. He shouldn't give any loose deliveries or full toss deliveries. Power play is completed. Field has been spread out now. That's again a quicker delivery there. An uneven delivery. That ball keeping low. Surprise the batsman. The batsman Vignesh Shanai doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Well, he goes for a sweep shot, but he found complete failure in playing that one. Actually, he wanted to go for a switch hit here, but the ball is not coming onto the bat. Meanwhile, leg bye has been signaled there by umpire Dinesh Acharya by Kampadi. 1 run in the form of extra run. We come back to Ajay Nayak now. Well, the batsman goes for a big one. The ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it and he's out. That was a short arm delivery, and batsman Hari Prasad wanted to go for a big hit but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man Sachin, who was standing at long off region, makes no mistake, caught it beautifully. One more wicket has gone down for team Jaikar Strikers now. Frustration for the team Jaikar Strikers Mudabidri. It's a big disappointment for the team. They have lost the wicket of Hari Prasad here. And Ajay Nayak on that occasion picked up that important wicket. Once again, Ajay Nayak continues here. Loud appeal there. Loud appeal for leg before the wicket. But I think the ball was clearly missing the leg stumps. It was going down the leg side. Batter wanted to go for a sweep shot. He wanted to flick the ball onto the onside. But the ball has not come to the bat. Ball hitting the legs of the batsman. That's the end of the over number 3 after the completion of 3 overs. It is 14 for the loss of 4 wickets. So 3 overs gone, 14 for the loss of 4 wickets. 4 more overs to go now. Let's see how many more runs Jaika Strikers will be able to score in the remaining 4 overs. They shouldn't lose any more wickets. They must keep their wicket intact now. These 2 batters will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. Let's see what's going to happen now. What kind of strategy the bowlers will adopt. Meanwhile, changing the bowling position here, I think the captain himself, Deepak Kamath, is going to bowl the over number 4 of this innings. Deepak Kamath is an icon player, is all set to bowl. Meanwhile, changing the commentary position as well. For further commentary, I have got Mr. Satish is with me, who is going to join in the commentary box. Very warm welcome to you, Satish. Thank you very much, Suresh Bhatji, and good morning, everyone, and welcome back for the prestigious GPL GSB Premier League 2024, and which is proudly organized by Cordial Sports Association, Mangalore, in this most beautiful Sahyadri cricket ground here in Adyar with the banks of river Netravati. What a fantastic match is in progress. Mumbai Faltans, after winning the toss, they elected to field first, and the bowlers are justifying the decision of the captain, picking up 4 valuable wickets of team Jaika Strikers and putting some pressure onto the batters. Deepak will going to continue away from us to the left-hand batter Venkatesh. He will going to face next delivery. Right around the wicket, pulls that one beautifully down to deep square leg boundary for a U6. This is the first sixer of this GPL GSB Premier League 2024, and at last breaking the shackle here by the batter Venkatesh. A short pitch down the leg side, all the time in the world to batsman to just going back and pulls that one handsomely down to deep square leg boundary for a 6. This is going to give a lot of oxygen for the team Jaika Strikers. Venkatesh getting that short pitch delivery and just capitalizing that one down to deep square leg. And this is kind of brave and gutsy batting which is required here for the team Jaika Strikers if they wanted to put some good score in front of
Mumbai Faltons, they got a formidable batting department, so that it's very necessary here for the batters to get some good score here. Deepak again. Right up from the wicket, similar delivery, but going down the leg side outside the line. Going with a quick single chance of run out there, but the ending throw is not good in that occasion. I think it's going to be better to return that one in the non-strikers, and a white call by umpire, and 2 wides to be added to total. With that 2 wides, scored Namuzan to 23 on the board for the loss of 4 wicket. Very important runs are coming in this over for the team. Strikers. They knows that there are not too many overs remaining, and they need to get partnership at the same time. Simultaneously, they need to look towards acceleration of run rate. That brings Vignesh into strike now. One of the very good striker of the ball, facing Deepak off the back foot. Short pitch delivery outside the line of office. A little bit climbing of delivery. The batsman lifting of delivery. The batsman just off the back foot to place it down to short backward point region for a single. With that single, scored Namuzan to 24 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. It's turning out to be one of the better over after that shackling start from Jaikos strikers. Round the wicket. Balls pulls that one beautifully down to deep square leg region, but production has been given in the deep square leg region, but so that batsmen have to settle for the single. Runs are coming very freely in this particular over for Jaikos strikers. At last, they managed to settle down both the batters. It's not so easy, especially when you're coming to this cricket ground, particularly cricket in the morning session. Time is exactly 11 past 25. Strong breezes which is passing around the ground, and a bright sunny morning here in this most beautiful Sahyadri Engineering cricket ground. Right on over wicket again, one more well bounced delivery outside the line of off stump, and Vignesh just waiting for the ball. Just a change of pace here from Deepak, and batsman negotiated very well in the last moment and picked up a single for that. With that single, scored Namuzan to 26 on the board. 26 for the loss of 4 wicket in the over number 5. 4 is in progress. Deepak, final time in this over. To the left hand batsman, who got 6 already in this over. This time lofted, not controlled cross stroke, and pays the penalty for that. No ball call by umpire. Lucky escape here for the batter Venkatesh. All in sudden we can see that maybe that was overstepping there by the bowler. Pays the penalty for that. The batsman wanted to go for the big shot, not quite getting hold of that improperly. But fortunately for the Vignesh, that ball Venkatesh, that ball is a no ball. Absolutely, it's going to be a escape. Very lucky for the batter that still is there in the middle, and scored Namuzan to 28. Beautifully ball, perfect delivery. Batsman tried to hit the ball across the line of the delivery. The line of the delivery, which is outside the line of off stump, just survived from that free hit delivery from the batter by Deepak. So productive over which comes to an end here for Jaikos strikers after completion of over number 4, searching for the right tracks. Team Jaikos strikers are 28 for the loss of 4 wicket. Now run rate seems to be a better one, and compared to that last 3 overs, this is a much better over. 14 runs came from that over. 14 came in 3 overs, and another 14 came in just only 1 hour. That shows that the lovely comeback here by the Jaikos strikers batters there in the middle. Especially Venkatesh got a 1 youth 6 down to deep square leg, and afterwards Vignesh is played very well. Sensible batting. 14 runs they got. Altogether 7 runs per over run rate progressing here for the team Jaikos strikers. So we have Nital and Rashmita as our manual scorer and online scorer, and as well as Deepak in scoring app. And of course, as a commentator, we have Suresh Bhatji in English, and at the same time, most experienced cricket commentator and golden voice of cricket is known to be in South Kendra and even in our neighboring state, Kasaragod district, even ODP district. None other than Ajay Raj will be the commentator in our national language in the welcome Ajay Raj for this prestigious GPL 2024, and good morning to you. So myself Satish Salyan, and here is the first ball. Pulls that one, but it's lack of placement. Straight to the hands of fielder, but the fielder couldn't manage to stop the single from Venkatesh, and with that single scored Namuzan to 29 on the board for the loss of 4 wicket here in over number 5 is in progress. All kind of competition we are expecting from these 3 days of festival of cricket. Absolutely,
it's definitely going to be a festival of cricket because lot of cricketing action in these 3 days of cricket, and all the teams definitely will go into battle hard for this prestigious title, GSP Premier League 2024, which is proudly organized by Korean Sports Association, Mangalore, in this most beautiful venue. The bowler, Ajay, bowling his second over. Second time in this over. Shuffled across the line of the delivery. Vignesh intentionally to get that one into mid-wicket region, but couldn't manage to read that low full toss from the bowler Ajay. And he just quite deliberately bowling that line, seeing that batsman just moving, initial movement towards the off stump, outside the line of off stump. And again Ajay. Right, I'm about to get full shot, one down to deep mid-wicket region. Fielder is underneath it. Nothing wrong with the stroke, but there's something wrong with the placement here from Vignesh. At the same time, he got the elevation, but fails to get the distance. Mid-wicket fielder making no mistake at all. This is a vital breakthrough for team of Mumbai Falcons. The danger man departs. Vignesh always is a very dangerous, especially coming to the slog overs. He settled down in the middle and tried to freeze his arm in this slow overs, but couldn't manage to get the distance. Unfortunately, ball went straight to the hands of mid-wicket, and mid-wicket fielder making no mistake at all. The partnership which is comes to an end, which is really progressing very well in the middle, but unfortunately which is broken. And thanks to the delivery, which is a short pitch delivery, Ajay maybe he quite deliberately bowled that short pitch delivery so that he can get the wicket because of that mistimed cricketing stroke as well as misplaced cricketing stroke costing a wicket of Vignesh. So new batter coming to the middle is Srinivas, one more very good striker of the ball who can perform both in overarm and underarm cricket. And wait and see how Srinivas will go in to contribute from the bat. This is over number 5 is in progress. 3 deliveries which is already completed. 4 times seeming from the far end. Right, over the wicket crashes that one beautifully down to deep cover point region for a walkable single by Shriniket. Confident looking start here from Srinivas as ball went into the deep extra cover region for an easy single with that single scope and moves on to 30 on the board. 2 umpires, field umpires, Dinesh Achar as well as umpire Shriniket. The 2 experienced umpire, the very quality umpires panel for this prestigious GPL. And here is again full toss, and Venkatesh couldn't manage to take the advantage of that delivery. Maybe that was a slow full toss. That's why the batter couldn't manage to take the advantage of that one. Venkatesh is a very good striker of the ball, but fails to capitalize that full toss delivery. Managed to get the single down to square leg region with that single scope and moves on to 31 on the board. And Mumbai Falcons, they are the champions in the edition 1 of this prestigious GPL 2024. Right, I'm over the wicket balls. Cuts at one side to the hands of extra cover. Very loose stroke played by Srinivas. It can go over the top of the infield, isn't it? But a half-hearted stroke coming from the blade of Srinivas pays the penalty for that. One more wicket is back into Pavel. It is turning out to be a great over from Ajay. Not only tighten up the screws in this over, but he picked up 2 valuable wickets in that over. That will go into a little bit of disappointment for the team Jacob Strikers after getting a very productive over, that is the 4th over. Then they couldn't manage to capitalize that, and 2 wickets which is back into pavilion in this over. Five overs which is comes to an end, and the previous over from Ajay is turning out to be one more very great over in point of view of team of Mumbai Falcons. Has got 2 valuable wickets, a wicket of Vignesh as well as a wicket of Srinivas. A new batter in is one more Vignesh Chennai, and one more very busy customer and a very good runner between the wicket and a good rotator of strike Vignesh Chennai. And wait and see how we'll going to contribute from the bat in the remaining 2 overs. For the latecomers, you are watching the match number 1 of the day number 1 of this prestigious GSB Premier League 2024, and of course it's going to be known to be a GPL Utsav, and because we can see that slowly the crowds are started to gather here in this most beautiful venue, that is the Sahyadri Engineering Cricket Ground here in Adyar, with the bank of river Netravati, with beautiful nature which is covered this cricket ground, one of the most beautiful cricket ground here in South Kenda district. It's going to be a great honor for each and every
players to come and perform in this beautiful venue. This time, going for the big shot, missed time cricketing stroke, but ball will go to land it safely between mid-wicket and short mid-wicket and deep mid-wicket, and ample time for the batter to complete that 2 valuable runs before the fielder from deep mid-wicket to collect that one. Mistimed pull shot there from Venkatesh. Intention is very clear that he wanted to clear that mid-wicket fielder, but couldn't manage to get the timing because maybe that was because of the height of the delivery. He couldn't manage to reach and he managed to complete that 2 valuable runs for his team and score numbers down to 33. Right, over they get lofted. That one straight down the ground, down to deep long off region. Will they come back for the second? Vignesh charging for the second and opportunity's run out is gone. Vignesh lost his bat from his hand. At the same time, the bowler is making no mistake at all, completing the formalities of run out. Shriniket is in a right position to give the decision. He know exactly, no need to ask for the third umpire because Vignesh is well short of his crease. One more wicket is back into pavilion. No other option at all. Vignesh knows that need to give the strike as much as possible to Venkatesh. That's why they're taking a little bit risk to coming back for the second. But a very good work by the fielder at deep long on return the ball very quickly to the hands of the wicket keeper, a little bit in the hands of a bowler, and bowler completes the formalities of making the run out. Pratik is a new batter in. Very hard to combine the runs. Only 1 over we can see here in the out of 5. This is a very productive over. That is over number 4, which is bowled by Deepak. Then we can see that all the bowlers did a great job. Now Ratan is bowling his second over. He starts well, and so far he conceded 3 runs. This time driven beautifully down to mid-wicket region, but this time they never going for the second because after that run out, they doesn't want to take any risk of coming back for the second. No chance at all for the second. The fielder from a deep mid-wicket charging to the ball and denying the second from this to batter. One more single. With that single score, but slowly moves on to 35 now for the loss of wicket number 7. Just 3 wickets remaining, and even the delivery is not too many deliveries remaining. This is over number 6 is in progress after this 1 hour remaining. So after this 1 hour remaining, here again Ratan. Right above the wicket, beautiful Yorker and delivery. Batsman just shuffled across the line of a delivery. Just wanted to play the improvising cricketing stroke. One of the popular cricketing stroke in the present cricket. Each and every batsman tends to play that improvising cricketing stroke, just like moving towards the off stump, try to get the ball over the fine leg region, over the wicket keeper. But this time bowler too clever, just following the batsman, bowled that Yorker and delivery, defeated with a beauty. Lovely delivery in there, swings and missed. Nowhere near the pitch of the delivery, isn't it? The bowler knows that the batsman will go into try for such particular cricketing stroke, so he just quite deliberately bowled that line. Good thinking from the bowler's point of view as he bowled again outside the line of off stump. Now Venkatesh just walking towards his partner, having some word, maybe giving suggestion that don't go for the big shot, just pick the single and give the strike as much as possible to me, and maybe that was a message coming from Venkatesh. Full toss, that's what I'm talking about, the same message, and batsman got a single down to short mid-wicket region. With that single, the score moves down to 36 on the board, but quite unfortunately, that is the last delivery of the over of 6, so that Venkatesh need to be stay out of the strike for the last over. (36) in 6 overs, that means run rate exactly 6 runs per over, and this is going to be the last opportunity for the team Jacob Strikers to rotate some strike, get some good score here, at least 10 runs, take them into a competitive total. And any score 40 to 45 definitely in the morning session is going to be competitive, but I'm not saying it's good enough, but seeing the condition is definitely going to be a very encouragement for the batter because of the wind which is really flowing very well. There is no dew factor, we can see that, because of time is exactly 11:30. It's a dry, we can see that we're no witness at all for the dew in this cricket ground in the pitch. It's going to be a flat wicket. It's going to be a very good batting track, I want to say. And so that a lot of hard work which is needed for the bowlers, and that's why it's so important for Jacob Strikers to get as much as run as possible in the last over. Again coming down the track, this time sensible, absolutely sensible, because Venkatesh wanted to get a strike back into the striker's end. The run out which is taken place, but wait and see whether here is a run out or not. Umpire Shinnik is saying that here is not out, so that the batsman out in the non-striker's end, and that is
Pratik is the batter, have to go to pavilion. He's just sacrificing his wicket. He's sacrificing wicket for his partner Venkatesh because he is a better batter to deal with the remaining 5 deliveries of their final over. Pradyumna is the new batter in. He's in non-strikers end, but Venkatesh will go into face next delivery from the bowler Mahesh from the Netravati river end. One fielder at deep long on one field mid wicket. The fielder at square leg in front of square. There is a fielder at short mid wicket, short square. Now short square leg fielder coming towards the cow point. Short fine leg. There is a short third man between gully and third man. Short extra cover. Deep long off, deep cow point. And altogether 4 men in the offside, 5 men in the onside for the last final deliveries of the innings of Jaikal strikers. Wait and see how Venkatesh will go into deal with this final 5 deliveries from the far end. Mahesh Boss drives that one handsomely down to deep long coverage, and they come back for the second. It looks like they're coming back for the second. In comes a throw from the deep, but throw is definitely not having a good direction actually. It's a wide throw coming from the fielder deep long on, so that both the batters quickly completed that 2 valuable runs. So Venkatesh playing a very good innings for his team single-handedly. Scoreboard now moves down to 38 on the board, and last 4 deliveries remaining in their innings. Mahesh to continue from the far end. This time going for the big shot. It's gone. Absolutely flum in front of wicket. Ball pitched in a line. Venkatesh just a little bit shuffled across the line of the delivery. Tried to hit that one across the line. Once he missed it, definitely he will find right in front of middle stump, and umpire Dinesh Achar has got no hesitation to call that leg before wicket. And a very good innings of Venkatesh is comes to an end, but without completing that slog overs, the final over. It's going to be a big blow for the team. Jaikal strikers losing Venkatesh another 3 deliveries to spare. Now it's going to be a last pair in the middle, and Lakshmish, known to be one of the icon bowler for the side of team Jaikal strikers, now coming to the middle with the responsibility of completing that 3 deliveries. At least they wanted to get to 3 to 5 runs in this over, so that it can be a competitive total against formidable Mumbai Faltans. Of course, Mumbai has got some Faltans as far as batting department is concerned. They got some very good batters, so that a lot of hard work which is required from the bowlers of Jaikal strikers. The 3 balls remaining. Lakshmish is on strike. Mahesh Boss, and this time Lakshmish never looks like he's a number 11 batter. Way that is confidently played that one, just moving towards off stamp across the line. Plays it down to deep square leg region for a easy single. With that single, score moves down to 39 on the board for the loss of 9 wicket. Pradyumna facing reverse stroke comes into play, but fails to defeat that infield that is in the back foot point region. But 1 more run which is added to total. 41 on the board. Now they're going to be last delivery of the innings of Jaikal strikers Mudabidri, and Lakshmish will go into face Mahesh. Again try to hit the ball. Wicket keeper will go into complete the formalities of run out. That's it. Last ball. 40, which is the total score of Jaikal strikers, and they set a target of 41 to win the match for Mumbai Faltans. And that is going to be a very interesting game of cricket here, because you cannot underestimate this total. It's not a huge one, and at the same time it's not a small one. This is what the kind of total where you can expecting some kind of good battle between these 2 teams to get the first victory of this prestigious GPL. And wait and see which team will going to start their journey with the victory. Will it go into a Mumbai Faltans? Will it go into be a Jaikal strikers Mudabidri? We'll take a short break here, and after the short break, definitely when team Mumbai Faltans will go into come here to chase just 41 runs in the stipulated 7 overs. That means 42 deliveries and 41 runs required for the wicket. Just under 6 runs per over the required run rate. And wait and see how well these 2 team will go into battle for the victory. And for the further explanation of the match of the innings of Mumbai Faltans, I would like to welcome one more senior most commentator and one of the fantastic Hindi commentator, Mr. Ajay Raj sir,
for the further explanation of the match in our national language in the warm welcome, sir, and good morning to you. Hello, check. Hello, check. थैंक यू सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार प्रकट करते हैं। मेरी आवाज़ सुनने वाले तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को बड़े विनम्र भाव से सप्रेम नमस्कार। और जीपीएल 2024 एक और यादगार क्रिकेट श्रृंखला आपके सामने। और जैसा आप जानते हैं, कोरियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की शानदार प्रस्तुति, हर साल कुछ नया बनाने का उनका प्रयास, और इस साल में एक और बहुत बड़ी क्रिकेट श्रृंखला जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 की रचना की गई है। और 23, 24, 25 फरवरी का ये महीना, जिसमें इस क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन, और सबसे शानदार मैदान अगर कहा जाए, ईडन गार्डन कहा जाए, तो सह्याद्री महाविद्यालय का नेत्रावती छोर का ये हरियाली भरा प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मैदान, जिसको हम सह्याद्री का ग्राउंड कहते हैं। ऑन फील्ड श्रीनिकेत और दिनेश आचार्य जी, माफ कीजिएगा, दोनों को सप्रेम नमस्कार। दिनेश आचार्य और श्रीनिकेत जी को, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं। और उनके साथ मुझे लगता है कि और 2-4 एम्पायर्स हैं जो इस वक्त ऑफ स्क्रीन हैं, लेकिन जब भी जीपीएल की अंपायरों का जो पैनल चुना जाता है, जिसमें बहुत शानदार अंपायरों को शामिल किया जाता है। लाइव स्कोर इन आपके लिए, जैसा आप जानते हैं, स्कोर इन आपके किरण, उनके बंधु, उनके मित्र दीपक इस वक्त जिम्मेदारी को संभालते हुए, और यूथ ऑफ जीएसबी लाइव टेलीकास्ट देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। स्कोर और स्टैटिस्टिशियन के रूप में हमारे साथ रश्मिता और नीतल मौजूद हैं। बहुत शानदार तरीके से वो स्कोरिंग की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और उनकी बदौलत हम आपको रनों का लेखा जोखा सुना रहे हैं। आज इस मैच में आते हैं जहां पर जयकर स्ट्राइकर्स और मुंबई पल्टन्स के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है। पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई पल्टन्स काफी दूर से आई है, मुंबई से सफर तय करते हुई, और अच्छे, शानदार, सक्षम, प्रतिभाशाली टीमों में गिना जाता है। 41 रनों का लक्ष्य, दोनों बैट्समैन तैयार हो चुके हैं। इस छोर से पहली गेंद, और विकेट ये गेंद, और फ्रंट फुट पर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ, जी हां, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाया बैट्समैन ने, शशांक ने बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया। अगले मैच के लिए मैं कोरियल सुपर किंग्स और क्षमा प्रार्थी आबरन डायमंड्स और जीआरएस मैसूर, इन दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध करता हूं कृपया वो टॉस के लिए आए। तो शशांक ने पहली गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ, क्रिकेट एक, जैसा आप जानते हैं कि तकनीकी खेल है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे तकनीकी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। शशांक का पहला स्ट्रोक बताता है कि वो कितने टेक्निकली स्ट्रांग है। फ्रंट फुट पर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक के साथ उन्होंने बल्ले से गेंद को टकराने दिया, पुश पर कर दिया, 1 रन चुरा चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स छोर से ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली, टिप्पा खाने के बाद गुडलैंड स्पॉट से थोड़ा पीछे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुडलैंड कहा जा सकता है, और एक तरह से कहा जाए कि अतिरिक्त उछाल मिला, उस उछाल को पीछे चढ़ जाते हुए कट करने का प्रयास किया बैट्समैन ने। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। गेंदबाज इस छोर से गेंदबाजी करते हुए, प्रद्युम गेंद को लेकर तैयार। बहुत कम नाम आपको देखने को मिलेंगे, संस्कृत का नाम है प्रद्युम, गेंद को लेकर तैयार, आउट विकेट।
ये गेंद सचिन को थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई और जब तक थर्ड मैन शॉट में फील्डर आकर गेंद को उठा ले, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय कि वो छोर को बदल लें। इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर। Here is an announcement. Please note KA51 AA 23 तो शशांक ने गेंद को धीरे से पुश बर कर दिया और 1 रन अपने खाते में चुरा लिए। रन बढ़कर उनका व्यक्तिगत योग उनका 2, जबकि कुल रन संख्या 3 पर। 41 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, जिसमें अब तक मात्र 3 रन बन चुके हैं। इस छोर पर प्रद्युम्न आक्रमण पर तैयार, राउंड विकेट उनकी गेंद, स्ट्राइक एंड पर सचिन आ चुके हैं। ऑफ साइड पर मैंडेटरी पावर प्ले के अनुसार 3 खिलाड़ी दिखाई दे पड़ रहे हैं दायरे के अंदर, ऑन साइड पर 2 हैं। राउंड विकेट, गेंद को हवा में उछाल दिया, गेंद तैरती हुई लॉन्ग आउट क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे आ गए और उनके हाथ से ये मौका छूट गया। जीवनदान मिला बैट्समैन को, विकेट कीपर ने बहुत खूबसूरती के साथ पीछे की तरफ थ्रो कर दिया स्टंप्स की दिशा में, लेकिन बैट्समैन मुझे लगता है कि शायद बच गए हैं। बहुत अच्छा मौका हो सकता था, सचिन को चलता किया जा सकता था। ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು KA04ND 4212 KA04ND 4212 ಈ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಓನರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ KA04ND 4212 ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. यस, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार एक अच्छा मौका जो कि गवा दिया फील्डर ने, और कहने के लिए आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ढेर सारे दर्शकों के सामने आपको और इतने सारे जो दबाव, जो प्रेशर होता है, उसके खिलाफ आपको कैच करना होता है। एकाग्रता इसलिए कहा जाता है कि आपको एकाग्रित होकर कैच करने की जरूरत है। प्रद्युम्न आक्रमण पड़ता है 11वें, नेशनल हाईवे एंड से उनकी गेंद। इस बार फ्रंट फुट पर सचिन ने क्या खूबसूरती के साथ गेंद को, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाया, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गए, फ्रंट फुट को थोड़ा गेंद की दिशा में बढ़ा दिया, टो और पैर को साथ में ले आते हुए गेंद को धीरे से उन्होंने पुश बर कर दिया, जब तक फील्डर कवर क्षेत्र में आकर गेंद को उठा लिए। दोनों बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 6, जबकि कोई आघात, कोई क्षति अभी नहीं हुई है। सचिन 4 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं, शशांक 2 पर हैं, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और नेत्रावती छोड़ का ये मैदान जहां पर ठंडी हवा बीच बीच में बहती है, और हर साल जिस तरह से आप देख रहे हैं कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति GPL चल रही है, उसमें हर साल कुछ नया बनाने का उनका प्रयास रहता है। खासतौर पर त्रिमूर्तियों को सप्रेम नमस्कार कहता हूं, नरेश शनई, चेतन और नरेश प्रभु, जो कि बहुत जिम्मेदारी के साथ एक क्रिकेट श्रृंखला बनाने के लिए जितना कुछ करना होता है, मुझे लगता है कि पूरी एक टीम है। जिस तरह से कृष्ण और उनकी अक्षौणी सेना होती है, उस तरह से इन तीनों के पीछे एक बहुत बड़ा टीम है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करती है। और एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला अगर कहा जाए कि पूरे कर्नाटक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रिकेट श्रृंखला इस GPL को कहा जाए तो इसमें कोई गलत ना होगा। तो इतनी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत होती है, और आपके साथ अगर एक अच्छी स्ट्रांग टीम हो जिसको आप गाइड करें और उसके मुताबिक काम हो जाए तो बात बनती है। और वो आपके सामने बहुत साफ सुथरा शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी का नतीजा है। दूर वाले छोर से सोहन गेंद को लेकर आ रहे हैं, उनकी गेंद ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई और मौका मिला बैट्समैन को कि वो 1 रन को तेजी के साथ पूरा कर लें। इस 1 रन के साथ सचिन बढ़कर पहुंच चुके हैं 5 के व्यक्तिगत योग पर, कुल रन संख्या 7 पर, बगैर किसी नुकसान के, आघात के। बीच बीच में ठंडी हवा चल रही है। मुंबई पल्टन्स जानती है कि उनके सामने 41 रनों का लक्ष्य जो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, निर्धारित 7 ओवर्स का मैच है, यानी कि लगभग 42 गेंदों में 41 रन को सिंगल से बनाया जा सकता है, इसलिए कोई ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक्स वो नहीं खेल रहे हैं। और लास्ट ईयर पिछले साल में पूर्व में मुझे लगता है कि प्रशांत पुरानिक जो कि मुंबई पल्टन्स के टीम ओनर थे, और इस साल
वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, शायद टीम ओनर चेंज हो गए हो। बहरहाल उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। सोहन की गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन शशांक गेंद को ऑनसाइड की दिशा में पुल करना चाहते थे, चूक गए और पर दिनेश आचार्य जी ने संकेत किया कि लेग बाय है, पैरों से टकरा कर गेंद निकल गई, ऑनसाइड की दिशा में घुमाकर खेलना चाहते थे शशांक। एक रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर बगैर किसी नुकसान के आघात के। 41 रनों का लक्ष्य। शशांक और सचिन पारी की बागडोर को संभालते हुए दूर छोर से सोहन, नेत्रवती छोर से एक और गेंद को लेकर तैयार हुए। उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, लेकिन जब तकदीर आपका साथ दे, किस्मत के धनी हो, तो स्टंप्स पर लगने के बाद भी गिल्लियां नहीं उड़ती है। ऐसा लगता है कि शायद फेविकॉल से चिपकाई गई हो गिल्लियां स्टंप से। गेंद बहुत तेज तर्रार थी, लगभग मुझे लगता है कि 60-65 के रफ्तार की एक गेंद थी। बैट्समैन थोड़ा सा क्रॉस द लाइन आकर गेंद को ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, चूक गए। गेंद सीधे घूमकर स्टंप्स पर जाकर टकराई, स्टंप से जाकर टकराई, लेकिन गिल्लियां उड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। विकेट कीपर ने जाकर गिल्लियों को उठाकर देखा कहीं कुछ चिपक तो नहीं गया। बहरहाल बैट्समैन बच गए, तकदीर का साथ मिला। उस छोर से एक और गेंद है। सोहन की गेंद ऑफ स्टंप के सीध पर थोड़ा ज्यादा बाहर थी, फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस, जिनको पुल करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ऐसे गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर कहीं ऑफ स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर खेला जा सकता था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा देकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में मिड ऑन क्षेत्र में बैट्समैन ने ड्राइव कर दिया। 1 रन चुराकर कुल योग को बढ़ाकर वो पहुंचा चुके हैं 9 पर बगैर किसी क्षति के। ये गेंद हवा में खेल दिया, गेंद तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। क्या कमाल का स्ट्रोक था। शशांक जिस तरह से शुरुआत में डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे थे, लगा नहीं कि अचानक गेयर बदलेंगे। ये गेंद थोड़ा धीमी गति से आई, लेंथ में कम भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसको अब उसकी लाइन को परख लिया और थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था। आमतौर पर ऑन साइड पुल करते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरती के साथ लगभग लॉन्ग ऑफ में जी हाँ गेंद को ड्राइव किया, लॉफ्टेड ड्राइव था, गेंद 4 होने के लिए निकल गई। इस बीच एक और गेंद रनआउट का मौका शायद बन जाए। जी हाँ, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मिड विकेट डीप में ड्राइव कर दिया। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर इज 15 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 15 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 15 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं। तो सुबह का प्रहर दोपहर की ओर बढ़ता हुआ, शानदार धूप मैदान पर फैली हुई है। आकाश में अगर आप देखें तो दूर दूर सफेद छोटे छोटे बादल रंगोली की तरह बिखरे पड़े हैं और समय इस वक्त 11:55 का हो चुका है। सारे फील्डर्स एकत्रित होकर योजना बना रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है। 15 रन बन चुके हैं, 41 रनों का लक्ष्य है, विकेट गिरने का नाम भी नहीं ले रही है। एक कैच का मौका गवा दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने। उसके पश्चात एक गेंद जो स्टंप्स पर जाकर गिरी, लेकिन गिल्लियां नहीं उड़ी। इस वजह से बैट्समैन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तकदीर के धनी निकले। इस बीच कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी कि वो अपने पास जो विकल्प है उससे चुनकर किस गेंदबाज को जो कि गेंदबाजी के लिए लाएंगे। लक्ष्मी 27 नंबर के जर्सी में आक्रमण पर कमेंट्री बॉक्स छोर से आ रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सचिन मौजूद हैं। सचिन और शशांक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में देखने को मिल रही है और कभी डिफेंसिव कभी बीच बीच में एक आध आक्रामक स्ट्रोक्स भी लगा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आमतौर पर एक अच्छी क्रिकेट के लिए योजना चाहिए वो सब वो दिखा रहे हैं। सचिन स्ट्राइक एंड पर इस छोर से ये गेंद लक्ष्मी गेंद को लेकर तैयार। क्रीज के कोने से की गई गेंद ऑफ स्टंप के सीध पर थोड़ा शायद बाहर थी, लेंथ में ज्यादा, जिसको तिरछा खेल दिया। थोड़ा सा आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद लुढ़कती हुई गई। जब तक फील्डर गेंद को संभाल पाते, सचिन ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया। दर्शकों की तादाद कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं धीरे धीरे शाम तक ढेरों दर्शक, जैसा कि आमतौर पर होता है जीपीएल में, ढेरों दर्शक यहां पर उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे और क्रिकेट को 4 चांद लगेंगे। इस छोर से लक्ष्मी आक्रमण पर तैयार। शशांक उनके सामने पहली बार आ चुके हैं। क्या योजना बनाते हैं देखने वाली बात होगी। क्रीज के कोने से वो गेंद कर रहे हैं।
और विकेट उनकी गेंद और शशांक ने थोड़ा पहले आगे निकलते हुए गेंद को थोड़ा कमिट हो चुके थे जिसकी वजह से एडजस्ट करना पड़ा। बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद गई, जब तक पॉइंट और गली के बीच में कहीं पर फील्डर आकर गेंद को उठा लें। आसानी के साथ शशांक ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, रन से के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा बाहर निकलकर सचिन गेंद को इनसाइड आउट करते हुए कट करना चाहते थे लेकिन चूक गए, मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। मैसूर टीम, थोड़ा सा याद दिला दें आपको, मैसूर की टीम अगर यहां पर पहुंच नहीं पाई तो विपक्षी टीम को टॉस, जी हां, कहा जाएगा कि विपक्षी टीम टॉस जीत चुकी है, उसको निर्णय का अवसर दिया जाएगा। तो कृपया मैसूर टीम कृपया जल्दी आकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएं टॉस के लिए, क्योंकि विपक्षी टीम के कैप्टन अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कोडियाल सुपर किंग्स के कैप्टन आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। अगर आप ना आ पाए, क्षमा प्रार्थी। आभरण इस बीच गेंद ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर डीप में गेंद गई, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 1 रन को पूरा लें। आभरण डायमंड्स के कैप्टन यहां पर इंतजार कर रहे हैं, तो मैसूर टीम के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो जल्दी आए, और अगर वो ना आ पाए तो फिर टॉस जीतने का श्रेय बिल्कुल आभरण डायमंड्स के दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा, फिर वो निर्णय लेंगे कि वो बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी। इस छोर से गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे और गेंद जाकर बल्ले से लगने के बाद स्टंप्स पर जाकर गिरी। इस बार गिल्लियों ने कोई गलती नहीं की, वो गिर गई और बैट्समैन आउट होकर शशांक जो कि लौट रहे हैं। तो पहले विकेट का आघात हो चुका है। कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थैंक यू। दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद हैं, जल्दी आइए टॉस के लिए। तो नए बैट्समैन, नए बैटर जो कि दीपक आ चुके हैं। तो जो जिस तरह से क्रिकेट के नीति नियमों में जो धीरे धीरे प्रगति हुई है, बदलाव हुआ है, उसी तरह से शब्दों में भी बदलाव। आमतौर पर हम बैट्समैन के हाँ कहा करते थे, लेकिन अब बैटर से संबोधित करते हैं। गोपी भट्ट जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। हालांकि मैं यही योजना बना रहा था कि गोपी जी के साथ कोंकणी और हिंदी का जो सम्मेलन, जो एक मिश्रित विवरण आपको सुनाएं उनके साथ इंटरेक्ट करके, लेकिन क्या ऐसा अवसर आएगा देखते हैं, समय बताएगा। तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 18, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सचिन स्ट्राइक एंड पर। विघ्नेश जो की गेंद को लेकर दूर वाली छोर से, नेत्रवती छोर से, जहां पर उनके पीछे एक काला स्क्रीन है और कैमरामैन बिल्कुल तैयार है। विघ्नेश आक्रमण पर तैयार, उनकी गेंद, ये गेंद और इस बार अप्रत्याशित रूप से थोड़ा सा उछल कर आई, उसको देखकर पीछे हटते हुए कट करने का प्रयास था बैट्समैन का, बल्ले से लगी और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। 1 रन दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। तो इस वक्त दीपक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विघ्नेश की गेंद, गेंदबाज विकेट कीपर के अंदर एक उत्साह समझ गया कि कहीं कुछ हुआ है, लेकिन बैट्समैन बच गए। दीपक बाल बच गए, खेलने का प्रयास कर रहे थे और थोड़ा सा दबाव इस वक्त दिखाई पड़ रहा है मुंबई पल्टन्स के ऊपर जैसे ही शशांक आउट हो गए। दीपक स्ट्राइक एंड पर। विघ्नेश की गेंद और कट बिहाइंड के लिए शायद अपील की गई, लेकिन अंपायर इंप्रेस नहीं हुए, क्योंकि ऐसे कई अपीलों का अनुभव वो रखते हैं और बहुत माइन्यूट होकर बहुत बारीकी से वो मुआयना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कान बिल्कुल खड़े रहते हैं कि कहीं कोई निक तो नहीं हुआ है, और इस वजह से आखिर देखा कि उन्होंने नकार दिया इस अपील को। वो छोर से गेंद इस बार लेंथ में ज्यादा थी, गेंद को धीरे से बल्ले का सिरा देकर खेल दिया आउट। जब तक फील्डर कवर की दिशा में आकर गेंद को डीप से उठाकर थ्रो कर पाते, बैट्समैन ने तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इसे के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 20 पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
ये गेंद सचिन के लिए ऑनसाइड की दिशा में ड्राइव कर दिया, लेंथ में ज्यादा थी गेंद, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहा है, दूसरा रन तेज कदमों के साथ चुराने का प्रयास, स्ट्राइक हैंड की दिशा में थ्रो आया तो जरूर, लेकिन थोड़ा विलंब से, काफी लंबा फासला था। मुझे लगता है कि थोड़ा सीधा थ्रो अगर किया जाता है तो शायद बात बन सकती थी, और वो कहीं ना कहीं हवा की दिशा भी विपरीत चल रही है, जिसकी वजह से थ्रो थोड़ा सा विलंब से आ गया, धीमा पड़ गया, और बैट्समैन 2 रन को पूरा कर चुके हैं। और छोर से गेंद, फुल टॉस थी, गेंद को हवा में खेल दिया, तैरती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई है, 6 रनों के लिए। जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर, क्या कमाल का स्ट्रोक है। सचिन मानो अचानक उनका बल्ला आग उगलने लगा है, फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा मौका मिलेगा। गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पूरी ताकत के साथ उछाल दिया 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 28 पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 फॉर 1। तो 28 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 41 रनों का लक्ष्य है। इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए गेंदों में कितने रनों की दरकार है। 18 गेंदें बची हैं और 13 रनों की जरूरत है। 18 बॉल्स टू गो एंड 13 रन्स टू गेट। 13 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं। तो एक छोर पर सचिन बहुत विश्वास के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हैं, पुश भर करते हैं, सिंगल्स बटोरते हैं। उसके पश्चात लूज गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ, पिछला स्ट्रोक आपने देखा, आखिरी पिछले ओवर में जो आखिरी गेंद पर उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में उछाल दिया था 6 रनों के लिए। इस छोर से लक्ष्मीश अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन दीपक मौजूद हैं। 13 रनों की दरकार है, और अगर मेरे साथी कमेंटेटर को कोई आपत्ति ना हो तो वो 13 रन बचे हैं, मैं उसको, और इस बार अंपायर ने उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। शानदार कैच, बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन को छोड़कर निकलती हुई गेंद, खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई, और विकेट कीपर ने गेंद को अपने झोली में कर लिया, खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट, दीपक आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। तो दीपक आउट होकर लौट गए, और दीपक जैसे शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि वो विश्वास उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा दबाव में दिखाई पड़ रहे थे, गेंद को बीट हो रहे थे हर गेंद पर, और कहीं ना कहीं इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, और विकेटों के पीछे जिस तरह से प्रसाद बहुत तेजी के साथ उन्होंने, हालांकि बहुत चपल खिलाड़ी हैं, विकेटों के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। तो इस छोर से लक्ष्मीश गेंद को लेकर तैयार, 1 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं, 2 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं, माफ कीजिएगा। एक और बहुत अच्छी गेंद आज लक्ष्मीश का, क्या कहना। अगर जयकर स्ट्राइकर्स के सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर कहा जाए उन्हें तो गलत ना होगा। क्या खूबसूरती के साथ वो गेंदों को निकालते हैं, ढूंढ कर ऐसे गेंदों को जो बैट्समैन को परेशान कर जाए। गुड लेंथ स्पॉट से निकलकर ऑफ स्टंप के आसपास थोड़ा सा उठती हुई गेंद हवा में स्विंग होकर निकल गई, बैट्समैन बीट हो गए, खेलना चाहते थे, दुविधा में पड़ गए, बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं लिया। इस छोर से एक और गेंद को लेकर लक्ष्मीश तैयार हुए, ओवर विकेट। विकेट कीपर बार बार प्रसाद अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं अंपायर पर, बिल्कुल वो पाषाण की तरह खड़े हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इस जीपीएल क्रिकेट श्रृंखला में हर साल जिन सारे अंपायरों का चयन किया जाता है और निश्चित तौर पर टॉप के अंपायर होते हैं, तो ये विश्वास, ये अपील जिसको खारिज किया अंपायर ने, गेंद को लेकर लक्ष्मीश दोबारा तैयार हुए। इस छोर से गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, विकेट कीपर भी थे, पीछे खिलाड़ी बैकअप भी कर रहा था, लेकिन जब तकदीर आपका साथ दे तो गेंद वहां पर गिरती है जहां पर कोई खिलाड़ी ना हो, और दोनों के बीच में जाकर गेंद गिरी भाग्य का साथ। एक और बार किस्मत का साथ बैट्समैन के फेवर में, 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन इस 1 रन के साथ। कुल रन संख्या बढ़कर 29 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 29 for 2।
सचिन काफी देर से क्रीज पर हैं, जम चुकी हैं निगाहें, गेंद बड़ी दिखाई पड़ती है, क्या वो सफल हो पाएंगे? इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार रनआउट का मौका होगा, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया, लेकिन तेज दौड़ में कहीं ना कहीं रतन जब दौड़ लगा रहे थे स्ट्राइक एंड की दिशा में, शायद उनसे आकर गेंद टकराई और वो अपने लाइन पर ही दौड़ रहे थे, इसलिए कोई सवाल नहीं उठता और बैट्समैन बच गए। 1 रन पूरा हुआ इस एक के साथ, कुल रन संख्या बढ़कर 30 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 30 for 2, 11 रनों की जरूरत है। लक्ष्मेश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, रतन स्ट्राइक एंड पर हैं, सचिन एक छोर पर, ऑफ स्टंप के बाहर एक और अच्छी गेंद। लक्ष्मीश ने इस ओवर में लगभग 3-4 बार गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर निकाला और बैट्समैन गेंद को फ्रंट फुट पर कभी बैक फुट पर खेलने के प्रयास में बीट होते जा रहे हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की है और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 30 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 30 for 2, यानी कि अभी और 2 ओवर शेष बचे हैं, माफ कीजिएगा, और 11 रनों की दरकार है, 12 गेंदें शेष बची हैं। 12 balls to go and 11 to get। 11 रनों की जरूरत है मुंबई पल्टन्स को। और क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभार योजना जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगर छोटा लक्ष्य हो तो वहां पर बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंसिव बल्लेबाजी अपनाते हैं, गेंदों को सिंगल्स में बटोरने का प्रयास करते हैं रनों को, और इस प्रयास में कभी कभार मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे बैकफुट पर आ जाते हैं। अपना नेचुरल गेम भी बहुत जरूरी है। दूर वाले छोर से ये गेंद ऑन साइड की दिशा में, सचिन ने गेंद को पुल कर दिया और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन चुराया, दूसरा रन चुराने के लिए सचिन थोड़ा सा आगे बढ़ गए, लेकिन देखा कि पार्टनर ने मना किया है, थोड़ा स्ट्रेच किया, बैक पीछे हटते हुए क्रीज की दिशा में अपने बल्ले को पहुंचा दिया। अगर ऐसा न कर पाते तो निश्चित तौर पर वो रन आउट हो सकते थे। 1 रन पूरा हुआ, 10 और रनों की जरूरत है। विघ्नेश की गेंद को लॉफ्ट कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है और फील्डर वहां पर लुढ़क गए, गेंद गई खबर बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन, जीपीएल का शानदार चौका। चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, विकेट्स गिरते हैं, कैच छूटते हैं, कभी पकड़े जाते हैं, और ये सब क्रिकेट की अनिश्चितताएं हैं। जैसा आपने देखा फील्डर मौजूद थे और थोड़ा ज्यादा जल्दी में वो आगे निकल गए, शरीर का संतुलन बिगड़ गया, लुढ़क गए और इस दौरान गाड़ी निकल गई, यानी कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और गेंद ऑन साइड पर पोल किया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है इस बार। मिड विकेट डीप पे फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 2 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। शानदार रनिंग। इन 2 रनों के साथ रनों का लेखा जोखा आपको बता दे, 37 for 2, 4 रनों की दरकार है। रतन स्ट्राइक एंड पर, रतन के लिए गेंद ऑन साइड पर, कैच हो सकता है? जी नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में थोड़ा सा पीछे फील्डर थे डीप में, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते कुछ देर हवा में जरूर थी और बड़ा अच्छा योजनाबद्ध तरीके से खेल को स्ट्रोक को खेला गया था। विकेटों को कवर किया और गेंद को ऑन साइड की दिशा में स्कूप और पुल का मिला जुला स्ट्रोक कहते हैं। बैट्समैन के पास 1 रन लेने का अवसर। उस छोर से गेंद हल्के हाथ से गेंद को पुश बर कर दिया। सचिन आज बहुत कमाल की बल्लेबाजी सचिन ने की है, बहुत पेशेंट होकर, बहुत धीरज के साथ। एक ऐसे बैट्समैन के लक्षण जो आपके खेमे में हो तो निश्चित अपने टीम की जीत को सुनिश्चित करता है। तो उस छोर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ज्यादा बाहर, उसका पीछा किया बैट्समैन ने, रतन ने, लेकिन ड्राइव करने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 39, 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 39 for 2, यानी कि अभी और 2 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, जबकि 6 गेंदें शेष बची हैं। 6 balls to go and 2 runs to get। 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। मुंबई पल्टन्स जो कि मजबूत पकड़ बना चुका है और जयकर स्ट्राइकर्स को कुछ जादू करना होगा अगर इस मैच को जीतना है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं 6 गेंदों में 2 रन कोई बड़ा लक्ष्य तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपके खेमे में अगर कोई जादूगर हो जो विकेट्स प्राप्त करें, गेंदों को डॉट में तब्दील करें, कुछ ऐसी प्रतिभा जो ऐसे परिस्थितियों में काम आए, ट्रम्प कार्ड बने, ट्रम्प कार्ड एक तरह से पत्ते में इक्का साबित हो, कैसा हो सकता है, देखने वाली बात होगी।
जयकर स्ट्राइकर्स की तरफ से अर्चित शिवानंद गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 7 नंबर के जर्सी में 2 रनों को क्या वो रोक पाएंगे? अर्चित शिवानंद फील्डिंग में परिवर्तन करने के पश्चात ऑफ साइड पर दायरे के घेर कर 2 खिलाड़ी हैं। इस छोर से यह गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा पीछा किया सचिन ने, मिस कर गए। फिर अंपायर से गुहार लगाई कि इस गेंद को वो वाइड करार दें, लेकिन अंपायर ने एक तरह से कहा जाए कि वो टच से मस नहीं हुए। इस छोर से अर्चित शिवानंद की अगली गेंद राउंड विकेट बैकफुट पर, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। बहुत स्टाइलिश अंदाज में गेंद को देखा, परखा, पीछे हट गए, विड था, गेंद को चॉप के अंदाज में कट कर दिया। एक तरह से स्लाइस कहा जा सकता है। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाते, सचिन ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया। 1 रन पूरा हुआ, सिर्फ 1 रन की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर रतन आ चुके हैं। रतन थोड़ा सा ऑन साइड पर घूमकर खड़े रहते हैं, उनके लिए गेंद राउंड विकेट इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। शानदार स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए मुंबई पल्टन्स ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, तालियां बज रही उनके लिए। बहुत विश्वसनीय बल्लेबाजी, खासतौर पर अगर कहा जाए तो सचिन ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है। सचिन ने बहुत खूबसूरती के साथ 21 रन जो कि उन्होंने बटोरे हैं, और जी हां 21 रन उन्होंने बटोरे, और बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए, और डगआउट में उनका स्वागत तालियों से किया जा रहा है। क्यों ना हो एक ऐसा बल्लेबाज जो परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करता है। शानदार बल्लेबाजी, मुंबई पल्टन्स को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और जयकर स्ट्राइकर्स को मुझे लगता है कि इस मैच में जो गलती की है उसको सुधारना होगा अगले मैच में, और उनको अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और क्रम के अनुसार अभी मुझे लगता है कि मैं अपने शब्दों को विराम दूं, और आने वाले नए मैच के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सतीश और सुरेश भट्ट का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो हमिंग बता, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, शार्प करो। हेलो चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, हेलो चेक।
Hello, check. Hello, mic testing 1 2 3 check. Hello, check. Correct. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. So thank you very much, Ajay ji. Once again, welcome back to this Sahyadri College ground. The second match of the day number 1 of this GPL season 8 will be played between Auburn Diamonds versus GRS Mysore Warriors. I request the 12th man of both the teams to come to the commentators box to assist our scorer. So in the first match of this tournament, Mumbai Paltans defeated Jaika Strikers Mudbidri by 8 wickets. What a magnificent, amazing and deserving victory for Mumbai Paltans. It's a good start for the team Mumbai Paltans in this GPL Trophy 2024. Meanwhile, Auburn Diamonds team will play against one of the newest team, GRS Mysore Warriors. For the first time, GRS Fantasy Park, Mysore Warriors are playing in this GPL tournament. So GRS Mysore Warriors captain, after winning the toss, he has decided to field first here. Meanwhile, the players of GRS Mysore Warriors are in the middle to set their field placement. We request the 12th man of Auburn Diamonds, wherever you please come to the commentators box immediately. Your presence is required here urgently. The two umpires officiating for this match are Swaroop Tirthalli and Raghu Kaduru. Swaroop Tirthalli is the main umpire there, and Raghu Brahmawar will be the square leg umpire. Vivek and Daivik are the two openers. Team Auburn Diamonds. Vivek Nayak Kocha, an all-rounder player, will take the strike, and Daivik will be the non-striker. And the opener bowler will be GK is the opener bowler. Batsman played elegantly to the long off region, but there is a fielder, there is a protection. So batter Vivek Nayak Kocha will have to satisfy with only a single here. With that single, Vivek is straight away off the mark. He opened his account and he has given the strike to left-hander Daivik. For this left-handed batsman, 5 men on the onside and 4 on the offside. It's a power play over. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle during the power play session. I can see one fielder in the wideish long on, and there is a fielder in the deep mid-wicket. Left-hander batter Daivik is all set to face the next ball. For the first time, he's ready to face. This time the batter is going played the shot into the vacant region. Long chase for the fielder there. Will the fielder be able to cut it off? No, the ball has gone out of the park here for boundary. What a tremendous shot it was. Played the shot nicely through the covers. Played that over the head of the fielder. He finds the gap there, and the ball has gone to the boundary rope for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. The fielder just became a spectator over there. So 4 valuable runs from the bat of Daivik, and Daivik is straight away off the mark. He opened his account. So welcome boundary for Team Auburn Diamonds. The meantime, we watch GK with a long run up. Full toss, converted it into full toss, straight down the ground. He played 1 bounce over the boundary rope for 4 runs.
The batter Daivik has given complete punishment for the bowler, charging the bowler on that occasion. He has scored 4 valuable runs here. He played that shot elegantly in between the long on and long off fielder, and no need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Daivik. So second boundary from the bat of Daivik, and Daivik is batting on 8 runs with those 2 boundaries, and the scorecard of Arbor and Diamonds now slowly moves on to 9 on the board without losing any wickets. First over is in progress. Bowler GK is looking a bit of expensive here. He has to improvise his bowling now. Let's see what he's going to do now. In the right arm, round the wicket fashion. Short of the delivery turned away nicely onto the onside, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. The batsman wanted to pull the ball onto the onside, but the ball went straight to the fielder there. Good piece of fielding there by the fielder standing at square leg region, collected the ball and threw it very quickly to the wicket keeper. But before the throw reaches the wicket keeper, there is ample time for Daivik to pick up an easy single here. That's a fine delivery there, pitching right in the block hole. Good improvisation there by GK. Ball pitching in the right spot here. And the batsman Vivek Nayak Kota wanted to play the shot to the offside, but the ball is not coming onto the bat. So no runs resulted. Dot delivery there by GK. Once again, the ball is in the hands of the bowler Gopala Krishna, and he's back to his bowling mark now. GK on his way to Vivek Nayak Kota. This time he will be coming over the wicket to Vivek Nayak. Converted it into full toss, and that has gone for a maximum here. What a terrific shot it was. That just went like a tracer bullet. It was a short of the delivery. It was a full toss delivery. And the batsman Vivek Nayak Kota has taken the great advantage of that full toss delivery. Played that shot over the deep wicket fence for a maximum. What a terrific shot it was. 6 valuable runs have been added to the total. That's the end of the over number 1. Very expensive over. So after the completion of first over, Arbor and Diamonds have scored 16 runs without losing any wickets. A good partnership is going on here between these 2 batters. Vivek Nayak Kota and Daivik are playing brilliantly. So here is an announcement. There is a car with car number KA19MF9325 which is parked behind the commentary box on the road. So we request the owner not to park that car. One more car number is KA19MN8860. We request the owner to remove that car as early as possible from where it is been parked. This time batsman Daivik wanted to go for a big hit, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. The ball has gone straight in the throats of the fielder, and the fielder kept his eyes on the ball without making any mistake, caught it beautifully. So Daivik is out. Arbor and Diamonds have lost their vital wicket here. Vinayak Pai, the man standing in the deep square leg region, caught it beautifully there. So Daivik is out for 9 runs. He has scored 9 runs and he is back in the pavilion. So to replace him, the new batsman now joining is Surendra Pai Sastana. Suri Sastana is his nickname. He has come out to the center here. The icon player of Arbor and Diamonds, one of the all-rounder player. Suri Sastana excels not only in the batting but also in the bowling department, and he is a brilliant fielder too. So lot of responsibility on the shoulder of Suri Sastana now. Suri, after taking the guard from the umpire, after watching the field placement carefully, he will be facing the bowler Prashant.
Prashant is the very successful bowler who has given that much required breakthrough for his team, even though they have conceded 16 runs in the first over. Soon after that, in the very first ball, Prashant was able to pick up that important wicket of Daivik. Now Prashant for the second time from the far range. Loud appeal there, loud shout by the bowler as well as by all the fielders. But I think the ball was clearly missing the off stump. So umpire Raghu Kaduru says not out. So no damage done there. Dot delivery there by the bowler Prashant. Prashant is bowling with such a good line and length that he's not giving any room for the batter to play here. Once again, Prashant on his way to Suri Sastana now. From the river range. Here is the next delivery. Room outside the off stump, steers it down to third man region. Long chase for the fielder. Down to the third man. But before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for a couple of runs here. Very good running between the wicket here. Aggressive running between the two batsmen here. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total of Arbor and Diamonds team. Prashant bowls. Batsman Suri played that elegantly onto the onside. But there is a protection. So this time Surendra Pai Sastana will have to satisfy with only a single here. So just a single has been added to the total of Arbor and Diamonds. And that single will bring Vivek Nayak Kocha on strike now. Score at the moment is 19 for the loss of 1 wicket. Daivik is the man out there who scored 9 runs. Turned away nicely onto the onside. There was the deep square-leg region, but straight to the fielder there. Good piece of fielding there by the fielder standing at deep square-leg region. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the wicket-keeper's end. But before the throw reaches the wicket-keeper Sandy, there is ample time for both these two batters to cross over for a easy single here. So single has been taken. This time Suri goes for a big one. It could be out as the fielder is underneath it and he's out. Sachin, the fielder standing at long on region, makes no mistake. Caught it beautifully. So Surendra Pai Sastana is out. Arbor and Diamonds have lost their trump card wicket. Surendra Pai Sastana is very disappointed and he will have to move back to the pavilion here. This is going to be a big blow for the team Arbor and Diamonds. So Prashant is a very, very successful bowler who has picked up one more wicket here in the second over of the innings. Surendra Pai Sastana actually wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat. As a result, the ball takes the leading edge of the bat and it was in the air for a while, and the man standing at long on region, Sachin, makes no mistake, caught it beautifully. So second wicket has fallen down now, and after the dismissal of Suri, the new batter joining is Anant. Anant, one more hard hitter of the ball, all-rounder player. He's at the non-striker's end now. So over number 2 completed after 2 overs. Runs on the scoreboard is 20. At the end of first over, it was 16. So only 4 runs have been considered by Deepak in the second over, and he was able to pick up 2 wickets. In fact, Prashant was the bowler. Batsman goes for a switch hit here, and that should be a boundary here. No need of running for that. What a terrific shot it was. Excellent batting there by Vivek Nayak Kota. He goes for a switch hit on that occasion, picked it up very nicely and played that shot into the vacant region. There was a huge gap, and easily he finds a boundary here. So Deepak Badal is the new bowler. He has considered 4 runs in that first ball. Now once again with a short run up, he is ready to bowl. Straight to the bowler, good piece of fielding of his own, bowling forward through and picks up the ball. So no runs resulted. Dot delivery there by Deepak Badal. The meantime, we watch Deepak for the 3rd time in this over. And the man on strike is Vivek Nayak Kota. That should be a wide, no doubt about the delivery.
The ball was going far away from the off stump, and umpire Swarup Tirthahalli has no hesitation in stretching his arms and giving a wide signal. No argument at all from the bowler because he knows the situation. So one extra run has been added to the total in the form of extra run. This time again he finds the gap there. The ball is rushing towards the boundary ropes all the way to the boundary ropes for 4 runs. Welcome boundary for Arboran Diamonds. Second boundary from the bat of Vivek Nayak Kota in this particular over. Vivek came as an opener and he's playing brilliantly so far. He's batting on 16 runs after facing 7 balls. And at the non-strikers end, we have got Anant, who is yet to open his account. This is a much better disciplined line there. The batsman Vivek played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there. So no runs resulted. Back to the bowler. Deepak Badal collects the ball on his forward through. Once again, Deepak is making some change in the field placement here. Vivek goes for a big one and straight to the commentary box. What a magnificent shot it was. Terrific batting there by the batter Vivek Nayak Kota. Stepped out very quickly. What an effortless stroke it was. Straight down the ground. He comes across and picked it up very nicely and hits that one to the long off fence for a maximum. And the ball has gone out of the park here. 6 valuable runs have been added to the total. This time again the ball was going down the leg side and it was far away from the leg stump as well. So one more wide call by umpire. 1 extra run will be added to the total. Played that shot into the vacant region. There is a fielder. Will they get 2? No, they just satisfied with only a single here. So a bit of expensive over has come to an end there by Deepak Badal. Over number 3 completed after the completion of 3 over. Arboran Diamonds are 37 for the loss of 2 wickets. The first man out was Daivik for 9. And after that they lost the wicket of Surendra Pai Sastana, who was able to contribute only 3 runs. And now Vivek Nayak Kota is batting on 23 runs. He played astonishing knock after facing 10 balls. Vivek Nayak Kota is batting on 23 runs with the help of 2 sixes and 2 boundaries. And Anant is yet to open his account. So over number 3 completed. Before the next over starts, it's time for us to change the commentary language. I request Mr. Satish to come to the commentary box for the further description. Thank you very much, Suresh Bhatji and yes, give cricketers led correction. GRS Mysore Warriors, after winning the toss, they elected to field first. And first delivery of the over number 4. This time lofted that one, but ball will go into landed safely before the fielder from deep square leg region to run across his to right to field that one. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. So with that 2 valuable runs, score now moves on to 39 for the loss of 2 wickets. I request all the teams, please note that need to collect your team management pass as well as ID for the players. Please collect right off our commentary box. It's available. Those who are not collected your ID as well as a pass, team management pass as well as players ID. Kindly request you to collect your ID and team management pass from organizer from our right off commentary box in the main stage. Rakshit to continue from the river end. Right on over wicket again, wanted to get that one into the onside region. Not quite getting hold of that stroke properly. Slower one there from the bowler in the negation, Rakshit, so that batsman the managed to complete that single. With that single score, moves on to 40 on the board for the loss of 2 wickets. Very good score on the board for team
Abharan Diamonds in this 3.3 overs. It's a nice going from the batters. Right over the wicket again, a slower one. Batsman a little bit early into the stroke. Anant this time not quite reading that slowness of the delivery. Quite interesting kind of bowling action there from Rakshit because he's just holding the ball in his left hand. For the last moment, he's transferring that ball from left to right. It's might a little bit confusion for the batter to find what kind of delivery the bowler is bowling from the far end. Again across the line, he wanted to get that one low full toss. The intention of Anand to get that one into deep square leg region, but because of that low full toss, a slower one from the bowler, so that batsman couldn't manage to get the timing behind the stroke, but good enough for him to complete that single with that single score, but moves on to 41 on the board. Short pitch, lofted that one bounce into the fence for 4 runs. Little margin for error. You can't do the mistake bowling that line. Of course, the fine leg is not there, even the deep fine leg is not there, deep square leg is there, and of course the bowler is not really having an ample pace in the ball, and he didn't got adequate field for that. A batsman just capitalized that one, hitting the ball down to deep fine leg boundary for 4 runs. With that boundary, good finish for the over number 4 then, and Abharan Diamonds are looking in a commanding position here. They got 45 for the loss of 2 wicket, and they got a run rate of more than 11 runs per over. It's a good going here for the team. Abharan Diamonds are cruising very well, and even they lost the toss, asked by the opposition team GRS Mysore Warriors to bat first, and they have batted brilliantly so far. Especially the highlight of the innings, Vivek Nayak so far batted brilliantly. Is batting on 30 and just 14 deliveries. Absolutely, it was entertainment innings coming from the bat of Vivek Nayak so far. He played some enterprising cricket stroke, and still is there in the middle looking for some beginnings for his team, and they wanted to get a big total for team Abharan Diamonds. Prashant is a new bowler in, will go into bowl that 5th over of the innings of team Abharan Diamonds. Just I want to see the field set here for right-hand batsman Anantesh. He's a tall man. For him, there is one fielder at short fine leg, one fielder at square leg in front of square, one fielder at mid wicket and wideish long on, and one at long on, and then one fielder down at long off and deep cow point. Here is the first ball. Left arm from the wicket, driven just wide of the fielder, not good attempt from the fielder, and before the fielder from the deep long off to run across his left field the ball down at deep extra cover region. Ample time for Anand to get that couple of runs. Just he played that one wide of that extra cover fielder, but little bit opportunities created for the catch, and reaction time is little bit, so that the bat just defeating his hand, and valuable couple of runs taken. It's 47 on the board. Left arm down the wicket, lofted that one, but not good enough. The long on fielder is in the right position to take the catch. Anand departs. This is a very important breakthrough from Prashant B for his team GRS Mysore Warriors. And have a look at that one in replay. Lofted that one. He got elevation, but fails to get the distance because no timing, and even the direction of the wind is not really helping that stroke to get the distance. And long on fielder completed the catch. It's so important in morning to afternoon. You need to see the direction of the wind, because it's a key for the success for the batsman. And with the direction of the wind, you're able to get that big stroke. He can get the distance, but against the wind, if you try to hit the big shot, then it's going to be a difficult opportunity for the batter to get the distance. Vikram Prabhu is a new batter in. One more very good physics what the new batter has got, and well built personality, and wait and see how we're going to use this personality in this slog overs, because this over number 5 is in progress of the team Abharan Diamonds, and Vikram takes a fresh shot from umpire. Away from us, Prashant seaming in. Left arm down the wicket. It's going to be a wide delivery. Nothing much to do with the delivery. The Vikram shouldering his arms, left the ball to the hands of wicketkeeper. Umpire has got no hesitation to call that wide. With that wide scoreboard, moves on to 47 for the loss of 3 wicket. Prashant after that getting 48 for the loss of 3 wicket. After he got the wicket, little bit excited, and he tried to get one delivery which is gone too far outside the line of off stump for Vikram. Prashant.
Balls this time lofted. Going to be one more opportunity is created for the catch. Deepak is underneath. Oh, he dropped the catch. My goodness. He dropped the catch. He's just saying that the rays of sun which is hitting my eyes, but there is no excuse at all because sun will going to do the job, and you need to get away from the rays of the sun rays. Sometimes it's very difficult, even quite understandable, and he's just claiming that maybe when ball is coming to his hand, the rays of sun which is hitting his eyes, so he couldn't manage to judge that catch. Ball just slipped out of his hands. 50 comes up. Again loose stroke played, and luckily that ball didn't carry to the fielder at short extra coverage, and Vikram this time played it on uppishly, and fortunately for him that ball is went in the off volley to that fielder at extra cover. 51 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Prashant. So far it's going to be a tidy over. In 1 wicket in this over, and he conceded so far 6 runs out of 4 deliveries. Switch it, but we managed to send that one down to deep backward point region. Fielder behind the ball, and ball winning the race against the baseman. At the same time, little bit of football in a cricket ground as well from that fielder, as he was trying to stop the ball hitting his legs, and a little bit extra work there for the fielder to bring the ball. And anyhow, that's a boundary comes. Have a look at that on replay. The fielder chasing the ball like a cat chasing a mouse, but ball at last winning the race against the fieldsman and got the boundary here. The with that boundary score and moves on to 55 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. It's turning out to be a fantastic start here for the new batter, and Vikram, both one is Vivek Nayak is on absolutely in a terrific touch. He's batting on 34 and just 15 deliveries. What an innings he's playing for his team. Absolutely mesmerizing innings he's played so far for his team. Again wanted to go for the switch it, ball going further away, missing the line. Umpire has got no hesitation to call that wide. With that wide, Scober moves on to 56 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. This is a prolonged over. Altogether we can see that 2 wides in this over, and he starts well, Prashant, but of course couldn't manage to finish well. The runs are coming after that wicket. They bowled wide deliveries and 1 boundary also conceded, and the final time in this over, 1 fielder is brought into inside the ring from the mid wicket, short mid wicket. Again, a lovely delivery indeed. Batsman just following the bowler just following the batsman, seeing that batsman shuffled across the line of the delivery. Good one to finish the over number 5. After completion of over number 5, searching for the right track. Habaran Diamonds are looking in a fantastic position, no doubt at all. They're going exactly 11.17 runs per over. It's a 56 for the loss of 3 wicket after completion of over number 5. For the latecomers, you are watching this prestigious GSB Premier League 2024 GPL Utsav, which is proudly organized by Cordial Sports Association, Mangalore, and of course the broadcast partner Youth of GSB worldwide, having a fantastic live telecast of this cricket tournament. And you are watching the match number 2 of this prestigious cricket tournament, day number 1. The 3 days of Festival of Cricket will go into organized in this most beautiful venue. And not only the cricket, but some kind of cultural activities also provided for the GSB communities, for the talents to showcase their talents, and some singing competitions, other activities which is organized by the organizer, and altogether it's going to be a fantastic atmosphere here in this Sahyadri cricket ground. Meanwhile, start up the over number 6, and nothing much to do with the delivery. Vikram just watching the ball till the last moment and just left the ball. Nothing much to do with the delivery, which is gone far away outside the line of off stump, and wide call by umpire. With that extra score, moves on to 57 for the loss of 3 wicket. Again, that ball is a little bit pitched outside the leg stump, but the batsman wanted to pull that one, missed it completely, and there is no chance at all for any run. So 2 field umpires, Raghu and Saruf, to experience umpire, and along with these 2 umpires, Dinesh Achar as well as Sriniket. Again, ball is just couldn't manage to control that turn of the delivery in the occasion. Rakshit
whenever bowling that outswing delivery, if you tried the ball outside the line of off stump, that ball certainly will go into be wide because ball further moving away from the right-handed batsman outside the line of off stump. So that it's going to be a very important for the bowler to keep the line which is almost on the midland off stump, so that it's going to be a better delivery for the right-handed batsman. Rakshit again. Right over the wicket, that is a better delivery. Appeal for leg before you get going for the chance of run out in the non-strikers, and umpire is raising his finger. That's the end of Vikram's innings in the form of run out. Tried to get that quick single, risk single, but which is converted into a run out by the wicketkeeper. Quickly moving to the direction of the ball. Have a look at that on a replay. Wicketkeeper has got a very good quick work and returned the ball quickly to the hands of the bowler, and bowler complete the formalities of hitting the stumps, and wicket number 4 which is back into pavilion. It's 58 for the loss of 4 wicket. Season 8 of this prestigious GPL is in progress, and the time is exactly 11 past 45 in the afternoon. The bright sunny evening, afternoon in fact, and that's going to be a little bit hot condition here in Mangalore. After that, the weather after that. The condition which is a little bit cool in the month of December and January, the end of February till March, April, it's going to be a hot condition. Lovely delivery indeed, moving from the right-hander batsman, beautifully bowled there by the bowler, and the batsman wanted to get that one in the onside region and missed it completely. Wicketkeeper, just a little bit half-hearted shout there from the wicketkeeper behind the stump, and no damage done. It's 58 for the loss of 4 wicket. Rakshit from the far end, right arm over the wicket, driven that one nicely down to deep, wideish long off for a walkable single. With that single scored, moves on to 59 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. 32 to 33 degrees Celsius temperatures which is recorded as present here in Mangalore, and even the condition of the tournament is definitely going to be very hot, and these two teams were really battling hard for the victory. This time, top edge, opportunity for the one fielder out of that zip square leg fielder in front of the square will go to complete the catch. Ball is in there for a while, and plenty of time for the fielder to judge that one from the deep square leg region. And the wicket number 5 which is back into pavilion of Harbour and Diamonds. Vinayak Prabhu, the fielder down at deep square leg. Have a look at that one in a replay. He taken that one very easily. Easy catch, a straightforward catch for the fielder. And the batsman couldn't manage to connect that one very well. Faces the penalty for that and is back into pavilion. So 59 which is the total score on the board for the loss of 5 wickets. Rakshit bowled a very tidy over. So far he is the only one bowler which is very impressive in his line and length so far, because the kind of that delivery is bowling is very interesting. And again right arm over the wicket, bounce Yorker landed very slow Yorker in the negation, and batsman negotiated very well in the last moment to get the bat into the ball. And very tidy over, and the wicket taking over which is comes in and here from the bowler. The much required tidy over for the team Mysore after completion of over number 6 then, and team Harbour and Diamonds are looking so good. 60 for the loss of 5 wicket. They're going exactly 10 runs per hour. Slight a bit of run rate which is coming down because of that tidy over, the previous over bowled by the bowler. Now last over remaining, and so important for team GRS Mysore Warriors that they need to restrict the runs in this last over. And Sandy is the one of the most experienced campaigner for the side of GRS Mysore Warriors. We need to restrict the runs in this last over. And wait to see how Sandeep will go into restrict the runs, and famously known as a Sandy. And Vivek Nayak is batting on 35 out of 18 deliveries in non-strikers then, and strikers and Ravi Chandra will go into face first delivery of the over number last. Right over the wicket, lovely delivery, beautifully bowled, and that was a perfect delivery to ball. Whenever dealing with the last over, you know exactly, batter always loves to play the big shots. So this is the one line is definitely going to be a very effective slower one from Sandy, and bowled that very good line just outside the line of after coming into the batter. Sandy again. Full toss, and they missed it completely, but definitely they are not going to miss a single here in the form of leg bye. With that leg bye, Skobar moves on to
61 for the loss of 5 wicket. Umpire Sarup and Raghu at square leg. The two umpires came to this tournament for a long way. Brahmavar, Raghu from Brahmavar and Swarup from Tirthahalli. 61 for the loss of 5 wickets. Sandeep to continue. Two very good deliveries to start with, but now big challenge now for the bowler because of Vivek Nayak is back on strike. He's batting on 35. Certainly is a one batter wanted to get some acceleration in this last over. Third time in this over away from us. Right above the wicket, beautifully bowled again. Sandy reading the mind very well of the batters. Not only reads the mind of the batter, but he knows exactly the kind of delivery need to bowl. The slower one absolutely is one of the main weapon the bowler wanted to use in the last overs, and Sandy using that very well so far. One more slow delivery. He picked that one right from the middle of the bat. You can't do that one regularly for the batter like Vivek Nayak. One was settled down in the middle. After that, the previous delivery which is bowled by the Sandy, which is a slower one. This time we are just waiting for that slow delivery. Have a look at that one on replay. Absolutely waiting for the slow delivery and lofted that one handsomely down to deep long on for a youth 6. 67 for the loss of 5 wicket. Again Drivan, this time going to be a chance here for the fielder. Wonderful catch taken there by Prashant. Once it looks like the ball is just sailing over the head of that fielder, but fielder down at deep long of region, Prashant making no mistake at all. Just had got a slight bit of jump here to get that catch. And the entertainment innings which is comes to an end of batter Vivek Nayak. Just have a look at it on replay. The Prashant absolutely very good judgment in the end. It's not so easy because ball just coming to the hands went like a trace bullet and when the ball is left the bat of a batter, and fortunately for the bowler that ball went straight to the hands of Prashant. But a very good innings which is comes to an end of Vivek Nayak. 67 for the loss of 6 wickets. Still it's a good score on the board, and Sunil is a new batter in. The good comeback from the bowler's point of view. Sandy immediately came back very strongly after that 6. He picked up a wicket of the same batter, and he was the final delivery is given him as per the new rules and regulation of the cricket is concerned. The bowler can make that run out. Of course we can call that as a munkading out, but that munkading out is just definitely removed by the MCC in the present rule. This is one kind of run out. This is considered as a one kind of run out. If the bowler will go into left the crease before the bowler the complete is bowling action, high action, because, and I think Sandis did a very good job actually. He's completed his bowling action, and immediately seeing that after came to his bowling stride, and seeing that the batsman is out of the crease, then he made that run out. Again a lovely delivery indeed outside the line of leg stamp. Going to be a chance of run out. Very good comeback here by Sandy in the last 2 deliveries. So, but still I think Abaran Diamonds are nothing much worried about that because they got a very good runs on the board. 67 they scored by losing 7 wickets in their 7 overs, and they set a target of exactly 68 to win this match. At current trend rate they got 9.80 runs per over, and they have to get 69. That means just under 10 runs per over, which is required mandate for the team. Correction, 68, which is going to be a target. 9.80 runs per over is the required run rate, and wait and see how well the team GRS Mysore Warriors, will they play like a Warriors here to win this match? Definitely they need to play like a Warriors if they wanted to get that 68 runs to win this match of their first league stage matches of this prestigious day number 1 of GPL 2024. Just wait and see the kind of reply coming from GRS Mysore Warriors. And before the innings will go into start of GRS Mysore Warriors, I would like to invite Ajay Raj sir for further explanation of the match in our national language Hindi. And Ajay Raj sir, just coming back to this particular match, of course in this morning afternoon session any score around 67 to 70, it seems to be one of the best score to depend. But seeing the condition here in the afternoon here in
Sahyadri cricket ground. It's not like there is that much of difficult condition for the batter. It's absolutely the batting paradise. If manage to use the crop and manage to use the direction of the wind, I think even Mysore, GRS Mysore Warriors also they got opportunity to climb that mountain of runs. Of course, asking run rate is just 10 runs per hour, but I think Ajay sir, as far as our best experience in this particular cricket ground is concerned, first tour of the power play is going to be key for the success for the team GRS Warriors. If they manage to utilize that 2 hours, at least 20 to 25 runs in the first hours, then gate will go into open for the team Mysore Warriors to win this match. Hello, check. Hello, check. Hello, check. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। तो आइए दोबारा सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। अजय राज का प्रणाम स्वीकार करें। जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 और इस मैच में अंपायर ने सचेत किया कि दोनों बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी मैदान पर उतरें। तो इस मैच में सतीश ने जिस तरह से आपको विवरण सुनाया, मुझे लगा कि कुछ एक बातें बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से एक बहुत शानदार छक्का जो रोमांच पैदा करने वाला था, थ्रिल लेकर आया। फिर अचानक एक कमाल का कैच जो फील्डर ने संभावित छक्के को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बहुत खूबसूरती के साथ आसान बनाकर कैच किया। और सबसे बड़ी बात मंकडिंग जो हमने देखा और बहुत कम देखने को मिलता है, पहलू दो बनते हैं, दृष्टिकोण दो बनता है। सतीश, मुझे लगा कि नियम के अनुसार, जो आधुनिक नियम के अनुसार मंकडिंग को आउट करार देना जरूरी है, लेकिन जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं तो लगता है कि शायद थोड़ा सा अनफेयर है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी कहता है कि बैट्समैन अगर आगे निकले हैं क्या वो फेयर था? जी नहीं, वो भी अनफेयर है। तो इस वजह से ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है, क्योंकि बैट्समैन भी आगे निकल गए और ऊपर से गेंदबाज को भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है कि बैट्समैन को ऐसा करने से रोके। तो आइए मैच की ओर बढ़ते हैं। ये बातें हुई और दूसरी पारी की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी मिडल और ऑफ स्टंप के लाइन पर, और लोअर फुल टॉस जिसको धीरे से गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया बैट्समैन ने, 1 रन चुरा लिया। तो मैंडेटरी पावर प्ले की बात की सतीश ने कि शुरुआत में 20-25 रन शुरुआत के 2 ओवर्स में अगर 20-25 रन बनेंगे तो बात बनेगी। इस बीच ये गेंद ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, 1 और रन लेने का अवसर। दोनों बैट्समैन इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें, जीआरएस मैसूर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस छोर से यह गेंद फुल टॉस थी, बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद को पुल कर दिया और यह 4 रन। कमाल का स्ट्रोक है। इस बेहतरीन चौके के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। रिप्ले में देखा जा सकता है कि विनायक ने क्या खूबसूरती के साथ गेंद को बहुत जल्दी पहचान गए। फुल टॉस थी, थोड़ा सा घुटनों को झुकाया, पूरी तरह से नहीं, जबकि विकेटों को कवर करते हुए गेंद को पुल किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और गेंद, इस बार क्या खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल है। बहुत जल्दी थोड़ा सा ट्रिगर ऑन हो गए। गेंद टिप्पा खाने के बाद स्टंप्स के सीट पर थी, मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर। अपने टो पर उछलकर विनायक ने गेंद को थोड़ा सा ऑनसाइड की दिशा में ग्लांस के अंदाज में खेल दिया, फ्लिक कर दिया। 1 रन अपने खाते में। कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 7 पर बगैर किसी नुकसान के, आघात के। रविकांत के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और परिवर्तन के तौर पर कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को करने का प्रयास। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इस बीच विकेट कीपर ने स्टंप्स को शायद उड़ा दिया है। अंपायर निर्णय निकालने कि आखिर हुआ क्या है। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। एसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर और कोडियाल सुपर किंग्स। एएसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर और कोडियाल सुपर किंग्स, दोनों टीमों के कैप्टन कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज, कमेंट्री बॉक्स के बगल में।
तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। दोनों अंपायर्स ने संकेत किया कि तीसरे अंपायर जिम्मेदारी को उठाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें। ऑन फील्ड आप देख रहे हैं तो स्टंपिंग के लिए शायद तीसरे अंपायर का इंतजार, वो नतीजा निकालेंगे और रिप्ले में देखने के पश्चात निर्णय निकालेंगे। ऑन फील्ड इस वक्त राघु ब्रह्मावर और स्वरूप जो कि मौजूद हैं। बहुत प्यार भरा नमस्कार उनको। राघु ब्रह्मावर जी से मुझे लगता है कि काफी साल के बाद, काफी समय के बाद मैं मुलाकात कर रहा हूं। फ्रेंड्स बैंगलोर के नेशनल इवेंट में, उसके पश्चात कुंदापुर के इवेंट में हमने उनसे मुलाकात की थी। आमतौर पर वो राष्ट्रीय स्तर के मैचेस में जो प्रोफेशनल क्रिकेट होते हैं उसमें सहभागी होते हैं, उसमें योगदान देते हैं और काफी समय के बाद सह्याद्री के मैदान पर उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। और एक टीम, बड़ी अच्छी टीम है, श्रीनिकेत, दिनेश आचार्य, स्वरूप और राघव ब्रह्मावर। बहरहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। अंपायर जिम्मेदारी को निभाते हुए कैप्चर किए गए दृश्य में रिप्ले को देखकर वो नतीजा निकालेंगे कि बैट्समैन क्रीज में पहुंचा है या नहीं। हवा तेज चल रही है, जो रंग बिरंगे ध्वज दूर दूर लगाए गए बाउंड्री लाइन के बाहर, वो संकेत कर रहे हैं कि आज पुरवैया शानदार बह रही है और जो गर्मी से परेशान हैं उनके लिए राहत की सांस है। उसके अलावा मैदान के सजाने का जो तरीका है, एक तरह से कहा जाए, पुराने जमाने में शब्दों का इस्तेमाल कहा करता था कि इस मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो बहुत वही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसा मैं कहता हूं कि कर्नाटक में सबसे बड़ी क्रिकेट श्रृंखला अगर जीपीएल को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि 3 दिनों का जो दिन रात का खेल होता है उसमें आप जानते हैं कि इतनी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाने के लिए आपको पैसा पानी की तरफ बहाना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत काफी लगती है। और इस मेहनत के लिए अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है। जी हाँ, नॉट आउट है तो बैट्समैन बच गए। तो जो मेहनत मशक्कत लगती है उसके लिए त्रिमूर्तियों को हैट्स ऑफ कहते हैं। नरेश शनय, चेतन जी और नरेश प्रभु, ये त्रिमूर्तियां हैं और इनके पीछे पूरी एक अक्षौणी सेना है। इनको अक्षौणी सेना को गाइड करते हुए इस बड़ी क्रिकेट श्रृंखला की रचना की जाती है। बहरहाल इस गेंद पर आते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन रविकांत हैं। रविकांत के लिए गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, लेंथ में ज्यादा थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद का पीछा किया और जड़ से निकालकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में फ्लिक के अंदाज में खेलना चाहते थे, चूक गए, बच गए। इस अपील को अंपायर ने खारिज किया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 7 बगैर किसी नुकसान के। एक छोर पर विनायक खेल रहे हैं 6 के व्यक्तिगत योग पर एक शानदार चौका लगाने के पश्चात, और रविकांत एक के व्यक्तिगत योग पर 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विवेक का ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। तो काफी किफायती ओवर कहा जा सकता है। मात्र 8 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। टॉस के लिए दोबारा मैं आमंत्रित करता हूं दोनों टीमों के कैप्टन से, कृपया। कोडल 7 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, कोडियल सुपर किंग्स और एएसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर और कोडियल सुपर किंग्स के कैप्टन से अनुरोध है कृपया जल्दी टॉस के लिए आइएगा। और प्लेइंग 11 लिस्ट भी बहुत जरूरी है। दूर वाले छोर से यह गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, एक एंगल डिलीवरी थी, अंपायर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। जी हां, राघु ब्रह्मा और हमेशा की तरह थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आश्वस्त होने के पश्चात ही वो निर्णय देते हैं। उन्होंने कहा कि वाइड है, तो वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 पर, माफ कीजिएगा 9। वाइड और दौड़ को मिलाकर 9 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य 68 का है। अनंत की गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद एक लेंथ से ऊपर उठी उस गेंद को बहुत जल्दी परखते हुए उस उछाल को कवर किया और गेंद को आड़े वाले से थोड़ा सा पुल किया। मिड विकेट डीप में गेंद जा चुकी है, दोनों बैट्समैन अपना छोर बदल चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 10 पर। अनंत एक और बाद नेत्रावती छोर से मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाज है, विकेट उनकी गेंद, और क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक खेल दिया था और लेकिन ऐसा इतना अच्छा स्ट्रोक खेलने के बावजूद चौका प्राप्त नहीं हुआ। यह निराशा की बात है बैट्समैन के लिए, क्योंकि ये गेंद जिस तरह से आई टिप्पा खाकर मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर उसको ऑन दी अप गेंद पुल किया था और फील्डर ने गेंद को फील कर लिया।
रन्स आपको बता दें कुल मिलाकर 12 रन्स बगैर किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस। विनय का विनय का स्ट्राइक एंड पर क्या कमाल का स्ट्रोक खेलते हैं, पुल किया गेंद को और एक रन सिर्फ लेने का अवसर मिलेगा विनय का को इस एक रन के साथ। रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 68 रनों का लक्ष्य, 68 का टारगेट इस मैच को जीतने का, लेकिन मात्र 13 रन जो कि अब तक बन चुके हैं। उस छोर से एक और गेंद, इस बार थोड़ा सा जी हां हड़बड़ा कर खेलने का प्रयास था बैट्समैन का। रविकांत गेंद को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, ऑफ स्टंप के सीध में थोड़ा बाहर निकलती हुई गेंद और उसको बल्ले से थोड़ा स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास किया, बल्ले का निचला सिरा लगी, विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, रन लेने का अवसर नहीं है। रविकांत स्ट्राइक एंड पर उस छोर से गेंद और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर फील्डर को बीट करती हुई गई और यह 4 रन। जीपीएल का कमाल का स्ट्रोक है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया इस बार, सही टाइमिंग के साथ और प्लेसमेंट लाजवाब था। फील्डर मिड विकेट में काफी डीप मिड थे, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो फासला था वहां पर गेंद को ऑन दी अप लेंथ में जो ज्यादा थी उस गेंद को पिक किया और पुल कर दिया ऑन साइड की दिशा में। रिप्ले में देखा जा सकता है कि कितने कमाल के टाइमिंग के साथ और प्लेसमेंट के साथ गेंद को खेल दिया था। ऑफ स्टंप के बाहर अपने पैर पिछले पैर को निकालकर गेंद को पुल किया ऑन साइड की दिशा में और गेंद टिप्पा खाने के बाद फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई। प्रयास अच्छा था लेकिन उनको उनके पहुंच से दूर बाउंड्री लाइन के बाहर और गेंद 4 रन के लिए। एक अनाउन्समेंट, दोन्ही कार हांगा रोडा मध्य पार्क केला, दयकोरून त्या दोन्ही कार कूडले काडका थंय सेपरेट पार्किंग लॉट आसा थंय राबोवका। कार नंबर KA19MF 9325 आनी एक KA19MN 8860. We request the owner of both the cars not to park there. You need to park your car in the parking lot. थैंक यू। विवेक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। विनायक उनके सामने स्ट्राइक एंड पर, यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और थोड़ा सा घुटनों को झुकाकर ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया। फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और इस वजह से बल्ला बदलने की मांग कर रहे हैं विनायक। 1 रन के साथ अब रन बढ़कर पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के लक्ष्य है 68 रनों का, यानी कि अभी और लगभग 50 रनों की जरूरत है। और विकेट इस छोर से ये गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद के ऊपर आ गए, लाइन को परख गए और देखा कि लेंथ में ज्यादा थी, उसको थोड़ा सा फ्लिक के अंदाज में और बहुत कलात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। 1 रन खाते में जोड़ लिए गए और विवेक अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। ज्यादा दौड़ धूप नहीं करते, मुश्किल से 2-4 स्टेप वो निकालते हैं। और विकेट उनकी गेंद इस बार लेंथ में दोबारा ज्यादा थी, ऑफ स्टंप के सीध पर जिसको ड्राइव कर दिया, जड़ से निकालकर ड्राइव कर दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जा चुकी है। फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया, जब तक वो समेट पाते आसानी के साथ विनय का 1 रन चुराकर अपने साथीदार को उन्होंने जिम्मेदारी को सौंपी है। इस छोर से अगली गेंद रवि किरण के लिए, पुशबर कर दिया। दोनों बैट्समैन की बुद्धिमानी का क्या कहना, बड़े चतुर होकर सिंगल्स को बटोर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बात बनेगी, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य है। और शुरुआत में जिस तरह से सतीश ने पूछा था कि 20-25 रन तो बनने चाहिए मैंडेटरी पावर प्ले में, अगर ऐसा नहीं बना तो इतना बड़ा लक्ष्य शायद पाना मुश्किल है। बैटिंग पैराडाइज उन्होंने ये भी संबोधित किया था, कहा था कि अच्छे खासे रन बन सकते हैं, गेंद अच्छी तरह से आसानी से बल्ले पर आ रही है, लेकिन इसका फायदा दोनों बल्लेबाज नहीं उठा पा रहे। शायद योजना कुछ अलग है, स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, वो सिंगल से काम चला रहे हैं, लेकिन लगता है कि अगर आक्रामक स्ट्रोक्स नहीं लगे तो आने वाले बैट्समैनों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के ऊपर जल्दी तेजी के साथ आ गए, जब तक वो गेंद को उठाते दोनों बैट्समैनों ने तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर लिया। ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। स्कोर इज ऑन 22 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 22 रन बगैर किसी नुकसान के। गोपी भट्ट आ चुके हैं यहाँ पर, उनका स्वागत करते हैं। क्या बात है, और हर साल की तरह इस साल भी आपका योगदान सर आंखों पर, और हमेशा जीपीएल को अपनी तरफ से अपना योगदान देते हैं। और अवसर मिलेगा तो बारी बारी विवरण में हम हिंदी और कोंकणी भाषा में इंटरेक्शन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे,
हो सकता है कि दर्शकों को पसंद आए। प्रयास यही है कि इस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाएं। स्वागत है गोपी भट्ट जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस क्रिकेट श्रृंखला का? ये लगातार हर साल कुछ नया बनाने का प्रयास त्रिमूर्तियों के जरिए, नरेश शनाय चेतन और नरेश का प्रभु, निश्चित तौर पर हर साल और भी अच्छा निखर कर ये क्रिकेट श्रृंखला आ रही है। आप क्या कहना है? खंडित 8 सीझन चलता सर, विंगड विंगड गावची टीम आमकां पळोवचा मेळटा। ह्या वर्सा फर्स्ट टाइम मैसूर एक आमगेले एक कर्नाटकाची एक सांस्कृतिक नगरी म्हणटा तसले एक गांव तुलान जाल्यार आज एक टीम आमकां पळोवचा मेळटा। तशीच विंगड विंगड इवेंट हांगा चलता आसा। आज एक निऑन डीजे नाइट म्हणून आसा, तेवे एक विशेष 8 वर्सांनी फर्स्ट टाइम जाता आसा। क्या बात है। इस पीछे गेंद लॉफ्ट किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से राघु ब्रह्मावर जी ने संकेत किया, दोनों हाथों को उठा करके 6 रन। जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक है। रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद को उछल दिया, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, पूरी तरह से पीछा किया गेंद का, लाइन के ऊपर आ गए और स्ट्रोक के पीछे इतना ताकत था कि निश्चित तौर पर गेंद ग्राउंड को क्लियर करे, उस अंदाज में गेंद को खेल दिया गया था। कोसों दूर गेंद दर्शक दीर्घाव में गई 6 रनों के लिए। तो इस साल जैसा गोपी जी ने कहा कि मैसूर की टीम ने भी हिस्सा लिया है, स्वागत है। हर साल एक और टीम की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ये क्रिकेट श्रृंखला इतनी प्रचलित और विख्यात हो चुकी है कि देश विदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और भी कई क्षेत्रों से नामांकन आ सकते हैं और क्रिकेट श्रृंखला का नाम और भी ज्यादा बड़ा होगा। गोपी जी, आपको क्या लगता है? खंडित एक आमगेले कोडियाल तेरू मंगळूर रथोत्सव तुम्ही ऐकून अशा पुरोची सगळे वर्ल्ड वाईड तुलना त्या कोडियाल तेरा येताची, तशीच कोडियाल तेरा नेक्स्ट जाऊच्या 1 वरानाची GPL टूर्नामेंट आहे तशी जल्ला आता वर्ल्ड वाईड तुलना GPL काही खंडित जाऊन या टूर्नामेंटाक येता लोक असच सुरू एक टिकेट बुक करणं। क्या बात है। जी हाँ, जिस तरह से रथोत्सव बहुत चर्चा में रहती है, जीपीएल आज उसी तरह से चर्चा में वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। उस छोर से गेंद ड्राइव किया, गेंद को मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन पर थी और थोड़ा सा बाहर निकल गए, गेंद के लेंथ को, लाइन को पहचान गए और खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। थोड़ा सा लॉफ्टेड ऑन ड्राइव था, जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा ले। दोनों बैट्समैन छोर को बदल चुके हैं। अच्छा प्रयास उस छोर से, नेत्रवती छोर से इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन ले आए, लेकिन ज्यादा बाहर थी, उसको जैसे तैसे ड्राइव में बदल दिए बैट्समैन ने। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जरूर था, लेकिन स्ट्रोक का बनना, रनों का बनना बहुत जरूरी हो जाता है। इस 1 रन के साथ रन आपको बता दें, स्कोर बन चुका है 32 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 32 रन, फुल टॉस थी और मौके का फायदा उठाया जा सकता था, मिस कर गए विनय का। हाथ को बिल्कुल बल्ले पर जोर से मारते हुए अपने आप को कोस रहे हैं कि आखिर इस मौके को उन्होंने किस तरह से गवा दिया। और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर थी और तकनीक कुछ अलग थी, जिसकी वजह से वो लाइन से अलग रह गए। अगर वो ऑफ साइड में कहीं ना कहीं खेल पाते तो शायद कनेक्ट कर सकते थे। गेंद को ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास किया, इसकर वजह से मिस कर गए। वो विकेट उस छोर से गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गए। थोड़ा सा पैरों पर से, जी हाँ, पैर से टकरा कर शायद गेंद निकल गई है। जी, इसी के साथ अंपायर राघु ब्रह्मावर जी ने संकेत किया कि लेग बाय है। 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 33 पर बगैर किसी नुकसान के। 33 विदाउट लूजिंग यानी विकेट्स संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 33 रन बगैर किसी नुकसान के। रनों का लेखा जोखा हमारे साथ, जैसा आपको बता चुका हूं, रश्मिता जी और नीतल मौजूद हैं। उनका आभार प्रकट करते हैं मन से, हृदय से, क्योंकि उनकी बदौलत हम आपको रनों का लेखा जोखा सुना रहे हैं। दीपक जो कि स्कोरिंग ऐप के इस वक्त जिम्मेदारी को निभाकर ऑनलाइन जो स्कोरिंग है उसको अपडेट कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और कंप्यूटर के, लैपटॉप के सामने और स्कोरिंग, उसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वराज जो कि जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। तो आइए 5वां ओवर शुरू हो रहा है। विवरण में बदलाव का मौका है और सुरेश भट्ट जी और गोपी भट्ट जी आप भी आ सकते हैं, या फिर सतीश। कुछ 3 ओवर्स बचे हैं, नजदीकी मामला लग रहा है, रोमांच बढ़ेगा, थ्रिल बढ़ेगा। पहले इस गेंद पर आते हैं, उसके पश्चात में हमारे साथी कमेंटेटर को विवरण को
सौंपता हूं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव करने का प्रयास किया, मिस कर गया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं। कुछ एक पंछियां, छोटी सी चिड़िया हवा में उड़ रही है सामने, काफी अच्छा दृश्य। कैमरामैन कैप्चर करिएगा प्लीज, क्योंकि ये जीपीएल 2024 चल रहा है। हर एक क्षण, हर एक दृश्य जो कि जीपीएल के शान को बढ़ाता है। आगे के विवरण संभालने के लिए सुरेश भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji. "17 balls remaining and 34 more runs required for team GRS Mysore Warriors. Ball takes the leading edge of the bat and straight to the wicket keeper there. One more wicket has gone down. So Pranav Bhatt, the bowler, has picked up that wicket here. And GRS Mysore Warriors are really losing their hopes. For the first time, GRS Mysore Warriors are playing in this GPL cricket tournament. So 34 runs they have scored, and they have lost the wicket of opener Vinayak. Vinayak played very well, but unfortunately on that occasion he wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly. The ball has gone to the wicket keeper. Wicket keeper caught it beautifully. So Vinayak is out. To replace him, another new batsman joining is Vinayak. Vinayak Prabhu is on strike, ready to face Pranav Bhatt. From the college in, Pranav Bhatt bowls. That should be a wide. No doubt about delivery. Ball was going far away from the off stump, and umpire Swaroop Tirthahalli has no hesitation in stretching his arms, turning around and giving a wide signal here. So one more extra run will be added to the total of GRS Mysore Warriors. We come back to the bowler, steers it down to third man region. There is a fielder down to the third man. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So GRS Mysore Warriors desperately need big hits now, because they know the target is very huge. Everything is good going for team Arbor and Diamonds. Meanwhile, one more wicket has gone down. Wicket number 2 has fallen down for the team GRS Mysore Warriors. Pranav Bhatt is becoming a more successful bowler. Has got the second wicket in this over here. So everything is good going for team Arbor and Diamonds. What a start for the team. Their batters have done excellent job, especially the opener batsman Vivek Nayak Kota has played brilliant knock, astonishing knock of 41 runs. He came as an opener, and he has hit 3 sixers and also I think 4 boundaries. With the help of that, they have set a huge target of 68 runs, and chasing this target, the team GRS Mysore are really struggling now. Played elegantly, nicely to the covers. Handsome looking cover drive there by the batter. Deepak Badal goes for a handsome looking cover drive. That was a lovely cover drive in fact, but only a single will result here. Not more than that. There is no possibility of going for the second run. So Deepak Badal is straight away off the mark. Room outside the off stump. Crashed away nicely to the covers. But before the fielder, Anand collects the ball and throws it back to the wicket keeper. There is ample time for the batter to pick up a single here. Pretty good over there by the bowler Pranav. He has considered only 5 runs in that over, and he has picked up 2 important wickets also. So that's the end of the over number 4. Over number 5 completed. After the completion of 5 overs, runs on the scoreboard is 38 with 2 wickets down. And you are watching Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. Kodial Sports Association of Mangalore are hosting this
fantastic cricket tournament for the 8th time. Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. Surendra is a new bowler. Ball hitting the legs of the batsman. Batter wanted to pull the ball onto the onside, but the ball is not coming onto the bat. That ball kept very, very low, surprised the batsman. The batsman didn't know much about delivery. He didn't have any clue about that ball, misses it completely, and meanwhile they get a single here. The meantime was Surendra for the second time. Straight down the ground he played. Will they get two? No, they will have to satisfy with just a single here. Very good piece of fielding there by Anant, who is a tall man standing at long on region. He comes across and collects the ball and throws it back to the bowler. And meanwhile the batter gets a single here. Deepak gets a single. Down the leg side. And wide call by the umpire. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. So one more extra run has been added to the total. With the help of that extra run, score now moves on to 41. Well, he goes for a big one and the ball has gone out of the park here. Big, big, big sixer. GPL sixer. What a terrific shot it was from the batter. Vinayak Prabhu stepped out very quickly. Down the track he goes, picked it up very nicely and hits that one over the deep mid-wicket fence for a maximum. 6 valuable runs resulted here. Converted that into full toss, long chase for the fielder and all the way to the boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. There is no need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. With those 4 valuable runs, the scorecard of GRS Warriors now moves on to 51. 17 more runs required in the remaining 8 balls. Vinayak Prabhu is looking very dangerous here. And Abaran Diamonds will have to look for the wicket of Vinayak now. Once again it was a full toss delivery and the batter Vinayak Prabhu wanted to take the advantage of that full toss, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. It was not from the middle of the bat. The ball takes the leading edge of the bat. Meanwhile, before the fielder who was standing behind the wicketkeeper stops that ball, there is ample time for both these two batters to cross over for a couple of runs. Good running between the wicket. In fact, it was a very good understanding between Vinayak Prabhu and Deepak Badal. So a couple of runs have been added to the total of GRS Mysore Warriors, which takes their full score to 53 now. Ball wraps onto the pad. Vinayak looking to shuffle across the stump. Ball hitting the legs of the batsman and leg by has been signaled by umpire Raghu Khadur. That is the end of the over. So single in the last ball of the over to keep retain the strike. So over number 6 completed after 6 overs. It is 54 for the loss of 2 wickets. That means 14 more runs required in the last over. 6 balls to go. 14 runs required for GRS Mysore Warriors. GRS Mysore Warriors captain, after winning the toss, he had decided to field first here. Now last over to go and 14 runs required for the team. The Vivek Nayak Kota of Abaran Diamonds played an astonishing knock of 41 runs, which has helped their team to reach a respectable target here. Now everything is good going for team Abaran Diamonds. They are in a driver's seat now, but just one big hit can change the whole complexion of the game now. The dangerous batsman, the pinch hitter of their side, Vinayak Prabhu, is on strike. Can he go for a big hit now? Will he be able to go for a maximum? This is going to be a very interesting. Nagesh is going to bowl the final over of the innings. A right arm medium pace bowler. Nagesh has got that responsibility of bowling the last over. Lot of responsibility on the bowler now. At the same time,
Lot of responsibility on the batter Vinayak Prabhu and Deepak Badal because they need 14 runs in the last 6 balls. Here is the first delivery of the last over. Crashed away nicely to the covers. Will they get 2 runs? No, that's a very, very good piece of fielding there by the fielder. Meanwhile, they were looking for the second run. Vinayak Prabhu was looking for the second run, but Deepak Badal was not at all ready. Unfortunately, Deepak Badal will have to sacrifice his wicket here. Wicket number 3 has gone down for GRS Mysore Warriors here at the score of 55. They have lost their 3rd wicket. Thirteen more runs required for GRS Mysore Warriors now. Sandy is the newcomer. Sandeep has come out to the center. He's at the non-striker's end. And Vinayak is the man on strike who is batting on 16 runs. Well, that's a very intelligent bowling there, but it was going outside the off stump, and in fact it was going far away from the off stump. And meanwhile, wide has been signaled by umpire. So 1 more extra run will be added to the total of GRS Mysore Warriors. At this stage of the game, the bowlers must be very, very smart. They should bowl perfectly straight to the wicket, because not only the runs are added, but also they should bowl 1 more extra delivery here, because each runs are very, very important. So they should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required now. Well, the ball takes the leading edge of the bat. There could be a chance of run out. I think Vinayak Prabhu is out. The ball takes the leading edge of the bat. Wicketkeeper tried his best, but the ball slipped away from his hands. But after that, a great recovery there by the wicketkeeper. He was very quick in collecting the ball and throwing it back to the bowler's end. Meanwhile, Vinayak Prabhu was short of his ground. He was rushing towards the danger end. He was looking for a single there, and unfortunately he has to move back to the pavilion here, and GRS Mysore are in big trouble now. Twelve more runs required in the remaining 4 balls. Sandy is on strike. Can he go for a big hit now? If they can pick up 1 boundary or sixer, definitely the things will change. That can change whole complexion of the game. Steers it down to 3rd man region outside the off-stump delivery. Will they get 2 runs? They're looking for the second. There could be a chance of run out. Will have to wait. Yes, he's out. The batter was rushing towards the danger range, and he was short of his ground. So they were looking for that run. Unfortunately, they have lost 1 more wicket here. Eleven more runs required of 3 balls now. Nagesh is bowling with good line and length here. Sandeep played it elegantly, looking for the second run. First run they were very hard, and they're looking for the second run. Very good effort there by the fielder, and it has gone to the 3rd umpire now. Square leg umpire Raghu Kaduru has referred it to the 3rd umpire. We'll have to wait and see whether the batter is safe or not. That was a very, very close decision, in fact. Hence, the square leg umpire Raghu Brahmawar has referred it to the 3rd umpire. Let's see what kind of decision will come from the 3rd umpire here. Brilliant piece of fielding there by the fielder of Abaran Diamonds. Everything is good going for the team. They are in a driver's seat, and GRS Mysore Warriors are really struggling here because the target is very huge for them, and they are losing wickets in the regular intervals.
After the dismissal of the opener batsman Vinayak, the things are slowly down for the team. Runs are dried up. 57 runs and they have lost 5 important wickets. After this match, the next match will be played between Kodiyal Super Kings versus ASKB Cricketers Bengaluru. I request the 12th man of both the teams to come to the commentators box to assist our scorer. ASKB Cricketers Bengaluru, for the first time they have been taking part in this GPL cricket tournament, a new team. Similarly, GRS Mysuru Warriors are also taking part for the first time here in GPL. So decision is still pending there. Third umpire is taking its time in reviewing that decision. He will have to review the decision from all different angles because it was a touch and go. Let us see what the decision will come from the third umpire now. Each runs will be very, very important now. And as I mentioned earlier, if GRS Mysuru Warriors finds boundary or sixer, definitely that can change the whole complexion of the game for their team. Prashant and Sandeep are the two batters in the middle there. So third umpire is again and again checking because it's a close call. We can see in the replay television screen here. Yes, it's a very, very close. In fact, the batter Sandeep was just inside the line, but we'll have to wait and see whether the bat was inside the crease or not. And the decision from the third umpire is not out. So batsman is safe. So 2 runs have been resulted here. Nine runs required. Meanwhile, Sandy goes for a big one. It could be out and is out. Simple catch to the fielder at square leg region. Sandy is out. So match is slipping away from the hands of GRS Mysuru Warriors. They needed 9 runs in 2 balls, and meanwhile Sandeep is out, and this is going to be a big blow for GRS Mysuru Warriors because the match is now slipping away from their hands. Auburn Diamonds, what an effort, great start for their team. Their batters batted very well, their bowlers are doing excellent job. At the same time, their fielders are also very, very smart. Now here is the last delivery of the final over of the innings. 9 runs required. Well, he played the shot into the vacant region, but the batter will get only a single here. With that, Auburn Diamonds have won the match comfortably against GRS Mysuru Warriors. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over Auburn Diamonds. In fact, it's a great victory for Auburn Diamonds here against GRS Mysuru Warriors. So Vivek Nayak Kocha is the player who contributed 41 runs from his bat. He played a brilliant knock for the team Auburn Diamonds. He came as an opener, and with the help of 3 sixes and 4 boundaries, he has scored 41 runs, and he has become the hero for the team. So within a short while from now, we are going to announce the Man of the Match award, and also
The third match of the day number 1 will be between Kodiyal Super Kings versus ASKB Cricketers Bengaluru. I request the 12th man of both the teams to come to the commentator's box to assist our scorer. So Neethal and Rashmita are there with us in the commentary box, who are the official scorers for this match, and Deepak is also official scorer from scoring app. You can get every updates of this tournament in scoring app. And also we have Swaraj, who is the digital scorer from M9 Sports team. So Youth of GSB hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every matches of this GPL Trophy 2024, which is proudly organized by Kodiyal Sports Association of Mangalore. Arch Pharma Labs are the title sponsors, and Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. So within a short while from now, the third match is going to start between Kodiyal Super Kings versus ASKB Cricketers Bengaluru. Meanwhile, it is time for us to announce the Man of the Match award of the previous game. The Man of the Match award goes to none other than Vivek Nayak Kocha of Aberron Diamonds, who played astonishing knock of 41 runs. Kodiyal Super Kings, please send your 12th man to the commentator's box. Meanwhile, the two umpires are slowly marching towards the track. They are entering into the ground. Sriniket Rao Urva and Swaroop Tirthalli are the umpires who is going to officiate this match. And I've got Mr. Satish Mangalore is with me in the commentary box, who is going to proceed the further commentary. Thank you very much, Suresh Bhadji, and we are into the match number 3 of the day number 1 of this prestigious GSB Premier League 2024. Meanwhile, I request extra player of Kodiyal Super Kings please be reported here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ towards our commentary box. Yes, you already hear them. Thank you very much. After winning the toss, captain of ASKB Cricketers Bengaluru are elected to field first, and so that opening batters of Kodiyal Super Kings are already they made their way to the middle of the pitch, and wait and see how well these two opening batters will go into lay the foundation for the team Kodiyal Super Kings. It's going to be a very good match here, and ASKB, maybe that's one more the new team is appearing in this 8th edition of the GSB Premier League 2024. After that, GRS Mysore Warriors, of course in their first match they faced a defeat, but they got a very good fight back, but not good enough to win the match against Aberron Diamonds. The Vinayak is on Tigers end, is a left-hand batter, and in the non-Tigers end, Ganesh Nayak, and everything is ready for the power play over. And power play over in the sense not more than 2 fielders outside the circle, and straight away 1 fielder at deep square like the infant of square, 1 fielder down at deep long on. That is 2 fielders outside the circle in the onside region, and here is the first delivery. Right around the wicket, a lovely delivery start with the pitch of the delivery, absolutely is right on the money. Abhijit strikes with the first delivery, the huge wicket in the straight away, and Vinayak Nayak no clue whatsoever that particular delivery, it is right on the block hole. Just I want to see it in the replay. Look at that one, absolutely a fantastic delivery, and certainly whenever the batter is facing his first delivery, have a look at that one. It's definitely going to be a difficult job for the batter, because they're not really expecting that kind of delivery. The very first delivery,
and have a look at it. Right on the block hold. And always the opening bowler will go into ball the first delivery as a warm-up delivery. And but here is the bowler bowling that kind of delivery means it's definitely going to be a reward which is given for Abhijit for this fantastic delivery. He's a very experienced campaigner. You know exactly he's dealing with the power play overs. It's not so easy job to bowl the power play over. You need to bowl that 6 very good deliveries if he wanted to restrict the runs in that power play. And anyhow, it's going to be a shackling start for the team Kodial Super Kings. They're back into pavilion. The new batter in is in the line of the delivery. Gautam got his first run quite neatly, plays it down to deep long off region. Of course, it's a full toss delivery, but being the fact that they lost their first wicket in the first delivery, so that he just did it in a defensive frame of mind, and that's why he managed to send that one down to deep long off for his first run and first run for his team, Kodial Super Kings. One for the loss of 1 wicket. That brings Ganesh into strike now. Abhijit right arm over the wicket. This time he wanted to play that one away from his body. Of course, nothing like looks like it's playing for the cut shot or a straight bat shot, because that slower one batsman first he wanted to go for the cut shot, but quickly realizing that there is not that much of width to play that cut shot, just he went with the stroke, but nevertheless ball went straight to the hands of bowler, and on his follow through he feeds the ball back to bowler. This time looks like something which is hitting the eye of the batter, so that is a little bit of disturbance for him. And Abhijit already starts his run, quickly realizing that batter is not ready, and again he's going back to his bowling mark. Abhijit Kinney seeming away from us, is looking so good so far in this over. Right arm over the wicket. Delivers outside the line of off stump and well within the reach of the bat, as the batsman just standing away from the leg stump, so that it's going to be a delivery which is bowler quite deliberately seeing that batsman a little bit away from the stump, so he bowled at that line which is outside the line of off stump. It is good enough for him to defeat the bat of the batter, and no run scored. One for the loss of 1 wicket. Abhijit again. This time again you're looking for the leg cutter outswing delivery, but not really getting that much help what he's looking for. White call by umpire. Little margin for error when you're trying that ball around the legs of the batter. That ball just moving away outside the line of leg stump, and umpire has got no hesitation to call that white, with that extra scoreboard numbers onto 2 on the board for the loss of 1 wicket. Abhijit Kinney again bowling away from us. Right arm over the wicket, lovely delivery in there, just forcing the batsman onto the back foot, and batter just going back. Ganesh pushing the ball right in the gap between cow point and backward point to get the single, and with that single scoreboard numbers on to 3 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. And a bright sunny afternoon, absolutely you can see that strong breeze is passing in the middle, still ball from left of our commentary box from west to east. And the shot selection is going to be very key for the success for the any batter. Gautam is on strike. Oh, lovely delivery, beautifully ball. The appeal is going on and is turning out. And batsman is walking. Now umpire is saying that Abhijit is coming right in front of umpires. Very difficult for him to see that what really happening, and maybe that a follow through where after Abhijit bowling that ball, and umpire couldn't manage to see that one. And let's wait and see. It's gone. Yes, it's gone. Absolutely. You can see the body language of the batter after he got Nick realizing that the batter himself is walking towards the middle. But you can't blame umpire for that. You can't blame umpire for that, because you can see that just if you see it in a replay what really happened. Have a look at the follow through of the bowler Abhijit. Right arm over the wicket. After delivering the ball, I think yes, he's in right position maybe. Umpire not heard the sound here, and yes, caught behind the wicket. Anyhow, it's a 3 for the loss of 2 wicket, and 2 wickets for Abhijit. Absolutely, Abhijit Kinney has got a fantastic start for his team. Dream start which is given by Abhijit for ASKB Cricketers Bengaluru. After winning the toss, selected to field first, and they got 2 valuable wickets in this first over. So after get a conversation with the squad umpire, sometimes it's very difficult for the umpire to hear that feather touch of the bats. Can I know the new batter's name? Thank you, Karthik.
Karthik is a new batter in. There is a two Karthik, Karthik Kamath and Karthik Prabhu. It's right like it's going to be Karthik Kamath Prabhu. Yes, thank you. Again, lovely delivery indeed off the backward batsman tried to turn that one on the onside region. Not quite getting that much of room enough to go for the pull shot. And there is no chance at all for any run. Scoreboard remains on 3 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. Ganesh Bhatt is in operation from the river end. Ganesh Nayak, it is a battle between two Ganesh and Ganesh Bhatt versus Ganesh Nayak. Ganesh Bhatt from the far end to Nayak. Nayak drives that on handsomely, but the placement is not good enough. The ball went straight to the hands of a deep square leg region in front of square, and because the two fielders outside the circle in the power play over, and straight away the ball went towards a deep square leg region. The Ganesh but is not happy with that the bowling action of the bowler. Maybe he's asking that umpire that is a suspicious bowling action, and here is again the bowler bowling right arm over the wicket. A short pitch delivery outside the line of leg stump and going to be a wide. And it's not punishable from the batter but from the umpire because of that line which is bowled by the bowler, which is going far outside the line of leg stump and goes to be a bonus run here for the team Kodial Super Kings. It's 5 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. Ganesh Bhatt receiving in from the far end. Right arm over the wicket to Ganesh Nayak. Was lovely delivery in there, beautifully ball, well pitched up delivery. Pitching, that's a good length spot actually. The bowler is targeting in the negation that is on the midland off stump, and perfect delivery to ball to the right hander batsman, and short of line delivery, but it's not that much of shot enough for the batter to go for any kind of big shots, defeat the bat, and wicket keeper behind the stump, back to bowler. Again loose delivery outside the leg stump, batter trying his level best to reach that delivery, Ganesh, but he knows that is a really going to be easy delivery. The free hit delivery can deliver that one into the deep square like a deep fine leg region, just chasing the ball but couldn't manage to meet the ball, and but umpire has got no hesitation to call that wide. The second wide of this over. Bowler little bit struggling to get his line and length. The scoreboard now 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. For the latecomers, you're watching a match number 3 of this GPL day number 1. 2024, beautifully ball, perfect one. No ball called by umpire. The straight away now, square leg umpires called it's a no ball. That might be that suspicious bowling action. Which is umpire after watching 2-3 deliveries called it no ball, and umpire has got evidence enough to see that what the bowler is doing here, and he cannot bend your elbow as far as the rules and regulation of the cricket is concerned, and let's wait and see what captain will going to do here of ASK Cricketers Bangalore. Of course, after getting a one warning, if a bowler will going to get another second warning, then of course they need to remove from the bowling, and that might be very carefully for the bowler not to repeat the mistake here, and wait and see how well Ganesh Bhatt will going to change his bowling action. Free hit delivery for the batter, a golden opportunity for Ganesh Nayak to get this free hit delivery. This time lofted, ball is in there, fielder will going to take the catch, but no damage done because of that free hit delivery. The batsman safe here, and one more single is added to total. With the addition of that single, score number moves on to 8 on the board for the loss of 2 wicket. Ganesh Nayak is on strike. Driven, but lack of placement straight to the hands of short extra cover. Good comeback here by the bowler. After that, the warning which is given by the square leg umpire is just correcting his bowling action and try to get the very good deliveries for the batter Ganesh Nayak. Karthik Prabhu is in the other end. Lofted, sweet sound coming from the blade of the bat. That will indicate that will go into a clean hit. And I'm just waiting for the umpire signal. It's 6. Magnificently struck. Just stand and deliver. Nothing much wrong with the line of the delivery, but the way that batsman transferring his weight onto the back foot and getting that one right from the middle of the bat, lofted that one down to deep long on for a huge 6. This is a kind of treatment which is required in this power play overs, isn't it? Powerful cricketing stroke which is really
required in that power play, and the last delivery of the over number second, which is 6, which is taken there by Ganesh Nayak, and takes the total score of the team into 14 now for the loss of 2 wicket. Good comeback here by the batter of team Kodial Kings. They're going now exactly 7 runs per over by losing 2 wickets after that shackling start in the first over. Then they knows that the second over is definitely going to be last over of the power play. Need to take the advantage of that power play. But yes, that is the last delivery of the over. Absolutely fantastic struck from Ganesh Nayak. It's the first day of this cricket tournament, the Friday, working day. Quite understandable, we're not having that much of huge crowd, but still it's a very good number of crowds enjoying the game of cricket. But hoping for the more crowds when time progresses in the late night, in the evening, and definitely it's going to be, we are expecting more crowds here. We're going to enjoy the game of cricket. Along with the game of cricket, we are getting some entertainment as well. Some DJ programs which is provided for the dance lovers, the music lovers. Again now lovely delivery, but just missing the line here again by Abhi. That ball is pitching on the middle stump because of that in-swing delivery. Ball just missing the line, going outside the line of leg stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler, but umpire has got no hesitation to call that wide. So with that wide, scoreboard numbers on to 15 on the board. Abhi from the highway end. Passes umpires Farouk. Right arm over the wicket, delicately played there by the batsman, right behind the line of the ball. All you can see that everything is perfect in that cricketing stroke, isn't it? Just a soft end comes into play, and right behind the line of the delivery. High end coordination is absolutely perfect in that occasion. The front foot is coming to the line of the delivery, and a high elbow indicating that absolutely the batsman has got a good technique to facing the ball here, because Abhijit Kini is one of the wonderful bowler as far as swinging the ball is concerned. What we're talking about the swing, this is an absolutely good outswing delivery here from Abhi. Slight a bit of half-hearted shout, not a confident shout here from the bowler, but always the bowler is enjoying that kind of deliveries when ball just leaving that right-hander's batter and right-hander batter's bat, and it's a beautiful delivery there from Abhijit Kini, and he's just enjoying this bowling in this condition. Again, bowling right arm over the wicket to Ganesh Nayak. Ganesh Nayak this time just coming to the close to the pitch of the delivery, leaning into the drive, got that single down to deep extra cover region for a single. This is a good technique when you are facing that outswing delivery. Your front foot is always going to be key for the success. As much as you are going to stretch your front foot, you are coming very close to that swing of the delivery, and definitely you are going to get to reach to the pitch of the delivery. It's a good technique there from Ganesh Nayak to pick the single. Then with that single, score Namozan to 17 for the loss of 2 wicket. Abhijit Kini again bowling away from us. Right arm over the wicket, coming down to attack, using his feet, played that down to deep extra cover for a maximum. Unbelievable strike. Absolutely a glorious stroke coming from the blade of the batter Karthik Prabhu. Magnificent struck. Just I want to see it in a replay, because the way that batsman using his feet, beautifully played that way, isn't it? Effortless cricketing stroke. One of the most difficult stroke to play in the book. Using your feet and lofting that down to deep extra cover is a delightful stroke coming from the blade of Karthik. Oh, loose stroke is played there by the batsman in the negation. Full toss, low full toss. Batsman tried to get that one into extra cover region by doing that ball very close to that fielder, isn't it? It might be the lucky breakthrough for Abhijit Kini if the ball went into the hands of the fielder there. But anyhow, is a lucky escape here for the batter. Scoreboard remains on 23 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Abhijit Kini again bowling with a short run off. Right arm over the wicket. Balls beautifully played again. A soft end comes into play. Good piece of fielding by the fielder, but not good enough to stop the single from Karthik. Is looking so confident so far. Very good productive over which is comes to an end after completion of over number 3. Searching for the right track. Of course they are in the right track after this over, because of that one magnificent 6 came from the bat of Karthik. They're looking in a commanding position now, I think so. Scoreboard is 23 on the board for the loss of 24 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 8 runs per over.
पंची की तरह तैरती हुई गई 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। for 2 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या गजब का स्ट्रोक था। गणेश ने गेंद को देखा परखा और गेंद लेंथ में ज्यादा थी, हाफ वॉली पर लिया और हवा का साथ भी मिला। गेंद कौसों दूर हवा में पंछी की तरह लहराती हुई उड़ गई 6 रनों के लिए। अब गार्ड बदलते हुए राउंड विकेट ये गेंद, और जैसे ही गेंद में बदलाव आया गणेश ने चतुराई के साथ थोड़ा पीछे हटते हुए बल्ले का सिरा निचला सिरा देकर गेंद को खेल दिया। कवर में गेंद गई, कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को ड्राइव कर दिया। बैकफुट पर हल्का सा पंच था और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए बैट्समैन के पास पर्याप्त समय गणेश के पास कि वो 2 रनों को बटोर लें। इन 2 रनों के साथ एक और गेंद ड्राइव कर दिया, लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर गणेश के पास। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। स्कोर इज ऑन 45 for 2, 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो रन अच्छे खासे बन चुके हैं। एएसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीता। बैंगलोर से यहां पर आई है वो उनकी टीम। तो अंदाजा लगाइए कि आज जीएसबी प्रीमियर लीग की क्या ख्याति है, कितना चर्चा में रहता है ये क्रिकेट श्रृंखला, कितनी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और देश विदेशों में चर्चा में रहती है। निश्चित तौर पर हर एक टीम दूर दूर से अलग अलग क्षेत्रों से प्रांतों से यही उम्मीद करती है कि वो इस क्रिकेट श्रृंखला में सहभागी हो और जीपीएल के चैंपियन बने। लेकिन उस प्रयास में कितने टीमों को मौका मिलता है कि वो इस क्रिकेट श्रृंखला में योगदान दे, ये किस्मत की बात है। बहरहाल एएसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर ने इस क्रिकेट श्रृंखला में, हालांकि नई टीम है, कोडियाल सुपर किंग्स के सामने उनका मुकाबला हो रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला एएसकेबी क्रिकेटर्स का और कोडियाल सुपर किंग्स अच्छे खासे रन्स बना चुका है 5 ओवर्स में। अभी और 2 ओवर शेष बचे हुए हैं। इस छोर पर गणेश स्ट्राइक एंड पर आएंगे। दीपक दूर वाले छोर से बिल्कुल कैमरामैन बिल्कुल उस काले स्क्रीन के ऊपर बड़ा एक मंच बनाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, डॉट में तब्दील हुई गेंद। रन्स 45 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। उस छोर से दीपक की अगली गेंद, कोटे का दूसरा ओवर दीपक कर रहे हैं। बड़ा लंबा बॉलिंग मार्क है उनका। ये गेंद ओवर विकेट ड्राइव कर दिया इस बार गणेश ने गेंद को। फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं मिड ऑफ क्षेत्र में। जब तक वो गेंद को समेट कर थ्रो कर पाते, थोड़ा सा डाइव लगाना पड़ा और 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। 1 रन के साथ ही रन बढ़कर 46 पर 46 for 2। दीपक कोटे का दूसरा पारी का छठा ओवर कर रहे हैं और रनों की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे रन्स बन चुके हैं और बचे हुए ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में अगर धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं तो लगभग 60 के आसपास तो रन बन ही जाएंगे। कार्तिक के लिए गेंद और अलग अंदाज में खेलने का प्रयास। ऑफ स्टंप के बाहर अपने पिछले पैर को निकाला और आक्रामक तरीके से ऑन साइड की दिशा में उछालने का प्रयास किया बैट्समैन ने। पैरों से टकराकर गेंद निकल गई और अंपायर श्रीनिकेत जी ने कहा कि लेग बाय है। 1 रन का इजाफा। रन से के साथ बढ़कर 47 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 47 for 2। जीएसबी प्रीमियर लीग 8वां सीजन चल रहा है और कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की यह शानदार प्रस्तुति, जैसा आप जानते हैं, यूथ ऑफ जीएसबी में शानदार प्रसारण। वो छोर से गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं लेकिन तेज कदम कुछ और तेज हो गए। रनआउट का मौका बन सकता था। मिड ऑफ के फील्डर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ गए लेकिन एक ही एक्शन में अगर वो गेंद को गैदर कर सकते हैं तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था। पहले प्रयास में गेंद उनके हाथ से निकल गई, रन लेने का अवसर बन गया और बैट्समैन ने तेजी के साथ 1 रन को पूरा कर दिया। कमेंट्री बॉक्स के सामने मैदान पर एक छोटी सी चिड़िया गुनगुनाती हुई, गुदगुदाती हुई, इधर उधर टहलती हुई
ये गेंद बीट कर गई बैट्समैन को और कार्तिक उसी प्रयास में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि हवा का रुख जो है बिल्कुल मिड विकेट और स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड की दिशा में चल रहा है और इस वजह से वो गेंद को थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन आकर ऑफ स्टंप के बाहर आकर ऑन साइड की दिशा में गेंद को पुल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच गए, इस बार मिस कर गए। गेंद हवा के एक तरह से कहा जाए कि स्टंप्स को हवा डालकर निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। दीपक दौड़ना शुरू कर चुके हैं। ओम की गेंद लॉफ्ट किया गेंद को और एक रन तेज कदमों के साथ लेने का अवसर बैट्समैन कार्तिक के पास। थोड़ा सा स्ट्रेच किया था, पिछले पैर पर कुछ ज्यादा शरीर का संतुलन बनाते हैं और एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुआ, आखिरी ओवर यानी कि 7वां ओवर बचा हुआ है। तो जीपीएल 2024 सीजन 8वां चल रहा है। हर साल जैसे गोपी भट्ट जी से मैंने बातचीत की कि हर साल और अच्छा बनाने का उनका प्रयास, अब इसकी सीमा कहां तक है ये देखने वाली बात होगी। सह्याद्री जैसा विशाल मैदान बिल्कुल जीपीएल के लिए ही बना हुआ है, ऐसा लगता है, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। आधुनिक पंछी आप देख रहे हैं, आकाश में ड्रोन तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है, आज तकनीक इतनी आधुनिकता के साथ चल रही है कि इसको नापा नहीं जा सकता है, आका नहीं जा सकता है। आधुनिक पंछी ड्रोन जिसे कहते हैं वो इस वक्त आकाश में दृश्य को कैप्चर करता हुआ। नरेश प्रभु जो कि कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, चारों ओर छाए हुए रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। एक बड़ा जिम्मा उनके ऊपर है कि इस क्रिकेट श्रृंखला को एक यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलने का प्रयास किया, बच गया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, बल्ले को हवा डालकर गेंद निकल गई और बल्ले का अगर सिरा भी लिया होता तो विकेट कीपर के हथेली में जाकर वो खुश हो जाती। बहरहाल बैट्समैन बच गए। गणेश स्ट्राइक एंड पर हैं, इस छोर से आखिरी ओवर कर रहे सविन नायक 33 नंबर के जर्सी में कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले कूदते हैं फिर उनकी गेंद, यह गेंद गणेश ने थोड़ा स्टेप आउट किया, कमिट हो चुके थे, इस वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ा क्योंकि गेंद थोड़ी छोटी थी, उसको आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, धीरे से कवर की दिशा में पुश बर कर दिया, थोड़ा तिरछा खेल दिया। जब तक फील्डर कवर में आकर गेंद को उठा लेते, एक रन 30 कदमों के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इस एक रन के साथ ही कुल योग बढ़कर 50 पर 50 या 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया कोडियाल सुपर किंग्स ने। क्या बात है, पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, यानी कि आने वाले जितने सारे रन है वो प्लस ही कहा जा सकता है। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, पलटकर स्विच हिट करने का प्रयास था गणेश का, वो मिस कर गए इस गेंद को। लेंथ में ज्यादा थी गेंद और बैट को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। ऑफ साइड पर बाउंड्री लाइन पर 3 खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया। पॉइंट में एक खिलाड़ी डीप में है, एक्स्ट्रा कवर डीप में है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक खिलाड़ी डीप में बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास खड़ा कर दिया गया क्योंकि आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया गणेश ने, अंपायर की तरफ देखा। अंपायर स्वरूप जी ने दोनों हाथों को, दोनों बाहों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। स्वरूप जी तीर्थहल्ली से आते हैं और मुझे लगता है कि आखिरी मुलाकात उनसे मुझे कहीं ना कहीं उल्लाल की एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला में, उल्लाल प्रीमियर लीग में मुलाकात हुई थी और बड़े अच्छे मित्र श्रीनिकेत जी के। इस छोर से गेंद ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को ऑन साइड की दिशा में, ताकतवर स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद के बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। रन आउट का मौका बनेगा। श्रीनिकेत जी ने स्क्वायर लेग पर खड़े उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बैट्समैन को जाना होगा। इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए। तीसरे विकेट का पतन हुआ। तो इसी के साथ बैट्समैन आउट होकर लौट रहे हैं। गणेश अच्छा प्रयास कर रहे थे लेकिन दूसरा रन जोखिम भरा था। मुझे लगता है कि पहला रन अगर और तेजी के साथ दौड़ते तो शायद बात बन सकती थी। आउटफील्ड में फील्डर ने बहुत तेजी के साथ, हालांकि प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था, वो जानते थे कि दूसरा रन लेने का कहीं ना कहीं बैट्समैन बना सकते हैं, इस वजह से तेजी के साथ दौड़कर जल्दी उठाकर उन्होंने सही दिशा में यानी कि स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया और बैट्समैन क्रीज से थोड़ा सा रह गए। और जैसा मैंने कहा कि अंपायर जितने सारे चुने गए हैं वो बहुत बारीकी ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं उनका रहता है। उन्होंने देखा कि बैट्समैन क्रीज में पहुंचे नहीं है
वरना कहीं ना कहीं आमतौर पर होता है कि अंपायर दुविधा में पड़ते हैं, फिर तीसरे अंपायर को जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल साफ साफ संकेत किया श्रीनिकेत ने कि बैट्समैन क्रीज में नहीं पहुंच पाए और इसीलिए इस वजह से उनको जाना पड़ेगा। तो एक और विकेट का पतन। रन्स कुल मिलाकर 52 पर 52 for 3 इस छोर से। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, पर्याप्त समय था दोनों बैट्समैन के पास कि वो आसानी के साथ एक रन को पूरा कर लें। इस एक रन के साथ कुल रन संख्या 53 for 3। मेरे साथी मेरे मित्र दीपक जो कि यहां पर मौजूद है, उनका स्वागत है। और गुड ओल्ड फ्रेंड्स इसे कहते हैं, पुरानी मित्रता है, एक हमारा ग्रुप हुआ करता था। बहरहाल लॉफ्ट किया, गेंद को कैच होगा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 7 नंबर के जर्सी में फील्डर ने गेंद को बहुत आसानी के साथ अपने झोली में कर लिया। इसी के साथ एक और विकेट का पतन, बैट्समैन आउट हो गए। संख्या विकेटों की बढ़कर 4 पर, जबकि 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन आपको बता दें 53 for 4 और 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य 54 का है, 54 का है और 54 बनाने के लिए एएसकेबी बैंगलोर की टीम अपनी तरफ से किस बल्लेबाज को शुरुआती दौर में भेजेगी, यह देखने वाली बात होगी। जबकि सारे फील्डर्स एकत्रित होकर एएसकेबी क्रिकेटर्स बैंगलोर के एक गोल कतार बनाकर, नियम के अनुसार हर एक क्रिकेट का अपना एक नियम होता है, उसको जी हाँ एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक गोल कतार बनाकर, काफिला बनाकर, उसके पश्चात बाउंड्री लाइन के बाहर वो जा रहे हैं। फिर अपने 2 शानदार बल्लेबाजों को वो मैदान पर उतरेंगे। इस बीच दोनों अंपायर्स हंसी मजाक करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर की दिशा में बढ़ रहे हैं और दृश्य ये है कि इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, विवरण बदलने का समय है। मेरे साथी कमेंटेटर इंतजार कर रहे हैं कि कब अवसर मिलेगा। हालांकि बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तेज हवा बीच बीच में चलती हुई, दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। डगआउट्स बता रहे हैं कि आज शाम को वो पूरी तरह से जैम पैक होने वाले हैं, क्योंकि ये जीपीएल 2024 चल रहा है। और जाते जाते मुझे लगता है कि आके विवरण सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सतीश मौजूद हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन ही नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you Ajay ji. Once again welcome back to this Sahyadri College ground. We are in the match number 3 of this GPL season 8. After this match, the next match will be between Royal Challengers Ballambettu versus Malshi Smashers. We request the captains of both the teams to come to the commentators box for the toss. Royal Challengers Ballambettu will play against Malshi Smashers in the 4th match of the day number 1. Once again, the captains of both the teams are requested to come to the commentators box immediately for the toss. The organizers are waiting for you, so wherever you, please come to the commentators box. So 54 is a victory target now for team ASKB Cricketers Bengaluru to win this match in 7 overs. This is not an easy target because as far as Kodial Super Kings is concerned,
They have got some clever bowlers. So this is going to be a tough task for ASKB cricketers Bengaluru, because ASKB cricketers Bengaluru are playing for the first time in this GPL, a new team. So now the two openers are slowly entering into the ground. They will have to play with the full responsibility. What they should do is, during the power play session, they need to go for big hits. They need to steal as many runs as possible during the power play over. The first 2 overs will be mandatory power play over. Only 2 fielders will be there outside the 30-yard circles. So opener batsmen will have to take the advantage of that fielding restrictions, and they need to go for big hits here. Balakrishna, the left-hander, will take the strike. Durgesh is at the non-striker's bench. Balakrishna, left-handed batter, will open the account for the team ASKP Bangalore. Gurudas is the opener bowler. A tall man will be operating his over from the Arch Pharma Labs Limited end. Here is the first delivery of the first over. Well, Balakrishna goes for a big one. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely chiming and nice footwork by Balakrishna. Down the track he goes. Picked it up very nicely and hits that one over the deep mid-wicket fence for a maximum. What a terrific shot it was. That one went just like a tracer bullet. Taking the advantage of that wind, Balakrishna hits a huge sixer. Slower delivery. There could be a chance of run out. He has to be hurry. We'll have to wait for umpire decision is here. And square leg umpire Sriniket Rurwa has referred it to the third umpire now. This is going to be a very, very close call. Hence, third umpire has given it to the upstairs. We'll have to wait for third umpire decision here. Very good piece of fielding there by the fielder of Kodia Super Kings. He was very quick, collected the ball and threw it very quickly to the wicketkeeper's end. And the batter, Durgesh, was rushing towards the danger end. We'll have to wait and see whether his bat was inside the crease or not now. In the very first ball, Balakrishna has given a nice treatment. With the help of a huge sixer, he has opened a innings for his team. He has given a very good start here. And after that, he played that shot to the offside. And at the same time, we have seen a good piece of fielding there by the fielder who was standing at silly mid-off region. He was very, very quick, collects the ball, and within a fraction of seconds, he was able to throw the ball to the wicketkeeper. That was an accurate throw there by the fielder. And meanwhile, Durgesh was looking for a single, and he is in trouble now. The decision has gone to the third umpire. We can see the replay in the television screen. It's a very, very close call, and the third umpire decision is out. Durgesh is out. Without facing any balls, Durgesh will have to move back to the pavilion here. This is a big blow for ASKB Bangalore. In the very first over of the innings, ASKB cricketers Bengaluru have lost their first wicket here. .54 was the target given to ASKB Bengaluru team by Kodia Super Kings. As far as Kodia Super Kings is concerned, they are the only one team who have represented all the GPL seasons. Even though they have not lifted any trophies, they are looking forward to clinch this 8th season of trophy. Ganesh Kota is the skipper of the team, the icon player leading from the front and playing a sheet anchor role for Kodia Super Kings. They have got very experienced bowlers. Meanwhile, the bowler Gurudas is doing an excellent job. Even though he conceded a loose delivery in the first ball, after a great comeback by the bowler, that ball was pitching right in the block hole, and Balakrishna played that shot to the offside, just giving the touch, and he was looking for a single there. Almost a Yorker delivery, flicks the ball onto the onside.
Meanwhile, that's a cheeky single there. That was once again a very risky run, and I think at this stage of the game, they shouldn't take any risk because they have lost their wicket early in their innings in the form of run out, so they can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact here. Once again, Balakrishna is ready to face Gurudas now. With a short run up, Gurudas bows. Far away from the off stump, that should be a wide. Umpire Swarup Tirthahalli has no hesitation in stretching his arms whatsoever and giving a wide signal here. One extra run has been added to the total of Bengaluru team. Balakrishna played that shot defensively forward, gently pushing the ball to the offside. The fielder from the silly mid-off area comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. So just a single to Balakrishna, and that single will bring Vishal on strike now. Balakrishna and Vishal are the two batters in the middle. Durgesh is the man there who is out for duck. Down the leg side, flicks the ball chipped up in the air, but just going away from the fielder. The fielder was not able to take that catch. In fact, it was not an easy catch. Meanwhile, the batter gets a single here, so single to Vishal. With that single, their score now moves on to 10 on the board. We are in the first over of the innings. 10 with 1 wicket down, ASKB Bangalore. Played elegantly onto the onside. Just punched the ball to the onside region. And Balakrishna gets a single here. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. There's the end of the over number 1. Pretty good over there by the bowler Gurudas. So after the completion of first over, it is 11 on the board for the loss of 1 wicket. ASKB Cricketers Bengaluru. So you are watching the match between Kodiyal Super Kings versus ASKB Cricketers Bengaluru. The match number 3 of day number 1 of this GSB Premier League 2024, presented by Kodiyal Sports Association. And this tournament is sponsored by our title sponsor, Arch Pharma Labs Limited. This is the 8th season of this GPL cricket tournament. Every year we are witnessing a fantastic cricket tournament here in Sahyadri ground for the GSB community players. 16 different teams are participating in this GPL season 8. And now we'll have to wait and see who is going to become the champions of this tournament. Ganesh Kota is the new bowler. Well, it's a direct hit there. Direct hits are always dangerous. I think the batsman was short of his ground, and that's all over for the batsman. What a brilliant piece of fielding there by the fielder. Karthik, the fielder, was very, very smart. He was very quick. He quickly realized that the batter was short of his ground and threw it very quickly to the stumps, and it was a direct hit. Unfortunately, the batter was short of his ground, and he will have to move back to the pavilion here. So second wicket has gone down for ASKB Cricketers Bengaluru here at the score of 11 runs. New batsman here, Sri Krishna. So Vishal is the man there out for 2. Ganesh Kota, the skipper of Kodiyal Super Kings, himself is bowling now the second over of the innings, and this is the second ball of the second over now from the far range. With a short run up, he bowls right arm over the wicket. Played elegantly onto the onside, converted that into full toss, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. Just flicks the ball onto the onside before the fielder collects the ball. There is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. So single to the new batsman Sri Krishna. He is straight away off the mark. He opened his account and he has given the strike to Balakrishna now. Ball pitching right in the block hole in the right spot here. That's a very good delivery there by the bowler Ganesh Nayak. Kota is not giving any room for the batter to play here. He's bowling with the right spot with the tight bowling, which is directly straight to the wickets here.
Meanwhile, Sri Krishna gets a easy single. One more single has been added to the total of the team ASP KB Cricketers Bengaluru, which takes their full score to 14 now. Here is the next ball. That's a very fine delivery there. The ball pitching outside the off stump, and batter leaves the ball, just left the ball to go to the wicket keeper. There was a shout for caught behind, but umpire says not out, so no damage done, no addition to the total. One more dot delivery by the bowler. This is again a very good delivery there. The batsman Balakrishna had no clue whatsoever about that delivery. The ball has all of a sudden taken a turn, and it has gone down the leg side. The ball hitting the thighs of the batter, and the wicket keeper does the rest of the job. There's the end of the over. Pretty good over there by the bowler Ganesh Nayak Kota. So after the completion of 2 overs, it is 14 for the loss of 2 wickets. ASKB Cricketers Bengaluru. Ganesh Nayak Kota has conceded only 3 runs in that over. So Sri Krishna and Balakrishna are the 2 batters in the middle there. Balakrishna is batting on 9 and Sri Krishna is on 1. 54 is the victory target for their team, and at the moment it is 14 after 2 overs. 40 more runs required in the remaining 5 overs. That means 30 balls remaining, 40 runs required. Anything may happen here. Only thing is these 2 batters will have to play with cool mind. As I mentioned earlier, they should not lose any more wickets here. They must keep their wicket intact. Meanwhile, Gautam is the new bowler who is operating the over from the Sahyadri College end. Another experienced bowler who has played plenty of cricket tournaments. Gautam for the second time now with the short run up. Right arm over the wicket, passes the umpire. Batter played the shot elegantly onto the offside. Lovely cover drive, handsome looking cover drive, but only single will result here. The batter Sri Krishna gets a single. So Balakrishna will have to look for the big hits now. He's a good timer of the ball, one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. Have a look at the field placement on the onside. Almost all the fielders are standing very close to the boundary ropes here. There is a long on, there is a deep mid wicket, there is a deep square leg, wideish mid wicket, third man, and on the offside we have silly mid off, cover point, and a mid off, long off. Turned away nicely onto the onside, but straight to the fielder. There is a protection, so Balakrishna will get only a single here, not more than that. There is no possibility of going for the second run because the fielder was very quick, collects the ball and throws it back to the bowler's end. So only single has been added to the total here. Score now slowly moves on to 16. Gautam is making some change in the field placement here because right-handed batter is on strike and he's coming over the wicket now to Sri Krishna. Played elegantly, nicely at mid-on. The fielder from the long-on region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Score moves up to 17. We are in the 3rd over of the innings. Gautam once again from the commentary box end, and he will be bowling to the left-handed batter Balakrishna. Meanwhile, Sri Krishna is giving some tips, some suggestion to the left-handed batter. Almost all the fielders on the onside are standing very close to the boundary ropes here. Gautam will be coming round the wicket to the left-hander. Meanwhile, I think that's fortunately Balakrishna is inside the crease there. Nothing happened to him. No damage done. So very good over there by the bowler Gautam. Over number 3 completed. Gautam has conceded 3 runs in that over. So after the completion of 3 overs, it is 17 for the loss of
2 wickets, ASKB Cricketers Bengaluru. "37 more runs required in the remaining 4 overs now. Required run rate is creeping up now. It is 9.25 per over. After the dismissal of Vishal, things are slowly down for the team. Runs are dried up. In the first over, they were able to score 11 runs. At the end of second over, it was 14. Now 17 after 3 overs. Ganesh Nayak Kota has been brought into attack. This is the second over of his spell. In the first over, he has conceded 3 runs. And now he's bowling the 4th over. Meanwhile, the batter gets a single here. The meantime, watch Ganesh Nayak Kota for the second time in this over from the river end. From the far end, he's making some change in the field placement for this left-handed batter. Balakrishna is all set to face Ganesh Nayak now. In the right arm, round the wicket fashion, he bowls. Full toss, played elegantly all around the carpet. Drives the ball to the offside towards the mid-off region, and easily he takes a single here, and Balakrishna has given the strike to Sri Krishna now. ASKB Bengaluru desperately need some big hits now. If they can pick up boundaries or sixes, definitely they can come back into this game. Let's see, can this become a productive over for ASKB Bangalore? That's a very fine delivery there. The ball hitting the legs of the batsman. The batsman looking to shuffle across the stumps and wanted to go for a big hit. He wanted to pull the ball onto the onside, but that ball kept very low at the last moment. Ball is not coming onto the bat. Ball hits the legs of the batsman, and leg bye has been signaled by umpire Sriniket. And this should be a wide there. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler, because he knows the situation. It was going down the leg side, so 1 extra run has been added to the total in the form of extra run. We come back to the bowler. Similar delivery and similar result here. Ganesh Nayak Kota is finding some difficulty in maintaining his line and length. He has to bowl perfectly straight to the wicket, because each runs are very, very important. They should not give any runs in the form of extras. They should give high priority for the direct and accurate bowling. That means wicket to wicket bowling is very much required in the limited overs matches. Once again, ball is in the hands of the bowler Ganesh. Played nicely at long on, but there is a protection, so Balakrishna will get only a single here. There is no possibility of going for the second run, no chance at all, so he settled for a single here. Singles are coming easily for the team. They're not finding any boundaries or sixes. That is what they need actually at this stage of the game to accelerate their score. Only single resulted once again. Score now slowly moves on to 24 for the loss of 2 wickets. So here is the last delivery of the 5th over now. I beg your pardon, 4th over. So that's the end of the over number 4. After the completion of 4 overs, ASKB Cricketers Bengaluru are 25. That means 29 more runs required in the remaining 3 overs. Let's see what they are going to do. 29 runs of 18 balls is not a difficult task. For that, all they need is some big hits. Just 1 or 2 sixer can change the whole complexion of the game here. Let's see whether they will be able to find any boundaries or sixers now in the 5th over. Meanwhile, a huge discussion is going on there among the players of Kodiyal Super Kings. As I mentioned earlier, Kodiyal Super Kings is the only one team which has participated in all the GPL seasons. They have got some outstanding players, so they don't want to lose this match so easily here. And at the same time, GRS Mysore Warriors are really finding some difficulty in chasing this target, because a huge target is in front of them.
54 is the target. Now 29 runs required in 3 overs. Meanwhile, changing the bowling position here, and at the same time changing the commentary position as well. For further commentary, please come in, Mr. Satish. Thank you so much, Suresh Bhaji, and very interesting stage of the innings where 29 required for the victory for team of Bangalore. The first ball, lovely delivery. Start with a slower one, and the bowler KP Vinayak Pai, the bowler bowled that fantastic slower one. The bowler batsman couldn't manage to read the slowness of the delivery, Balakrishna, and wanted to get that on the onside region, but at last moment he just left the ball into the hands of wicketkeeper. There is no chance at all for Indian. Losing each and every delivery, making it difficult for team Bangalore to win the match. Short pitch delivery and full Z1, but I don't think he's going to get the distance. Of course he full Z1, but not in the power, not having any of timing in that stroke. Absolutely, that all happening when you try to pull that slow short pitch delivery, isn't it? Just like we can see that in the replay. Of course that was short pitch delivery. The batsman but need to hit that one pretty well. He need to wait for the delivery to coming into his bat, but too early into the stroke, and that full shot pays the penalty for that. Ball went into the straight into the hands of deep square leg region fielder, and one more wicket is back into pavilion of team ASKB Cricketers Bangalore. They are looking in deep trouble, just like what Suresh Bhaji has mentioned earlier about the Cordial Super Kings. Absolutely, they got very experience of playing representing in this prestigious cricket tournament GPL, and they got a very good journey in this GPL, so that they got some good experienced players in the side. They know exactly what to do in this condition, and they're bringing right bowler in the right position to get some wicket, to get some dotted deliveries. Still, they have to long way to go for Bengaluru to win this match. Scoreboard is 25 for the loss of 3 wickets. Another 29 more runs required for the victory. But deliveries remaining just 16, and that is the big problem for the team. Have to get some big shots immediately if they want to do back in the game. But losing a wicket and incoming new batters meant is the right time for the fielding team to tighten up the screws. Again, the bowler right arm over the wicket. Switch it comes into play. Ball went into the steep cow point field. My goodness. Once it looks like it is a collision between the cow point fielder as well as in the deep extra cow fielder. But at last the fielder from deep cow point region just got the eye into the ball, and he got the very good catch. Have a look at it on replay. Switch it comes into play. Played that one, of course, right from the middle of the bat. Again, he didn't got distance as the fielder. Absolutely little bit misunderstanding between the two fielders. At last, the jersey number 23, the man is to take that very good catch. In fact, the young fielder out there in the deep extra cover, Gautam, and very talented young fielder there in the deep extra cover, deep cow point region, held his nerve in that the last moment. He managed to get that catch. Even that one fielder came right across him, but he managed to keep the eye on the ball till the last moment and completed that very good catch. One more wicket is back into pavilion. 2 wickets in a 2 deliveries means the bowler is on hat-trick. Vinayak Pai is on hat-trick. Can he able to get the first hat-trick of this GPL 2024? Wait and see. Right arm over the wicket. He just an appeal going on. Appeal going on for the caught behind the wicket. But here is the umpire. Swaroop already signaled it's a wide delivery. And even Squalag umpire also is unmoored. Is saying that nothing has happened. Then the excitement. Looks like it might be that a hat-trick delivery. The bowler wanted to get the wicket here. Yes, umpire decision will going to be a final here. Umpire saying that nothing has happened. It's a white signal for umpire. Ball on the pitched on the middle stump and going a little bit outside the line of leg stump. Umpire tried to flick that one off his legs, and looks like Venkatesh Pai a little bit frustrated about that. He wanted to get the hat trick, but of course no damage done. Ball just misses the bat of the batter.
Strong breeze is passing here in the middle of the ground as the Vinayak Pai balls. Lovely delivery indeed. Again, short pitch delivery. Well, lifting of delivery again for the new batsman. Perfect delivery to ball to the new batter. He wanted to cut that one away from his body, and went just missing the bat and went into the hands of wicketkeeper behind the stump, and there is no chance at all for any run now. And all we can see that the things are looking tougher and stiffer here for the team Bengaluru. This time lofted once again, opportunity for the wicket number 3 here for the Vivek. He is really dismantling the batting department of Bengaluru. Vinayak Pai picked up 3 valuable wickets. 3 wickets in that over for Vinayak Pai, and making the things little bit too much harder for the team Bengaluru to win this match. So one more wicket is back into pavilion. Nitin Kamath is back. Nitin Kamath is a new batter in, and 26 for the loss of 6 wicket. 5 deliveries he bowled and picked up 3 valuable wickets. Absolutely one of the best bowling figure you can say in this day number 1 of this prestigious GPL. Long way to go. Still they have to get another 28 more runs to win this match. 54 which is the target, and 28 more runs required for the victory in the remaining 13 deliveries. 13 deliveries, 28 more runs required for the victory. Badly required on 2 big shots here. But here is Vinayak looking in absolutely fantastic form. Was that one? No ball called by umpire. Squalling umpire called it's a no ball, but I want to say for what the reason behind that. No ball which is called by umpire at Squalling umpire. The bowling action maybe, yes, a suspicious bowling action, a little bit Vivek bending his elbow, Vinayak little bit correction, bending his elbow, so that umpire little margin error. The experienced umpire, they are watching each and everything, and after seeing that yes, suspicious bowling action of the bowler, umpire called it's a no ball. Golden opportunity for the batter to grab this free hit delivery for at least for 1 big shot, so that they can back in the game. Vivek again, right arm over the wicket, try to pull that one, not quite getting hold of that short pitch delivery properly. Not that much of short enough, isn't it? But he wanted to get a big shot, couldn't manage to get over that one. Just a single. Fantastic over from Vivek. It comes in, and 3 wickets in that over after completion of 5 overs, chasing 54 to win this match. Still team ASKB cricketers Bengaluru searching for the right track, struggling in the middle. It's 30 for the loss of 5 wicket. That means the last 2 overs they need to get another 24 runs in the asking run rate of exactly 12 runs per over. Seems to be it's a difficult ask, 24 runs to get from 2 overs at the rate of exactly 12 runs per hour. But in present cricket, anything can be possible. And of course, even though it's a little bit difficult one, but always good saying in cricket that difficult road often leads to beautiful destination. And destination here for team Bengaluru, 54. And 24, which is the remaining run, they need to get at the rate of exactly 12 runs per over. And Gautam Pai brought into attack. The one more very young talented bowler, a good all-rounder for the side. He contributed from the bat. Now wait and see how he will going to contribute from the ball. Very good all-rounder. And for the right-hander batsman, there is a fielder at deep long off and deep long on, and a wideish long on, that is in the cow corner. The one fielder is a deep square leg, that is in front of square, and one is behind the square. Pulls that one, but not good enough to get the boundary. But this is just a single. There is a fielder then the deep square leg. All the bowlers, we can see that they're bowling as for their field. This is very important for the bowlers, and you need to bowl as for your field, and then only you will going to get the success. And so far the bowlers of Kodial Sports King did a great job, and even the fielders also, they are really anticipated very well with the bowlers. 31 on the board. Loved it. It's going to be too late or too early. I want to see it. It's going to be a huge one. That was a really fantastic struck coming from the blade of
the batter Sri Krishna. Well, will it going to be an opportunity or not? Wait and see. After getting a 6, it might be little bit opportunities created for the Bangalore to back in the game. Right above the wicket, one more. What I am talking about in present cricket, anything can be possible. Difficult road often leads to beautiful destination. What I am told earlier, and he is justifying that word. Picking up a 2 massive sixes in a 2 consecutive deliveries. Now scoreboard which is jumps into 43 for the loss of 5 wicket. That means just 11 more runs required for the victory. This is one of the greatest example why the cricket is game of glorious uncertainty. Absolutely, it's an unpredictable game. 1 or 2 big shot, it's good enough for changing the complexion of the game. Now batter is on fire. Krishna looking for the third, but bowler have to survive. Right arm over the wicket, nicely bowled. This time right on the block hold, not given any room for the batter to go for the big shot, but good enough for Sri Krishna to get the single, even though he's not happy with himself. But it's a low full toss, not an easy full toss for Sri Krishna to get that one over the mid wicket. Just a single there. With that single scored, moves on to 44 for the loss of 5 wicket. 10 more runs required for the victory. 8 balls remaining. Appeal for leg before wicket. Umpire saying that got a little bit inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wicket. And with that single scored, moves on to 45 on the board. What a match! What a dramatical change in the game, isn't it? Everyone thought that it's going to be an easy victory for Kodial Super Kings, and all in sudden, Sri Krishna is changing the complexion of this game. But match which is not yet over. Match which is not yet over. They need to get another 9 runs to win this match. Right arm over the wicket, shuffled across the line up there to try to swing that on the onside region. Good change of line there by the bowler, but single is there anyhow. Sri Krishna will going to retain the strike, I think so, for the next over. After completion of productive over number 6 for the team ESKB Cricketers Bangalore, now they are 46. That means they needed 8 runs in the last hour. Have a look at the dugout, and everyone, the spectators, you can see that enjoying the game of cricket, and this is going to be a thriller, absolutely going to be a thriller. One of the best match so far in this day number 1. This is going to be the match is definitely inching towards a nail batting finish. It's going to be anybody's game. 8 runs required from the last over. Responsibility which is given in the shoulder of the bowler who will go into bowl the last over. Rohit Kamath has got a responsibility, but Sri Krishna, after getting his team into right track of winning this match, wait and see, can he able to finish the match for his team or not. Job which is not yet over. What I'm already mentioned, cricket is already cricket is a game of glorious uncertainty, and wait and see how Rohit will going to restrict this 8 runs from the last over. Just I want to see the field set, very interesting field set. For the last over, 1 slip cordon is there, that you can call that is a short third man also, and the fielder is there in the deep backward point, maybe that for the reverse stroke. 1 fielder a deep cover point, an extra cover, and a deep long off. There is a deep long on. Very interesting to see that a lot of protection is given in the deep in the offside region. The reason that the wind flowing in that region. Left arm round the wicket. Oh, beautifully bowled. Appeal for caught behind. But again, just an excitement rather than the confidence. All happening in cricket when you were desperately wanted to win the match. He wanted to desperately get that wicket of Krishna. He's a danger man as far as the team Kodial Super Kings is concerned. They wanted this wicket. Now, very good start given by Rohit in the first ball. Now, 5 balls remaining. 8 runs required for the victory. Here is Rohit. Left up from the wicket, full toss, lofted that one, ball is in the air and long on fielder, oh my goodness! 1, 2, 3 and 4th attempt is drop the catch. Can you believe this? He not only dropped the catch, but 2 valuable runs which is conceded in that drop catch. Have a look at it on a replay. He got underneath it, perfect position, taken, and yes, he's just playing with the ball. He's just playing with the ball, but couldn't manage to complete the catch. And 2 more runs added to total.
Switch it is comes into play. Already I mentioned there is a fielder is situated for the switch it. So Sri Krishna have to settle for the single. It's little bit relaxed here for Rohit because Krishna is out of the strike. Now I want to see the runs. 40, 49. That means 5 runs required. 3 balls remaining. What a match! This is going to be a decider delivery. I want to say he will go into ball to that the batsman Ganesh Bhatt. Balls beautifully ball. Appeal is going on. Chance of run out in a non-striker and misses the stump and going for the overthrow as well. Absolute disaster for the Cordial Super Kings. By signal by umpire. Can you believe this? The wicket keeper had really making a little bit mistake here. I think he's just going appealing for the caught behind wicket. In the meantime, Krishna desperately wanted to back in the strikers and they runs. Wicketkeeper misses the stump. No backup in the non-strikers and extra runs which is conceded. And with that extra run scored moves on to 50 comes up here for team ASKB Cricketers Bangalore. 51 for the loss of 5 wicket. 2 balls remaining. 3 runs required for the victory. Ganesh Bhatt is on strike. Rohit is on attack. Left arm ball, crashing cover drive, down to deep extra cover drive, extra cover region, just a single. Now it's going to be a decider delivery. 2 required from last ball. What a match. Absolutely. Now, very interesting to see the strategy from Sri Krishna. Will he look for the couple of runs? Will he look for the single? Or will he look for the big one? This is always going to be a mind game. Of course, cricket is just what I'm talking about always. It's not fully, it was a physical game. But mentally, how much you are strong enough to handle the pressure, the situation like this. This is not only for the batsman, for the bowler as well. How well they manage to handle the pressure to ball that last delivery. Rohit will go into ball the last delivery. 2 runs required for the victory. He balls, driven, down to long off region, completed a single, looking for the 2, in comes the throw, just a single, and scores are level. That means both the teams will go into share the points. Well, what a match. What a match. And if Ajay Raj is in commentary box, definitely he will going to tell it's going to be a paisa vasool match. Of course, there is no entry fees for watching the cricket tournament, but definitely it's going to be a fantastic match. And what a great finish for this match number 3 of the day, number 1 of this prestigious cricket tournament. Fantastic finish for the match. And a match which is ended in a tie. And both teams will go into share the points. Cordial Super Kings might be pretty happy that and they will go into tie this match. But a fantastic comeback here by the batsmen of ASKB Cricketers Bangalore through Sri Krishna. He played absolutely one of the fantastic knock for his team, but couldn't manage to win the match. But at last he managed to give the 1 point for his team after that very good knock from his bat. So now time for the break here in our commentary box. After the break, we are going to the number 4 match of the day. Number 1 will be played between Royal Challengers Ballambetu versus Malsi Smashers. I think Royal Challengers Ballambetu, they are the runner-up of the last edition, the edition 7 of this prestigious GPL 2024. And being the runner-up of that edition 7 of GPL, I think a lot of expectation from the team Royal Challengers Ballambetu. Wait and see how well they're going to begin their journey and against Malsi Smashers. And we'll take a short break. After a short break, my friend Ajay Raj will going to take over the microphone in our national language in Hindi. And fantastic game, Ajay Raj, because of the match number 3. But we need to appreciate the effort of Sri Krishna, because he will definitely become Sri Krishna in that moment, using his not mantra, it's chakra, jadoo, and he absolutely played a fantastic knock for his team, and won the a little bit 1 run short of the victory, but it's good enough for them to get a valuable point in this points table.
एक अनाउन्समेंट हांगा मागशी एक कार पार्क केला बलेनो कार नंबर KA 19MN 8860 ದೈಕೋರ್ನು ते कार ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಣು ತುಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ರಬ್ಬೋಜ್ಕತ್ತಿರಂಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಸ್ ತೈ ರಬ್ಬೋಕ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ करता कार नंबर KA 19MN 8860 ಬೆಲೋನೋ ಕಾರ್ ದೈಕೋರ್ನು ಜಲ್ತಿತ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಣು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಪಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಣ್ಣು ತುಮಗೆಲ್ಲಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ करता सती थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। क्या शानदार मैच देखने को मिला। GPL 2024 में तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत है। पिछला मैच दांतों तले उंगलियां दबाने वाला, नाखूनों को चबाने वाला, और निश्चित तौर पर सतीश जी ने कहा कि अगर मैं साथ होता तो शायद कुछ और शब्दों से इसका वर्णन करता। ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी और श्री कृष्णा ने ASKB क्रिकेटर्स बैंगलोर की तरफ से जो बल्लेबाजी की है, मैं कहूंगा कि आज भोजन के वक्त सारे लोग उनको कंधों पर उठाएंगे, क्योंकि अपने टीम की लाज को उन्होंने बचाया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, काबिले तारीफ। ऐसा लग रहा था कि बस बेंगलुरु इस मैच में हारने ही वाली है, कोडियाल सुपर किंग्स जीत जाएगी, लेकिन अचानक किस तरह से परिस्थिति को बदल दिया श्री कृष्णा ने। और वैसे भी कहावत है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो बिल्कुल एक महान गुरु की तरह, एक जादूगर की तरफ जो जादू करते हैं, मिरेकल करते हैं, वैसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला कृष्णा की तरफ से। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टीम को हालांकि जीत जाते, कहीं ना कहीं परिस्थितियां फिर पलट गई और जीतने वाला मैच हाथ से निकल गया। लेकिन कम से कम एक तरह से कहा जाए टाई हो चुका है और पॉइंट्स टेबल में आपको शेयर करते हुए पॉइंट्स दिए जाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन जब जीत का रास्ता बन ही गया था तो जीता जा सकता था, लेकिन इसीलिए क्रिकेट की खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। आइए इस मैच में आते हैं। अंपायर ने संकेत किया श्रीनिकेत जी ने कि मैच शुरू। टॉस जीतने के पश्चात मालसी स्पेशल्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर। इस चौक से पहली गेंद पुल कर दिया गेंद को। क्या कमाल का स्ट्रोक है, फील्डर के पांव से दूर गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। GPL का कमाल का स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक है। इस शो से एक और गेंद अमाई के लिए। अमाई ने गेंद को स्लोअर फुल टॉस थी, थोड़ा इंतजार किया, जज किया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि गेंदों को पहले गेंद को देखना बहुत पैनी निगाह से ये बहुत जरूरी हो जाता है, और इस वजह से देखकर गेंद को झुककर धीरे से पुश बर कर दिया, 1 रन चुरा लिया। गिरीश गेंद को लेकर तैयार। तो आइए पिछले मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसका पुरस्कार, जैसा आप जानते हैं, ASKB क्रिकेटर्स बैंगलोर की तरफ से एक शानदार बल्लेबाजी करने वाला जाबाज बल्लेबाज श्री कृष्णा को दिया जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच श्री कृष्णा, कृपया मंच की ओर जाएं और इस पुरस्कार को प्राप्त कर लें। इस बीच एक गेंद जोरदार अपील, लेकिन अपील को खारिज किया अंपायर श्रीनिकेत जी ने, कहा कि बैट्समैन सुरक्षित हैं। तो मालसी टॉस जीतकर, मालसी स्मैशर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर, बाएं हाथ का बैट्समैन अमय नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और स्ट्राइक एंड पर वरुण स्ट्राइक एंड पर। कमेंटेटर बॉक्स छोर से ये गेंद ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे और लगा शायद बल्ले को लगी है या नहीं, देखना होगा। अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, यानी कि ऑफ द बैट बल्ले से लगी। बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद जमीन से लुढ़कती हुई विकेट कीपर के बगल से गुजरती हुई गई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बैट्समैनों ने अपना छोर बदल लिया और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 6 पर पहुंच चुका है।
गिरीश आक्रमण पर तैयार, सामने वाले छोर पर अब अमय जो कि गेंद को ले स्ट्राइक बल्ले को थामकर तैयार हुए। अमय के लिए गेंद ड्राइव किया, गेंद को जड़ से निकालकर खेलने का प्रयास की दिशा में थ्रो, विकेट पर गिर चुका है। और क्या अंपायर इस बार नतीजा निकालेंगे? वो थोड़ा सा स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, बिल्कुल ऐसा कोई संकेत उन्होंने नहीं किया, काफी नजदीकी मामला था, बिल्कुल विश्वास के साथ उन्होंने इस अपील को खारिज किया, क्योंकि जब थ्रो गिरा था स्टंप्स पर, बल्ला क्रीज के अंदर पहुंच गया था। आमतौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंपायर थोड़ा सा कतरा जाते हैं, लेकिन बहुत विश्वास के साथ इस अपील को सोचने के बाद सुनिश्चित करके नॉट आउट करार दिया अंपायर ने, बैट्समैन सुरक्षित हो गए। इस छोर से गिरीश गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद पुल करना चाहते थे, जोरदार अपील की गई और आखिरकार धीरे धीरे करते हुए जी ने उंगली को उठाते हुए कहा कि बैट्समैन को जाना होगा, लेग बिफोर द विकेट करा दिया गया। इसी के साथ बैट्समैन वरुण आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था, स्टंप्स के सामने दोषी पाए गए और इस अपील को जो विश्वास के साथ किया गया था, अंपायर को मजबूर होना पड़ा श्रीनगर जी को कि इस अपील को वो स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ पहले विकेट का आघात हुआ, वरुण आउट होकर लौट गए और गिरीश ने पहली सफलता प्राप्त कर लिया। इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 7 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। इस छोर पर जो ओवर था गिरीश का, कमाल की गेंदबाजी, 7 रन खर्च किए गए 6 गेंद के मुकाबले में, लेकिन एक बहुमूल्य विकेट उन्होंने वरुण का प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं कहना होगा कि मालसी स्मैशर्स को एक अवसर मिला है, पहले विकेट के गिरने के पश्चात दबाव को बना सकते हैं, मजबूत पकड़ बना सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बलमटा की तरफ से बालमबेट्टू, माफ कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी, रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू की तरफ से एक और बैट्समैन केदार नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जबकि स्ट्राइक एंड पर अमय आ चुके हैं। केदार नाम सुनते ही मुझे पता है कई सारे लोगों के मन में भी विचार आएंगे कि केदार जाधव है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट श्रृंखला होती है और आज बिल्कुल गर्व के साथ कहेंगे कि जीएसबी प्रीमियर लीग उसी स्तर की यह क्रिकेट श्रृंखला है। दूर वाले छोर पर राघु ब्रह्मा विकेट कीपर के विकेट के पीछे खड़े होकर बिल्कुल संकेत कर रहे हैं कि खेल शुरू हो चुका है और गेंद को लेकर सुधींद्र आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। नेत्रवती छोर से सुधींद्र की गेंद अमय के लिए और बैकफुट पर गए, गेंद को हल्का सा पंच किया, ड्राइव किया कवर क्षेत्र में, जब तक फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते हैं। 1 रन तेज कदमों के साथ अमय ने पूरा कर लिया। स्कोरिंग ऐप के करता धरता किरण आ चुके हैं, उनका स्वागत है हृदय से। क्या बात है, थोड़े से नाराज हैं लेकिन परिस्थितियां क्या करें, कभी कभार हो जाता है। बहरहाल भोजन के बाद स्वागत है। दीपक के लिए मुझे लगता है कि उनको भोजन के लिए भेज दिया गया है। उस छोर से गेंद को लेकर दोबारा सुधींद्र तैयार हो रहे हैं आक्रमण पर। हवा तेज चल रही है, बैट्समैन के पास अवसर है कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर कहीं ना कहीं स्ट्रोक खेलकर रनों को बटोर सकते हैं। वहां पर हवा का साथ मिलेगा, चौके छक्के लगाए जा सकते हैं। उस छोर से गेंद इस बार बैकफुट पर थोड़ा सा गेंद को देखते हुए उसका पीछा किया, लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी देखते हुए उसके मुताबिक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में केदार ने थोड़ा बैकफुट पर स्लैश करने का प्रयास किया, बल्ले को लगी निचले सिरे से, 1 रन लेने का अवसर मिला। और वैसे भी वो चाहते हैं कि अमय को ज्यादा स्ट्राइक दें। अमय अब तक 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं और बाएं हाथ के बैट्समैन ये प्लस कहा जा सकता है। उस छोर से सुधींद्र आक्रमण पर तैयार, मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाज, ये गेंद मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को, विश्वसनीय डिफेंसिव स्ट्रोक था, थोड़ा सा फॉरवर्ड होकर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, दोनों पैर को गेंद के लाइन पर थोड़ा आगे निकलकर खेल दिया, पुश बर कर दिया बैट्समैन ने। जब तक मिड ऑन पर फील्डर आकर गेंद को उठा लेते आसानी के साथ, अमय ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया। रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 10 पर, माफ कीजिएगा 10 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उस छोर से सुधींद्र का आक्रमण, केदार स्ट्राइकर पर है, लेकिन आज क्या कहना, जीपीएल 2024 में स्टंप्स और गिल्लियां को जादू के साथ लगाई गई है कि जैसा आपने देखा ड्राइव किया था बैट्समैन केदार ने बहुत ताकतवर तरीके से, बल्ले से लगी, पैरों से टकराई, फिर आकर स्टंप से लगी, लेकिन गिल्लियां उड़ने का नाम नहीं ले रही हैं और बच गए, भाग्य ने साथ दिया। फिर एक बार उस छोर से
M9 के सौजन जी का स्वागत है, क्या बात है, वो है तो टीम निश्चित तौर पर अच्छा करेगी। उस छोर से और विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा कट करने का प्रयास बैकफुट पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर गेंद को तिरछा खेलना चाहते थे, मिस कर गए, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं है। केदार स्ट्राइक एंड पर वो कहां तक अमय का कितना साथ दे पाएंगे, कितनी भागीदारी बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। सुधींद्र कोटे का दूसरा, हालांकि कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। हवा तेज चल रही है, दूर दूर आपको घने हरियाली भरे चोटियां दिखाई पड़ेंगी। आज नदी काफी शांत है। उस छोर से गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, गगनचुंबी सो गए, फील्डर गेंद के नीचे आ गए और शानदार कैच उन्होंने लपक लिया। इस कैच के साथ ही केदार आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और जिस अंदाज में स्ट्रोक खेला गया था रिप्ले में देखा जा सकता है, ये गेंद ओवर द विकेट थी, लेंथ में कुछ ज्यादा छोटी भी नहीं थी, उसको बहुत खूबसूरती के साथ उछाला, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गेंद बल्ले के बीचों बीच थोड़ा ऊपर की ओर लगी और स्कूप की तरह से गेंद थोड़ा हवा में ज्यादा ऊंची उठी, ज्यादा फासला तय नहीं कर पाई और फील्डर जो मौजूद थे उन्होंने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ लपक लिया। तो इस कैच के साथ ही केदार आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, दूसरा विकेट गिर चुका है और मालसी को दूसरी सफलता प्राप्त हो चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू इस वक्त परेशानियों का सबब है उनके सामने, लेकिन अभी बल्लेबाज अच्छे मौजूद हैं और विशेष तौर पर अगर कहा जाए तो दूसरी छोर पर अमय जो अब तक डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जब तक वो हैं निश्चित तौर पर अच्छे खासे रन्स रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू के लिए बनाए जा सकते हैं। अब अमय गार्ड ले रहे हैं अंपायर से। तो तीसरे ओवर के लिए गिरीश आ रहे हैं इस छोर से और कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर वो लेकर आ रहे हैं इस छोर से। 5 नंबर के जर्सी में उनके सामने स्ट्राइक एंड पर अभी भी अमय तैयार हो चुके हैं, गार्ड ले चुके हैं दोबारा, क्योंकि इस वक्त छोर बदल चुका है, उनके लिए अच्छा अवसर है। वो लेफ्टी है, बाएं हाथ के बैट्समैन है, ऑन साइड पर हवा चलती है तो अगर ऑन साइड पर वो कहीं ना कहीं प्लेस करते हैं तो बहुत आसान होगा। इस छोर से ये गेंद गिरीश की, इस बार देखा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, हमें बॉल बहुत मेरिट के साथ खेलना चाहते हैं। देखा कि गेंद टिप्पा खाकर स्टंप्स की दिशा में थोड़ा स्विंग होकर अंदर की तरफ आई, उसको जज किया पहले और अचानक बल्ले को लाते हुए धीरे से गेंद को दबा देने के अंदाज में पुश भर कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं होगा। गिरीश की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस थी, हवा में खेल दिया, कैच होगा, लॉन्ग क्षेत्रों में कैच कर लिए गए और इसी के साथ हमें आउट होकर लौट गए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका विकेट गिर चुका है। मौका था, दस्तूर था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर अगर खेलते तो हवा का साथ मिल सकता था। उन्होंने लॉन्ग ऑन का क्षेत्र चुना था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गलत साबित हो गए, ज्यादा फासला गेंद नहीं तय कर पाई और सीधे लॉन्ग ऑन में फील्डर जो मौजूद थे उनके पास गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और निराशा के साथ बल्ले को खींच कर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं अमय, क्योंकि निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा कर सकते थे। आज मौका था, वो सेट हो चुके थे, लय प्राप्त हो चुका था, गेंदें आसानी के साथ वो फेस कर रहे थे और स्ट्रोक्स को देख के लग रहा था कि आज जो लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक तरह से शॉट सिलेक्शन में वो गलत साबित हो गए, प्लेसमेंट में गलत साबित हो गए, इसी के साथ उनका विकेट गिर चुका है। तो कुल योग बन चुका है, आपको बता दें 10 रन, 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट जो कि वरुण का गिरा, वरुण ने कोई जी नहीं एकमात्र रन बनाए 3 गेंदों का सामना करते हुए। केदार आउट होने के पश्चात फिर अमय अभी अभी आउट होकर लौट गए। इस छोर से गिरीश एक और गेंद को लेकर, और क्या बुद्धिमानी है, क्या चतुराई है, गिरीश को इसीलिए ने भेज दिया अंपायर, माफ कीजिएगा कैप्टन ने, कैप्टन जानबूझकर उनको दूसरा ओवर दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बीच बीच में अचानक फुल टॉस एक आध गेंद करते हैं ताकि बैट्समैन ललचा जाए और गेंद को लॉफ्ट करें। अतुल स्ट्राइक एंड पर गिरीश की गेंद, कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और बड़े कारगर साबित हो गए गिरीश, बहुत कमाल की गेंदबाजी उनकी है। अचानक एक आध गेंद बीच में फुल टॉस डाल देते हैं, लोअर फुल टॉस, ये गेंद दोबारा फुल टॉस थी और इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, गेंद को तिरछा खेल दिया, कवर क्षेत्र में गेंद डीप में गई है, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 12 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, क्योंकि अभी बाएं हाथ के बैट्समैन है, सत्या स्ट्राइक एंड पर है, उनके लिए 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर।
ये गेंद अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। और गिरीश की गेंदबाजी की प्रशंसा करनी होगी। मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में गिरीश जैसे गेंदबाजों की बहुत सख्त दरकार है। बहुत अच्छी गेंदों को वो कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पर बहुत अच्छा नियंत्रण है, कंट्रोल है, और इस वजह से बैट्समैन को वो परास्त कर रहे हैं। इस छोर से एक और गेंद, इस बार लोअर थी, लगभग ब्लॉक होल में करने का प्रयास था, उसको देखा बैट्समैन ने और सत्या ने जड़ से निकालकर गेंद को पुश बर कर दिया। एक रन चुरा चुके हैं। इसी के साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। स्कोर इज ऑन 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 13 रन्स, 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। समय जो कि इस वक्त दोपहर का है, भोजन के पश्चात का 3:15 और भोजन के पश्चात जितने सारे दर्शक, बड़ा मंच उनके लिए खास तौर पर बनाया गया वीआईपीएस के लिए। अलग अलग डगआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यूं ही सही सवाल बनता है, आपके मन में यह भी होता होगा कि बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाएं बनती हैं, लेकिन आप फीडबैक दे सकते हैं। यूथ ऑफ जीएसबी में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अपने अपने दृष्टिकोण को उसमें बयां कर सकते हैं कि आपको यह क्रिकेट श्रृंखला कितनी रास आती है, कितना अच्छा लगता है। क्या शानदार दृश्य है। पंखे की जरूरत नहीं है, बीच बीच में हवा तेज चल रही है। सतीश जी से इसी बात में बातचीत हो रही थी इसी विषय पर। बहरहाल दूर छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। सुधींद्र दोबारा लाए गए और सत्य प्रभु स्ट्राइकर पर। उस छोर से गेंद को लेकर सुधींद्र कोटे का दूसरा, पारी का चौथा ओवर लेकर नेत्रावती छोर से उनकी गेंद ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बहुत अच्छी गेंद गुड लेंथ स्पॉट से थोड़ा आगे गिरी। फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास, लाइन से बहुत अलग रह गए, फुटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाए गेंद के, थोड़ा खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया। इस वजह से गेंद थोड़ा बीट करती हुई बैट को विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन लेने का अवसर नहीं है। रन अभी भी 13 पर, बहुत कछुए की चाल, धीमी गति से रन बन रहे। ये गेंद सत्या के लिए और गेंद को धीरे से पुश बर कर दिया सत्या ने। और जिस तरह से देखा अपने बैट्समैन सुधींद्र ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया और सीधा संकेत किया कि वो थ्रो करने वाले हैं। सत्या को थोड़ा सा शायद हड़बड़ाते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैट्समैन अभी भी सुरक्षित हैं। दूर छोर से सुधींद्र की अगली गेंद और दो विकेट इस बार ड्राइव किया, लेंथ में ज्यादा थी, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलती हुई गेंद, उसको देखा, पीछे हट गए, रूम बनाया और खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पुश बर कर दिया। सत्या नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए। कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर, 14 for 3, 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अतुल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और अतुल और सुधींद्र के बीच में कितना कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और गेंदबाजी की रनअप की बात करें तो सुधींद्र मुश्किल से मुझे लगता है 10-12 स्टेप निकालकर दौड़ते हैं। मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाज हैं। उस छोर से उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कुछ ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद, थोड़ा पीछे हटे, गेंद का पीछा किया, कट करना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। लगभग 50 के 60 के रफ्तार की एवरेज रहेगी पर आवर किलोमीटर जिसे कहते हैं, उस रफ्तार के साथ सुधींद्र गेंदबाजी करते हैं और काफी पैनापन। इस वजह से अंपायर, माफ कीजिए, कप्तान ने दोनों गेंदबाजों को 2-2 ओवर्स दिए हैं। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा ऑनसाइड की दिशा में खेल दिया और मौका था अतुल के पास कि वो गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि शायद कोई खिलाड़ी पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा था, बैकअप नहीं कर पा रहा था, स्टंप्स को कवर नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोक लिया और नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में अगर वो थ्रो करते स्टंप्स पर लगती तो निश्चित तौर पर बैट्समैन को मजबूर होना पड़ता कि वो पवेलियन लौट जाए। एक रन खतरे से खाली नहीं था, बन गया और अब स्ट्राइक एंड पर सत्या आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन। उस छोर से एक और गेंद, इस बार फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर तिरछा खेल दिया। जब तक स्क्वायर लेग में फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, सत्या एक रन चुरा कर दूसरे के लिए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन साथीदार ने, पार्टनर ने मना किया, मजबूर होकर लौटना पड़ा। देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। इस एक रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस पारी में अभी 3 ओवर्स शेष बचे हुए हैं। आइए आपको दोहरा के बता दूं, मालसी स्मैशर्स और रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू के बीच में यह संघर्ष चल रहा है। टॉस जीतकर मालसी के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया
और शुरुआत काफी अच्छी रही उनकी, 3 बहुमूल्य विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए और रनों पर अच्छा खासा अंकुश उन्होंने लगाया। क्यों न हो, आपके खेमे में जब गिरीश और सुधींद्र जैसे सक्षम प्रतिभाशाली गेंदबाज जो मौजूद हैं, और इस गेंदबाजी के बाद अब कप्तान के पास क्या विकल्प है, उनके पास क्या अभी गेंदबाजी में और स्ट्रेंथ बाकी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, कहीं मत जाइएगा प्लीज। 5वें ओवर की शुरुआत हो रही है। अपने शब्दों को विराम देकर आगे का विवरण सुरेश जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji. So after the completion of 3 overs, the team has scored 16 runs after losing 3 important wickets. Changing the bowling position now. Suraj is the bowler there, has been brought into attack, who is bowling from the Sahyadri College end, and the non-striker was looking for the second run, unfortunately is out. That was very, very risky run. The non-striker wanted a single. Atul was not at all ready. He was trying to send him back. And this is a big blow for the team batting side. They have lost 1 wicket here in the form of run out. Things are slowly down for the team batting side here. Vivek, the fielder, collects the ball and threw it very quickly. And the non-striker was short of his ground. As a result, team Royal Challengers Balambet to have lost their 1 more wicket here at the score of 16 runs. Padmanabh Paikota is doing his job as the wicket keeper there, standing very close to the wicket keeper. Very experienced player of GSB cricket community. The bowler continues room outside the off stump, crashing drive to the offside, crashed away. Atul Prabhu crashed away nicely through the covers, but at the same time, there is a good piece of fielding there by the fielder who was standing very close to the boundary ropes. So batter Atul will have to satisfy with only a single here. So single to Atul Prabhu, which takes their full score to 17 now, and I beg your pardon, 18 runs on the scoreboard, and we are in the over number 5 of this match. This is the match number 4 of this GPL Trophy 2024, and this tournament is brought to you by Kodiyal Sports Association of Mangalore. Every year, Kodiyal Sports Association Mangalore is organizing a franchisee-based cricket tournament here at Sahyadri ground. Meanwhile, that's a very, very fine delivery there, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket-keeper Padmanabh, and the wicket-keeper collects the ball behind the stumps neatly, and he returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler Suraj. Suraj on his way to Rajendra now. Rajendra played the shot to the third man region. There is a fielder. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. Girish Pai is the fielder who was standing at the short third man region, collects it and throws it back to the wicket keeper. Meanwhile, these two batters have taken a single here. 1 more single has been added to the total of Royal Challengers Balambettu team. Meanwhile, that should be a wide. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler, because he knows the situation. So umpire Sriniket Rao Urva has no hesitation whatsoever in stretching his arms, turning around and giving a wide signal there. As the next delivery from the bowler, meanwhile the batsman played that shot into the vacant region. Ball safely landed into the no man's region, and a good piece of fielding there by Atul, who was standing at a wideish mid wicket. He collects the ball, and only single resulted here.
So singles are coming more easily here. For Royal Challengers Balambettu team, they need to accelerate their score. They need some big hits at this stage of the game to accelerate their score because it's a 7 overs match, 5 overs gone. Runs on the scoreboard is double 2 for the loss of 4 wickets. So Kodial Sports Association of Mangalore are organizing this most prestigious cricket tournament in the name of Arch Pharma Labs GPL Trophy 2024. This is the 8th season of GSB cricket tournament. 16 different teams have taken part in this particular tournament. We have got 4 pools in this tournament. In the pool A, we have Jaika Strikers, Mudbidre, Mumbai Paltans, UK Ekadash Saraswat and Kodial United Sports Club. Whereas in pool B, Auburn Diamonds, GRS Fantasy Park, GRS Mysore Warriors, Malpe United and Iruvatturu Sports Club, Manipal. In pool C, Kodial Super Kings, ASKB Cricketers Bengaluru, Malshi, Udupi Blasters and Rising Stars Mangalore. And in pool G we have Royal Challengers Balambettu, Malshi Smashers, Amchigale Cherkes and Walalanke Fighters of Mulki. So 16 different franchises have participated in this particular tournament. We'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive GPL Trophy 2024. Meanwhile, it was a full toss delivery, pulled away nicely onto the onside. No need of running for that. All the way to the boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Atul. Meanwhile, the square leg umpire wants to review, wants to check with the third umpire whether it is a no ball because the batter is saying that the ball has gone above the waist level of the batter. So Sriniket Rao has given it to the upstairs and he is now checking with the third umpire. That was a terrific shot there by the batter Atul Prabhu. Atul Prabhu is a outstanding cricketer who has played plenty of GSB level cricket tournaments. He used to play for Deadly Panthers Kodial and in this match he is playing for Royal Challengers Balambettu and he is the key player of Royal Challengers Balambettu here. So third umpire is checking whether it's a no ball or not. He wants to review whether the ball has gone above the waist level of the batter. There is a huge gap there and batsman Atul Prabhu quickly realized that there is a gap and he found the gap and he played the shot into that vacant region and the ball has crossed all the way to the boundary ropes for 4 valuable runs. So with the help of those 4 runs, their score now jumps up to score is now 27. Over number 6 is in progress. Pawan is the bowler there. That was a loose delivery and the batsman has taken the great advantage of that full toss delivery, converted that into full toss and played elegantly. So it's a legal delivery there. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Match number 4 is going on here between Royal Challengers Balambettu versus Malshi Smashers. Royal Challengers Balambettu were the runner-up team of last GPL season
Okay, it's a fair delivery, so only 4 runs will be added to the total here. Score at the moment is 27. Pawan for the third time from the far range, that is from the river end, with a long run up in the right arm over the wicket fashion. He will bowl to the right-handed batter Atul. Ball wraps onto the pad. Atul once again wanted to pull the ball onto the onside, but this time he found failure in playing that one. He couldn't get the line of the ball properly. The ball hitting the legs of Atul. So no runs resulted. Dot delivery there by the bowler Pawan. Good improvisation there by Pawan. Batter Atul wanted to step out quickly, but once again he couldn't read the delivery there and completely beaten. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage, and wicketkeeper Padmanabh Pai Kota collects the ball behind the stumps. Once again the ball was going far away from the off stump. The bowler is finding some difficulty in maintaining a line and length. He has to improvise his bowling now, because in the limited overs matches each runs will be very, very important. So bowlers must bowl with perfect discipline line. Wicket to wicket bowling is very much required here. This time he goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath. And he's out. That was a full toss delivery, and Atul Prabhu wanted to go for a big hit but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played that shot with the loose hands. There was not much of power behind that shot. He has lost his complete rhythm there. As a result, the ball takes the leading edge of the bat and it was in the air for a while. And the man, Sudhindra, who was standing at the long on region, makes no mistake, caught it beautifully. He converted that into an amazing catch. Almost very close to the boundary ropes. He was able to take that catch. So one more wicket has gone down here. Gautam is a newcomer now. Another hard hitter of the ball. Gautam has come to the crease. Once again, quicker delivery there. Good over there by the bowler Pawan. That's the end of the over number 6. After the completion of 6 overs, Royal Challengers Balambettu are 28 for the loss of 5 wickets. At the end of 4 overs, it was 22. That means 6 runs have come in this over. Pawan picked up one important wicket also after considering 6 runs in that 5th over. So now 2 more overs to go. Let's see how many more runs will come in the remaining 2 overs. Narasimha is the new bowler now. एक अनाउन्समेंट पार्किंग लॉट अंतु दोनी कार्स दैकोर्नु तेगुदुकुनु कड़क समर अब्बकमंडी रिक्वेस्ट करते सती कार नंबर KA20Z2944 अनेक कार नंबर KA30N3117 ते कार दोन्ही कार तेगुदुकुनु काणु विंगड कड़े रब्बकमंडु रिक्वेस्ट करते सती. Meanwhile, Narasimha is the new bowler who has been introduced here to bowl the 6th over of the innings. Narasimha is bowling from the Sahyadri College end. And the man on strike is one of the hard hitter of the ball, Vignesh. I beg your pardon, Gautam. Gautam wanted to go for a switch hit. He was trying to go for a reverse shot. Attempted for a switch hit, but he found a complete failure in playing that one. The ball hitting the legs of Gautam. Meanwhile, they get a single here in the form of leg bye. One extra run has been added to the total of
Royal Challengers Balambettu, and their score now slowly moves on to 30 after losing 5 wickets. Royal Challengers Balambettu will have to look for big hits now in order to accelerate their score. Gautam is at the non-striker's end. Rajendra played the shot elegantly onto the onside. Meanwhile, no ball has been signaled by the umpire Sriniket Rao. I think he's not happy with the bowling action of the bowler, and he has given a warning to the bowler as well. So 1+1, one in the form of no ball and one from the bat. So totally 2 runs will be added to the total of Royal Challengers Balambettu team. So their score now moves on to 32. Narasimha will be coming round the wicket now. Here is the free hit delivery. Can Gautam take the advantage of this free hit ball? Here is a golden opportunity for Gautam to free his arms. Will have to wait. Will he be able to go for a maximum? Slower delivery. Gautam goes for a big one. Ball is in the air. It could be a catch, and what a brilliant catch. But since it's a free hit delivery, there is no damage for the batsman. Gautam is looking for the 3rd run. There could be a chance of run out. What is happening here? They were looking for the run, and meanwhile it was a close decision, and hence umpire Sriniket Rao has given it to the upstairs. Now he has referred it to the 3rd umpire. Already they have completed 3 runs very fast, and they were looking to take that 4th run, and meanwhile the batsman was rushing toward the danger end there. Now we'll have to wait whether the batsman is safe or not. So terrific atmosphere, very, very hot sunshine here today at Sahyadri College Stadium. We can see some colorful flags, colorful advertising boards, and the decision from the 3rd umpire is out. So batsman is out. Royal Challengers Balambettu will get 3 runs for this, and with those 3 runs, their score is now 35. Rajendra is out. Vikrant is the newcomer now to join with Gautam. That was a free delivery, and he wanted to go for a big hit. Unfortunately, he was looking to play against the wind. So only 3 runs resulted, and they lost 1 wicket also. And this time he goes for a switch hit here, and it has gone out of the park for a maximum. And it's a GPL sixer. This fantastic sixer is brought to you by Arch Pharma Labs. What a terrific shot it was. On that occasion, Gautam wanted to attempt for a switch hit, and he found complete success in clearing that. The ball has gone out of the park for 6 valuable runs. Score jumps up to 41 with those 6 valuable runs here. The bowler Narasimha is looking a bit of expensive here, finding difficulty in restricting the batters. Once again, ball is in the air, but well, what is happening out there? Gautam was settled with only a single. Unfortunately, another batsman, Vikrant, was looking for the 2nd run, and he has to lose his wicket. So Vikrant will move back to the pavilion here. So only 1 run will be added to the total. With that single, scorecard of Royal Challengers Balambettu is now 42.
So here is the last delivery of the final over of the innings now. Score still remains on 42. Sumuk is the newcomer. Sumuk will be facing Narasimha now. Narasimha will be coming round the wicket to Sumuk. Narasimha on his way to Sumuk for the last time. Beautifully played to the onside, long on region. They come back for the second. The throw was not quite good enough. Meanwhile, Sumuk is out. So they lost another wicket while taking that second run. So only single will be added to the total here. That's the end of the over number 7, and that's the end of the innings of Royal Challengers Belambettu. So after putting into bat first, altogether Royal Challengers Belambettu have scored 43 runs. That means now 44 is the victory target for Team Malshi Smashers to win this match of 42 balls. This is not a difficult target for the team because they have got a good batting lineup. Only thing is the opener batsmen will have to play with cool mind. They shouldn't lose any wickets early in their innings. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles, keep the scoreboard moving, keep rotate the strike. That's what they need to do. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, only then they will have to look for big hits. Whereas Royal Challengers Belambettu is concerned, their bowlers must bowl perfectly straight to the wicket. They need to work very, very hard. And at the same time, their fielders must be very, very smart. If they can pick up 1 or 2 wickets early in their innings, definitely they can put the pressure on the batting side of Malshi Smashers, and Royal Challengers Belambettu can bounce back into this game. Let's see what is going to win this match and what's going to happen and who is going to win this match. Meanwhile, change in the commentary position here, and for further commentary, please come in Mr. Satish. Thank you very much, Suresh Bhatji, and welcome back for the innings of team Malsi Smashers, and they will go into, yes, need to get 44 to win the match, and not a huge total, but not a small total, but a fighting total put there by the team, the defending runner-up of the previous edition, Royal Challengers Belambettu, and wait to see how the bowlers will go into defend this total. Signal straight away coming from umpire Shiniket, and receiving the signal from
Nithil received the signal from umpire, and even our online scorer Deepak receives the signal. The first ball nicely cuts that one down to a short cow point region for a easy single by Padmanabh, one of the most experienced campaigner for the side of team Malsi Smashers, and they off the mark with the single and one without loss of any wicket. Lot of hard work which is required for the bowlers of Royal Challengers Balambetu if they wanted to defend this total, and of course for that their attacking bowling which is the badly required from the bowlers. And meanwhile we are going to the match number 5 after this. The match will be played between UK Ekadasha Saraswat versus Kodial United Sports Club. So that I request both the teams captain please be reported here immediately for the toss. Demadali UK Ekadasha Saraswat Hago Kodial United Sports Club ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Meanwhile, both opening batters are off the mark with a single, 2 without loss of any wicket. Right arm over the wicket, inside edge of the bat. Luckily that ball didn't travel to the stumps and ball went into his back foot. And a little bit lazy movement of the feet in the engagement from Padmanabh. But try to get that one on the offside region because of that little bit quicker delivery there from Vikhyat. And the batsman couldn't manage to get that one into the from the middle of the bat. Just 2 on the board without loss of any wicket in the power play. Power play in this sense, 2 fielders outside the circle, long off and deep extra cover. This time across the line, plays it down to square leg region. Good piece of fielding there by the square leg fielder, diving to his right. Just stops the ball but fails to stop the single from this to batter. Padmanabh picked up a single. He's a very good striker of the ball, especially in the onside region. Loves to play the ball on the onside region all the time. He got a single for that. With the single scored Namozan to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first stage in progress. Vikyat again away from us. Right arm over the wicket, edging it down to third man. They're going for the kick. Chance of run out. Wicket keeper misses the stumps. And at last Padmanabh seems to be a very lucky batter there, because ball which is not too far away from the wicket keeper, isn't it? Ball which is just very close to the wicket keeper. But the partner of Padmanabh wanted to get the single, Vivek Prabhu, and slight a bit of misjudgment of that run. But lucky for Padmanabh that ball misses the stumps, which is a throw coming from the hands of the wicket keeper. Anyhow, single taken there, 4 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Vikyat. Right arm over the wicket, nicely cuts that one down to backward point region for an easy single, nicely behind the line of the ball, just using the deftness of the crease. Perfect technique to play that cut shot, and scored Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. First which is comes to 9 in fact, and that means the 5 in the first means 39 more runs required for the victory in remaining 6 overs. 36 ball, 39 more runs required for the victory. Not a big difference between run and a ball. There are 3 difference, which is definitely what we're talking about. The 36 ball, which is excluding wides and no balls, so that it can be manageable if a batter will go into play sensibly. For the latecomer, you're watching this prestigious GSB Premier League 2024, which is proudly organized by Kodial Sports Association, Mangalore, and of course under the great leadership of Naresh Shanai, Naresh Prabhu and Chetan, the 3 pillars of this cricket tournament, organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful venue, Sahyadri Engineering College Cricket Ground here in Sahyadri, with nature's beauty. And special attraction of this cricket tournament, and of course the Netravati River just passing behind this cricket tournament, this cricket ground, and making this ground more beautiful. And that's why even spectators, even players, everyone loves to come and watch cricket here, to perform here. And here is the second over will going to start from the river end. Right arm over the wicket, Padmanabh lofted that one with the direction of the wind. He got that one, huge one, that will go into a biggie. Just got that one right from the middle of the bat. Have a look at that one, the position which is taken by Padmanabh. Just little bit shuffled across the line of the delivery. You know exactly where the wind is flowing. Into his left, into the onside region. Little margin for error for the bowler. And batsman just hoisting it over down to deep square leg boundary for a huge 6. So with that 6, Kobar Namuzan to 11 on the board without loss of any wicket.
Again, the bowler will going to continue from the far end. Right arm over the wicket. Bowls to Padmanabh. Good judgment, in fact, there from Padmanabh, seeing the line of the day. Sometimes it's very dangerous as well if the bowler bowled to in cutter, leg cutters. Always we can see in that some cricket tournaments, ball which is coming around the legs with the leg cutter can hit the stumps. But this time Padmanabh confident enough that the bowler is bowling out swing delivery, that ball going away from the leg stump, and white signal umpire. 12 on the board. Right arm over the gate, going for the big shot again, missed it completely. Good comeback here by the bowler. And watching the physique of Padmanabh, just looks like Sarfraz Khan, who made a debut for India in the last test match, because the jersey number is also similar. 87 the jersey number of Padmanabh, and 97 which is the jersey number of Sarfraz Khan. But there is a big story in that 97. Talk about that later. This time lofted just over the infield, ball will go into land and safely not over. My goodness, it seems to be definitely it's going to be one of the best catch of the tournament if the ball fielder will go into get that catch, but ball just slipping out of the hand. But a great attempt by the fielder. Amai, the fielder, is charging from the deep square leg. Great attempt, I want to say. Have a look at that one. Padmanabh across the line, swings at that one. Couldn't manage to get the elevation right. And the fielder is charging in from the deep square leg. Have a look at that. While he was trying to get that one, maybe that he is hitting the ground pretty hard, so that ball just slipping out of his hand. Otherwise, definitely it's going to be one of the best catch of the tournament. Anyhow, its scoreboard is 14 on the board for the loss of 1 wicket. And the bowler will going to continue from the far end. Satya Prasad from the river end. Right arm over the wicket, balls. This time swings it out. What a great shot. Just hearing the name of Sarfraz Khan. And here is batter Padmanabh playing a magnificent struck. It's so easy for him. I already mentioned he's one of the good striker of the ball in the onside region. Have a look at that one, taking the position there. Nothing wrong with the line of the delivery. He just shuffled across the line of the delivery, played it down to deep mid wicket boundary for a youth 6. So bowler being punished badly by Padmanabh. 2 sixes in this over. Takes the total score into 20 now. What a great reply coming from the opening batters, especially the Padmanabh is on fire from the far end. Satya balls, it's going to be 6 number 3 and better than the 2-3 sixes now. This time little bit square down to the square leg boundary for a youth 6. 3 sixes in this over, and this is going to be absolutely mesmerizing cricket batting performance here from the batter Padmanabh. 3 similar technique, we can say that nothing change in the technique, is shuffled across the line delivery, but bowler is not really learning from the mistake. Again he bowling. The 23 runs came from just 9 deliveries, and that shows the aggressiveness of the batter Satya. Right above the wicket, 6 number 4. This is going to be a monumental. What we are talking about, the 6 which becomes so easy for Padmanabh. 4 sixes in that over, takes the total score into 32. What a fantastic batting display here from Padmanabh. After completion of over number 2, total score is 32, and just 12 more runs required for the victory. Kodial United Sports Club won the toss for the next match and elected to bowl first against UK Ekadasha Saraswat. And out of that 32 runs, 29, Padmanabh scored 29 out of 32. This is absolutely one-man army. And getting most of the runs, almost of the runs, 93% of the runs which came from the bat of Padmanabh, and showing his excellency as far as the big hitting is concerned. Now
his partner is thinking about just thinking about picking up a single and try to give the strike as much as possible to Padmanabh. Vivek Prabhu picked up a single. They're coming back to that jersey number 97, and yes, that is a jersey number of right arm over wicket. Balls, single is taken. What you're talking about, the jersey number of Sarfaraz Khan is 97. And 97, when then was asked why your jersey number is 97, and he told that if I want to play for Indian cricket team, a lot of hard work which is done by his father. The father is definitely is a icon for him to play for Indian team. So then I said, what is the similarity between that the father as well as the 97? And he told, if you now means 9. His father's name is Naushad. 9 means now. Sat means Sad. Naushad. So he want to dedicate this jersey number. His father, he can't write his father's name behind his jersey. So by his number, he wanted to dedicate for his father. It's a Naushad, Nausad. That is one of the very strange thing we can see in international cricket. But most of we can see that every cricket player has got their lucky jersey numbers. And here is again wanted to go for the big shot. Ball is in the air, but umpire not unmoved. After this match, I will going to ask Padmanabh sir why it was 87. So maybe there will be a story there from Padmanabh why it is getting that 87. And yes, 36 is the total score here, and bowler will going to continue right arm over the wicket, coming down the track, using his feet down to deep long on for a single. So with that single, scoreboard is now moves on to 38 now. 37. That means they are very close to the wicket. A better over compared to the previous over, much better over ball by the bowler in that occasion. But still the things are looking so easier for the team Malsi smashers, and they're justifying the why they're smashers, and the way that Padmanabh smashing that 4 sixes is justifying this Malsi smashers. They are definitely some batters has got good in smashing the ball, especially the Padmanabh leading from the front, hitting some big shots. Atul, the bowler, will go into ball from the far end. Seven more runs required for the victory. And Vivek will go into face next delivery. Atul bowls lofted. And this time Vivek joining the party. After that, seeing his partner hitting 4 sixes, why not? Just I want to test my muscle power now. And he got that one right from the middle of the bat down to deep mid wicket boundary for a youth 6. Now scores are levelled, and just a single run required for the victory. This is going to be one of the quickest victory as far as the day number 1 of this prestigious GPL is concerned. Lofted, he finished the match in a style. Now he finished the match in a style, and now I got the that number story why Padmanabh has got 87, because he born in the year of 1987, so he put 87 behind his jersey number. Thank you for that information which is given by Swaraj. So he's born in the year of 1987, so I got 87 the jersey number. And now it's time for Ajay Raj to tell about his jersey number story about for the next match. The match which is finished too early, Ajay Raj, and that's only because of some fantastic batting display by the opening batters, Padmanabh as well as Vivek, and especially the Padmanabh is the one really getting the most of the runs, and congratulations coming from the teammates. And yes, it's going to be one of the very good day for Padmanabh. The way that he batted absolutely got some entertainment for the cricket clovers here in this beautiful cricket ground. They are definitely entertained with that lovely cricketing strokes. And congratulations for team Malsi Smashers.
They won the match quite comprehensively against Royal Challengers Balambetu, and now it's time for the two teams to clash here in their first league matches. UK Ekadasha Saraswat takes on Kodial United Sports Club. For that match, I would like to invite Ajay Raj for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. तो पिछले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार पद्मनाभ को दिया जाता है। कृपया पद्मनाभ बड़े मंच की ओर आइएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। 12th मैन, दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजिएगा प्लीज। थैंक यू सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोबारा जीपीएल 2024 में तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं।
इस मैच में मुकाबला इस वक्त चल रहा है यूके एकादश सारस्वत और कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीतकर कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी जो कि इस वक्त चल रही है। अंपायर से अनुरोध है कृपया मैच को थोड़ा सा रोके। अंपायर श्री के जी 1 मिनट। 12th मैन यहां पर अभी पहुंचे नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये फील्डिंग टीम 12th मैन बहुत जरूरी है। ये मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच होता है वैसे ही चल रहा है और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट है। आपसे अनुरोध है थैंक यू, थैंक यू। तो आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। इस छोर से इस ओवर की गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और वाइड घोषित किया अंपायर स्वरूप जी ने और वाइड के इस रन के साथ ही रनों का बनना जो कि शुरू हो चुका है। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। गॉड बिहाइंड के लिए अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन अंपायर ने कहा कि वाइड ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी और ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसा लगा बहुत नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर स्वरूप जी ने विश्वास के साथ कहा कि वाइड है तो 1 और अतिरिक्त रन बढ़कर 2 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। और विकेट छोड़ सके और इस बार क्या कमाल का कैच हो सकता था अगर कैच कर लेते, लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई। पॉइंट में खड़े खड़े फील्डर ने माफ कीजिएगा डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का प्रयास किया। उनके हाथ से गेंद छूटी, लेकिन उस प्रयास के लिए हैट्स ऑफ कहना चाहिए क्योंकि फ्लैट शॉट था, बस जमीन पर गिरने ही वाली थी कि फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। फुल टॉस गेंद इस बार पुल किया। एक और शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर ने दौड़कर जाकर रोक लिया। संभावित चौका हो सकता था। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। अगर ये मिस हो जाता तो निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन पर लुढ़क सकती थी 4 रनों के लिए। बहरहाल सिर्फ 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया बैट्समैन ने। गेंद का थोड़ा पीछा किया ऑफ स्टंप पर, थोड़ा पीछे स्ट्रेच करते हुए फिर बल्ले को उठाया, गेंद को जाने दिया। रन्स अभी भी वहीं पर सिर। चरण स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद लॉफ्ट किया, गेंद को बहुत खूबसूरत ड्राइव है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन्स। क्या कमाल का लॉफ्टेड ड्राइव था। कवर ड्राइव करेंगे लेकिन थोड़ा सा लॉफ्टेड ड्राइव था, खूबसूरती के साथ, टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ, जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था, थोड़ा सा पिछली खेला गया स्ट्रोक का और इस शानदार चौके के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। सौरभ की गेंद चरण के लिए थी और लेंथ में ज्यादा, लगभग मिडल ऑफ स्टंप के आसपास थी। उसको लेंथ में ज्यादा आती हुई गेंद को लॉफ्ट किया, इनफील्ड के ऊपर से, कवर के ऊपर से उछाल दिया। इस ओवर की एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार ज्यादा बाहर निकली जिसको ड्राइव करने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर की समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 9 बगैर किसी नुकसान के। चरण जो कि खेल रहे हैं 5 के व्यक्तिगत योग पर, अभी तक उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं, जबकि रोहन 2 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार दृश्य है। दोपहर का प्रहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता हुआ। समय आपको बता दें कुल मिलाकर, जी हाँ, शाम के 4 बज चुके हैं और गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बात बन जाए। चाय की चुस्कियों के साथ मैच का आनंद उठाया जा सकता है। सतीश जी भी पीछे बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम के वक्त में अगर चाय न हो तो बात नहीं बनती है। ठंडी हवा चल रही है, अब तब तक चाय आए हमको, मुझे लगता है कि ठंडी हवा से काम चलाना पड़ेगा। हवा मध्यम गति से कभी तेज होती हुई और नए बैट्समैन, जी नहीं, वही बैट्समैन इस वक्त इस छोर पर गार्ड ले रहे हैं। रोहन अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात तैयार हो रहे। 9 सेकंड पर चरण थोड़ा सा झुककर बैठकर स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को। गेंदबाजी का जिम्मा आ चुका है इस वक्त आदित्य पर। आदित्य नेत्रावती छोर से गेंद करेंगे, दूर आकाश में एक पंछी लहराता हुआ। कैमरामैन से अनुरोध है
M9 के कैमरामैन हैं और मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर पीछा किया, गेंद के लाइन के ऊपर आ गए और जड़ से निकाल करके इनको ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में ऑन ड्राइव अच्छा था, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंदों को ऑन साइड की दिशा में ड्राइव करना निश्चित तौर पर प्रतिभा की जरूरत होती है। एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 10 पर बगैर किसी क्षति के आघात के। चरण स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। आदित्य योजना बनाकर तैयार हो रहे, लेकिन चरण ने अब उन मिटी हुई रेखाओं को जो पॉपिंग क्रीज की है उसको पूरा दुरुस्त किया, फिर मट्टी से थोड़ा सा अपने हथेलियों को ये सीधा जिया इस बीच गेंद पसीने को दूर करने के बाद ड्राइव करने का प्रयास, चूक गए, मिस कर गए। एक रन लेने का अवसर, अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, यानी कि ऑफ द बैट। क्या शानदार दोष है, कैमरामैन थोड़ा सा कैप्चर करे। पंछियां आकाश में तैर रही है, नेत्रावती की छोर की और हवा में तैरती हुई, झूमती हुई, अपने मन में, जी हां, थोड़ा सा मगन होकर वो तैरती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या शानदार दृश्य है, क्या बात है। कैमरामैन को भी हैट्स ऑफ, वो बिल्कुल तैयार खड़े, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, उनको हैट्स ऑफ कहते हैं, क्योंकि सवेरे से अब तक जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, देश विदेशों में फीडबैक अच्छा मिल रहा है कि ये कैमरामैन बड़े प्रोफेशनल है। और उस छोर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और गेंद जी नहीं, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। तो इस जबरदस्त छक्के के साथ, इस शानदार छक्के के प्रोजेक्ट है GPL 2024। क्या कमाल का स्ट्रोक था, खूबसूरती के साथ, टाइमिंग के साथ गेंद को उछाला था रोहन स्ट्राइक एंड पर। उस छोर से अगली गेंद, एक और बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है, फील्डर ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से। GPL का सिक्सर, 23 विदाउट लॉस, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या कमाल का स्ट्रोक है। रोहन लय में आ चुके हैं, तलवार बनाकर बल्ले को वो तैयार हो चुके हैं। जैसे ही पॉपिंग क्रीज की रेखाएं उन्होंने बनाई, हाथ से मट्टी रगड़ते हुए हथेली के पसीने को दूर किया, लगा कि अब कुछ अलग करने वाले हैं। वो छोर से अगली गेंद, दोबारा उछाल दिया, गेंद को हवा में तैरती हुई जा रही है, दर्शक दीर्घा बनकर, जी हां, दर्शक दीर्घाओं में गेंद गई है। 6 रनों के लिए GPL का सिक्सर। तो यह हैट्रिक सिक्स है, लगातार 3 छक्का लगाने वाला ये जाबाज बैट्समैन रोहन इस पूरी श्रृंखला में पहला एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने रिकॉर्ड बनाया 3 छक्कों को लगातार लगाने का। एक और गेंद लेग स्टंप, जी ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा स्ट्रेच किया, पिछले पैर को बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर पीछे लगाए और पुल किया गेंद को, क्योंकि गेंद की लेंथ उतनी ज्यादा छोटी नहीं थी, उसको देखते हुए अपने आप को पीछे ढकेलना पड़ा बैट्समैन को, रोहन को, और फिर जैसे तैसे ऑन साइड की दिशा में गेंद को पुल करते हुए 1 रन को बटोर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर 2 पर, 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 30। मैं अगर कहूं कि एक रन बने हैं या बहे हैं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 15 का औसत इस वक्त चल रहा है। रन बह रहे हैं, बिल्कुल उस नेत्रावती छोर में जो पानी बह रहा है, नेत्रावती का जो पानी बह रहा है, उसी तरह से रन बह रहे हैं। 15 रन प्रति ओवर का औसत चल रहा है और निर्धारित 7 ओवर्स का मैच जिसमें 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं। अंदाजा लगाइए क्या बात है। कैमरामैन जो कि अपने एक काम को शानदार तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और M9 के सर्जन पड़ुबिद्रे जिनको हम कैप्टन कहते हैं, उनके कैमरामैन समेत हमेशा तत्पर रहते हैं 100% देने के लिए। और यूथ ऑफ GSB जो कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश विदेश में उनके प्रसारण का बोलबाला चल रहा है। आज कहें कि ये दोनों मिलकर कमाल कर रहे हैं GPL में, तो कहना मुझे लगता है कि 100% है। जबरदस्त प्रयास वो कर रहे हैं। GPL के जितने सारे दृश्य वो दिखा रहे हैं, उसके अलावा जितने सारे मैदान पर छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि पंछियों का उड़ना या फिर दर्शकों का आना जाना, कुछ आकर्षक ऐसी चीजें जिसको वो कैप्चर करते हैं, कैमरा पर दिखाते हैं, ये बिल्कुल एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की तरह दिखाई पड़ता है, जिस तरह से IPL और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस बनते हैं। क्या शानदार कैमरामैन हैं, उनको
हैट्स ऑफ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैदान की ओर बढ़ते हैं दोबारा लाइव एक्शन के लिए, थ्रिल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 84 नंबर के गेंदबाजी जर्सी में गेंदबाज तैयार हुए, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच किया। शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट देर आए दुरुस्त आए, काफी देर के बाद ही सही, एक विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। इस शानदार कैच के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। तो वैभव आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। माफ कीजिएगा, वैभव ने शानदार तरीके से कैच लपक लिया और रोहन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। वैभव का कैच आसान बनाकर दिखाया जरूर, लेकिन क्या कमाल का कैच था। दौड़कर पीछे जाना, अपने आप अपने शरीर का संतुलन बनाना, गेंदों के ऊपर आंखों को जमाए रखना एकाग्रता के साथ, और उस दबाव के इतने सारे दर्शकों के सामने, इतने सारे खिलाड़ियों के सामने एकाग्रित होकर गेंद को कैच करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसको बहुत आसान बनाकर दिखा दिया। क्या कमाल का कैच था। इस कैच के साथ ही ये पहले विकेट का पतन हो चुका है। रोहन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी चरण एक छोर पर मौजूद हैं। एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। 6 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस छोर पर नए बैट्समैन का आगमन हो चुका है। पवन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। राधाकृष्ण गेंद को लेकर तैयार, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और पवन ने इस बार थोड़ा चेक करना चाहते थे कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जो है उसको कहीं ना कहीं आधे अधूरे मन से ही सही खेलने का प्रयास किया, जिस तरह से चेक करते हैं। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। 84 नंबर के जर्सी में दोबारा राधाकृष्ण स्पिन का आक्रमण करते हुए बिल्कुल अंपायर के पास खड़े रहते हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है इस बार। पवन ने बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह, थोड़ा सा ऐसा लगा कहीं शायद कहीं प्रोफेशनल बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हो, गेंद को फ्लिक के अंदाज में पुल किया, लगभग मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी और मिला जुला स्ट्रोक कहना चाहिए। फ्लिक के पीछे थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, कलाइयां बहुत मजबूत होनी पड़ती है, और 2 रन तेज कदमों के साथ पवन ने पूरा कर लिया, अपना खाता खोल चुके हैं। राधाकृष्ण की अगली गेंद कमेंटेटर बॉक्स छोर से, राउंड विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, थोड़ा पीछा किया, कट करना चाहते थे लेकिन इतना आसान नहीं था। गेंद ज्यादा छोटी नहीं थी, कट करने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इस शोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गई। शायद बल्ले का किनारा लगा या नहीं ये लगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बैट्समैन बच गए। गेंद का पीछा करते हुए थोड़ा खेलने के प्रयास में शायद ऐसा लगा कि लगी है, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गई। इस छोर से अगली गेंद दाएं हाथ से विकेट। राधाकृष्ण गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया गेंद को, और फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 33 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 33 for 1। थोड़ा सा ध्यान दें, सवेरे से अब तक के कमेंट्री में जब भी गेंदबाज बॉलिंग करता है मैं थोड़ा सा पॉज हो जाता हूं, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। और फिर क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, मैं जानबूझकर पॉज देता हूं ताकि निक होने के पश्चात विकेट कीपर अगर कैच कर ले तो अंपायर को इसकी आवाज सुनाई दे। तो मुझे लगता है कि मुझे भी सहयोग की आवश्यकता है आप लोगों की तरफ से। बीच बीच में टोका न करे, रोका न करे, क्योंकि मैं जानबूझकर अंपायर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस वजह से जब गेंदबाज डिलीवर करता है उससे पहले मैं पॉज हो जाता हूं। एक अनाउन्स्मेंट ಹಂಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಕ್ಷಿ ರೋಡರಿ ಧೋನಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈಕೋರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಕಡಕತೆ KA01 MM8063 ಅನೇಕ KA19 MM4089
ते दोन्ही कार रोडा मध्ये पार्क केला दयकोन तेदुकुन काणो ते पार्किंग लॉट ಅಂತ ಪಾರ್ಕ್ ವರ್ಕ ಮಾಡು तुमगे रिक्वेस्ट करता असती ಕೂಡಲೇ ते कार कोर कड़का नतले रंग आमका प्रॉब्लम जाता तश जेवनो KA 19 4089 KA 01 8063 दोन्ही कार ಕೂಡಲೇ तेदुकुन कड़का थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोबारा GPL 2024 में स्वागत करते हैं। तो दूर वाले छोर से आज फार्मा एंड से गेंदबाज गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। रामकृष्ण गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, जबकि स्ट्राइक एंड पर इस वक्त पवन 3 की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 जी नहीं 5 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया। शानदार दृश्य है और फील्डर्स अपना अपना पोजीशन लेकर तैयार हो रहे हैं। नेत्रवती छोर से रामकृष्ण गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। पवन स्ट्राइक एंड पर इस ओवर की पहली गेंद, ये गेंद बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा पंच करना चाहते थे, टो पर उछल गए क्योंकि अतिरिक्त उछाल था। अप्रत्याशित रूप से गेंद उछल कर आई, उसको देखा और फिर टो पर उछल कर गेंद को पंच किया फील्डर के दिशा में। जब तक वो गेंद को समेट पाते बैट्समैन के पास 1 रन लेने का अवसर था। पवन बढ़कर पहुंच चुके हैं 4 पर, जबकि कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 34। जबकि इस ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक एंड पर चरण, और देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे चरण, मिस कर गए। लेंथ थोड़ी सी कम रह गई, थोड़ा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, उसको पूरी तरह से जज नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन सभी भी वहीं पर स्थिर है। रामकृष्ण गेंद को लेकर आज फॉर्मैंड से उनकी गेंद, एक और गेंद, क्या शानदार परिवर्तन रामकृष्ण कर रहे हैं। पहले गेंद को कभी लंबा करते हैं कभी छोटा, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ जी नहीं लेंथ में ज्यादा थी, उछल कर आई, उसको घूमकर घुटनों को थोड़ा झुका कर ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। आज फरमान से इस ओवर की अगली गेंद रामकृष्ण, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेंथ में ज्यादा और वेरिएशन इसे कहा जाता है। रामकृष्ण बड़ी चतुराई के साथ गेंद को छोटा या लंबा और दिशा भी बार बार वो प्रयास कर रहे हैं कि लाइन और लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन करके बैट्समैन को परेशानी में डाल दिया जाए। ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, खेलने का प्रयास चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक और गेंद लॉफ्ट कर दिया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन दुर्भाग्यवश कहना होगा उनके हाथ से गेंद छूट गई। संभावित छक्के को उन्होंने कैच में परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे तैसे समेट लिया गेंद को और बैट्समैन को सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिला। कुल मिलाकर रन 35 पर पहुंच चुका है। रामकृष्ण उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट, ये गेंद बैकफुट पर गए, थोड़ा कट करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी सिरा लगकर गेंद गई फील्डर की दिशा में। थर्ड मैन शॉट में 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 36 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर इज ऑन 36 for 1। 36 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। दोहरा के बता दें आपको, ये मैच इस वक्त यूके एकादशा सारस्वत और कुडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के बीच में चल रहा है। टॉस जीतने के पश्चात कुडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रनों पर अच्छा खासा अंकुश लगाने का उनका प्रयास अच्छा जरूर था, लेकिन गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हो गए, खर्चीले साबित हो गए। श्रेय जैसा आपने देखा कि रोहन जैसा धुआंधार बल्लेबाज हो तो किस तरह से उसको बांधा जा सकता है। नया ताजा ओवर इससे पहले शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सूरज जी को आमंत्रित करूंगा विवरण सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। So thank you Ajay ji. Welcome back once again to this GPL 2024. Fifth match of the day number 1 is going on here between UK Ekadash Saraswat versus Kodiyal United Sports Club. Kodiyal United Sports Club, for the first time they are participating in this GPL cricket tournament. After winning the toss, they have decided to field first here, and in reply to that, UK Ekadash Saraswat have scored 38 runs.
Next delivery from the bowler. Good delivery. They are pitching right in the block hole and they're looking for the second. They come back for the second and completed the 2 runs easily here. One shot has been signaled here. The batsman just played that shot, just giving the touch and going for a runs, but he will have to satisfy with only a single here. Once again, the bowler Aditya will come to bowl for the 3rd time from the Puzalana end. Here is the next delivery. Converted that into full toss, but played that shot into the vacant region. So no damage at all for the batsman, no danger at all for the batter here. The ball safely landed into the vacant region. Meanwhile, before the fielder collects the ball, there is ample time for both these 2 batsmen to cross over for an easy single here. Score moves up to 40 now. This is a quicker delivery. They are pitching right in the block hole and the batsman had no clue about that ball. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball whatsoever, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps, so no runs resulted. Dotted delivery there by Aditya. For the 5th time, goes for a switch hit here, but there is a protection, so batter will have to satisfy with only a single here. There is no chance for going for the 2nd run. They get only a single here. Score now slowly moves on to 41, and we are in the 5th over of the innings, last ball of the over. And that should be a wide delivery there. The ball was going down the leg side and all of a sudden it has taken a turn. But since the ball was going down the leg side, the umpire Swarup called it as a wide delivery. Ball chipped up in the air. 3 fielders are in a row and what a great catch in fact. That was a very, very difficult catch in fact, because the fielder has to cover a lot of ground, and especially he was looking backwards, he was running backwards. The ball slipped away from his hands and all of a sudden another fielder came in between and he converted that into a catch. So wicket number 2 has fallen down for UK Ekadash Saraswat here at the score of 42 runs. So Prajwal is the fielder who takes that catch. It's a brilliant effort there by the fielder. So 2nd wicket has gone down for team UK Ekadash Saraswat, one of the hot favorite team of this GPL season 8. So at the end of 5 overs, UK Ekadash Saraswat are now 42 with 2 wickets down. Sharan is batting on 8 and newcomer is Girish. Batsman goes for a big one. It could be 6 and that's a mighty 6. Lovely timing. And down the track he goes, picked it up very nicely, hits that one, taking the advantage of that wind, he hits that one over the mid-wicket fence for a maximum. The batter has given a good start for this over. Ramakrishna bowls. Full toss. This time it's a simple lollipop catch. The batter once again wanted to convert that full toss and wanted to go for a big hit, but unfortunately the ball takes the leading edge of the bat and it was in the air for a while and the fielder collects it easily here. So UK Ekadash Saraswat have lost one more wicket here. Very, very hot sunshine here today at Sahyadri College ground. We can see some colorful flags, colorful advertising boards.
So Kodial United Sports Club are playing here, and I can see Konchadi Naresh Shenoy, who is the backbone of Kodial United Sports Club, is really enjoying this match. They are playing for the first time in this GPL season. New batter in is Girish. Meanwhile, is after taking the guard from umpire Sriniket Rao is ready to face the bowler. Ramakrishna Brow's intelligent bowling there. Slower delivery, bit of variation. The ball has all of a sudden taken a turn. Ramakrishna is a very experienced bowler. He can change the pace of the ball. He can change the direction of the ball, and the batter had no clue about that ball. Girish misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Dot delivery there by Ramakrishna once again. Ball pitching in the right spot. Meanwhile, the batsman just taps the ball to the offside before the fielder collects the ball. These two batters were very quick, and they have completed a single, a cheeky single there. 1 run has been added to the total, and that with that their score now moves on to 14-9 for the loss of 3 wickets. Ramakrishna from the Arch Pharma Labs end. Ball wraps onto the pad. It was going down the leg side. There could be a chance of run out. He has missed the stumps. Oh my goodness, if it's a direct hit, certainly the batsman would have been in trouble. Very, very lucky indeed. Fortunately, the batsman survives here. The batter was short of his ground, and he was rushing towards the danger range. Very good effort there by the wicketkeeper, but direct hit has not happened here. Direct hits are always dangerous. Pulled away nicely onto the onside, turned away the ball to the deep mid-wicket region. Will they get 2 runs? There could be a chance of run out. And the umpire has referred it to the third umpire now. The batter was rushing towards the danger range. Datesh was looking for the second run. Meanwhile, a very good throw there by the deep fielder. Collects it and throws it back to the bowler. We'll have to wait and see what the decision will come from the third umpire now. एक अनाउन्समेंट पार्किंग लाट अंतू एक एंब्युलेन्सस दयकोर्नु तेगेदुकोंಡು कड़क एंब्युलेन्स नंबर KA19 AB0034 पार्किंग लाट्ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ KA19 AB0034 ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Well, the decision from the third umpire is out. Datesh will have to move back to the pavilion here. UK Ekadash Saraswat have lost the wicket of Datesh. Datesh without making any score. He will have to move back to the pavilion. Very, very disappointed. Lots of hopes from him, but none can fulfill. So 51 with 4 wickets down after the completion of 6 overs. It's a 7 overs game. Last over to go now. I think Vaibhav is going to bowl the final over of the innings. New bowler Vaibhav has taken over to bowl the last over of the innings, and he will be operating his over from the Puzalana end. We have got 2 ends here. The far end is known as Arch Pharma Labs Limited end, and the commentary box end is called as Puzalana end.
So Arch Pharma Labs and Puzalana are the main sponsors of this GPL 2024. Vaibhav for the second time now will bowl to the right-handed batter. That ball keeping very low. The batsman had no clue about that ball, misses it completely. The ball went straight to the wicket-keeper's hand and wicket-keeper collects the ball behind the stump, so no runs resulted. Dot delivery there by the bowler Vaibhav. Gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. Bowler Vaibhav is bowling with good line and length, is not giving any room for the batter to play here. So only 2 runs conceded so far in last 3 balls. Well, that's a clever bowling there, intelligent bowling there by Vaibhav. Meanwhile, they get a single here in the form of leg bye. 1 extra run has been added to the total of UK Ekadash Saraswat team, which takes their full score to 54 now. Only 2 more balls to go of their innings. Best time, he goes for a big one. Ball is in the air, it could be out, and a simple lollipop catch to the fielder. Nagesh, the fielder who was standing at long off region, kept his eyes on the ball and he converted that into an amazing catch. So wicket number 5 has gone down for UK Ekadash Saraswat here at the score of 54. So Vaibhav so far he's doing excellent job. This is the final over of the innings. Vaibhav was able to pick up 1 important wicket and he has just conceded only 2 runs so far, and now only 1 ball is remaining in their innings. So UK Ekadash Saraswat, after putting into bat first, they have scored 54 runs with 5 wickets down and last ball to go of their innings now. Chandan is the newcomer in. Chandan is taking guard from the umpire and he will be facing Vaibhav. With a short run up, left arm medium fist bowler will be bowling in the round the wicket fashion to the newcomer Chandan. Vaibhav to Chandan. Last ball of the innings. Some problem for the bowler Vaibhav during his run up. Once again, the ball is now in the hands of the bowler Vaibhav. Here is the final delivery. Gently pushing the ball, just giving the touch, going for a cheeky single. They come back for the second. There could be a chance of run out. He has to be hurry. I think that's all over for the batsman. So Chandan is run out. They will get only a single here. That's the end of their innings. So altogether, UK Ekadash Saraswat have scored 54 runs. I beg your pardon, 55 runs. That means 56 is the victory target now for the team Kodial United Sports Club to win this match of 7 overs. .56 is the target for Kodial United Sports Club. This is not an easy target because as far as UK Ekadash Saraswat team is concerned, they have got some outstanding bowlers. So this is going to be a tough task for Kodial United Sports Club. Only thing is the opener batsmen will have to play a brilliant cricket from the beginning. During the power play session, they need to score as many runs as possible because as we all know, first 2 overs will be mandatory power play overs here. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle during the power play session. So opener batsmen will have to take the advantage of that fielding restrictions and they need to go for big hits from the beginning. If they can pick up a couple of boundaries or sixes in the first 2 overs, definitely they can come back into this game and they can give a good fight for their opposition side, that is UK Ekadash Saraswat team. So after this match, we are going to have the match number 7 of this GPL tournament, which will be played between Malpe United versus Iruvatturu Sports Club Manipal. The captains of both the teams are requested to come to the commentators box for the toss.
This is the first call for the captains of Malpe United and Iruvatturu Sports Club, Manipal. So this tournament, GPL Trophy 2024, is brought to you by Kodiyal Sports Association of Mangalore. Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament in association with the M9 Sports. M9 Sports cameramans are doing an excellent job here, capturing each and every actions of this beautiful Sahyadri venue. So fantastic cricket tournament, 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Sahyadri College Ground. Swarup Tirthalli and Sriniket Rao Urva are the two umpires officiating for this match. Very experienced umpires from Mangalore and Tirthalli region. And meanwhile, the fielders of UK Ekades Saraswat are slowly entering into the ground to set their field placement before the innings of Kodiyal United Sports Club starts. It's time for us to change the commentary. And I have got Mr. Satish Mangalore is with me in the commentary box, who is going to give you the further commentary. Thank you very much. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಚಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಚಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Suresh Bhatji. And one more the very good match is in progress. Actually, it's a good comeback by the bowlers of team Kodiyal United Sports Club. After that, explosive start from the opening batters Charan as well as Rohan. And after the 2 wickets which has fallen, and afterwards the bowlers of the team UK Ekades Saraswat are managed to pull the things back, and they managed to restrict them for just 54 round. Now it's a 54 which is going to be a target, 54 which is going to be a target for Kodiyal United Sports Club, and wait and see how well UK Ekades Saraswat will going to restrict. 56, little bit correction, it's not 54, 56 which is a target, and run rate required is exactly 9 runs per over and 8 runs per over, and it's definitely going to be the competitive and very good total put there by Ekades Saraswat. Opening batters are in the middle. Opening batter in the middle, Nandish Shenoy and Vaibhav Pai. Nandish Shenoy is in striker's end, and the bowler will go into start the proceedings from the commentary box end. Right arm round the wicket, lovely deliveries to start with. A little bit which is offered there by the bowlers. Little bit short outside the line of off time. Not that much of shot enough for the left-hand batter to go for the cut shot, and he missed it completely. Have a look at that, the cricket ground. Absolutely the beautiful scenario of this cricket ground, UCG cricket ground. And yes, this is why this cricket tournament, why the crowds are loves to come here and watch this cricket tournament, and because of the beauty of this cricket ground. And just like an international standard. Full toss, wanted to loft that one, but hit that one pretty hard into down to deep long on region for a easy single. With that single scored now. They started the journey, in fact, one without loss of any wicket. And Charan K, the drone camera is covering this beautiful view of this cricket ground. And the camera in that four-wheeler, and that's why you are getting that kind of the round view of this cricket ground, isn't it? And a lot of innovative thinking. That's why it's going to be a fantastic
live telecast, Youth of GSB Worldwide, providing the very quality cricket coverage. This time, opportunity of run out. If it's directed, I think it's all over for the batter. But fortunately for him, that ball misses the stump and got an opportunity to get another extra run in the form of overthrow. 2 more valuable runs which is conceded. Just with the bowler couldn't manage to get the stumps in that occasion. Have a look at that one in replay. Went for the full shot. Check. Lofted that down to deep long on region. They're looking for a second then, and before the throw coming from the fielder, they completed 2 valuable runs. Right arm over the wicket. This time driven that one, not quite getting hold of that one properly, but good enough for him to get the single between the bowler and a short extra cover before the fielder from deep long off region to collect that one. Ample time for the batter to collect the single. With that single, scored now moves on to 6 on the board, and Nandish is individual score now 5 on the board, 6 without loss of any wicket, chasing 54 to win this match. Kodial United Sports Club have to get that 54 runs. They need to get a good start here. The bowler again, Charan. Across the line, he wanted to swing that one, not quite getting that much of enough room to pull that one. Of course, the intention is very clear there from the left-hand batter, Nandish, to get that one into mid-wicket region, but fails to connect that one properly. But we've got a single for that. Very tidy first over completed there by Charan. After completion of first over, chasing a total score of 54 to win this match. It's 7 on the board without loss of any wicket. 56 little correction, 7 runs which is scored. That means 49 more runs required for the victory. So next match, the match number 5 will be played between defending champion Malpe United versus Iruvattur Sports Club Manipal. So that I request both the captains please be reported here immediately for the tossing ceremony. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇರುವತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. Slowly crowds are gathering in this beautiful Sahyadri Engineering Cricket Ground. The 7 is the total score, 56 is going to be a target. And steady start from the opening batters, Vaibhav Pai and Nandish. Try to get some good start and wait and see how well they will go into play the second and last over of the power play. Altogether 16 fours and 24 sixes in this first day of cricket tournament. This time bat umpire just watching till the last moment whether it was good enough for him to call that wide. Yes, it is a wide ball just going away outside the line of leg stump. Full toss, but batsman can take the advantage of that full toss, but he's not interested, and ball went to the hands of wicketkeeper. Wide call by umpire. 8 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Pawan. Ball's lovely delivery, beautifully bowled interrogation. Vaibhav Pai wanted to play unorthodox cricketing stroke, and unorthodox in the sense switch it is attempted, one of the most popular cricketing stroke in present cricket. Each and every batter loves to play that kind of switch it. For that I think you need to have some kind of good footwork, quick footwork, which is very, very much required. Getting a position quickly is very important. Bowled him, cleaned him up, beautifully bowled. After that dotted delivery, certainly the batsman a little bit under pressure. He wanted to break the shackle, but choosing that wrong delivery for the big shot. Ball is right on the block hold of the batter. I wanted to get that one in the mid-wicket region. No clue whatsoever for that particular delivery. Cleaned him up with the beauty by the bowler. The wicket number first is back into pavilion. Have a look at that one replay. Absolutely perfect Yorker line delivery. It's not so easy. Of course, in season ball cricket, you can get the Yorker length very accurately, but in a tennis ball cricket it's not so easy because ball is not that much of hard in the nature, and if you never get that Yorker length that way, you need to be very accurate and need to be very specialist while bowling that line and length. Beautifully bowled there by Pawan Telang in that previous delivery.
And the batsman absolutely cleaned him up. Beauty. 80 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Kodial United Sports Club, what we are talking about, needed to get a good start, but they lost their first wicket in that second over. The jersey number 10 came into middle, and Satyajit is a new batter in. Satyajit, the wait and see how he'll go into face Pawan. So far Pawan is looking so good in from the river, and maybe he's getting some extra benefit from the wind flow, getting some good direction, good extra face in the bowling. Now he's changing his angle, he's coming round the wicket. Beautifully bowled there by the bowler outside the line of off stump. Now it just looks like umpire just has talked with the bowler that is after that follow through is coming right in front of umpire Shiniket, so that you need to avoid that one, because you are the loser if any caught behind any leg before wicket. Very difficult for umpire to give the decision, so that very important for bowler after the delivery, the follow through. You need to keep your left up when you are bowling round the wicket, and when you are bowling the right over the wicket, you need to keep come to right your after that follow through. Left arm, beautifully bowled, perfect one. What a fantastic piece of bowling there from Pawan. Absolutely great piece of bowling. So really hard to combine the runs. So 4 very good deliveries there from Pawan, and keeps the things very tight in this power play over. And new batter Satyajit, again lack of placement, almost drags the ball from outside the line of off stump. Try to hit that one down to mid wicket region. Again he fails to defeat that infield. Good piece of fielding there by the fielder at short mid wicket. Altogether Ekadash are looking in a commanding position in this 2 over of the power play, not giving any run cheaply for the opposition. 8 for the loss of 1 wicket. Pawan Telang last time in this over. Full toss, lofted. Will it go into the 6 or not? Ball just going, and he got the distance with the direction of the wind. The kind of treatment which is required in this power play over, and he choosing that last delivery of the Pawan. All the efforts are gone in vain of this over because of that juicy full toss, slow full toss. And the batsman picked that one right from the middle of the bat, hoisting it over down to deep whitish long on for a 6. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ 2 ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಹಾಗೆ ಇರೋತ್ತೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ So Satyajit just breaking the shackle in the last delivery of the second over, and the second, which is what we're talking about, the last over of the power play. The umpire just suggesting that the fielding team not to waste the time. As per the rules and regulation, there is a time limitation for each and every fielding team to complete their 7 hours quota. And bowler will going to continue from the commentary box, and Girish Prabhu, and in front of him Nandish from the Fuzilona end, of course one of the more big sponsor of this cricket tournament. From edition 1 to the edition 8, they are the biggest supporter. Oh my goodness, he's cleaned him up. But Bales, what talking about, Ajayra's talking about whether there was any spevicle which is sticked in that stumps. It's not the first time I'm seeing that. This is the 3rd time in this day number 1. Wicket, ball hits the stump, and Bales fish not dislodged. This is going to be a disaster. Yes, we are getting that the reason behind that, and we have Dinesh Acharya, umpire, is saying that the weight of the ball is not good enough. It's dislodged the bales, because the weight of the bales, it's the LED bales, there's got extra weight. So I think that's the main reason that every time when ball hits the stump, but the bales which is not dislodged from the stumps, it's going to be a disaster for the bowler.
Girish. Short pitch and swings it back down to deep square leg region, but against the direction of the wind. I already mentioned it's going to be very difficult to get the distance when you are playing from the far end, river end. Hitting the big shots on the onside region is going to be a big ask, and that's why one single for the batter. The way that single scored was on 16 for the loss of 1 wicket. Girish again. Right above wicket bounce. This time going for the big shot. Chance of catcher and wonderfully taken. That was absolutely a stunner. That one is absolutely a stunner from that cow point fielder, because of that ball looks like the ball is just falling short of the fielder, and Pawan almost standing in that cow point region, charging to the ball and diving to his front and completed a wonderful diving catch into his front, and wicket number 2 which is back into pavilion. And that was a short whistle. Have a look at that one, shot outside the line of off stump, and batter wanted to get that one into the long off region, mistimed stroke. And have a look at the effort that from the fielder. Absolutely very good control over that diving catch into his front and completed the good catch here. The wicket number 2 which is back into pavilion of team Kodial United Sports Club are looking in trouble. Needed to have some partnership. Of course, so far in this day number 1, we are witnessing some excellent fielding performance from every teams. Some very good catches, some very good savings in the boundary lines. This is what we are talking about. The GPL is all about. The level of competition is always going to be very high. Each and every team, they got a dream of coming to the final, dream of touching that champion trophy of GPL. And here is the next one. Beautifully ball, perfect one. He is a very lucky indeed, the batter, because ball just not only passing between his 2 legs, and that ball is gone over the stumps. And the new batter Aditya Bhatt just searching for the delivery, couldn't manage to judge that Yorker line delivery there from the bowler Girish, bowling away from us. Lovely delivery, beautiful delivery, one more same delivery, identical mirror display of previous one. The same line, same length, same reaction coming from the batter, that he wanted to get that on the onside region without moving his front foot into his line of the delivery, misses it completely, turning out to be one more great over. This time lofted, opportunity for the long off fielder, and he takes a catch, and before he going to take the catch, he removes his cap from his head. That was really very interesting to see that, because sometime cap will going to distract you to take the catches, high catches. And one more wicket is back into pavilion. Virendra, the fielder, down at deep long off. Have a look at that one in a replay. Lofted, the long off, the high up in the air, the high catch, always going to be difficult. And ball which is landed into the hands of that fielder. And very good judgment catch taken there by the deep long off fielder. It's 16 for the loss of 3 wicket. All in sudden, the team are in trouble. Kodial United Sports Club. Now new batter in is Saurav. One more very good batter, Saurav Bhakta, and one who can perform both in overarm and underarm cricket. Good striker of the ball. They needed some partnership along with this partner Satyajit. Otherwise very difficult for them to get that 56 required run. It's a little bit going higher and higher. That now it's 10 runs per over the required run rate. After completion of over number 3, it's 16 on the board. That means exactly 40 runs required for the victory, and in the remaining 4 overs, asking run at 10 runs per over. Pawan Telag asked to ball this second over and last over of his squad after that fantastic first over. Of course, the one delivery which is he bowled a full toss delivery, the batsman hit that one into the fence for a 6. Otherwise, very decent over ball by Pawan. That's why captain of UK Ekadas wanted him to continue. Bowled him, cleaned him up. One more wicket is back into pavilion. Now Satyajit is walking towards the middle. It's a march past of the batters of team United Sports Club, Kodial United Sports Club. They lost their 4th wicket, and again missing that line completely from that
line. You have a look at that one in the replay. Bowler bowling round the wicket. Right arm, the batsman going for the expansive drive, but looking for the blind attempt and pays the penalty for that. Nowhere near the pitch of the delivery. And I request any member of Malpe United as well as Irottur Sports Club Manipal, please report here in our commentary box to collect your water bottles from organizers. (16) for the loss of 4 wicket, and Pawan Talanga got his wicket in the first delivery, right on the money, right on the target. The new batsman in is Vinod Kamath is a new batter in. Vinod Kamath will go into face next delivery from Pawan Telang. Needed some partnership badly here for the team. Kodial United Sports Club again a little bit down the leg side. Umpire righty so not interested, offering outside the line, offering around the wicket. That's certainly ball pitching outside the line of leg stump, and 17 for the loss of 4 wicket in the over number 4th is in progress. Pawan Telang, the firing from the far end, full toss delivery. Saurabh Bhakta plays it down to deep square leg region, not quite getting that one middle of the bat. Of course, it's a full toss. You cannot miss this full toss when you are playing in this end, because the direction of the wind really favoring the batter to get the distance. If you manage to get that one into the mid wicket, if you want to try to play that lofted stroke, I think it's going to benefit the batsman to get the distance. 18 on the board for the loss of 4 wicket as Pawan balls. It's going to be a punishable from the umpire, not from the batter. Ball is missing outside the line of leg stump too much, and little margin for error. Umpire Shiniket has got no hesitation to call that wide, and with that wide score numbers on to 19 for the loss of 4 wicket. Next match, it's going to be a good match. Malpe United, the defending champion, will going to take challenge of Irottur Sports Club Manipal. Round the wicket, Yorker line delivery, but nicely negotiated by the batsman in the last moment. We know the getting that one from the bat down to mid wicket region, deep square leg region in fact, and he got a single for that. Very slow progressing here for the team Kodial United Sports Club. Quite understandable because of disciplined bowling performance by the bowlers of team UK Ekadash Saraswat, that they really tighten up the screws by the beautiful overs. Appeal plumb, absolutely plumb, no doubt at all. Saurabh finding himself right in front of a middle stump. If you see it in a replay, you can find that his back foot is absolutely right in front of middle stump. What a fantastic over there from Pawan. Absolutely, he is looking so good so far in that 2 overs. Have a look at that one. No doubt at all, plumb in front of wicket, and the ball is hitting the back foot of back boot, in fact, not a back foot, it is a back, of course this back foot is right in front of middle stump. Ball just hitting his boot, and wicket number 5 which is back into pavilion. 20 for the loss of 5 wicket. Nagesh is a new batter in. Struggle time continues here, long way to go. Still they have to get another 36 more runs to win this match. After this, only 3 overs remaining. Asking run rate now almost climbing up to 11.37 runs per over. This is maybe the one of the difficult thing we can see. What the team Kodial United Sports Club, they didn't got enough wickets in hand. They lost 5 wickets back into lost 5 wickets, so that a lot of hard work is required from the remaining batters to get that 56. Again, going to be a wide, one more wide plus 1. It's going to be 2 wides. With that 2 wides, score numbers on to 22 for the loss of 5 wickets. That's one thing that Pawan Telang is in this 2 overs so far, as he's tried to ball some Yorker line delivery. He's just missing the line, and twice in this over, ball missing the line, going outside the line of leg stump. Final time in this over. The Vinod Kamath is on strike now. Lovely delivery to finish that one. You know exactly, just seeing the stance of the batter,
The bowler quickly realizing that he's looking for the big shot in the onside edge, and he bowled outside the line of off time. Fantastic over which is comes in, and after completion of over number 4, chasing 56 to win this match. Still Team Kodial United Sports Club are searching for the right track, struggling in the middle, and it's 22 for the loss of 5 wicket in the remaining 3 overs. They need to get another 34 runs to win this match, and before the next over going to start is the time to change in commentary box as well. It's over to Ajay Raj. Ajay Raj, it looks like a difficult task. 12.25 runs per over is the required run rate, but difficult in the sense not impossible. In cricket anything can be possible. The perfect example is the third match when it looks like the fielding team going to win the match 2 sixes, which is changing the complexion of the game. And here also the 2 or 3 sixes in this particular over, definitely opportunities there for Kodial United Sports Club to back in the game. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जीपीएल 2024 में दोबारा स्वागत है। निश्चित तौर पर 2 छक्के कहीं ना कहीं परिस्थितियों को बदल सकते हैं। सतीश जी, वेरी वेल सेड। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। अनिश्चितताओं का खेल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्या ये देखने को मिलेगा इस वक्त कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स की तरफ से? ये गेंद लगभग लेग स्टंप के सीट पर थी। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में पुल करने का प्रयास किया बैट्समैन ने, और 1 रन चुराने का अवसर। रन बढ़कर 23 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स का, और परिस्थितियां जो कि इस वक्त उनके खिलाफ चल रही है। विकेट ज्यादा गिर चुके हैं, रनों का सूखा पड़ा हुआ है। ये गेंद और पलटकर गेंद को खेलना चाहते थे, चूक गए, गेंद पैरों से टकराई, लेकिन कहीं ना कहीं बच गए अंपायर के नजरों से। ऐसा कोई जोरदार अपील नहीं हुआ, और अंपायर वैसे भी इस अपील से शायद इंप्रेस न हो पाते। शायद स्टंप्स को छोड़कर निकल रही थी गेंद। नागेश जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है, विनोद कामत थोड़ा सा परेशानी में ऑन साइड की दिशा में पुल करने के प्रयास में बीट हो गए। एक ही व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस छोर से गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता था, बच गए, लेकिन डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का प्रयास, हथेली में गेंद आ गई, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई, और बैट्समैन को मौका मिला, जीवनदान मिला, वो बच गए रन से के साथ। रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद की गई थी ओवर द विकेट। ये गेंद बिल्कुल क्रीज के कोने से, और हवा में गेंद को खेल दिया था। कुछ जल्दी बल्ले को चलाया, बाहरी सिरा लगकर गेंद हवा में गई। डाइव करने के प्रयास में गेंद हाथ से छूट गई। इस छोर से गेंद फुजलाना एंड से फुल टॉस गेंद थी, पलटकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। 1 रन लेने का अवसर मिला बैट्समैन को। इसी के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 25 पर 25, 5 विकेटों के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। क्या बात है। आइए पहले इस गेंद पर आते हैं। जोरदार अपील, लेकिन विकेट कीपर और गेंदबाज के इस अपील से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पर। स्वरूप जी इस वक्त इस छोर पर खड़े हैं, उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया, और आप देख रहे हैं पाइसेस का एक शानदार सुजुकी जो कि आपके लिए आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, जिसको कट करना चाहते थे, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। तो जीपीएल 2024 में जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मैन ऑफ द सीरीज के लिए शानदार सुजुकी रखा गया पाइसेस की तरफ से। क्या बात है। हमारे कितने बड़े बड़े धनी महानुभाव, महान व्यक्तित्व जो कि इस क्रिकेट श्रृंखला को योगदान दे रहे हैं, अपनी तरफ से इस क्रिकेट श्रृंखला को 4 चांद लगा रहे हैं। उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत यह क्रिकेट श्रृंखला बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है, और आज देखते ही ऐसा लगता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैच चल रहा हो। आइए मैच में दोबारा आते हैं। नागेश जो कि स्ट्राइक एंड पर 2 के व्यक्तिगत योग पर 2 गेंदों का सामना किया। विनोद कामत नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा दूर वाले छोर से चरण निषाद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, और
आज फार्मा के एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने स्ट्राइक एंड पर नागेश जो कि तैयार हो रहे हैं। रनअप जी हाँ, अपने कदमों को नापने के पश्चात बॉलिंग मार्क बना लिया और फिर वो तैयार होने गेंदबाजी के लिए। फील्ड प्लेसमेंट अगर उसकी रूपरेखा देखी जाए तो ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर लगभग 3 खिलाड़ी तैनात हैं। थर्ड मैन शॉट में है, गली में एक खिलाड़ी मौजूद, कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। आज फार्मर से ये गेंद और ड्राइव करना चाहते थे, रनआउट का मौका शायद बन जाए, लेकिन क्या स्वरूप जी ने जी नहीं, उन्होंने संकेत किया कि तीसरा अंपायर इस वक्त जिम्मेदारी को उठाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। बहुत नजदीकी मामला लग रहा था क्योंकि जिस तरह से गेंद को खेलने के पश्चात रन चुराने का जो प्रयास किया गया था उसमें कहीं ना कहीं बात नजदीकी दिखाई पड़ रही है। इस वजह से अंपायर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ संकेत किया कि तीसरे अंपायर जिम्मेदारी को उठाए और दूध का दूध पानी का पानी करे। शानदार प्रहर है। शाम के समय इस वक्त मैं आपको बता दूं 5 बज चुके हैं और धीरे धीरे अब सूरज डूबने की ओर जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज जैसे ही डूबने लगेगा आपके सामने कृत्रिम रोशनी मैदान भर फैलेगी, जिसे हम आज के आधुनिक भाषा में फ्लड लाइट्स कहते हैं। तो फ्लड लाइट्स की रोशनी में शानदार क्रिकेट का खेल जीपीएल 2024 फिर बरकरार रहेगा और बहुत रोमांचक मैच देखने को मिले, उम्मीद यही करते हैं। अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। जी हाँ, इसी के साथ बैट्समैन आउट। तो विनोद आउट होकर प्रवीण लौट गए। विनोद आउट होकर लौट गए। राघवेंद्र जो कि नए बैट्समैन आ चुके हैं। तो दोनों बैट्समैन क्या कुछ कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। 56 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। और जैसा आप जानते हैं इस वक्त कोडियाल यूनाइटेड बड़ी जद्दोजहद से रन्स बना रहा है। बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दूर वाले छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, पीछा किया, गेंद के ऊपर आ गए, गेंद को ऑन साइड की दिशा में ड्राइव कर दिया। 1 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 26 for 5। तो ना हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। हेलो चेक, हेलो। इस ओवर की अगली गेंद लॉफ्ट किया गेंद को, गेंद हवा में गगनचुंबी स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और उनके हाथ से गेंद छूटकर बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, लेकिन फिर उन्होंने गेंद को पलट कर रोक लिया। जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाए, बैट्समैन के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। और 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। लक्ष्य है 56 रनों का, यानी कि अभी और 26 रनों की जरूरत है, दरकार है। 6 विकेट माफ कीजिएगा। ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। जीपीएल का सिक्सर। नागेश के बल्ले से कमाल का स्ट्रोक, गजब का स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ, प्लेसमेंट के साथ मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उन्होंने उछाल दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 36 पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी और 20 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
ये गेंद आर्चर एंड से हवा में गेंद को खेल दिया, फील्डर काफी डीप में खड़े हैं, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते गेंद नीचे गिर चुकी थी और समेटने का समय जब तक लें बैट्समैन ने 23 कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया और इन 2 रनों के साथ ही ये ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। तो 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 38, 6 विकेटों के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आखिरी ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदें शेष बची हैं। 18 रनों की जरूरत, 18 रन टू गेट इन 6 बॉल्स। 18 रनों की जरूरत है, दरकार है, आवश्यकता है। 6 गेंदें शेष बची हैं। इन शॉट अगर 3 छक्के लगाए जाए तो बात बनेगी, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? यूके एकादश सारस्वत जो कि पहले बल्लेबाजी कर चुका है, 56 रनों का लक्ष्य उन्होंने कोटियाद यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को रखा है और 6 विकेट्स जो कि यूके ने प्राप्त कर लिए। इस वक्त दबाव बढ़ाने का उनका जो प्रयास है उसमें वो लगभग कामयाब हो चुके हैं। अभी 6 गेंदों को उनको रोकना होगा, क्या ऐसे में बात बनेगी? देखने वाली बात होगी। तो रुकावट के लिए थोड़ी देर के लिए खेद है और बिजली की कमी की वजह से पूरी तरह से आपको साफ साफ विवरण सुना नहीं पाए। बहरहाल आइए मैच में आते हैं, थ्रिल को बढ़ाते हैं, रोमांच को बढ़ाते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन, स्ट्राइक एंड पर राघवेंद्र स्ट्राइक एंड पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर नागेश और गेंदबाजी के लिए दत्तेश गेंद को लेकर तैयार। राघवेंद्र स्ट्राइक एंड पर 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया, क्या करारा स्ट्रोक है, जादू कर दिया। कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। जीपीएल का सिक्सर। कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब में बता दिया कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कमाल का स्ट्रोक है। राघवेंद्र ने अंतिम क्षणों में 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, एक जबरदस्त छक्का जड़ते हुए दिखा दिया कि अभी दमखम बाकी है, अभी जुनून बाकी है। कमाल का स्ट्रोक वो खेल सकते हैं। 5 गेंदें शेष बची हैं, 12 रनों की दरकार है। शुरुआत में मैंने कहा था कि इन शॉट 3 छक्के की जरूरत है, 1 छक्का लगा लिया गया है। एक छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज दोबारा तैयार हो रहे हैं। ओद विकेट, राघवेंद्र स्ट्राइक एंड पर। दत्ता की गेंद और विकेट नॉन स्ट्राइक एंड के दिशा से फील्ड बैट्समैन आगे निकल गए। विकेट कीपर ने बहुत अच्छी बुद्धिमानी के साथ गेंद को नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया और इसी के साथ बैट्समैन रन आउट हो गए। दत्ता की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैट्समैन खेलने के प्रयास में बीट हो गए। हालांकि रन लेने में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, वो स्ट्राइक एंड की दिशा में दौड़ पड़े रन लेने के लिए और उसको देखते हुए विकेट कीपर रोहन ने जल्दी ही गेंद को गैदर किया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में बड़ी बुद्धिमानी के साथ थ्रो कर दिया और नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन रन आउट हो गए। लेकिन अभी भी राघवेंद्र उस छोर पर मौजूद हैं जहां पर वो छक्का लगा सकते हैं। प्रज्वल नए बैट्समैन का आगमन नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। 5 जी नहीं 4 गेंदें शेष बची हैं और 12 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। क्या होगा? दत्ता गेंद को लेकर तैयार, 15 नंबर के जर्सी में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। डील डॉल में काफी तंदुरुस्त लगते हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी में पैनापन होगा? 4 गेंदों में 12 रनों को रोकना है उनको, क्या ऐसा होगा? जबकि दूसरी ओर राघवेंद्र ने 1 छक्का लगाकर कहीं ना कहीं आशा की किरणों को उत्पन्न किया है। क्या वो बात बना लेंगे? खेल थोड़ी देर के लिए रुका होगा और दत्ता दोबारा तैयार हो रहे। ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात खड़ा है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और क्या बात है, बड़ी चतुराई के साथ राघवेंद्र ने इस गेंद को जाने दिया। दत्ता ने देखा कि बैट्समैन थोड़ा स्टेप आउट कर रहा है, लेग स्टंप के बाहर कर दिया और अंतिम क्षणों में राघवेंद्र ने शरीर की लाइन से गेंद को हटाया, बचा लिया अपने आप को और वाइड घोषित हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा परिवर्तन, थोड़ा पीछे हटते हुए गेंद को दोबारा उसी अंदाज में कवर क्षेत्र में उछलना चाहते थे, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। 3 गेंदें शेष बची हैं, 12 रनों की जरूरत है। क्या कुछ गजब का स्ट्रोक राघवेंद्र खेल पाएंगे अपने टीम के लिए? देखने वाली बात होगी। दत्ता की गेंद,
इस बार उछाल दिया गेंद को हवा में, कैच होगा। लॉन्ग ऑन क्षेत्रों में फील्डर गेंद के नीचे आ गए। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है और भाग्य की विडंबना देखिए, तीसरा रन दौड़कर दोनों बैट्समैनों ने पूरा कर लिया, बैटर्स ने पूरा कर लिया। कमाल की रनिंग है, 3 रन बटोर लिए। और स्वरूप जी ने जो इस वक्त इस विकेटों के पीछे अंपायरिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नो बॉल है। तो नो बॉल +3 यानी कि 4 रन बटोर लिए गए। और स्वरूप जी से पूछना चाहते हैं, नो बॉल आखिर ओवर स्टेपिंग के लिए शायद दिया गया है? जी हाँ, ओवर स्टेपिंग की गई है और इस वजह से आश्चर्य है। दत्ता जो कि स्टेप निकालकर स्पिन करते हैं और उनकी गेंद नो बॉल ओवर स्टेपिंग की वजह से। फ्री हिट का अवसर बैट्समैन के पास। प्रज्वल स्ट्राइक एंड पर हैं, फ्री हिट का अवसर है। दत्ता गेंद को लेकर तैयार। बहुत अच्छा मौका हो सकता था रनआउट का, एक और मौका बनेगा, लेकिन स्वरूप जी ने दिया, उन्होंने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए हैं। इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने दोबारा उसी अंदाज में चतुराई के साथ नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया और बैट्समैन जो कि क्रीज से रह गए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। संख्या विकेटों की बढ़कर पहुंच चुकी है 8 पर। 8 रन पर 8 विकेट गिर चुके हैं, जबकि कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 49 फॉर 8। 49 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। जी हाँ, शानदार खेल चल रहा है, रोमांच अभी बाकी है। आपको बता दें, कुल मिलाकर 2 गेंदें शेष बची हुई हैं और 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। 7 टू गेट इन 2 बॉल्स। स्ट्राइक एंड पर राधाकृष्ण जो कि स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने एक जबरदस्त, राघवेंद्र स्ट्राइक एंड पर भी, माफ कीजिएगा, राधाकृष्ण नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। राघवेंद्र जिन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाया। क्या वो 2 गेंदों में 7 रनों को बना पाएंगे? बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अब कहना मुश्किल है कि आखिर क्या होगा। दत्तू इस वक्त एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। अंतिम 2 गेंदों को उनको करना है। ओवर द विकेट इस छोर से दत्ता की गेंद, क्या कमाल की गेंद है, बीट कर गई बैट्समैन को। और दत्तू की गेंदबाजी का क्या कहना, जो बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि पिछली गलती को उन्होंने सुधार लिया और गेंद को इस तरह से करना है कि बैट्समैन समझे कि ये शॉट ऑफ लेंथ है और पासे में फंस जाए, उस अंदाज में गेंद को वो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्विंग करा रहे हैं। और बैकफुट पे गेंद को कवर की दिशा में उछालने के प्रयास में बैट्समैन लगातार बीट होते जा रहे हैं। अब गेंद डॉट में तब्दील हुई और राघवेंद्र जो कि कहीं ना कहीं पासे में फंस गए। आखिरी गेंद शेष बचा है, 7 रनों की जरूरत है। क्या कुछ जबरदस्त छक्का लगेगा? पिछले मैच की तरह क्या मैच टाई होगा? क्या पॉइंट्स बांटे जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। राघवेंद्र इस बार स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा बैठ गए, अपने विचारों में खो गए, फिर तैयार हो रहे हैं। दत्तू की गेंद, इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है। क्या कमाल का स्ट्रोक है। राघवेंद्र ने साबित किया कि वो बन सकते हैं चैंपियन। क्या जबरदस्त छक्का उन्होंने लगाया और इस छक्के के साथ कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स ने इस स्कोर को टाई किया है, बराबरी पर पहुंच गए और आखिरकार कहीं जीतते या कहीं हारते, आखिरकार बीच में आकर फंस गए। पॉइंट्स बांटा जाएगा और इसी के साथ एक निर्णायक मैच, एक बहुत महत्वपूर्ण मैच जो कभी यहां कभी वहां हो रहा था, पलड़े में कभी यहां कभी वहां हो रहा था, अचानक परिस्थितियां बदल गई और जबरदस्त स्ट्रोक के साथ ही इस मैच का अंत जो कि टाई में परिवर्तित हुआ। क्या कमाल का मैच है, क्या बात है।
क्या बात है। आइए स्कोर और स्टैटिस्टिशियन जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इधर उधर गिनती करने के पश्चात आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया है कि बड़े मंच की ओर किसे बुलाना होगा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। बड़ा दिलचस्प एक तरह से चर्चा चल रहा था, आखिर में उन्होंने राघवेंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच चुनाया है। क्या बात है, जबरदस्त प्रदर्शन राघवेंद्र ने किया है, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को टाई किया। पॉइंट्स जो कि शेयर किए जाएंगे, इस वजह से राघवेंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। उनसे अनुरोध है कि कृपया वो बड़े मंच की ओर आए और इस प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को स्वीकार करें। और आयोजनकर्ताओं से अनुरोध है कृपया जो भी हमारे मुख्य अतिथि यहां पर मौजूद हैं उनसे अनुरोध करें कि ये शानदार पुरस्कार प्रदान करें। तो नया ताजा मैच शुरू होने जा रहा है और अब समय है विवरण को और भाषा को बदलने का। आगे का विवरण सुनाने के लिए नए ताजे मैच के लिए सूरज जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you, Ajay ji. Welcome back once again to Sahyadri College venue. Sixth match of the day number 1 of this GPL 2024 will be played between Malpe United versus Iruvatturu Sports Club Manipal. And the news from the center is Team Malpe United have won the toss and they have decided to bat first here. Gautam Prabhu and Ashok are the two openers there, slowly marching towards the track for Team Malpe United. And Iruvatturu Sports Club Manipal fielders are in the middle to set their field placement. The two umpires for this match are Dinesh Acharya Baikampadi and Raghu Kaduru from Brahmawar. This match is now going to be a very interesting match because Malpe United were the champions of last GPL season. So they are now playing against another hot favorite team, Iruvatturu Sports Club Manipal. Iruvatturu Manipal is also the champions of 2020 GPL cricket tournament, and in 2019 they were the runner-up team. Suraj Kamath is a very experienced key player of their team. So this is going to be a nail-biting finish match for this sixth match of the GPL 2024. Very, very hot sunshine now here at Sahyadri venue. Gautam and Ashwath are the two openers for Team Malpe United. Left-handed batter Gautam is at the non-striker's end and Ashwath will be the striker. Ashwath is a left-handed batter and Gautam is a right-handed batter. Suraj Kamath is all set to bowl now. We have the green signal there by the umpire. Suraj Kamath has represented KPL. He played for Bijapur Bulls team in Karnataka Premier League. So Suraj Kamath is ready to bowl the first ball of the over now from the Puzalana end. Here is the first delivery of the first over. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. The ball was going down the leg side and umpire Dinesh Acharya Baikampadi has no hesitation whatsoever in stretching his arms and giving a wide signal. So first run in the form of extras for Team Malpe United.
Once again, similar delivery and similar result here. Suraj Kamath will have to improvise his bowling now. He shouldn't give any runs in the form of extras because each runs are very, very important. So he should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required. So bowler has to give more and more high priority for the direct and accurate bowling. So Suraj is coming round the wicket this time. Again, the ball was going down the leg side. Batsman just leaves the ball thinking that it is too far from the leg stump. So left the ball and wicket keeper collects the ball behind the stumps. Vishwanath is doing his job as the wicket keeper. They are standing well behind the wickets here. Again, it was going down the leg side. 3 wide balls so far in this over. Some problem for Suraj Kamath in maintaining a good line and length. He should bowl with perfect discipline line. They should bowl perfectly straight to the wicket. This is a very, very good delivery there. Good improvisation there by Suraj Kamath. Good comeback. That ball keeping very low, surprising the left-hander. Batsman had no clue about that ball, misses it completely, and wicket-keeper Vishwanath Kamath collects the ball behind the stump, so no runs resulted here. Almost a Yorker length delivery there. Loud appeal for leg before the wicket by the bowler as well as by the wicket-keeper. But umpire says not out. I think it was clearly missing the leg stump. It was going down the leg side. So umpire Dinesh Acharya Kulai says not out. And they get a single here. With that single, their score now moves on to 4. And we are in the first over of the innings. 3 more balls to go of this over now. Suraj Kamath is making some change in the field placement here. Right-handed batter is on strike now. 4 men on the onside for the right-hander. And 5 on the offside. Ashwath is all set to face Suraj Kamath now. I beg your pardon, Gautam is the man on strike. On that occasion, he attempted for a switch hit, but found utter failure in playing that one. Ball went straight to the wicket-keeper's hand, and the wicket-keeper does the rest of the job. And Suraj Kamath is back to his bowling mark now. Suraj on his way to Gautam. That's a quicker delivery there. Very, very fine delivery which beats the batsman Gautam. And the ball went straight to the wicket-keeper's hand. The ball deceives the batsman, betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So no runs resulted. Score remains on 4 without any loss. Oh, it's clean bowled. That is the beauty of the delivery. Fantastic, perfect delivery there by the bowler Suraj Kamath. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. Gautam didn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. And the ball uprooting the off stump. So first wicket has gone down for Malpe United. A big blow for the team. They have lost the vital wicket of Gautam. So without making any score, Gautam is moving back to the pavilion. He has gone for duck. And Suraj Kamath has given the much required breakthrough here for his team here. Very, very successful bowler. Suraj Kamath has picked up that important wicket of Gautam. So Malpe United are now 4 with 1 wicket down after the completion of 1 over. So you are watching the match between Malpe United versus Iruvatturu Sports Club of Manipal. 2 hot favorite teams are clashing against each other. As I mentioned earlier, Malpe United had lifted the trophy last year, whereas in 2020, Iruvatturu Sports Club were the champions, and in 2019, Iruvatturu Sports Club were the runner-up team. So both the teams are very, very favorite teams. Let's see who is going to win this match here. This is going to be a nail-biting finish here. I think this match is going to be an exciting match. We can all witness a nail-biting finish match between these 2 teams. Sridhar Mendo is a new bowler. A tall man, another experienced bowler.
who has got plenty of experience of playing the GSB cricket tournaments. Sridhar Mendo. Some problem for the bowler during his bowling run up, and once again he's going back to the bowling mark here. From the Arch Pharma Labs end, Sridhar Mendo will bowl the second over of the innings, and in the right arm round the wicket fashion he will be bowling to the left-hander here. Well, the ball was going down the leg side, and batter Karthik wanted to flick the ball onto the onside. Ashwath is the man on strike, and Karthik at the non-striker's end. Score remains on 4 with 1 wicket down. The man out is Gautam for duck. Now, lot of responsibility on the two batsers now. That's a very fine delivery there. Pitching outside the off stump, the pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Wicketkeeper Vishwanath collects the ball behind the stumps and he returns the ball back to the bowler, and Sridhar Mendo is back to his bowling mark now. Sridhar Mendo is having a very good bowling high arm action. Again, similar delivery and similar result here. The batter is finding some difficulty in facing his deliveries because Sridhar Mendo is bowling in the right areas, right spot. He's bowling with such a good line at length that he's not giving any room for the batter to play here. So Ashwath will have to improvise his batting now. The meantime was Sridhar Mendo. Balls this one to Ashwath. This time the ball was going down the leg side, and umpire Raghu Kaduru says it's a wide delivery. So 1 extra run will be added to the total of team Malpe United in the form of extra run, which takes their full score to 5 now. 5 for the loss of 1 wicket. Over number 2 is in progress. It's a 7 overs match. Well, it was going down the leg side. Batsman again, Ashwath wanted to flick the ball onto the onside. Meanwhile, wicketkeeper was not able to stop that ball, and they get a single here. Single to Ashwath. Ashwath is batting on 2, and Karthik is yet to open his account now. So 6 for the loss of 1 wicket, Malpe United. We are in the second over of the innings. Sridhar Mendo is once again making some change in the field placement here for this right-handed batter. 4 men on the onside for Karthik and 5 on the offside. Well, Karthik wanted to pull the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. Direct hit there. Fortunately, the batsman was inside the crease, so well, the decision has gone to the third umpire here. This is going to be interesting. We'll have to wait and see whether the bat was inside the crease or it was in the air. So hence, third umpire Raghu Kaduru has given it to the third umpire, and third umpire will review the decision in the television screen from all different angles. So we'll come to know what would be the decision from the third umpire here. So 3 days of cricket festival here at Sahyadri College ground. Well, the third umpire decision is not out. Batsman is safe. He was inside the crease, so no damage done. A good piece of fielding there by the fielder of Iruvatturu Sports Club Manipal. It was a direct hit, but fortunately the batsman's bat was inside the crease, so no danger at all. No damage done. They get a single here. With that single, their score now moves on to 6. I beg your pardon, 7 runs. Single has been added and 7 runs on the scoreboard. Here is the next delivery, slower delivery there, beaten comprehensively. That's a bit of variation in that ball, and the batsman misses it completely. No runs resulted. Good over there by Sridhar Mendo has come to an end. At the end of first over, it was 4, and Sridhar Mendo conceded 3 runs in this over. So after 2 overs, Malpe United team has scored 7 runs for the loss of 1 wicket.
Malpe United captain, after winning the toss, he had decided to bat first. And meanwhile, Iruvatturu Sports Club bowlers are doing an excellent job. They are really restricting the batsmen of Team Malpe United in going for big hits. Suraj Kamath will again now bowl the second over of his quota. In the first over, he had conceded 4 runs. Suraj Kamath excels not only in the bowling, but also in the batting department as well. He has represented Bijapur Bulls team in the KPL Karnataka Premier League. Now he is playing for Team Iruvatturu Sports Club Manipal. He is the key player of their team, leading from the front, playing a sheet anchor role here. And now the ball is in the hands of the bowler Suraj Kamath, and Suraj Kamath is making some change in the field placement for this right-handed batter here. Let's see what kind of strategy Suraj Kamath is going to adopt here. Suraj Kamath is an icon player of Iruvatturu Sports Club of Manipal. Converted it into full toss, crashing drive to the offside. Ball is rushing towards the boundary ropes and almost very close to the boundary ropes. The fielder was able to cut it off. So 2 runs have been added to the total here. Before the fielder collects the ball, these 2 batsmen have crossed for a couple of runs. Iruvatturu Sports Club Manipal were the runner-up team of recent GSB cricket tournament held in Mulki. They were defeated by Alpha Troopers Mumbai in the final delivery of that match. Here is the next delivery, played elegantly onto the onside, all around the carpet. Didn't take any risk, and nicely played at long on. Guided the ball towards the long on region. The fielder from the long on region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman in picking up a comfortable single here. Left-hander will take the strike now. Ashwath, the left-handed batsman who is batting on 2, is ready to face Suraj, and Suraj will be coming round the wicket to Ashwath now. Karthik is batting on 4, and Ashwath is on 2. They have not found any boundaries or sixes so far. Only singles are coming. They need to exert their score. Power play is completed. Field has been spread out now. Suraj to Ashwath. Ashwath wanted to pull the ball onto the onside. Once again, not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. Timing was not good. Placement was not perfect. So he managed to pick up only a single here. Score moves on to 1-1. 11 with 1 wicket down after 2.3 overs. Suraj to Karthik. Far away from the off stump. That should be a wide. The ball pitching far away from the off stump, and batter just leaves the ball. Left the ball to go to the wicket keeper. Meanwhile, Dinesh Acharya called it as a wide delivery. That's a very good delivery, and batsman attempted for a switch hit. He goes for a reverse shot, but there is a protection, so they will get only a single here. There was no chance for going for the second run because the fielder collects the ball quickly. So they need to satisfy with only a single here. Well, he hammered the ball onto the onside. Long chase for the fielder. Will he be able to cut it off? Good piece of fielding there. Very, very good piece of fielding. He has saved a couple of runs for his team. Almost very close to the boundary ropes. He was able to stop that ball. Otherwise, the ball could have been gone for the boundary ropes here. So only 2 runs have been added to the total. With those 2 runs, the scorecard of Malpe United is now 15. He goes for a big one. There is a fielder underneath it, and it was going straight to the throats of the fielder. Unfortunately, the ball slipped away from his hands. This is a big reprieve for the batter here. Very, very lucky indeed. That was not an easy catch, because especially when you are looking at hot sun, it is difficult to judge these kinds of catches. So
The ball slipped away from his hands. He has put down that catch. Very lucky indeed, the batter. So they get 2 more runs here. So over number 3 completed after the completion of 3 overs. Malpe United are 17 with 1 wicket down. So after after winning the toss, Malpe United captain had decided to bat first here, and they were able to score 17 runs. That means they are having a run rate of exactly 5.67 per over, and I think the projected score is around 41. They need to exert their score now. 4 more overs remaining. Let's see how many more runs will come in the remaining 4 overs. Meanwhile, I request Mr. Satish to come to the commentary box to proceed the further commentary. Thank you very much, Suresh Bhaji. And slow progressing here for the defending champion so far in this 3 overs. Malpe United against Team Irattur Sports Club Manipal. 4th over. First ball, right number 1 wicket. Batsman almost drags the ball from outside the line of off stump. Tried to hit the ball down to deep long on, but not quite getting that one from the middle of the bat. But good enough for him to get the single before the fielder from deep long on to field that one. Both the batters are crossed for a easy single. 18 for the loss of 1 wicket. And disciplined bowling performance continues here from Irattur Sports Club Manipal. Just like Rishi Bhaji is mentioning about the history of these two teams in this GSB Premier League 2024. So far, Irattur team, once they become the champion in the 2020 and 2019, their runner-up, and even the team Malpe United, they came into this tournament as a defending champion. So that lot of pressure for the defending champion, because they need to defend that one. Lovely shot. This is going to be one bounce into the fence for 4 runs. So in a present cricket, this is going to be a regular cricketing stroke. Switch it. Each and every batter loves to play that one. Absolutely taking that one right from the middle of the bat and down to deep backward point boundary. 1 bounce into the fence for 4 runs. And this really surprised the bowler, the way that batsman taking his position quickly, just like a left-hand batter hitting the ball down to deep square leg in terms of a slog sweep shot, and he played it quite beautifully down to deep backward point boundary for 4 runs. So much required boundary, just breaking the shackle after that slow start. I already mentioned they need to back with some good cricketing stroke if we wanted to get some good total. I wanted to fill that one, not quite getting that one in the middle of the bat, but we need to wait for the umpire signal. No contact with the bat. Umpire Raghu Saligrama has got no hesitation to call that leg by. Ball just missed this bat. 1 more single. With that single, score moves on to 23 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Ashwin, the bowler, operation from the far end, Arch Pharma Limited. One of the big sponsor of this cricket tournament has got a 2 and Fuzilona and Arch end. Again, look like that ball is going to be a little bit missed out by the batsman. He is really frustrated. It's a full toss delivery, but line which is outside the line of off stump. We wanted to drag that one from outside the line of off stump to get that one deep squarely, because of direction of the wind is flowing to the left of the batter, so that he wanted to get that one in that region. Missed it completely. No chance of any run. Ashwin lofted it. This time he got a proper connection and he got the distance. Just looks like the fielder in the mid wicket region couldn't manage to get that one, and ball just going over the fingertips of the fielder in the deep mid wicket. Of square to run to his right. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. So Karthik getting some very important runs for his team after completion of over number 4. It's going to be a comeback over for team Malpe United. They got some runs in that over. 13 runs coming from that over. It's 31 for the loss of 1 wicket. Now current run rate is 7.75 runs per hour. At one time when Suresh Bhaji hand over the microphone to me, that time it's 17 on the board. The big over,
And 31 on the board. 31 for the loss of 1 wicket, 4 overs which is constant, and 3 overs remaining in the innings of Malpe. And wait and see how Malpe United will go to get the runs here. Nothing much wrong with that, wickets in hand. Both the batters looks like they settled down. Ashwath Pai and Karthik Yan implementing the very safe strategy, the game plan. They are very watchful in the beginning, and once they get eye in, they started to freeze their arm, especially in the previous over. Both the batsmen are getting some runs for the team. The Karthik especially is getting on a youth 6 down to mid wicket. And now left hand batter Ashwath Pai is on strike and Anand Pai is on attack. The spin bowler is in action, and passes umpire Dinesh Acharya, and bowler will go into ball the first delivery. This time it's going to be opportunity for the square leg field. Oh, drops the catch. Can you believe this? Absolutely lollipop. The opportunity of run out is also created. 2 chances in 1 ball for the batter. Karthik, and catches win the matches, which is the greatest slogan of cricket. It's no ball call by umpire. Sorry for that. We are not witnessing. 7 fielders in the onside region. 6 fielders. Thank you. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, you can't keep 6 fielders in the onside region. This is really the disaster, the absence of mind. Even though a fielder will going to take the catch, because of that no ball, batsman certainly is a safe. But the problem here for the bowler is that he need to bowl that free hit delivery. So 33 now because of that 1 + 1, 2 to the total. The free hit delivery, and wait and see how Karthik will go to capitalize this free hit delivery. Disappointment for the bowler Anand Pai because of the mistake by the captain as well as sometimes the wicket keeper, even the bowler. The 3 men are responsible for that, isn't it? First is the wicket keeper have to see where the fielder is, and second thing what captain should know, and more than anything else, it's a bowler's job to see that where the fielder is, because he need to bowl as per his field. That's all happening when there is a left and right combination. The need to change the field set every time strikes which is going to rotate it, need to change the line as well. That's what the cricket is all about. Again the bowler Anand Pai. This time too much across the line of the delivery. Almost he was standing in a 5th or 6th attempt, isn't it? He tried to get some improvising cricketing stroke, tried to get that one over the deep square leg, a short square leg fielder, but missed it completely from the bat. Again wanted to go for the reverse appeal for leg before wicket. Maybe the ball just missing the off stump, the line of the delivery. The batsman wanted to get that one as a switch it down to deep backward point region. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಿದವರು ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಎದುರು ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಎದುರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಬೈ Anand Pai in the negation. Slower one, change of pace. Whenever the bowler is bowling a slower one, the spin bowler getting some extra deviation, extra turn, and the batsman beaten by the turn of the delivery went into the hands of wicketkeeper. Score remains on 34 for the loss of 1 wicket. Again short pitch and swings that one down to deep square leg for a 6 in the flatter version. The plenty of time for the left hand batter to pick that short pitch delivery. Maybe the bowler just looking for one more delivery, which is just he wanted to try to get a little bit short length delivery, but batsman has got a plenty of time to read that slower one, pulls that one beautifully down to deep square leg for a U6, and with that 6 cover numbers on to 40 on the board. This time going to be high, and will it going to be handsome? Yes, it is high and handsome. Went into the fence for a U6. So Ashwath Pai is justifying why he is the icon player of Malpe United.
This is the reason behind that one. Nothing wrong with the line of the delivery. Have a look at that stroke. The line which is slight a bit of going away from the left-hand batter, but is almost that one from outside line of off stump. Hot hitting that one down to mid-wicket boundary for a U6. Again, chip that one right in the gap. One bounce collected by the fielder. And a very good piece of fielding by the fielder, but not good enough to stop that couple of runs here for the batter Karthik Ashwath Pai. Scoreboard now 48 for the loss of 1 wicket. One more very expensive over which is comes to an end. Slowly the Mulpai United are getting some runs after that very slow start in the first 3 overs. Check. 2 overs going to be very productive. It's GPL Utsav 2024 अंतू बोटिंग झोन तुमकां गोत शिल्वरीची आता फ्री आसा तुम्ही वचून बोटिंग झोनांत एन्जॉय करिता 6:30 ते मात्र आसता बोटिंग झोन तशें जावन तुम्ही बोटिंग झोन एन्जॉय करका म्हणून आमी निमगून घेता आसाच I once again request those who are sitting in front of LED screen, the scoreboard, please don't sit in front of that. I once again request those who are sitting in front of LED screen, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು 3 ಜನ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. This time it's going to be a leading edge of the bat. Opportunities created for the fielder, but unfortunately, ball which is landed safely between bowler and a long on fielder. The ball is in the air for a plenty of time, and one of the fielder can take this catch, isn't it? Because a lot of time for the fielder to judge that catch. It's difficult for the bowler to run back, but definitely it's going to be easy for the fielder who are standing and deep long on mid wicket to get that catch. Again the full toss lofted, but this time straight to the hands of fielder. He's not moved at all where he was standing. The ball is straight away come to his hand, and he's so happy to see that his smiling face. The batsman couldn't manage to take the advantage of that full toss delivery. Couldn't get that one right from the middle of the bat. He got the elevation but fails to get the distance, and fielder where he was standing just inches inside the boundary line completed a catch, and he's celebrating that catch as well. 50 check. for the loss of 2 wicket. बोटिंग आणि अर्ध घंटा आसा तशें जावन तुम्ही एन्जॉय करता जाल्यार आतांच थंय बोटिंग झोना लागीं वचूं येता आनी गम्मत करिता. बोटिंग झोन आनी हाफ एन आवर आसा 30 minutes ओनली तशें जावन तुम्ही वचून थंय एन्जॉय करीत. Thank you very much. The wicket keeper behind the stump completely missed that one. It's a diving effort which is gone in vain. They got a couple of valuable runs. It might be the opportunities created for the caught behind the wicket for the wicket keeper, but batter completed 2 valuable runs. Gautam Kini with that couple of runs scored moves on to 52 for the loss of 2 wicket. What a fantastic scenario of this cricket ground. Absolutely beautiful view of this Sahyadri cricket ground here in Adyar. Everyone enjoying the game of cricket. The spectators slowly gathering here and enjoying the moment. Festival atmosphere. Again drives that one straight to the hands of short extra cover. Just a single here for Ganesh K with that single scored numbers on to 53 for the loss of 3 wicket. The left hand batter is on strike. Ashwath Pai is batting on 26 after 26 in 18 deliveries. The current rate is improving each and every over. 9.35 runs per hour. The square leg fielder going back to deep square leg. There is short fine leg, deep wideish long on and mid wicket. Lovely delivery, beautifully Yorker line delivery from Sridhar. One of the most experienced campaigner, Sridhar. I'm watching him from a long time, and especially when he is performing in this GPL, and he's one of the must very good bowler as far as the economical over is concerned. They're mixing up the delivery very well. This time batsman picked up a single quite easily by pushing the ball down to short cow point region. One more over comes to an end after completion of over number 6. Team Malpe United are looking so good so far. It's 50.
54 for the loss of 2 wicket after completion of over number 6. Last over remaining in the innings of Malpe United. After this match, the match number 7 will be played between United Blasters versus Rising Star Mangalore. So that I request both the teams please get ready for the next match. Sujit got a responsibility of bowling that last over. They need to restrict the runs because already 54 on the board. So far in this particular tournament, the 60-65 runs is definitely going to be a dependable total. And at the same time, Iruvattur Sports Club, they're chasing with a condition which is not good enough for the bowler, batsmen. So outside the line of leg stump, going to be a wide, punishable from the umpire, not from the batter, because of that line which is going outside the line of leg stump. Little margin for error, and that's what bowler just asking question over the umpire. Umpire saying that yes, very close to the stump, but ball going away, little bit away, so that it's going to be wide. Right arm over the wicket bounce. This time he lofted, all lofted, that one handsomely down to deep square leg boundary for a 1 more 6. After the batsman is settled down in the middle, have a look at that way that getting some acceleration in the run rate. This has been an outstanding comeback here by the United Malpe. First 3 overs belongs to the fielding team, and remaining we can see that batsmen are dominating. This is not a kind of line to ball to the settled batsman, isn't it? Ball is in the slot and batsman quite easily off the toes flicks that one beautifully down to deep square leg boundary for a 6. 61 for the loss of 2 wicket. Sujit balls again. It's going to be a slight bit of misjudgment by the batsman. He thought it might be a wide. This is a line it's actually need to ball. So whenever you need to see that where the direction of the wind is flowing, when the direction of the wind is flowing in the onside region, definitely it's going to be asking for trouble if you try to ball some ball around midland leg stump. This time, driven that one obviously straight down the ground, as straight as an arrow, before the fielder from deep long on to come across to return the ball. Very good throw coming from the fielder, but not good enough to stop the couple of runs, and the wicketkeeper fails to collect the ball. It's a very good throw coming from the fielder, because as far the dimension of this cricket ground is concerned, it's going to be a long way to go for Karthik Kamath to return the ball to the strikers end. A very good throw in, but bowler wicketkeeper fails to collect the throw from the fielder. 63 for the loss of 2 wicket. Again, the ball's lofted. Opportunities created for Kamath to take the catch, and is the safest pair of hands. No way to missing that opportunity, the golden opportunity to take the catch. This is going to be a huge wicket taken by Sujit. Ashwath Pai is back into pavilion, but before you back into pavilion, he did all the damages he wanted to do from his bat. GPL उत्सव 2024 अंतु आज रात्री 7:30 घंट्याक बोटिंग झोन लगी नियॉन नाइट डीजे पार्टी जावचार आसा. डीजे किरण कामत मुंबई दोन आमगेलो टू जॉइन जाता, तशें जावन तें डीजे पार्टीक तुम्ही पूर्ण जणांनी येवक म्हणपास आमी स्वागत करता. आसाची आमगेल मर्चेंडायज स्टोर अंतु नियॉन एक्सेसरीज तशीची टी शर्ट्स दवरलेले आसा. तुम्ही थंय दोन परचेज कर न्हू. डीजे नाइट अंतु भाग घेवीत. थँक यू. Thank you for all the information. 63 for the loss of 3 wicket. Last 2 deliveries remaining in the innings of United. This is going to be that's going to be a wide. Umpire just wanted to see that whether the ball is pitched outside the line of the pitch, because as per the new rules and regulation of the cricket is concerned, if the ball pitches outside the line of the pitch, then it's going to be no ball. That's why umpire taking his own time and given that wide. 64 on the board. Again, lovely delivery, beautifully ball, perfect one. A very good delivery to ball to the pressed leg. Varun Kinney is a new batter, so this is a right line to ball to the new batter, and just a dotted delivery. Good comeback here by the bowler. So last delivery will going to start from the commentary box end. Varun Kinney.
This time lofted, straight down the ground, but not more than a couple of runs, I think so. Yes, it is a couple of runs. Then they finished their innings with 60. 66 they scored and they set a target of 67 to win this match. So 7 overs which is comes to an end, and of course very interesting to see that Malpe United started slowly, progressed little bit highly and finished lovely because of that the finishing touch which is given by the two batters, and especially the batsman Ashwath as well as Karthik. Really they're getting some acceleration each and every over, getting some more and more runs, and they set a target of 67 and they 66 in fact, and they set a target of 67 to win the match for team Irvatturu Sports Club Manipal. And before the innings will going to start, it's going to be a huge total to chase down, I think so, because just coming to that why it is going to be a huge total, I just wanted to comment with the Ajay Raj 66 is the total score, 667 which is going to be a GPL उत्सव 2024 अंतू आज रात्री 7:30 घंट्याक निऑन नाईट डीजे पार्टी जावचार आसा. तुम्ही भाग्यवीत हंतू बोटिंग झोन अलग यश तसल एक एरिया अंतू हेंचता तुमका निऑन एक्सेसरीज जावक जाल्यारी आमगेले मर्चेंडाइज स्टोर्स अंतू टी शर्ट तशीची विंगड निऑन एक्सेसरीज मेळटा ते घेवन तुम्ही निऑन पार्टीक 7:30 घंट्याक जॉइन जावक म्हणून आमी निमगून घेता सची बॉलिवूड मॅशअप डीजे किरण कामत आमगेलो टू 7:30 घंट्याक जॉइन जावचार आसाची तशी तुमकां पूरा जनके मय मोगान स्वागत करता सच. Thank you. And yes, Ajay Raj sir, just seeing that total score of 67, and I think it's going to be a difficult one. The reason behind that, the तशी आमगेलो टू आमगेले फूड कोर्टाचे स्पॉन्सर म्हणून सांगा अरुणा मसालाचे अनंतेश प्रभू अण्णा आमगेलो टसाची हांका कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन तशीची यूथ ऑफ GSB तर्फेन हार्दिक स्वागत सांगून आमगेल मोगान दिवची तसल मेमेंटो तुम्ही स्वीकार करका म्हणून आमी निमगून घेता तसाची विशेष कसन म्हळ्यार ह्या वर्साचे मेमेंटो अयोध्ये राम मंदिर कशस्की ताजे एक सनाची कलाकृती दिवची तसल प्रयत्न आमी केलेलो आसा. मोगान तुम्ही घेवन वर्स अशीची GPL उत्सवाक सपोर्ट करका म्हणून आमी निमगून घेता तसाची. well, thank you. And Ajay Raj, over to you. Malpe United, being the defending champion, they played like a champion because the way that they're getting some acceleration of run rate after that started very slowly but progressed very well and finished very well. And because of that, the little bit problem here for Irvatturu is that they need to get to 67. I'm not saying that 67 is that much of difficult to chase down, but I'm just thinking about in this condition where it was evening exactly 6:10. The wind factor definitely going to be a big factor in this particular match because they are not getting that much of wind what Malpe United has got. That's why their captain, after winning the toss, they elected to bat first. The first captain in this day number 1, after winning the toss, elected to bat first. The reason behind the wind factor as well as the light factor. I request for the next match, 2 captains please be reported here immediately. The captain of ODP Blasters as well as the Rising Star Mangalore, please be reported here immediately for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದರ್ಶ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮಗೆಲೋ ಟು SS नायक सर SS नायक सर असाची दय करून तुम्ही वेदिके वयर येवका म्हणून आमी निमगून घेता असाची तुमगेल सहकार आमकां मस्त रितीर आसा तशें जावन तुम्ही वेदिके वयर येवन जॉइन जावका म्हणून आमी निमगून घेता असाची. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी. किरण, कैन आई स्टार्ट? मुझे लगता है कि बीच में किरण जी आए हैं.
तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अपने काम को कर रहे हैं। आइए स्वागत है दोबारा इस शानदार जीपीएल 2024 में तमाम दर्शकों का। और बहुत महत्वपूर्ण बातें सतीश जी ने कही कि टॉस जीतकर पहला ऐसा कैप्टन जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, और पिच का मिजाज पढ़ने वाले जानते हैं कि आखिर क्या करना होगा। इस पिच की खासियत यह है इस मैदान की कि शाम के पश्चात परिस्थितियां बदल जाती हैं। जिस तरह से सवेरे से शाम तक जो मैच जो पिच अच्छा खेलता है बल्लेबाजों के लिए, वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है शाम के पश्चात। और इस बात को भली भांति जानते हैं मलपे यूनाइटेड टीम के कैप्टन, क्योंकि वो पूर्व में चैंपियन रह चुके हैं और इस वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन अभी भी मैं कुछ पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी समय है। शुरुआत मैंडेटरी पावर प्ले में अगर बात बन जाए तो बात बनेगी। इस छोर से पहली गेंद दूसरी पारी की राउंड विकेट, ये गेंद फ्रंट फुट पर, गेंद को क्या शानदार फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक है और इस बार रनआउट के लिए अपील कर रहे हैं। इस अपील को नकार दिया साफ साफ राघु ब्रह्मावर्जी ने, जो स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। एक रन पूरा हुआ। पहली गेंद दूसरी पारी की, जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत रिलैक्स दौड़ लगाते हैं गेंदबाज। उनकी गेंद राउंड विकेट थी और ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लेंथ में ज्यादा, फॉरवर्ड डिफेंसिव अंदाज में गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया बैट्समैन ने, एक रन चुरा लिया। विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गिरीश ने एक रन चुराकर जिम्मेदारी विश्वनाथ पर सौंपी है। गणेश गेंद को लेकर तैयार, राउंड विकेट, गणेश की गेंद, ये गेंद और कैच हो सकता था, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गई। बहुत अच्छा मौका हो सकता था। गणेश की गेंद बैट्समैन को मजबूर कर गई कि वो इस गेंद को खेलें, थोड़ा सा बल्ले को लगा दें। वो ललचा गए और धीरे से गेंद को कट करने के प्रयास में बल्ले को चूम कर गेंद निकल गई, विकेट कीपर के हाथ में आते आते रह गई। उनके हाथ से गेंद छूट गई और बैट्समैन को जीवनदान मिला। क्या बात है। फजल एंड से ये गेंद जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील को दिनेश जी अपने अनुभव को जोड़कर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से खारिज करेंगे। और बहुत ज्यादा बाहर थी लाइन और फिर अंदर की तरफ आई, तो दिनेश जी ने साफ साफ नकार दिया इस अपील को। लेग बाई का संकेत किया तो एक रन खाते में। इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर 3 पर पहुंच चुका है बगैर किसी क्षति के आघात के। गणेश दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विश्वनाथ एक रन बना चुके हैं। CA SS नायक सरसाची देखोरून तुम्ही वेदिकेवेर येवका म्हणून निमगून घेतसा तशेंच आमगेलो नरेश प्रभू देखोरून येवन तांकां एक मेमेंट दिवन धन्यवाद सांगता म्हणून आमी निमगून घेत तशी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 रन कुल मिलाकर विश्वनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी, माफ कीजिएगा। और इस छोर से यह गेंद, गणेश की गेंद, राउंड विकेट। इस बार पुल कर दिया गेंद को, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद और उसको बल्ले का निचला सिरा देकर बहुत ज्यादा बाहर निकल गए, थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच किया और पुल कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ और एक रन खाते में जोड़ लिया। कुल मिलाकर 5 रन बन चुके हैं। सूरज डूबने की ओर बढ़ रहा है और फ्लड लाइट की रोशनी जल रही है। शानदार शाम का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। राउंड विकेट इस छोर से गेंद और इस बार विश्वनाथ ने गेंद को धीरे से ऑफ ऑन साइड की दिशा में स्कोर ऑफ द विकेट धीरे से पुश पर कर दिया। 1 रन खाते में। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स कुल मिलाकर 6 पर बगैर किसी नुकसान के आघात के। समय आपको बता दें, टाइम शाम के शानदार 6 बज चुके हैं। धीरे धीरे अब सूरज डूबेगा और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से धरती पर चांद उगाता है। वह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एडयार सह्याद्री महाविद्यालय का ये मैदान आपको चांद की तरह दिखाई पड़ेगा। नेत्रावती का छोर, दूर दूर घने पेड़ और वो तमाम दर्शक जो जीपीएल को हमेशा सराहते हैं, उसको योगदान देते हैं, अपने तरफ से सहयोग करते हैं। यहाँ पर आकर उनकी दिलचस्पी जो देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर दर्शक न हो तो निश्चित कोई भी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला उतना कारगर साबित नहीं होती है। आज रात्री 7:30 घंट्याक नियॉन नाइट डीजे पार्टी बोटिंग सोन अलग जाता। तुमको पूरा चनाक पास मी मोगान स्वागत करता सची मुंबईचे फेमस बॉलीवुड मॅशअप डीजे किरण कामत आमगेलोटू जॉइन जाताची बोटिंग सोलानगी तुम्ही येवका म्हणून सांगून आमी रिक्वेस्ट करता सच।
हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता था लेकिन बच गया। रनआउट का मौका एक और बार हो सकता है। दिनेश जी ने संकेत किया कि तीसरी आंख यहां पर काम आएगी और तीसरे अंपायर की तरफ उन्होंने संकेत किया कि क्या होगा, देखने वाली बात है। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हमारे तीसरे अंपायर। बहुत नजदीकी मामला है, वरना दिनेश जी ही आसानी से तीसरे अंपायर की तरफ संकेत नहीं करते हैं। उन्होंने संकेत किया तो अब देखने वाली बात है कि बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या नहीं। अगर उसके अलावा देखा जाए, जिस तरह से बैट्समैन ने गेंद को ऊंचा खेल दिया था, बल्ले का निचला सिरा लगी, हवा में कुछ ज्यादा ऊंची उठी और फील्डर जो गेंद के नीचे आ रहे थे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसल गए, उनके हाथ से गेंद छूट गई और बैट्समैन को जीवन दान मिला। लेकिन वहीं पर परिस्थितियां बदल गई, रनआउट का मौका बन गया। अब देखना यह है कि क्या बैट्समैन क्रीज में पहुंच गया या नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट 10.17 का चल रहा है। और आउट का संकेत किया है अंपायर ने। क्या बात है, तीसरे अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो चुके हैं। इसी के साथ बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है। उडुपी ब्लास्टर्स और राइजिंग स्टार्स मैंगलोर। देखिए बड़ा आश्चर्य है, 2-3 बार कॉल दिया गया है उडुपी ब्लास्टर्स और राइजिंग स्टार्स के कैप्टन को। वो जल्दी टॉस के लिए आइएगा प्लीज, जल्दी थोड़ा जल्दी करें कृपया, आपसे अनुरोध करते हैं। टॉस के लिए बड़े मंच की ओर आए दोनों टीमों के कैप्टन। तो आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से रनआउट करने का जो प्रयास किया था विकेट कीपर ने, और बहुत जल्दी, इससे पहले के बल्ले को क्रीज के दिशा में पहुंचा पाते, बहुत जल्दी गिल्लियों को, स्टंप्स को उड़ा दिया विकेट कीपर ने। और इसी के साथ बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है। इस वक्त श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दूर वाले छोर से आज फार्मा एंड से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार। कार्तिक की गेंद बड़ी लंबी दौड़ के साथ वो दौड़ना शुरू कर चुके हैं। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा शरीर से दूर गेंद को ढकेलने के लिए कट करने का प्रयास किया, बल्ले से लगी और स्लिप में फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़े थे। जब तक वो गेंद को संभाल पाते, दोनों बैट्समैन तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर, माफ कीजिएगा, 1 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कृत्रिम रोशनी मैदान पर फैल चुकी है, शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि दूर छोर पर आपको सूरज भी चमकता हुआ दिखाई पड़े और कृत्रिम रोशनी, फ्लड लाइट भी एक साथ? ऐसा कभी शायद देखने को मिला हो। उस छोर से गार्ड को बदलकर अब ओवर द विकेट गेंदबाज कर रहे हैं कार्तिक। आउट विकेट है। उस छोर से ये गेंद फ्रंट फुट पर गेंद को धीरे से कट बार कर दिया बैट्समैन ने। अच्छा स्ट्रोक था, बड़ी अच्छी योजना के साथ फॉरवर्ड डिफेंसिव का अंदाज था, उसमें कलाइयों का धीरे से प्रयोग किया, गेंद को धीरे से कट कर दिया। बहुत अच्छी तकनीक के साथ गेंद को खेल दिया। गिरीश ने अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। कार्तिक जब भी दाहिने हाथ का बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर आता है वो राउंड विकेट करते हैं, और जब भी बाएं हाथ का बैट्समैन आता है उसके लिए वो ओवर द विकेट करते हैं। उस छोर से गेंद, कार्तिक तैयार हुए, दौड़ना शुरू किया, राउंड विकेट उनकी गेंद। इस बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में श्रीनिवास ने पुश भर कर दिया। 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इसी के साथ रन्स बढ़कर 10 पर पहुंच चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, 67 रनों का 67 का टारगेट है, और सिंगल सी बनाते रहें तो ओवर निकलता जाएगा और फिर परेशानियों का सबब बन सकता है। राउंड विकेट अब बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। क्या होगा, क्या आक्रामक स्ट्रोक्स लगेंगे? दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। आर्चा फार्म एंड से गेंद को लेकर, इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा में गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे, झोली को आगे कर दिया और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए। नागेंद्र ने शानदार कैच लपक लिया और डगआउट में दूर तालियां बज रही हैं। क्या शानदार कैच है, एक बहुत बहुमूल्य विकेट। इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे GPL 2024।
तरीका आपके कैच करने का अच्छा हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन कैच को अपने हथेलियों में कैद करना यह बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस विकेट के साथ ही दबाव बढ़ता हुआ दूसरा विकेट गिर चुका है। और जैसा आपको बता चुका हूं मैं कि मलपे यूनाइटेड जो कि पूर्व में चैंपियन रह चुके हैं, पिछले साल वो चैंपियन रहे हैं, तो वो नशा, वो अभी भी नशा उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है। और वो नशा एक अलग नशा होता है कि आप पहले चैंपियन बन चुके हो, आगे भी बन सकते हो। उस नशे को अभी भी बरकरार रखते, वो जुनून अभी भी देखने को मिल रहा है। टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय कप्तान का बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि परिस्थितियों को जानते हैं, बड़ा लक्ष्य उन्होंने बनाया और शानदार गेंदबाज काम पर लगा लिए। उस छोर से आर्चर फ्रंट से ये गेंद, और इस बार गेंद को ऑन साइड की दिशा में थोड़ा सा लपेट कर तिरछा खेल दिया। फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, फ्लैट शॉट था, थोड़ा सा पीछे रह गया फील्डर जब तक वो गेंद को समेट पाते। बैट्समैन के पास समय था कि वो तेज कदमों के साथ रन को पूरा करें। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 11, 2 विकेटों के नुकसान पर 11 for 2, यानी कि अभी और 5 ओवर्स शेष बचे हुए हैं। 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों का खेल अभी शेष बचा हुआ है। और 30 गेंदों में मुझे लगता है कि लगभग 56 रनों की दरकार है। 56 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 30 बॉल्स, यानी कि लगभग 26 का फासला दिखाई पड़ता है। और ऐसे में जी हां, 11.20 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 11.20 का रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट जो कि इस वक्त चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? इरवतुर स्पोर्ट्स का मणिपाल जो कि प्रयास कर रहा है। 2 बैट्समैन इस वक्त जूझ रहे हैं परिस्थितियों से, लेकिन बात नहीं बन रही है। जब तक चौका छक्का न लगेगा बात नहीं बनेगी। शाम के पश्चात इतना आसान नहीं होता है कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा जाए। पिच का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि शाम के बाद थोड़ा सा पिच धीमा खेलती है और इस वजह से बैट्समैनों को काफी परेशानी हो जाती है। ऐसे में क्या योजनाबंदी देखने वाली बात होगी। इस छोर से गेंद को लेकर नया ताजा ओवर लेकर अश्वत्थ पई आ रहे हैं आक्रमण पर, फजल होना एंड से, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर अश्विन स्ट्राइक एंड पर तैयार हो चुके हैं। क्या योजना के साथ अश्वत्थ गेंदबाजी करेंगे, अश्विन को देखने वाली बात होगी। फील्डिंग में थोड़ा हल्का सा परिवर्तन, ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी तैनात है। और विकेट, ये गेंद हवा में, गेंद को उछाल दिया, हवा में तैरती हुई गेंद हाथों में, हथेलियों में कैद कर ली गई। इसके साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। नागेंद्र ने बहुत खूबसूरत कैच लपक लिया। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। दूर आकाश में पंछियों का झुंड बिल्कुल घोंसलों की ओर बढ़ रहा है। शाम हो चुकी है, सब अपने घोंसलों की ओर बढ़ रहे हैं। और सह्याद्री के मैदान पर अगर कहा जाए, ये भी एक घोंसला ही कहिए, क्रिकेट का घोंसला है। और यहां पर दर्शकों की तादाद, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। शाम के इस शानदार वातावरण में, फिर रात में, जी हां, फ्लडलाइट की रोशनी में, जो कृत्रिम रोशनी जिसे कहा जाता है, उसकी रोशनी में खेल का मजा ही कुछ और हो जाता है। इस बीच गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। नागेश पई स्ट्राइक एंड पर। अश्वत्थ ने 1 विकेट प्राप्त कर लिया इस ओवर में और बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, वो 2 विकेट इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने वाले छोर पर नागेश पई, खुजल एंड से ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा खड़े खड़े पीछा करने का प्रयास किया, मिस कर गए। और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करते थोड़ी सी यहां निकाली, लेकिन इसका असर दिनेश जी पर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं गेंद और बल्ले के बीच में काफी फासला था। और इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद अश्वत्थ भाई, इस बार परिवर्तन के तौर पर स्टंप्स के सीध पर थी, मिडल लेग स्टंप की लाइन पर, लेंथ को ज्यादा किया इस बार अश्वत्थ ने। बड़ी योजना के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। उसको देखते हुए बैट्समैन ने पैर और बल्ले को साथ में ले आते हुए गेंद को धीरे से पुश भर कर दिया। 1 रन चुराने का समय और इससे के साथ रन बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। कैमरामैन अगर तैयार हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दूर आकाश में पंछियों का झुंड जा रहा है और क्या शानदार दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ सिर्फ जीएसबी प्रीमियर लीग में चलता है।
इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद अश्वथ तैयार हुए, फजल और एंड से उनकी गेंद इस बार मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, रन आउट का मौका शायद बन जाए, जी नहीं, गिल्लियां चमकीली उड़ गई लेकिन बैट्समैन क्रीज को पार कर गए, एक रन पूरा कर लिया और इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर 13 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 13 for 3। और आज सतीश जी भी यही बात का जिक्र कर रहे थे और मैंने भी देखा कि लगभग 2-3 बार स्टंप्स पर गेंद गिरने के बावजूद गिल्लियां नहीं उड़ी। और आइए पहले इस गेंद पर आते हैं, अश्वथ गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, ओ द विकेट, ये गेंद बैकफुट पर गए, थोड़ा सा पीछे हटे, माफ कीजिएगा, गेंद को कट किया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी, एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, इस एक रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 14 for 3। तो गिल्लियां जब नहीं उड़ी तो मजाक में सही कहा गया कि हम कहीं फेविकॉल से चिपकी तो नहीं है, लेकिन फिर उसको विवरण से बता दिया दिनेश जी ने कि आखिर गेंद जो है काफी हल्की है, बेल्स काफी वजनदार। इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, पीछे हटे, गेंद को धीरे से कट भर कर दिया बैट्समैन ने, एक रन के साथ ही कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तो कुल 3 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज ऑन 15 for 3। शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है, सूरज धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ता हुआ, शाम का शानदार प्रहर है, दर्शकों का आना जाना लगा है, उसके अलावा धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। फुट काउंटर में अगर कहा जाए तो आज सवेरे से भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि कर्नाटक में एकमात्र है एक ऐसी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला जिसको GSB प्रीमियर लीग कहते हैं, उसमें 3 दिनों में जो हॉस्पिटैलिटी रहती है वो कहा नहीं जा सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं शब्दों को ढूंढना होगा, क्योंकि 3 दिन में लगातार सवेरे से रात तक फूड काउंटर ओपन रहता है और सभी परिवार आकर भोजन के साथ सब कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद यहां पर आकर विराज कर इत्मीनान के साथ मैच का आनंद उठाते हैं। आइए चौथे ओवर की ओर बढ़ते हैं। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दूर वाली छोर से आर्च फार्मा एंड से नए गेंदबाज का आक्रमण। कार्तिक अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन श्रीनिवास तैयार हो रहे हैं। श्रीनिवास कद में काफी लंबे हैं, सशक्त लगते हैं, बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन आक्रामक स्ट्रोक्स जिसकी उम्मीद की जा रही है वो नहीं लग रही है। उस छोर से गेंद राउंड विकेट, ये गेंद और उछालने का प्रयास, पैरों से टकराई, जोरदार अपील की गई। राघु ब्रह्मावर जी ने कहा कि लेग बाई है और बातों बातों में भूल ही गया। राघु जी ने कहा था कि क्रीज की रेखाएं जो मिट गई हैं उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें और ग्राउंड्समैन अगर हो तो थोड़ा सा ध्यान दें, जो पॉपिंग क्रीज है उसकी रेखाओं को थोड़ा सा वो जाकर दोबारा खींचें, दुरुस्त करें ताकि अंपायरों को कोई परेशानी न हो। बहरहाल इस ओवर की अगली गेंद को लेकर कार्तिक तैयार हो रहे हैं। 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नेत्रावती छोर से आज फार्मा एंड से कार्तिक एक और तीर को लेकर तैयार हुए। राउंड विकेट, ये गेंद विकेट कीपर ने क्या कमाल दिखाया है और बैट्समैन शायद बच गए हैं। जिस तरह से गेंद को खेलने के लिए विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलना चाहते थे, एक बहुत अच्छे एथलीट की तरह विकेट कीपर ने कलाबाजी खाई अपने बाईं और गेंद को रोका। ऐसा लगा कि शायद बल्ले से लगी थी, लेकिन ऐसा शायद नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, समेट लिया। दोबारा कार्तिक गेंद को लेकर लंबे बॉलिंग मार्क से तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी तैनात दिखाई पड़ रहे हैं, 3 खिलाड़ी माफ कीजिएगा। राउंड विकेट उस छोर से यह गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया, गेंद को फील्डर वहां पर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। कमाल का कैच, इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन और इस बेहतरीन विकेट के प्रायोजक थे GPL 2024। कार्तिक की गेंद और अपने गेंदबाजी में उसी के अनुकूल क्षेत्ररक्षण का फैलाव, ये बड़ी बात होती है कप्तान और गेंदबाज के बीच में जो तालमेल चल रहा है। रिप्ले में देखा जा सकता है कि गेंद को किस तरह से लेंथ में ज्यादा कर दिया और बैट्समैन को मजबूर किया कि वो लॉफ्ट करें, गेंद को हाफ वॉली पर लिया, गेंद को ऑन साइड पर वाइडिश मिडॉन क्षेत्र में लॉफ्ट किया था। फील्डर वहां पर तैनात थे, बस इसी के लिए यही जाल बिछा रखा था गेंदबाज ने और वहां पर वो कैच कर दिया गया। तो इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन, जबकि उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं।
क्या जबरदस्त कैप्चर कर रहे हैं, कैमरामैन को हैट्स ऑफ कहना होगा। रिप्ले में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। आज फॉरमैन से इस ओवर की अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, ग्लांस किया गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ, बिल्कुल प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह देखने को मिला। उछाल था, उस उछाल का फायदा उठा लिया, धीरे से गेंद को ग्लांस किया, 1 रन खाते में। और एक और पंछियों का झुंड घोंसलों की ओर बढ़ता हुआ शानदार दृश्य है। कैमरामैन अगर तैयार हो तो उसे भी कैप्चर करें। बहरहाल उस छोर से आज फॉरमैन से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। और जी हां, क्या बात है, कैमरामैन 7-9 के बिल्कुल तैयार हैं, हर उस शानदार दृश्य को कैप्चर करते हैं जो जीपीएल को 4 चांद लगा सकता है। एक और गेंद हवा में खेल दिया, इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है, लेकिन क्या जादूगर खड़ा है वहां पर। अद्भुत अनोखा दृश्य देखने को मिला। संभावित छक्के को फील्डर ने हवा में तैर कर गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया है, लेकिन राघु जी इस वक्त आश्वस्त होना चाहते हैं। उन्होंने संकेत किया कि तीसरा एम्पायर थोड़ा सा एक्शन में आ जाए तो देखकर बताएं कि क्या यह छक्का है या नहीं। लेकिन इस फील्डर को मैं कहूंगा कि जबरदस्त फील्डिंग के लिए एक बड़ा अवार्ड देना चाहिए। क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण उन्होंने किया है, बिल्कुल उस पंछी की तरह हवा में उड़कर मानो पैर में स्प्रिंग लगा हो, गेंद को अंदर की तरफ उन्होंने पुश किया और गेंद जो बाहर की तरफ 6 के लिए जा रही थी वो अंदर की तरफ गिर गई और अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि वो थोड़ा सा देख लें। तीसरे अंपायर की ओर उन्होंने संकेत किया कि ये छक्का है या नहीं। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। अंपायर इस वक्त जो कि मुआयना कर रहे हैं और क्या अंदर से गेंद को रोका गया या फिर बाहर जाकर हवा में कूद गए, ये जो कि सवाल इस वक्त बनता है और इसी वजह से अंपायर उसको देख रहे हैं। कैमरामैन दूर दूर हर उस दर्शक को कैप्चर कर रहे हैं, क्या बात है। और तो जिस तरह से जो दर्शक दूर दूर बैठे हुए हैं अपने सपनों में खोए हुए, उनको भी वो कैप्चर कर रहे हैं। तो इस वजह से कहना होगा कि बड़ी उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। क्या बात है, हर एक काम जो कि 100% करें, यही बात बनती है अगर क्रिकेट श्रृंखला को एक बड़े स्तर पर तक पहुंचाना है। तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। सारे फील्डर्स जो कि इस वक्त रुके हैं, बैट्समैन भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। दोनों अंपायरों का भी दृश्य देखने को अच्छा दिख रहा है। राघु जी थोड़े कद में छोटे हैं और दिनेश आचार्य लंबे कद काठी वाले हैं। दोनों आपस में मस्ती मजाक में डूबे हुए हैं और पिच बिल्कुल खामोश बेजान सा पड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब नतीजा निकलेगा और कब ये रोमांच बढ़ने को अपनी ओर बढ़ेगा। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट आपको बता दें 16 का चल रहा है, हालांकि दरकार है, जरूरत है। इस वक्त करंट रन रेट जो है 4.54 का 6-4 का चलता हुआ। श्रीनिवास 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया और श्रीधर 1 गेंद का सामना करने के पश्चात 1 रन बना चुके हैं। और इस वक्त जो कि मल्पे यूनाइटेड बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाकर जीत की ओर अग्रसर है। इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल को चाहिए, इन दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि वो आक्रामक स्ट्रोक्स लगाएं, परिस्थितियां क्यों न खिलाफ चल रही हो, लेकिन जब आपके अंदर जीतने का जज्बा होता है तो बात बनती है। उसके लिए शॉट सिलेक्शन, आपका उत्साह, आपका जोश और वो जीतने का जज्बा जिसे कहते हैं, तीनों का साथ में बन जाए और एकाग्रता बहुत जरूरी है, तब बात बनेगी। इस वक्त जो कि दबाव की स्थिति में इरवत्तूर चलता हुआ, खेल रुका हुआ है। अंपायर पूरी तरह से जांच करना चाहते हैं, उसके पश्चात वो निर्णय लेंगे। फ्लडलाइट की रोशनी पूरी तरह से जली हुई है और कृत्रिम रोशनी मैदान पर फैली हुई है। धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा छाएगा आपको धरती पर चांद उगाया हुआ दृश्य देखने को मिलेगा। तो इस साल जैसा आपने देखा, एक साल में मुझे याद है, अगर मैं गलत न हूं तो घुड़सवार भी लाए गए थे और
पैरासेलिंग भी था और इस साल में कई बच्चों के लिए भी और अलग अलग चीज़ों को मंगाया गया है। तो उस सोच को, उस दिमाग को हैट्स ऑफ कहना होगा नरेश शनय, नरेश प्रभु और चेतन जी को कि कहाँ कहाँ से वो सोचकर कुछ अलग बनाने का जो उनका प्रयास होता है वो सफल हो जाते हैं हर साल। और दिमाग जो है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। कुछ नया सोचकर नया बनाने का उनका प्रयास, और इसी वजह से हर साल जीपीएल कामयाब क्रिकेट श्रृंखला कहलाई जाती है और देश विदेशों में चर्चा में आ जाती है। इस बीच खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, सारे फील्डर्स इस वक्त मौन व्रत धारण करते हुए क्रीज पर, दोनों अंपायर भी इंतजार कर रहे हैं कब ये इंतजार का खत्म होगा और बातों बातों में इंतजार का फल मीठा होता है। 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जीपीएल उत्सव 2024 चल रहा है। आइए रोमांच को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उनके लिए वीआईपीज के लिए अलग से बड़ा स्टैंड बनाया गया है। उसके अलावा दूर दूर आपको बड़े बड़े डगआउट्स जो कि हर टीम के लिए बनाए गए हैं, एलईडी स्क्रीन्स देखने को मिल रहे हैं और कैमरामैन्स के लिए अलग जगह पर जो कि बड़े ऊंचे स्थान पर बैठकर वो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास काबिले तारीफ है। अंपायर ने कहा कि 6 रन। तो अंपायर ने कहा कि जबरदस्त छक्का है और इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे जीपीएल 2024। बैट्समैन का विश्वास बढ़ गया इस जबरदस्त छक्के के साथ। चांद दिखाई पड़ रहा है, कैमरामैन ने एक बार चांद को दिखा दिया। क्या बात है, उस छोर से आर्चर फॉर्मेट से गेंद को लेकर कार्तिक तैयार हुए। श्रीनिवास ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। क्या एक आध स्ट्रोक वो लगा पाएंगे? राउंड विकेट, एक और बार गेंद को हवा में खेल दिया उन्होंने और दूसरी बार उसी फील्डर ने कुछ चमत्कार कर दिखाया, अंदर की तरफ ढकेल दिया है। लेकिन क्या इस बार अंपायर दोबारा संकेत करेंगे? रनआउट का मौका शायद बन जाए। जी नहीं, और अंपायर ने कहा है कि ये तो अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, यानी कि छक्का नहीं है। राघु ब्रह्मावर जी ने आश्वस्त होकर संकेत किया कि सिर्फ 1 रन बटोर लिया गया। जी हां, क्या बात है। 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आप देख रहे हैं जीपीएल 2024। अभी रनों को अगर देखा जाए 14.33 का रिक्वायर रन रेट है और बैट्समैन क्या इन रनों को कवर कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। 3 ओवर शेष बचे हैं। (43 रन्स टू गेट इन 18 बॉल्स। 43 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं। दिलचस्प होगा या नहीं समय बताएगा, क्योंकि इस वक्त गेंदों और रनों के बीच में बड़ा फासला। आगे का विवरण सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं सतीश जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। Thank you very much, Ajay Raji. And chasing a huge total of 67 to win the match. Still, team Irotturu Sports Club are struggling in the middle in the form of required run rate is concerned. Asking run rate is almost now climbing up for 16 plus. It's going to be a very difficult task, especially when coming to the condition what I earlier said, that it's going to be a different ball game. While playing in the natural light is a different, while playing in the artificial light, definitely it's going to be a different ball game. Ball which is not coming to the bat, at the same time wind factor is going to play a big role in the result of the match. Again, wanted to get that one as a switch it, batsman wanted to go for the switch it, missed it completely because of that line which is cleverly bowled by the bowler. Seeing the batsman going for the free meditated switch it, just cleverly changed the line which is bowled outside the line of leg stump, and very difficult for the batter to get that one into deep backward point region, but he picked up a single down to short square leg region. 26 for the loss of 4 wicket. Varun Kinney bowling away from us. Right arm over wicket. This time too clever in that occasion. Seeing that batsman this particular delivery, the batsman again Srinivas wanted to go for the switch it.
This time bowler bowled far outside the line of leg stump and white signal by umpire. With that extra scoreboard numbers on to 27 for the loss of 4 wicket. Long way to go for the team. Irvattur if they wanted to win the match against the defending champion Malpe United. Varun. Boss this time swings that one beautifully. Absolutely perfect improvising cricketing stroke coming from the blade of Srinivas. These kind of brave and gutsy batting which is required in the early stage of the innings for the team Irvattur, but it's of opportunities there for them to back in the game. They needed such kind of cricketing stroke regularly in the remaining deliveries if they wanted to win this match. Scoreboard jumps into 33 for the loss of 4 wickets. This time Srinivas just shuffled across the line of the delivery. Beautifully played that one. Absolutely perfect connection. And he got the distance in the flatter version down to deep square leg for a 6. So fuzzle on a 6 which is came from the bat of Srinivas. Once again try to repeat that one. Just defeating that short fine leg fielder. Looks like the ball which is a little bit has got a bat onto that. Otherwise opportunities created for Srinivas to get one more big shot down to deep fine leg or deep square leg. No one fielder there in the deep in the square leg or in the deep in the fine leg. So that's the golden opportunity which is missed out by Srinivas. Scoreboard numbers on to 34 for the loss of 4 wicket. 67 is the target. 33 more runs required for the victory. Varun again bowls. Again looking for the improvising cricketing stroke. He's lost his balance. Opportunity to run out in the non-strikers and but throw a little bit wider from the wicket keeper, and the batsman survived. This time Sridhar wanted to get that same cricketing stroke what Srinivas is played, but the bowler is too clever, just following the batter, not really providing the opportunity to freeze his arm. Varun, last time in this over. Left a ball lofted, opportunities created for the catch. Mid-wicket fielder will not going to get there, but after one bounce he collected. But have a look at that one. And no run scored. Can we believe this? Sridhar thought it might be all over for him. That's why he's not interested for the run. But certainly there will be an opportunity of a couple of runs if they run quickly. And unfortunately, that is the dotted delivery to finish the over number 5. Then now 2 overs remaining. 33 more runs required for the victory for Irvattur Sports Club Manipal. 16 and half runs per over required run rate. Well, it's going to be a difficult one, but not impossible. In present cricket, anything can be possible. And I think having Srinivas in the middle, it can be possible because the direction we are standing here, absolutely in a commentary box, and he will go into bat. There will going to be a little bit opportunity created to get the distance as far as the flow of the wind is concerned. And wait and see. The wind, of course, we are talking about not that much of a huge wind. We can see now in the evening, later in the evening, time is exactly 6 past 40. And floodlights are on, making this cricket ground more beautiful with that lights. And absolutely the fantastic and electrifying atmosphere in this most beautiful Sayadri Engineer cricket ground of this first day of GPL 2024. First ball swings and missed. Wicketkeeper celebrating here, but just an excitement rather than the confident. There is a huge gap between bat and pad. Of course, the batter wanted to shuffle across the line of delivery, try to get that one down to mid-wicket region, but ball just missing the bat. And wicketkeeper behind the stump gathers back to bowler. Coming down the track, once again using his feet, not really getting into the line of the ball. Ashwath Bhai really playing with the mind of the batter, isn't it? You know exactly what batter will going to do. He wanted to get the ball into mid-wicket region so that he's every time just using his feet, shuffled across the line of the delivery, but bowler not giving any opportunity, not giving any room to play that shot. Just following the batsman, bowling a lovely line which is outside the line of off stump. Ashwath seaming in from the far end. This time again wanted to get the big shot. Again he fails to get the proper connection. Srinivas B. Scoreboard now 35 for the loss of 4 wicket. In the over number 6 is in progress. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಲವು 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು
2 ವೀಲರ್ ಮತ್ತು 4 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. This time ball is in the air, opportunity for the catch there, and he drops the catch. And my goodness, sometimes it's all happening in under floodlight, very difficult for the fielder to catch the ball. So one more drop catches there, and they completed single, I think so, 36 for the loss of 4 wicket. ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನರೇಟರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಲವು 4 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲಕರು 4 ವೀಲರ್ನ ಮಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ, ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವಿಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲನ್ ಹಿಯರ್. The one more wicket is back into pavilion. Now targets is looking tougher and stiffer here for the team Irvatturu. And again the batsman wanted to get that one, Srinivas, towards the deep mid wicket, but got a leading edge. And have a look at the fielder, making no mistake at all. The experienced campaigner for the side of fielding team Malpe United completed the catch, and it's 36 for the loss of 5 wicket. Everyone spectator catching this beautiful moment from their mobiles. And this is going to be a really good opportunity for the cricket lovers. Have a look at the supporters of the fielding team Malpe United. They are enjoying each and every wickets taken by their bowlers, and this is the beauty of GPL. And some spectators, they are supporting their favorite teams. Each and every teams want definitely they have got own supporters behind their team. They definitely wanted to encourage their players, and it's very important. If you when you are getting a crowd behind you, then it's going to be a little bit benefits the player to get some good performance in this prestigious cricket tournament. Ashwath Pai brought into attack, and little correction, he will go into the last delivery of the over, and bowler batsman Suraj Kamath will go into face. Inside edge of the bat, going for the run, and direct hit which comes into play. Umpire says not out. And scoreboard remains on 36 for the loss of 5 wicket. 6 overs gone, last over remaining, 21 required from the last over. It's going to be last opportunity for Irattur Sports Club Manipal to get this 31 runs. Just like what we are mentioning about the journey of this particular two teams in this GPL, and one-time champion and one-time runner of Irattur are looking in a deep trouble. But defending champion Malpe United, there looks like they wanted to start their journey with the victory, but job which is not yet over. They need to restrict 21 runs in the last over. So Rajendra will go into ball that last over. Nagendra, correction. Not too much worry about that runs what he is going to depend in the last over. The 21 runs need to depend in this last over. But cricket is an unpredictable game. Anything can be happened in cricket. And wait and see how Sridhar will go to get some big shot in the last over. Right above the Sridhar across the line, hit that one pretty firmly down to deep long on, but not good enough. Not good enough from Sridhar to need to get some big shot. The singles will not going to do the job here for the team Irvatturu. They needed to get 4s and 6s, and last 5 deliveries remaining. They need to get another 20 runs to win this match. 20 to get form 5. 30 little correction, make a pardon. 30 required. Outside and off ramp, going to be a beautiful delivery there. Now it's going to be a last opportunity which is completed, unless and until the bowler will go into ball any no balls and wide balls. Then victory which is definitely going to be a sticked for Malpe United. Just a celebration which is required. 4 balls remaining. That's it. Now 3 balls remaining. 30 runs required for the victory. 30 required from 3 balls. 3 sixes will not going to help the team to win the match, but just formalities left in this game for Malpe United to win this match. Nagendra. Away from us. Right arm over the wicket balls. Driven. Not more than a single. 38. 29 required. 2 balls remaining.
14.5 runs per delivery, which is required, not per over. So 27 required from 2 balls. It's going to be a big victory for Malpe United. Definitely it's going to benefit the net run rate for Malpe United. Again wanted to go for the reverse stroke, missed it completely. One more dotted delivery, last ball remaining. Last ball remaining. And defending champion Malpe United, they will going to start their journey with a huge victory against one of the formidable team, Iruvatturu. That's it. Just for a single they will go into cross, and this is not good enough. Huge victory for the team of Malpe United. They defeated their opposition by 27 runs. And 27 runs of huge margin victory for Malpe United, and that's going to be a great start for the defending champion. Have a look at that one. Srinivas Pai, only the batter who got 20 runs. Otherwise, all we can see that single digits in the batting department. That shows how well the bowlers are bowled here. But pick up the bowler, Karthik Nayak as well as Ashwath Pai picked up 2 valuable wickets. But have a look at that Ashwath Pai's bowling figure. Absolutely fantastic, economical figure. 2 overs, 6 runs, picked up 2 valuable wickets, and responsible for the victory for the team Iruvatturu Sports Club. Congratulations for team Malpe United. Hard luck for Iruvatturu, and better luck for the next league stage matches. Now we are going to the next match, in the match number 7 of the day number 1 of this prestigious GSB Premier League 2024. Udupi Blasters takes on Rising Star Mangalore. And for that match, I would like to invite Suresh Bhatji. And I don't know what the result of the toss of the next match. Rising Star Mangalore won the toss. They elected to bat first. All inside on the strategy, the game plan changing here. Because in the morning, every captains after winning the toss, they elected to field first. And once the floodlights are on, then game plan is changing. Winning captain wanted to bat first, because chasing is so difficult now onwards under floodlight. It's over to Suresh Bhatji. Thank you. So thank you, Satish ji. Match number 7 of GPL 2024 will be now played between Udupi Blasters versus Rising Stars of Mangalore. I request the 12th man of both the teams to be here in the commentary box. We need the 12th man of Udupi Blasters. Now this is the 7th match of the day number 1, and after this the next match will be between Amchigele Cherkes versus Vadalanke Fighters Mulki. I request the players of both the teams to get ready for the next match as well. It's time for us to announce the man of the match award of the previous game. The man of the match award goes to none other than Ashwath Pai of Malpe United, who played brilliantly. So I request Ashwath Pai to come on to the main stage, and please collect your man of the match award from our chief guest.
GPL वॉच करता असच्या सक्कड विवर्सांक वापस एक पटी वेलकम बैक फार्मा लॅब्स GPL 2024 आच्या मॅच नंबर 7 स्टार्ट जातस उडुपी ब्लास्टर्स वर्सेस रायझिंग स्टार्स मँगलोर. टॉस विन जावन रायझिंग स्टार्स मँगलोर टीमाच्यान बॅटिंग चूज केला. ओपनर जावन दीपक आणि प्रज्वल खंयची नमुने स्टार्ट तांगेल्या टीमाक दिता ते पळोवका. नॉन स्ट्रायकर जावन लेफ्ट हँडेड बॅटर टीमाचे आयकॉन प्लेयर प्रज्वल शेनाय तशींच स्ट्रायकर दीपक कामत. अशान उडुपी ब्लास्टर्स टीमा तर्फेन फर्स्ट ओवर घालूक आदर्श रेडी जातस. एक राईट आर्म मीडियम फेस बॉलर आदर्श विथ ए लॉंग रन अप बॉलिंग करतस पुजलाना एंडा दोकून. फर्स्ट ओवराचे फर्स्ट बॉल आदर्श टू दीपक. लायक एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पडल्यार बॉल बॅट्समॅन दीपकान थर्ड मॅनाक स्टियर करचे प्रयत्न केला. बॉल बॅटाचे एड्ज लागला जाल्यार विकेट किपर धरू जायनी. खंयचे रन येनी खंयचे डॅमेज जायनी. फर्स्ट बॉल जाल्लो हांगा डॉट बॉल. प्रज्वल शेनाय कॅप्टन्सीचे टीम रायझिंग स्टार्स. ओपनर जावन प्रज्वल शेनाय आयला नॉन स्ट्रायकर एंडान तस. नेक्स्ट बॉल डावन द लेग साइड जावन आशिल्ले खंडीत जावन वैड जावका खंयचे डाऊट ना. बॉल लेग स्टंप मस्त भायर वता आशिल्ले तशें जावन अंपायर स्वरूप तीर्थहळ्ळी आणि वैड म्हणून डिक्लेअर केला. एक रन एक्स्ट्रा रुपार ॲड जातस. एक रनान रायझिंग स्टार्स टीमाचे अकाउंट ओपन जातस. वापस एक पटी लायक एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलिव्हरी कंप्लीटली बीट जाल्लो. बॅट आणि बॉलामध्ये खंयचे कनेक्शन ना. बॉल सीधा गेला विकेट किपराल हातांत. वापस एक बॉल डॉट बॉल जाल्ला. विकेट कीपर जावन डॉक्टर विनोद नायक उडुपी ब्लास्टर्साचे आयकॉन प्लेयर कॅप्टन एक एक्सपिरियन्स प्लेयर GSB क्रिकेटाचे सिनियर मोस्ट प्लेयर म्हणून म्हणत. आदर्शाल नेक्स्ट बॉल वापस तसले एक बॉल सिमिलर डिलिव्हरी अँड सिमिलर रिझल्ट. बॅट्समॅनाक मिस जातस. खेळू जातना लायक कोण बॉलिंग घालतस. आदर्श एक परफेक्टली लायक लाइन एंड लेंथ मेंटेन करून आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग घालतस. वापस बीट जाल्ला. दीपक 3 बॉल बीट जाल्ला. एक रन मात्र आयला एक्स्ट्रा रुपारी. नेक्स्ट बॉल आदर्श टू दीपक. पुजलाना एंडा दोकून लॉंग रन अप घेऊन बॉलिंग घालतस. अंपायर क्रॉस करून गेल्यार बॉल फुल टॉस जावन कन्वर्ट केल्ले. हॉट एक शॉट मारचे प्रयत्न केला. फिल्डरान मात्या वयर उबार मारला जाल्यार वायडिश मिड विकेट देखून फिल्डरान धांवन येवन बॉल फील्ड केला. ऑलमोस्ट बाउंड्री लायना रोपा लागी बॉल रबयला. तशें जावन बाउंड्री वच्चनी 2 रन मेळ्ळे. ह्या 2 रनान दीपकाला अकाउंट ओपन जाल्ले. दीपक स्ट्रेट अवे ऑफ द मार्क. ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ला रायझिंग स्टार्साचे 3. नेक्स्ट बॉल आदर्श टू दीपक. लायक एक बॉल तितले लायक कोण ड्राईव्ह केले ऑन सायडान तू बॉल सीधा फिल्डराल हाता वतस जाल्यार एक रन प्रिवेंट करूं जायनी. फिल्डरान येवन बॉल फील्ड करून क्विकली थ्रो केला बट अजी मध्ये एक रन धांवन कंप्लीट केला दोग जण बॅटर्सान. सो दीपकाक मेळ्ळे 1 रन. दीपकाल इंडिविज्युअल स्कोर जाल्ले 3. तशीच टीमाचे वट्ट स्कोर 4. आत्त स्ट्रायकर आयला लेफ्ट हँडेड बॅटर प्रज्वल शेनाय रायझिंग स्टार्स टीमाचे आयकॉन प्लेयर. प्रज्वल शेनाय एक टेक्निकली साउंड बॅट्समॅन. अंपायरा लागी गार्ड घेवन फिल्डिंग प्लेसमेंट वॉच करून नेक्स्ट बॉल फेस करता. क्रिसार वेट करता असं प्रज्वल शेनाय. बॉल आदर्शाल हातांत. फर्स्ट ओवराचे अखेरीच बॉल लायक कोण कवरसा मारला. एक लॉंग चेस म्हणून येता फिल्डर्सांक जाल्यार 1 रनान संतुष्ट जाली ती. 2 रनां खंयचे रन काडचे प्रयत्न करनी बॅटर्सान. तशें जावन लास्ट बॉलान तू एक सिंगल काडून प्रज्वलान तागेल्या स्ट्रायक रिटेन केला. फर्स्ट ओवर कंप्लीट जाला. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर रायझिंग स्टार्स मँगलोरचे वट्ट स्कोर जाला 5 विदाउट एनी लॉस. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हांगेले एक
प्रस्तुती आर्च फार्मा लॅब्स GPL 2024च्या सुरवे दिसाच्या 7 मॅचांक जातस दोन्ही हॉट फेवरेट टीम्सामध्ये उडुपी ब्लास्टर्स आणि रायझिंग स्टार्स मँगलोर. राकेश दोन्ही ओव्हर घालूक आर्च फार्मा लॅब्स एंडा दखून तयार जातस. डॉक्टर विनोद नायक फिल्डिंगात वापस चेंजेस करतस. क्रीसारस टेक्निकली साऊंड बॅट्समॅन प्रज्वल शनाय लेफ्ट हँडर टीमाच्या की प्लेयर एक प्राऊडेस्ट प्लेयर म्हणून म्हणूयात GSB क्रिकेटाच्या. राकेशाला फर्स्ट बॉल स्लोवर डिलिव्हरी लायकून ग्लाइड केला कवर पॉइंट मारनो 1 रन आरामेर काढला. सो प्रज्वला मेळ्ळा 1 रन. प्रज्वलाला इंडिव्हिज्युअल स्कोर जाल्ल्या दोन्ही तशींची टीमाच्या ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ला 6. खंयचे विकेट लॉस्ट जायनाशी 6 रन स्कोर केलेला रायझिंग स्टार्स मँगलोर टीमाच्यान. आता नेक्स्ट बॉल घालूक राकेश वापस आर्च फार्मा लॅब्स एंडा दखून फिल्डिंगान थोडे चेंजेस करून बॉलिंग घालता दीपकाक. 3 रन काणून खेळतस राईट हँडेड बॅटर दीपक. राकेशाला नेक्स्ट बॉल दीपकाक राईट आर्म ओव्हर द विकेट जाऊन घालतस. ऑफ स्टंप चिके भायर गेल्यार बॉल बॅट्समॅनान सोडून दिल्ल्या खंयचे मारचे प्रयत्न करनी हाजे मध्ये अंपायर श्रीनिकेत हाणें वैड म्हणू सांगला. तागेले दोन्ही हात स्ट्रेच करून वैड मोड सिग्नल केला. सो 1 एक्स्ट्रा रन मेळ्ळा हांगा रायझिंग स्टार्स मँगलोर टीमाच्या. तशींचे ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ल्या 7. 1 एक्स्ट्रा रन ॲड जावन राकेशान गेल्यार बॉल दीपकान चंद करून खेळणू 1 रन काडला. ऑन सायडाक ड्रायव्ह केल्या तितले लायक एक फिल्डिंग थंय एक प्रोटेक्शन आशिल्लें मित्र खाली 1 रनान संतोष जावका. दीपकान दोन्ही रनां खंयचे अवकाश ना. वापस स्ट्राईक मेळतस लेफ्ट हँडेड बॅटर प्रज्वलाक. स्कोर जाल्ल्या 8. बॉलिंगांतू राकेश एक राईट आर्म मिडियम फेस बॉलर मस्त एक एक्सपिरियन्स आशिल्लो बॉलर राकेश. तशींचे स्ट्रायकर वेट करता आसत प्रज्वल. राकेश टू प्रज्वल लायक बॉल ब्लॉकोला पडल्यार बॉल जेंटली पुश केल्ले ऑफ सायडाक जस्ट टच करून 1 रन काडला. त्या बॉलाक खंयची नंबर रेस्पेक्ट दिवका की तशी खेळ्ळो. ऑलमोस्ट ए टेस्ट क्रिकेट फॉरवर्ड डिफेन्सिव स्ट्रोक म्हणून म्हणयात. हाजे मध्ये फिल्डरान येवन बॉल फिल्डिंग करचे पुढे 1 रन कंप्लीट केला प्रज्वलान. प्रज्वला मेळ्ळें 1 रन. टीमाचे ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ले 9 आफ्टर 1.3 ओव्हर्स. 7 ओव्हर्सा मॅच. रायझिंग स्टार मँगलोर टीमाच्यान सुरवेक टॉस विन जावन हांगा बॅटिंग चूज केलेलें. तशींची 1.3 ओव्हर्सा नंतर 9 रन काडला. राकेशान गेल्यार बॉल वापस ऑफ सायडा मारचे प्रयत्न केला बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी. बॉल गली रिजनाक गेला. फिल्डरान येवन बॉल फील्ड केला बट 1 रन प्रिवेंट करूं जायनी. फिल्डरान येवन बॉल फील्ड करचे पुढे दोग जण बॅट्समॅनांनी 1 रन धांवन कंप्लीट केला. तशें जावन प्रज्वलाक मेळ्ळें स्ट्रायकत. राकेश बॉलिंग घालूक वापस मागशी वतस. बॉल राकेशाला लागतास. राकेश बॉल घालता प्रज्वलाक. प्रज्वल इंडिव्हिज्युअल स्कोर 3. तशींचे दीपक खेळतस 5 रनारी 7 बॉल फेस करून 5 रन काडला दीपकान. नॉन स्ट्रायकर एंडर आस. प्रज्वल 3 बॉलांत 3 रन काडला. एक हॉड एक जबाबदारी इनिंग्स प्रज्वलान खेळका जाता. तागेले कॅप्टन्सी नॉक कसं की त्या दाखोवका जाता. आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होगूर पुश करून ऑफ सायडाक मारून 1 रन प्रज्वलान काडलेलो आस. सो 1 रन प्रज्वला मेळ्ळो. ಒಟ್ಟು टीमाचे स्कोर जाल्ल्यात 11 विदाउट एनी लॉस. 1 बॉल बाकी आस. दोन्ही ओव्हराचे कडे बॉल घालूक राकेश वापस बॉल घेवन मागशी वतस आर्च फार्मा लॅब्स एंडा दखून. तशींची क्रीसारी आतां बॉल फेस करूक दीपक. राकेश टू दीपक लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओव्हर. लायक बॉल ब्लॉकोला पडल्यार बॉल ऑलमोस्ट एक यॉर्कर डिलिव्हरी मणकी आशिल्ले ब्लॉकोला पडल्या. बॅट्समॅनाक खेळूं जायनी.
ऑन साइड ड्राईव्ह करचे प्रयत्न केला बट बॅट आणि बॉलामध्ये तिथल्या कनेक्शन सम नाशिल्ले बॅट्समॅन बॉल रीड करून जायनी चिके स्लोवर लेन डिलिव्हरी जावन आशिल्ले वेरिएशन आशिल्ले तशें डॉट जाल्ला ओवर कंप्लीट जाल्ला 2 ओवर कंप्लीट जाल्यार म्हणजे रायझिंग स्टार्स मंगळूर टिमाचे वट्ट स्कोर जाल्ला 11 विदाउट एनी लॉस 7 ओव्हर्साच्या मॅचांत 2 ओव्हर पॉवर प्ले जावन आसता सो पॉवर प्ले तू खाली 1 रन मात्र आयला एक हॉड एक टार्गेट सेट करचे प्लॅन करून हांगा 2 जण ओपनर्स आयिल्ली ती बट पॉवर प्लेचे एडवांटेज घेवच्या जायनी 1 रन काडला जाल्यार एक खुशी विचार कसो म्हळ्यार एकय विकेट पळणी 2 जण बॅट्समॅन सिंगल्स डबल्स काणू स्ट्राईक रोटेट करता आसती स्कोर बोर्ड मूव करता आसती तशें जावन 1 रन जाल्ला 2 ओव्हर नंतर आता 3 ओव्हर घालूक 9 बॉलराक हांगा इंट्रोड्यूस केला सो 3 दिसाचे क्रिकेट फेस्टिवल एक क्रिकेट कार्निवल म्हणून येतं सह्याद्री कॉलेज ग्राउंडांत GPLचे 8चे सीझन हांगा चलतस येदोळते 7 सीझन आमी पळयलस मस्त एक चंद रितीरी चलचित आसले क्रिकेट टोर्नामेंट अद्भुत जावन आशिल्ले दिसू लायक एक क्रिकेट टोर्नामेंट प्रोजेक्ट सह्याद्री कॉलेजाचे हे ग्राउंड मस्त सुंदर जावन दिसतस लायक एक पिक्चर तशीची लायक कंडिशन्स बॅटर्स आनी बॉलर्सांक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण हांगा सृश्टी जाला म्हणून येतं आर्च फार्मा लॅब्स GPL 2024 नवे बॉलर जावन आदेश भट मुल्की 3 ओव्हर घालूक पुजलाना एंड देखून रेडी जातस फिल्डिंगात तू थोडे चेंजेस करतस आदेश भट फर्स्ट बॉलर एक एक्सपिरियन्स बॉलर कटर स्पेशलिस्ट म्हणून नाव असं राउंड द विकेट जाऊन बॉलिंग घालतस आदेशान केल्यार फर्स्ट बॉल लायक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप आशिल्ले थंयची ओगूर गाईड करून 1 रन काडला प्रज्वलान सो प्रज्वला मेळ्ळे 1 रन प्रज्वलाला इंडिविज्युअल स्कोर जाल्ले 5 आतां स्ट्राईक मेळतस दीपकाक वट्ट स्कोर 12 जाल्ला येदोळते खंयचे बाउंड्री जेव्हा 6 पळोवच्या मेळ्ळी खंडीत जावन फील्ड स्प्रेड आउट जाल्यार मित्र आतां गॅप मारनो बाउंड्री 6 पिक करूक पळोवक तांगेले स्कोर एक्झलेट करूक जाता रायझिंग स्टार्साचे हे 2 जण ओपनर बॅटर्सान ओवर द विकेट जावन बॉलिंग घालता आदेश रायट हँडेड बॅटराक 4 फिल्डर्स ऑन सायडान तशींची 5 फिल्डर्स ऑफ सायडान रायट हँडेड बॅटराक एक लॉंग ऑन एक लॉंग ऑफ मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट आदेशाल नेक्स्ट बॉल लायक एक बॉल बॅट्समॅनान पुल करचे प्रयत्न केला बट बॉल बॅटा मेळ्ळी कंप्लिटली बीट जाल्लो पांय लागले म्हणून अंपायरान म्हणला सो लेग बाय सिग्नल येतस एक एक्स्ट्रा रन ॲड जावन रायझिंग स्टार्स मँगलोरचे वट्ट स्कोर जाल्ल्यात 13 विदाउट एनी लॉस प्रज्वलाल 5 रन तशींची दीपकाले इंडिविज्युअल स्कोर 5 3 एक्स्ट्रा रन आयिल्ले आसा येदोळते 3 बॉल घालूक आदेश पुजलानो एंड दोकुन लेफ्ट हँडेड बॅटराक दीपक क्रिसार वेट करतस प्रज्वलान घरार बॉल उबर बारला बॉल वाऱ्यार आसा कॅच जो चान्स आसा अजोटूची कॅच धरला दीपक इज आउट एक हॉड शॉट प्रयत्न केलेला प्रज्वल आउट लेफ्ट हँडेड बॅटर प्रज्वलान उबार मारचे प्रयत्न केला बट बॉल बॅटर एडजा लागून मस्त वेळ ते वाऱ्यार आशिल्ले बॉलर आदिश भट्टान खंयची चूक करनी चंद कोर जर्ज कोर कॅच धरला तशें जावन फर्स्ट विकेट पडल्यार सांगा रायझिंग स्टार्स तांगेले बॅकबोन प्रज्वल शेनाय डिपार्ट्स तेरा रनाक सुरवे विकेट पडलेला सांगा 13 म्हळ्यार एक क्रिकेट जगतांत दुरदृष्टकर संख्या म्हणटा ती अनलकी नंबर त्यांची 13 रन्स स्कोर अंतू रायझिंग स्टार्स मँगलोर टिमाक एक हॉड बिग ब्लो म्हणून येतं तांगेल टिमाचे ट्रम्प कार्ड प्लेयर दी प्राउडेस्ट प्लेयर प्रज्वल शेनाय डिपार्ट्स एट दी स्कोर ऑफ 13 रन्स प्रज्वल शेनायन 5 रन कॉन्ट्रीब्यूट केलेल्या तागेल्या इंडिविज्युअल अकाउंटांत आता ताका रिप्लेस करूक नवे बॅट्समॅन जावन सिद्धेश रमणी अनेकलो
लायक एक प्लेयर गोवा महाराष्ट्रांत खेळ्ळो तसले एक प्लेयर सिद्धेश रमणी स्ट्रायकरी अंपायराला गार्ड घेवन आदेश भट्टाला बॉल फेस करच्याक तयार जातस अशाने आदेश भट्ट एक सक्सेसफुल बॉलर ताच्या टिमाक खंयची नमुने रिक्वायर्ड ब्रेक थ्रू जाय की त्या ताणें दिल्लेलो आस ओवराच्या नेक्स्ट बॉलाक आदेश भट्टान केला बॉल चिके वेरिएशन आशिल्ल्या स्लोवर डिलिव्हरी जेंटली पुश केल्ल्या फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह स्ट्रेक खेळणू सिद्धेश रमणीन एक रन काढून तागेल्या अकाउंट ओपन केला सो सिद्धेश इज ऑफ द मार्क 14 रन जाल्ला एक विकेट लॉस जावन आउट जालो बॅटर म्हळ्यार प्रज्वल 5 रन काढून आउट जालो तशीच क्रीसार दीपकाला इंडिविज्युअल स्कोर 5 पंचा बॉल घालूक आदेश फुल टॉस जावन पडल्यार बॉल चिक्के स्लोवर आशिल्ले फुल टॉस जावन कन्वर्ट करचे प्रयत्न केले बट बॉल बॅटा येनी वापस मिस जाल्लो स्विंग एंड ए मिस तशें जावन बॅट बॉल लागनी हाजे मध्ये फिल्डरान येवन बॉल फील्ड करचे फुडें दोग जन बॅट्समॅनांनी एक रन धांवन कंप्लीट केलेलो आसा एक रन मेळ्ळ्या बॅट्समॅनाक सो वट्ट स्कोर जाल्ल्या 15 तिन्नी ओवर चालती तस कडे बॉल घालूक आदेश टू सिद्धेशा गेल्यार बॉल ह्या फाटी रनआउट जावं चान्स आशिल्ले डावन टू थर्ड मॅन बॉल वता आशिल्ले फिल्डरान बॉल धरल्या विकेट किपरा थ्रो केल्या बट तागेले थ्रो येवन विकेट किपरा रीच जावचे फुडें दोग जन बॅट्समॅनांनी एक रन धांवन कंप्लीट केला जोटूची तिन्नी ओवर कंप्लीट जाला 3 ओवर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणजे रायझिंग स्टार्स मँगलोरचे वट्ट स्कोर जाला 16 एक विकेट लॉस्ट जावन 16 with 1 wicket down after the completion of 3 overs Rising Stars Mangalore आणि 4 ओवर बाकी आसा पळोवया वरल्या 4 ओवरांतू कसा पुरा जाता कितली रन्स बॅटर्स हांगा स्कोर करता ती म्हणून टॉस विन जावन रायझिंग स्टार्स कॅप्टन प्रज्वल शेणन सुरवेक बॅटिंग करचे निर्णय घेतिले वापस बॉलिंग घालूक राकेशाक हांगा इंट्रोड्यूस केला राकेशाला हे दोन्ही ओवर सुरवे ओवरांतू राकेशान तागेल्या फर्स्ट ओवरांतू 6 रन दिल्ले खंयचे विकेट काणी आतां तागेल्या कोर्टाचे दोन्ही ओवर घालूक रेडी जातस आर्च फार्मा लॅब्स एंड दाखून क्रीसारी वेट करतस सिद्धेश आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पडल्यार बॉल ऑफ स्टंप करून मस्त भायर आशिल्ले फुल टॉस जावन कन्वर्ट केल्या हाजे मध्ये लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट एक एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येता बॉल फिल्डरान येवन थ्रो करचे फुडें ते थ्रो येवन बॉलराला रीच जावचे फुडें हांगा दोग जन बॅटर्स मस्त क्विकली जावन धांवली ती हाजे मध्ये अंपायरान थर्ड अंपायराक रेफर केलेलो आसा रनआउटा खातीर लायक एक फिल्डिंग तशीच थ्रो वे मस्त एक्युरेट जावन आशिल्ले राकेशान बॉल कलेक्ट करून स्टम्प्साक लागत पयस फुडें हांगा बॅटर क्रिसा भितर आस की ना की म्हणून पळोवक थर्ड अंपायरात रिव्यू करून डिसिशन आमकां दिता पळोवया खंयचे नमुने डिसिशन थर्ड अंपायराला येता म्हणून एक क्लोज कॉल जावन आशिल्ले बॉल कलेक्ट केला रिप्लेंत आमी पळोव येता यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड आनी तुमकां टीव्हींतू यूट्यूबांतू दाखयता आसता ती ह्या टुर्नामेंटाचे नेर प्रसार लायव्ह टेलिकास्ट हाजे मध्ये नॉट आउट म्हणून डिसिशन दिला थर्ड अंपायरान सो खंयची डॅमेज ना 2 रन टिमाक ॲड जातस ह्या 2 रन ॲड जावन मंगळूरच्या टिमाचे वट्ट स्कोर जाल्ल्यात 18 with 1 wicket down उडुपी आणि मंगळूरा मध्ये जत्तसच्या GPLच्या फर्स्ट राउंडाची मॅच हांगा राकेशाल नेक्स्ट बॉल सिद्धेशा गेल्यार बॉल ऑलमोस्ट यॉर्कर लाइन डिलिव्हरी म्हणून ब्लॉक होला पडल्यार बॉल मस्त एक हॉट शॉट प्रयत्न करनी सिद्धेशान जस्ट ऑन साइड फ्लिक केल्या खंयचे फिल्डर नातील जाग्या मारनो एक रन काढला
अजिमध्ये सिद्धेशाक 1 रन मेळतस सिद्धेशाला इंडिव्हिज्युअल स्कोर जाल्ले 5 4 बॉल फेस करून सिद्धेशान 5 रनांक काडलेलास तशींची ओपनर बॅट्समॅन जावन आयिल्लो दीपकान 6 रनांक कॉन्ट्रीब्यूट केला ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ್ಲ 19 with 1 wicket down after 3.2 overs. राकेश वापस कटी तिन्ही ओव्हराच्या तिन्ही बॉल घेऊन राऊंड ओव्हर द विकेट जाऊन बॉलिंग घालतस दीपका घाल्यार बॉल फुल करचे प्रयत्न केला बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी टायमिंग्स तितले नाशिल्ले टायमिंग्स परफेक्ट नाशिल्ले मित्र खाली 1 रनांक संतुष्ट जावका दीपकाक मेळ्ळे 1 रन 1 रन काणू दीपकानात सिद्धेशाक स्ट्राईक दिला सिद्धेशेक लायक एक टायमर ऑफ द बॉल हार्ड हिटर ऑफ द बॉल एक हॉर्ड एक जबाबदारी आसा सिद्धेशाला वैरी पळोव्या सिद्धेशांक तसं करता म्हणून स्लोवर डिलिव्हरी लायक एक इंटेलिजंट बॉलिंग म्हणून येतं क्लेवर बॉलिंग जावन आशिल्लें बॅट्समॅन हॉट शॉट प्रयत्न करता म्हणून पळयल सताना स्लो जावन गेल्ले हाजे मध्ये नो बॉल म्हणून डिक्लेअर करता असो अंपायर नो बॉल म्हणून अंपायरान डिसिशन दिला सो 1+1 2 रन हांगा ॲड जाला टिमाच्या स्कोरांतू खाली एक एक्स्ट्रा रन ॲड जातना एक फ्री टाइम मेळतस लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा बॅटर आकत पळोव्या एक फ्री टच एडवांटेज बॅटर घेत की म्हणून दीपकाक एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून येतं फ्री हिट बॉल दीपक खंडित जावन हॉट शॉटा प्रयत्न करता फ्री हिट बॉलांतू बारला जाल्यार बॉल सीधा गेला फिल्डराल हातांतू लायक एक फिल्डिंग थंय फिल्डर आले ब्रिलियंट फिल्डिंग म्हणून येतं खंयचे रनी येनी फ्री हिट बॉलांतू डॉट जाला तशें जावन टिमाच्या ಒಟ್ಟು स्कोर 22 रबला 22-1 2 बॉल बाकी आसा 4 ओव्हराच्या राकेशन करार बॉल हॉट शॉट प्रयत्न केला बॉल वाऱ्यार आसा कॅच जो चान्सेस आशिल्ले हाजे मध्ये 1 बाउंस ओव्हर द बाउंड्री फॉर 4 रन्स एक लायक एक वेलकम बाउंड्री म्हणून येतं रायझिंग स्टार्स मँगलोर टिमाक एक बाउंड्री मारून दीपकान तागेल टिमाक स्वागत केलेलं आसा सो 4 व्हॅल्युएबल रन्स ॲड जाला लायक एक पनिशमेंट दिल्ले शॉर्ट ऑफ लेंथ जावन आशिल्ले बॉल डावन द लेग सायड आशिल्ले चंद कोरन पिक कोरन खंयचे फिल्डर नातील जाग्यार मारले फिल्डिंग खातीर थोडे चुकलो फिल्डर तशें जावन बॉल सीधा बाउंड्री लायन देखून भायर 4 रनाक 4 इम्पॉर्टंट रन्स हांगा ॲड जातस रायझिंग स्टार्स मँगलोर टिमाचे तशें जावन ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्यात 26 एक विकेट लॉस जावन 26 रन्स काढला 4 ओव्हराच्या कडे बॉल घालूक बॉलर रेडी जाला वापस एक हॉट शॉट लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ मध्य बारला वापस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन देखून भायर 1 बाउंस ओव्हर द बाउंड्री फॉर 4 रन्स लायक एक प्रोडक्टिव्ह ओव्हर म्हणून येतं टीम रायझिंग स्टार्स मँगलोर टिमाक ह्या ओव्हरांत 2 बाउंड्री तांणी पिक केल्ले तशें जावन 4 ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणजे रायझिंग स्टार्स मँगलोरचे ಒಟ್ಟು स्कोर जाला 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट लायक एक बॅटिंग हांगा दाखयतस दीपक 2 बाउंड्री मारून आनी काही क्रिसार आसा ओपनर जावन आयिल्लो तशींची सिद्धेश ताका लायक कोण साथ दितस आनी 3 ओव्हर बाकी आसा पळोव्या वरल्या 3 ओव्हरांतू कसा पुरो जाता कितली रन तांणी स्कोर करतात म्हणून हाजे मध्ये एक हॉट डिस्कशन जातस उडुपी ब्लास्टर्स टिमा मध्ये डॉक्टर विनोद नायक बहुशा बॉलिंग घालूक येतस टिमाच्या आयकॉन प्लेयर आमगेले GSB क्रिकेट हिस्ट्री म्हणून येताना एक स्टार प्लेयर GSB क्रिकेटाचे सुपर स्टार म्हणून येतं सिनियर मोस्ट प्लेयर डॉक्टर विनोद नायक कस्तुरबा हॉस्पिटल मणिपालाच्या फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटाच्या HOD इन्चार्ज जावन आसचे डॉक्टर विनोद नायक उडुपी ब्लास्टर्स टिमाच्या कॅप्टन आतां टॉप बॉलिंग करून आयला पळोव्या वरल्या 3 ओव्हरांत कसो परत जाता म्हणून हाजी मते तूं कमेंट्रीन तूं चेंजीस करता आसा ती मुखारच्या कमेंट्री हिंदी लँग्वेजान सांगूक अजय राज
हेलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जीपीएल 2024 में बैठे तमाम दर्शकों का दोबारा तहे से स्वागत है। इस पीछे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, डॉक्टर विनोद नायक की गेंद, जिसको पीछे हटते हुए धीरे से कट करने का प्रयास, रन लेने का अवसर नहीं। कुल मिलाकर 30 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। आइए दोहराकर आपको बता दें, राइजिंग स्टार के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उडुपी ब्लास्टर की तरफ से। डॉक्टर विनोद नायक की गेंद और लॉफ्ट कर दिया, फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स के लाइन पर थी, उसको बहुत जल्दी पहचान गए और बल्ले का मुंह खोलकर सॉफ्ट हैंड से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। दीपक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, 15 रन बना चुके हैं, 14 गेंदों का सामना उन्होंने अब तक किया है। शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद नायक की गेंद फुजल एंड से इस बार ड्राइव कर दिया, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, तिरछा खेल दिया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर डीप में जा चुकी है, फील्डर जब तक गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दीपक ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया और रन्स बढ़कर 32 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला निश्चित तौर पर शाम के बाद अच्छा कहलाया जाता है, ऐसे में डॉक्टर तैयार हुए। ये गेंद मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर धीरे से पीछे हटकर बल्ले का भारी मोटा सिरा देकर फिसलने दिया गेंद को और गली क्षेत्र में फील्डर गेंद को जब तक समेट पाते, दोनों बैट्समैन तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर चुके हैं। शानदार दृश्य है, पूरा आकाश अंधेरों में डूबा हुआ और जैसे मैंने आज शाम आपको कहा कि धरती पर एक चांद उगाया हुआ दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वही दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर विनोद नायक की अगर बात कहें, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में और उम्र का तकाजा। इस छोर से ये गेंद ड्राइव कर दिया, लेकिन पैरों से रोकने का असफल प्रयास। 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही रन्स बढ़कर 34 पर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तो बात कर रहे थे डॉक्टर विनोद नायक की, अच्छे बैट्समैन, अच्छे गेंदबाज, अच्छे फील्डर, अच्छे विकेट कीपर और अच्छे कप्तान, अच्छे योजना बनाने वाले, क्या कहें, उनके प्रशंसा में शब्द कम पड़ रहे हैं। क्या कमाल का ऑलराउंडर है और इस वक्त उडुपी ब्लास्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फजल नाइन से डॉक्टर विनोद नायक की गेंद पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। शानदार स्ट्रोक था, लेकिन शाम के बाद जैसा आप जानते हैं पिच और आउटफील्ड काफी धीमा पड़ जाता है, धीमी पड़ जाती है गेंद। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो ओवर की संख्या बढ़कर 5 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स 35 for 1। तो दूर आकाश में चांद का दृश्य दिखा रहा है कैमरामैन, क्या बात है, बहुत खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। पूरा चांद बहुत कम देखने को मिलता है और कैमरामैन तैयार रहते हैं कि क्या कुछ अलग दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। यही बात अलग करती है इन कैमरामैन को बाकी सब लाइव टेलीकास्ट से। 35 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर दृश्य, पूरा आकाश अंधेरों में डूबा हुआ और एक पूरा गोलाकार चांद आपको देखने को मिल रहा है और दर्शक बड़े उत्साहित होकर जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल महोत्सव है, बिल्कुल बेखौफ, सारी चिंताओं को छोड़कर अपने मगन में मस्त होकर दूर वाले छोर से इस ओवर की गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड पर प्लेसमेंट के साथ खेलना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में फील्डर तैनात थे, जब तक वो गेंद को समेट कर थ्रो कर पाते बैट्समैन के पास समय था कि तेज कदमों के साथ वो 2 रनों को पूरा करें। सिद्धेश का ये स्ट्रोक बड़ा अच्छा था। आदेश भट्ट की ये गेंद जो फुल टॉस रह गई थी लगभग मिडलर लेग स्टंप के लाइन पर, उसको सिद्धेश ने बहुत खूबसूरती के साथ कलाई के सारे से फ्लिक के अंदाज में बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया। ऐसा लगा कि शायद संभावित चौका हो सकता है, लेकिन फील्डर ने बहुत तेजी के साथ गेंद को रोक लिया। इस छोर से आदेश भट्ट गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं। मात्र 6 रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं। काफी किफायती गेंदबाजी उनकी। आर्चा एंड से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार। आर्चा फार्मास्यूटिकल्स एंड वहां से गेंद को लेकर आदेश भट्ट तैयार। सिद्धेश के लिए फुल टॉस थे, प्लेसमेंट किया, इस बार कौन भला रोक सकता है इस गेंद को। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। जीपीएल का शानदार चौका है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक। सिद्धेश बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये गेंद राउंड विकेट फुल टॉस थी, लेग स्टंप के ज्यादा बाहर और मात्र इस गेंद को दिशा भर देनी थी। कंधे को हिलाया, कलाइयों को घुमाया, गेंद को खूबसूरती के साथ प्लेस किया, गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन।
डीजे स्मिथ अगर तैयार हैं तो मैं उनको अनुरोध करता हूं कि जबरदस्त नंबर्स को वो तैयार रखें, दर्शकों को उस धुन को सुनकर नाचने का मन हो जाए, ऐसे धुनों को वो तैयार रखें। वो छोर से आर्चा फार्मा एंड से गेंद को लेकर तैयार। ये गेंद योजना बदली और बैट्समैन भी बड़े सतर्क थे। सिद्धेश ने देखा गेंद लेंथ में ज्यादा और मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, उसको फॉरवर्ड डिफेंसिव होकर धीरे से पुश बर कर दिया। जब तक फील्डर आ जाते अपने साथीदार दीपक को उन्होंने सौंपी जिम्मेदारी। रन्स बढ़कर 42 पर 1 विकेट के नुकसान पर आदेश भट्ट इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। अब ओवर द विकेट उनकी गेंद, एक गेंद रुक कर आई और फील्डर की दिशा में थ्रो, उन्होंने जी नहीं, फील्डर ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया। गेंद को धीरे से कट भर कर दिया था बैट्समैन दीपक ने। जोखिम भरा रन था, खतरनाक हो सकता था। थ्रो विकेट पर गिरता तो शायद अंपायर को मजबूर होना पड़ता कि वो तीसरे अंपायर को जिम्मेदारी सौंपे, लेकिन बच गए। और उस गेंद की अगर बात करें तो आदेश भट्ट ने वेरिएशन का एक उदाहरण दिया, गेंद को थोड़ा सा धीमा कर दिया। टिप्पा खाने के बाद धीमी उछाल के साथ आई थी, उसको धीरे से कट भर कर दिया। अब तक इस श्रृंखला में 34 छक्के लग चुके हैं, 20 चौके। एक और गेंद, अतिरिक्त उछाल, फील्डर आ चुके हैं, लेकिन क्या बात है, तेज रनिंग, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है। रिप्ले में देखा जा सकता है कि ये पिछली गेंद ओवर द विकेट और हवा में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रही है ये गेंद, बहुत अच्छी बात है। पीछे हटे, गेंद को धीरे से चौप के अंदाज में खेल दिया और एक पूरा कर लिया। 1 रन को इसी के साथ ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। 44 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद शेष बचा है। अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे। 1 more बॉल टू गो। श्रीनिकेत जी से अनुरोध है, 1 गेंद अभी शेष बचा है स्कोरर के हिसाब से, और हमारे लाइव स्कोरिंग अपडेट जो कर रहे हैं उनके हिसाब से 1 गेंद अभी बचा हुआ इस ओवर में। 44 रन 1 विकेट, 44 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। दूर आपको स्कोर बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, जो एलईडी स्क्रीन, जहां पर साफ साफ सफेद अक्षरों में दिखाया जा रहा है। और एक और दूर छोर पर वेंकटेश प्रभु बैंगलोर का विज्ञापन आप देख रहे हैं। एलईडी स्क्रीन, दूर दूर एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और कैमरामैन अलग अलग दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं। डगआउट में बैठे हुए वो सारे प्लेयर्स जो कि क्रिकेट मैच का बड़ा आनंद उठा रहे हैं, और वो बड़े स्टैंड्स जहां पर दर्शक बैठकर आनंद उठा रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, मैदान के चारों ओर एलईडी स्क्रीन के पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसको भी कैप्चर किया जा रहा है। बड़े वो भी खुश हैं क्योंकि लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। और ये शानदार चमकता हुआ, जगमगाता हुआ जीपीएल 2024 का ये दृश्य, एक ट्रॉफी का जो जीतेगा वो बनेगा सिकंदर। एक श्वान का पिक्चर कैप्चर किया जा रहा है जो मैदान की तरफ देख रहा है कि क्या उसको मौका मिलेगा कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। बहरहाल हैट्स ऑफ टू कैमरामैन, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और इस बीच दोनों बैट्समैन आपस में शब्दों का लेन देन करने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। तो मैं सोच ये रहा हूं कि कैमरामैन सब क्या और कैप्चर करेंगे। और दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आदेश भट्ट की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और मिस कर गए विकेट कीपर। जी हां, डॉक्टर विनोद नायक ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो वो 1 गेंद जो बचा हुआ था वो समाप्त हो चुका है। ओवर की संख्या बढ़कर 6 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 overs 44 for 1। हॅलो, माइक चेक। बोटिंग झोनालागी निऑन नाईट डीजे पार्टी आणि स्वल्प वेळाने आरंभ जाता तशें जावन तुम्ही पूर्ण जणांनी इथे येवको म्हणून मी नेमून घेता आसाची निऑन नाईट डीजे पार्टी बोटिंग झोनालागी डीजे किरण कामत आणि स्वल्प वेळाने जॉइन जाता तुम्ही येवन थंय चंदेक पार्टीन तू भाग घेवको म्हणून मी नेमून घेता आसाची। थैंक यू। आज सवेरे से किरण जी की आवाज नहीं सुनाई दे पड़ी और अब अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने सारे स्पॉन्सर्स हैं बीच बीच में जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसको किरण जी निभा रहे हैं। बहरहाल कैमरामैन ने दूर आपको श्वान का दृश्य दिखाया जो श्वान मैदान के स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त लॉन्ग लेग क्षेत्र में लगभग बैठा हुआ मैच का आनंद उठा रहा है। और बच्चों के लिए क्या अलग अलग चीजों का उपलब्धियां हैं, अगर कहें तो गलत ना होगा। और ये सब जीपीएल
24 में। ओ देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा बल्ले को चलाया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। एक रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया बैट्समैन ने इस एक रन के साथ, रन्स बढ़कर 45 पर, एक विकेट के नुकसान पर। अगले मैच के लिए आमची गेले चरके और वालालंक फाइट स्मॉल की दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया टॉस के लिए आइए। इस बीच गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं, सिर्फ एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 46 पर 46 for 1 और रविंद्र आक्रमण पर आ चुके हैं। सिद्धेश स्ट्राइक एंड पर। सिद्धेश ने अब तक 18 रन्स बनाए हैं, थोड़ा सा कूद कर वो वार्म अप भी करना चाहते हैं ताकि अंदर का वो जोश बना रहे। 14 गेंदों का सामना किया, 18 रन्स बनाए सिद्धेश स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से रविंद्र की गेंद फुजल ऑन एंड से फुल टॉस थी और अच्छा स्ट्रोक है, जानबूझकर गेंद को हल्के हाथ से लॉफ्ट किया, कवर की दिशा में रन आउट का मौका बन सकता था, बच गए, विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हो गए, उनके पास थ्रो आ चुका था लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन कहना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, उसको कलेक्ट करते हुए स्टंप्स की दिशा में ले जाने के प्रयास में गेंद हाथ से छूट गई और काफी शानदार फील्डिंग की गई और एक ही एक्शन में गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया गया और स्ट्राइक एंड पर विकेट कीपर के पास थ्रो तो आया जरूर लेकिन उनके हाथ से छूटकर उनके सीने से जाकर गेंद टकरा गई और इस दौरान बैट्समैन ने रास्ता पार कर लिया क्रीज का और इसी के साथ 2 रन खाते में जोड़ दिए गए। सिद्धेश बढ़कर 20 पर पहुंच चुके हैं, 48 रन कुल मिलाकर, एक विकेट के नुकसान पर 48 for 1। रविंद्र की अगली गेंद सिद्धेश को फुजलोना एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, एकाग्रित होना चाहते हैं रविंद्र। ऑफसाइड पर दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी तैनात हैं और सिद्धेश एकाग्रित होना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। गार्ड लेने के पश्चात थोड़ा सा ओपन स्टांस है, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला। इस छोर से गेंद है, ये गेंद ड्राइव कर दिया, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और खूबसूरती के साथ ड्राइव करते हुए दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया सिद्धेश ने। इस एक के साथ कुल योग बढ़कर 49 पर 49 for 1, यानी कि अभी 1 रन अगर बनाया जाए तो मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकली कहा जा सकता है कि विश्वास बढ़ेगा क्योंकि 50 का आंकड़ा पहला पड़ाव कहा जाता है। इस छोर से इस ओवर की अगली गेंद रविंद्र की गेंद फुजलोना एंड से ये गेंद थी, धीमी गति से आई, रुक कर आ गई और इस वजह से बैट्समैन थोड़ा सा मिस कर गए, बल्ले का निचला सिरा लगकर गेंद विकेट के पास से गुजरती हुई, विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर आप देखें तो 7.50 का प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है। करंट रन रेट 7.17 का चल रहा है, तो रनों के इस बहाव को रोकने का प्रयास गेंदबाज रविंद्र के जरिए किया जा रहा है। फजल एंड से रविंद्र आक्रमण पर तैयार, 47 नंबर के जर्सी में उनकी इस ओवर की अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद को उछाल दिया है, कैच हो सकता है, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही एक और बड़ा विकेट जो कि गिर चुका है। जैसा आपने देखा कि गेंद हालांकि जिस तरह से प्रयास कर रहा है कि रनों की रफ्तार को बढ़ाएं, सफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आकर बैट्समैन ने गेंद को उछालने का प्रयास किया, पुल करना चाहते थे। रोहित शर्मा के अंदाज में गेंद बल्ले का निचला सिरा लेकर तो जरूर गई लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, गेंद बहुत ज्यादा ऊंची उठी और कैच में तब्दील हुई। तो इस प्रकार एक और विकेट का पतन, 2 विकेट्स गिर चुके, 49 कुल योग। और इस वक्त जी हाँ, उडुपी ब्लास्टर्स के ओवर की बात अगर करें तो आदर्श ने 1 ओवर में 5 रन दिए, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं किया, 3 डॉट्स किए और लगभग 5 का उनका इकोनॉमी चल रहा है। और कैमरामैन थोड़े जल्दी में आपको अलग अलग दृश्य दिखा रहे हैं, शानदार दृश्य है, कभी खिलाड़ी कभी बच्चों का वो दृश्य जो खेलते नाचते हुए झूमते हुए उस कैमरा पर, जहां पर आपको घूमता हुआ कैमरा आपको कैप्चर करेगा और आप बड़े मस्ती में नाचते झूमते हुए वीडियो को या फिर अपने पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। इस बीच ओवर समाप्त हुआ तो कुल मिलाकर
50 रनों की दरकार 42 गेंदों में 7 तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। कमेंटेटर सुरेश भट्ट कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज। सुरेश भट्ट कमेंटेटर। तो इस प्रकार निर्धारित 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और लक्ष्य है 50 रनों का। देखते हैं कि उडुपी ब्लास्टर्स क्या ये 50 रन बनाता है या नहीं। देखने वाली बात होगी। आगे का विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much, Ajay ji. Welcome back to this Sahyadri College ground. So after this match, we have the next match which will be played between Valanke Fighters of Mulki versus Amchigele Cherkes. I request the captains of both the teams to come to the commentators box immediately for the toss. एक अनाउन्समेंट पार्किंग लॉट ಅಂತ एक कार कार नंबर KA19MN2120 ते काराचे हेडलाइट्स ऑन आस दैकोरनो ताजे हेडलाइट्स ऑफ करका ताजे ओनरान कार नंबर KA19MN2120 पार्किंग लॉट अंत पार्क केलेल्या काराचे हेडलाइट्स ऑन आस दैकोरनो ते ऑफ करका म्हणून तुमगे लागी रिक्वेस्ट करता आसत. So 50 is the target for team Udupi Blasters to win this match of 7 overs. This is not a difficult target for the team because they have got a good batting lineup. But only thing is the opener batsmen will have to play with cool mind. They should not lose any wickets early in the innings. What they should do is just work the balls into the gaps, pick up singles and keep doubles, keep rotate the strike, keep the scoreboard moving. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, they will have to look for big hits. Let's see what kind of start these two openers are going to give for the team Udupi Blasters. Rakesh and Vinayak are the two openers. In the middle, Vinayak will take the strike and Rakesh will be the non-striker here. And as far as the fielding side, Rising Stars Mangalore is concerned, their bowlers must work very, very hard. They need to be very smart. Fielders have to be very smart. They should be very quick. If they can pick up 1 or 2 wickets early in the innings, definitely they can come back into this game and they can put the pressure on their opposition side. Let's see what kind of strategy the bowler will adopt here. Kaushik is the opener bowler for Rising Stars Mangalore to start the proceedings from the Puzalana edge. Kaushik is making some change in the field placement here for this left-handed batter, Vinayak. Vinayak is a good timer of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground, and he will take the strike. He's on strike now. Here is the first delivery of the first over. The ball wraps onto the pad, ball hitting the legs of the batsman Vinayak. There was a loud appeal by all the players of Rising Stars Mangalore, but umpire says not out, so no damage done. First ball is a dot delivery there. Once again the ball is in the hands of the bowler Kaushik. The meantime, watch Kaushik for the second time in this over with a short run up. Goes for a big one, ball is in the air, it could be 6 and that's a mighty 6. Lovely chiming and nice footwork by Vinayak. Stand and deliver. Converted that into full toss. And he has given a punishment for the bowler. Charging the bowler on that occasion. He has scored 6 valuable runs here. And Vinayak is straight away off the mark.
Kaushik once again to Vinayak. Vinayak gently pushing the ball to the offside, played a forward defensive stroke before the fielder from the mid-off region comes across and collects the ball. Vinayak was very quick and it's a good running between the wicket, a cheeky single to Vinayak. With that single, the scorecard of Udupi Blasters now moves on to 7. Right-handed batter is on strike now. Rakesh, an all-rounder player for Udupi Blasters. Rakesh is ready to face the bowler Kaushik now. Kaushik is again making some change in the field placement here. Prajwal Shanai is doing his job as a wicket keeper there, standing well behind the wickets for Rising Stars Mangalore. Here is the next ball. Rakesh played a forward defensive stroke there and the ball went straight to the fielder. Good piece of fielding there by the fielder, so no runs resulted. Dot delivery there by Kaushik. We come back to Kaushik now. Once again, from the Puzalana end, will bowl to Rakesh. Played the shot elegantly onto the long on, but there is a protection. The fielder from the long on region comes across and collects the ball, but before the fielder collects the ball and throws it back to the bowler Kaushik, there is ample time for Rakesh to pick up a single here. So Rakesh opened his account. Score moves on to 8 now. Left-hander Vinayak will face Kaushik. Kaushik will be coming round the wicket to the left-hander here. That's again a very, very fine delivery there. Meanwhile, if it is a direct hit, certainly batsman could have been in trouble. Vinayak was rushing towards the danger range, but direct hit has not happened here. So very lucky indeed. Fortunately, Vinayak survives here. No damage done. They get a single here in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 1. So after the completion of first over, Udupi Blasters are now 9 without any loss. 50 is the target for the team. That means they need more than 7 per over. And at the moment, they are in a very good position. They have scored 9 runs in the first power play over. Now second over is also a power play over. Let's see whether they will be able to take the advantage of this power play over now. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle during the power play session. So batsmen can go for big hit to accelerate their score. Vinayak is all set to face the new bowler Aditya now. Aditya from the Arch Farmer Labs end. With a short run up, he will be bowling to Vinayak. And here is the first ball of the second over. Aditya Pai bowls, wraps onto the pad. Loud appeal by the bowler Aditya. I think the bowler was trying to put some pressure on the umpire, but umpire says it was going down the leg side. So no damage done. No addition to the total. Score remains on 9. Aditya Pai Kundapura is the bowler. Once again, ready to bowl for the second time in this over. And the man on strike is Vinayak. That's a very fine delivery. That ball keeping low, surprised the batsman Vinayak. Batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. And the wicketkeeper Prajwal Shanai collects the ball behind the stumps neatly. And he does the rest of the job. We come back to Aditya Pai Kundapura from the far range. This time again the ball pitching in the right spot here. Good length delivery and batsman had no clue about that ball. So no connection with the bat and ball properly. So no runs resulted here. One more dot delivery there by Aditya Pai. So Aditya will have to maintain the same line and length throughout his spell now. Let's see what he's going to do now. Again, almost a Yorker length delivery there. Batsman is finding some difficulty in facing his deliveries because Aditya is bowling with such a good line and length that he's not giving any room for the batter to free his arms here. Things are slowly down for Udupi Blasters. Runs are really dried up. Chasing a target of 50 runs. They are now 9 without loss after 1.4 overs.
Aditya now for the 5th time in this over. Man on strike is Vinayak. Left-hander Vinayak is all set to face Aditya now. Here is the 5th ball. Glides the ball to the offside. That was a very, very risky run. The ball was going to the fielder, but before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single, and Vinayak gets a single, and that single will bring Rakesh on strike now. Rakesh is batting on 1 after facing 2 balls, and Vinayak is batting on 9 of 9 balls. Score at the moment is 10. Pretty good over so far from Aditya. 40 more runs required in the remaining 31 balls for Udupi Blasters. Very fine delivery once again. Ball went straight to the fielder there. Good piece of fielding there by the fielder. Collected the ball and no runs resulted. Very, very good over there by Aditya. Just conceded only 1 run in that over. What an economical bowling figures from Aditya Kundapura. We'll have to really appreciate the bowling performance in that power play over. He has just given away only 1 run. So that's the end of the over number 2 after the completion of 2 overs. It is 10 without any loss. Required run rate is creeping up now. Every dot ball will put more and more pressure on the batters here. 40 runs required in the remaining 5 overs. That means they need a run rate of exactly 8 per over. Samir is going to bowl the 3rd over of the innings now. Samir Shanbag, another player who has played plenty of matches for Mumbai Paltans as well as Alpha Troopers Mumbai, basically a player from Maharashtra. Samir Shanbag, last year he had played for Malpe United. Now he will be playing for the team Rising Stars. Here is Samir Shanbag with a long run up. Very, very experienced bowler of Rising Stars Mangalore. One of the key bowler. He's going to operate the 3rd over of the innings now from the commentary box edge. So Vinayak will face Samir here. Here is the first delivery of the 3rd over. Right arm. Over the wicket manner he bowls. That's a very fine delivery there. Almost going down the leg side. And the batsman was thinking that it is too far from the leg stump. So just leaves the ball. Left the ball to go to the wicket keeper. And wicket keeper Prajwal Shenoy collects the ball behind the stumps. And he has done the rest of the job. He returns the ball back to the bowler Samir Shanbag here. As I mentioned earlier, Samir Shanbag is a very good economical bowler who has got plenty of best bowler awards till now. Here is Samir Shanbag balls. This batsman Vinayak goes for a big one. It could be 6 and that's a mighty 6. Short of length delivery. Quickly realized that it is too short of length ball. And Vinayak goes for a big hit and picked it up very nicely and hits that one over the deep square leg region for a maximum. What a terrific shot there by Vinayak. 6 valuable runs have been added to the total. With those 6 runs, their score now jumps up to 16. Can this become a productive over for Udupi Blasters? This is much better discipline line there by Samir Shanbag. Good improvisation, good comeback by him. This time the ball keeping very low and Vinayak had no clue about that ball. Couldn't read the line of the ball properly. Misses it completely and wicketkeeper does the rest of the job. The previous one was short of length delivery. So already he has dispatched 2 sixes. Vinayak is in an aggressive mood here. Once again, ball pitching right in the block hole. Vinayak had no clue about that ball. Vinayak doesn't know much about delivery. He didn't know much about that ball. Misses it completely. There is no proper connection between the bat and ball. The bat came bit late. So dot delivery there by Samir Shanbag. Good improvisation once again. And this is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters.
Once again, we come back to Samir Shanbag as the next delivery for the 5th time in this over. Well, he goes for a big one, and this is another one. Big sixer. GPL sixer, third sixer from the bat of Vinayak. Vinayak is in a terrific form here, looking very dangerous. He is in an aggressive mood here. Charging the bowler on that occasion, he has scored 6 more valuable runs, and Samir Shanbag is looking bit of expensive here. Score jumps up to 2-2 now, 22 without any loss, Udupi Blasters. Vinayak is batting on 21. What a brilliant batting there by Vinayak. Ball is in the air, and this is one more, bigger than the previous one. This is better than the previous one. It's not an easy to hit these kinds of shots. It's always treat to watch these kinds of shots, and here this man is really becoming a hero for Udupi Blasters. What a great comeback by Udupi Blasters. So very expensive over there by Samir Shanbag. Too many runs have conceded. So there's the end of the over number 3. After the completion of 3 overs, Udupi Blasters are 28 without any loss. Without losing any wickets, they have scored 28 runs. That means they are slowly reaching the target. Still 4 more overs to go now. 22 more runs required in the remaining 4 overs. Let's see who is going to bowl the next over. If the Rising Stars Mangalore pick up the wicket of Vinayak, definitely they can come back into this game and they can put the pressure on the batter's side. Meanwhile, changing the bowling position here, at the same time changing the commentary position also. And for further commentary, please come in, Mr. Ajay ji. हेलो चेक थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जीपीएल 2024 में दोबारा हृदय से स्वागत है सभी का। और रोमांच बढ़ता हुआ आज इस बल्लेबाज ने, विनायक ने साबित किया कि परिस्थितियां पिच की तरह भी स्लो क्यों ना खेलें, जब आपके अंदर जज्बा होता है आप बनाकर बिल्कुल बना सकते हैं। वो छोर से ये गेंद पलट कर गेंद को प्लेसमेंट के साथ स्विच हिट किया, बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। अंपायर ने कहा कि नो बॉल है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रनों के लिए। शानदार जीपीएल का चौका, नो बॉल का संकेत किया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, पहले कमिट हो गए, देखा कि ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकल रही है, ऑफ स्टंप के सीट पर थी, माफ कीजिए, लेंथ पे ज्यादा, उसको बहुत खूबसूरती के साथ स्विच हिट किया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। और नो बॉल का अवसर, यानी कि बैट्समैन को पुरस्कार के साथ 4 मिले और एक आधुनिक नियम के अनुसार फ्री हिट का अवसर। और इन रनों के साथ कुल रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 33 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 33 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। उडुपी ब्लास्टर्स यूं ही नहीं रखा गया है ब्लास्टर्स, क्योंकि इनके अंदर बड़े बड़े ब्लास्टर्स मौजूद हैं। राकेश के स्ट्राइक एंड पर है, माफ कीजिएगा, 27 की व्यक्तिगत योग पर विनायक बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। राकेश के लिए गेंद फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया, अच्छा ऑन ड्राइव था, जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते। 1 रन राकेश ने चुरा लिया, अपने साथीदार विनायक को कुछ जिम्मेदारी सौंपी और इसी के साथ रन बढ़कर 34 पर अब रिक्वायर्ड रन रेट 4.17 का चाहिए आदित्य आक्रमण पर, लेकिन क्या वो रोक पाएंगे बैट्समैन को? आज फार्मा से गेंद करने के लिए उस छोर से आदित्य तैयार हो रहे हैं। विनायक स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बैट्समैन विनायक ने जिस तरह से छक्के लगाए हैं वो काबिले तारीफ हैं, गेंदबाजों के होश को उड़ा दिया उन्होंने। उस छोर पर आदित्य योजना बना रहे हैं और फील्डिंग में बार बार थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में विनायक ने बल्लेबाजी की है उससे बिल्कुल खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब जरूरी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से विनायक को चलता कर दे, थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर विनायक तैयार हुए। आर्च फार्मा एंड से गेंदबाज आदित्य भट्ट की इस ओवर की अगली गेंद
बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, क्या बात है, अच्छा कमबैक किया आदित्य ने। गेंद घूमकर ऑफ स्टंप के ऊपर से थोड़ा सा हवा डालकर निकल गई है। बैट्समैन फ्रंट फुट पर खेलें या दुविधा में पड़ गए, गेंद को खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। आदित्य की एक और गेंद दूर वाले छोर से आज फार्मा एंड से, ये गेंद आउटसाइड पर उछाल दिया, गेंद क्रॉसओवर दूर निकल गई है उस एलईडी स्क्रीन की दिशा में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जीपीएल का जबरदस्त सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक है, ओवर द विकेट ये गेंद मिडलर लेग स्टंप, मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और उसको बहुत खूबसूरती के साथ लेंथ को पकड़ लिया और घुमाकर लपेट कर गेंद को पुल किया उन्होंने दूर लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 5 रनों की जरूरत है, 56 बन चुके, माफ कीजिएगा। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर वहां पर रोक नहीं पाए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। इस बेहतरीन स्ट्रोक के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। माफ कीजिएगा, 6 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 6 more runs to get। तो और 6 रनों की दरकार, 44 रन बन चुके हैं, 1.80 का औसत जो कि रिक्वायर्ड रन रेट। आदित्य गेंद को लेकर दूर वाले छोर से विनायक स्ट्राइक एंड पर। दूर वाले छोर से गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया, क्या होगा, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जब किस्मत आपका साथ देती है, किस्मत आपके साथ हो तो गेंद वहां पर गिरती है जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं होता है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, तो कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर 45 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। एक बहुत मजबूत जीत दर्ज करने जा रहा है उड़पी ब्लास्टर्स। अभी 2 ओवर्स जी नहीं 3 ओवर शेष बचे हैं और रनों की जरूरत मुझे लगता है कि अभी और 5 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। उड़पी ब्लास्टर्स को 5 और रनों की जरूरत। ऐसे में क्या होगा, सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन 5 रनों को रोका जा सकता है या नहीं ये एक्सपर्ट्स जानते हैं, क्योंकि इस वक्त पलड़ा भारी उड़पी ब्लास्टर्स का 2 ऐसे बैट्समैन बगैर किसी नुकसान के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक भी विकेट अब तक नहीं गिरा है और बैट्समैन के विश्वास जो बिल्कुल विश्वास का पारा चढ़ चुका है। विनायक ने 38 रन बनाए हैं, 2 छक्का जी नहीं 38 रन के 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 38 रन पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी उनकी चल रही है। बाएं हाथ के बैट्समैन है, घूमकर ऑन साइड पर खड़े रहते हैं। 5 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए विघ्नेश भट्ट आ रहे हैं आक्रमण पर, इस छोर से विघ्नेश भट्ट फुजलोना एंड से गेंदबाजी करेंगे। समय थोड़ा सा लिया जा रहा है, मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा जल्दी करें, अभी और बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं और आज के दिन में, अभी आज के रात में और बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। विघ्नेश भट्ट गेंद को लेकर तैयार, इस छोर से फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा अदला बदली करने के पश्चात, परिवर्तन करने के पश्चात वो तैयार हो रहे हैं। फुजलोना एंड से 23 नंबर के जर्सी में है, दौड़ना शुरू कर दिया। डाउन विकेट उनकी गेंद और गेंद को बहुत सही दिशा में पुल कर दिया है, कोसों दूर गेंद दर्शक दीर्घाव में जाकर गिरी 6 रनों के लिए। इस जबरदस्त छक्के के साथ इस मैच को उड़पी ब्लास्टर्स ने जीत लिया है और इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। 44 रन के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी विनायक शनाय ने, जो कि नॉट आउट रहे, नाबाद 44 के व्यक्तिगत योग पर बॉल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इस मैच को उन्होंने जीत लिया। अवसर बनता, समय रहता तो वो अपना अर्धशतक भी पूरा कर सकते थे। पिछली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसको बहुत खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पुल कर दिया बैट्समैन ने 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ ही उड़पी ब्लास्टर्स ने बहुत शानदार जीत बगैर किसी नुकसान के, एक रिकॉर्ड है, एक कीर्तिमान है इस श्रृंखला का कि विदाउट लॉस इस मैच को उन्होंने जीत लिया। क्या बात है, मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई हो।
जबकि राइजिंग स्टार्स इसमें थोड़े से कम रह गए, रन्स अच्छे बनाए, लेकिन गेंदबाजी में स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क करना होगा। अगले मैच के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। जबकि अब समय है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का, और प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए बड़े मन से जो हमारे अतिथि हैं वो इस पुरस्कार को प्रदान करेंगे। और आप जानते हैं एक कीर्तिमान बनाने वाला जबरदस्त बल्लेबाज विनायक शनाय, जिनको ये प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है, बड़े मंच की ओर वो आए और हमारे मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद हों तो कृपया थोड़ा सा सहयोग करें और इस शानदार प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को प्रदान करें विनायक शनाय को, जिन्होंने आज बहुत जानदार शानदार बाकमाल बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत अभिनंदन, मेनी कंग्रेचुलेशंस विनायक जी को। और समय मुझे लगता है कि अब अगले मैच क्या शुरू होने वाला है, तो अब मैं अपने शब्दों को विराम देकर अगले मैच के लिए आगे का विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। So thank you, Ajay ji. Welcome back to this Sahyadri College ground. The 8th match of day number 1 of this GPL 2024 will be now played between Amchigere Cherkes versus Vadalanke Fighters Mulki. The news from the center is Vadalanke Fighters Mulki have won the toss and they have decided to field first here. We need the 12th man of Amchigere Cherkes here in the commentary box. Amchigere Cherkes, please send your 12th man to the commentators box immediately. This match is now going to be a very interesting match. Vadalanke Fighters Mulki, their captain Sharat Prabhu, after winning the toss, he has decided to field first here. Can we have the 12th man of Amchigere Cherkes? Your presence is required here urgently, so wherever you, please come to the commentators box immediately. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬರಬೇಕು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. We need the 12th man of Amchigere Cherkes here. Toss won by Vadalanke Mulki. Field. The 12th man of Amchigere Cherkes, wherever you, please come to the commentators box. Without having the 12th man, we will not be able to start the match.
The two openers for Amchikila Cherkes are Pundalik and Srinivas. Srinath at the north striker's edge. Pundalik is on strike. Sunit Bhatt is the opener bowler for Walalanke Mulki. That's a very fine delivery, pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there. So no runs resulted. First ball is a dot delivery. The meantime, you watch Sunit Bhatt for the second time in this over from the Puzalana end. Here is the next delivery of the... Played nicely to the covers, long chase for the fielder there, but the outfield is very slow. As a result, they were able to score only 2 runs here. Not a fully controlled stroke it was. The timing was not good. Meanwhile, there was a long chase for the fielder, and the fielder collects the ball, throws it back to the bowler. They get 2 runs here. With those 2 runs, Pundalik is off the mark. He opened his account. We come back to the bowler, Sunit Bhatt. Well, that was a full toss delivery. Wanted to convert that into full toss, but couldn't take the advantage of that full toss delivery. The batsman was thinking that it is too far from the off stump, so just leaves the ball to go to the wicket keeper. And wicket keeper Sharat Prabhu collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Dot delivery there by Sunit. Vignesh Bhatt Koteshwara is giving some tips to Sunit here. Vignesh Bhatt is an all-rounder player for Walalanke Mulki. Meanwhile, the ball was going far away from the off stump, and wide has been signaled there by umpire Harish Acharya. Dinesh Acharya says it is a wide delivery. 1 run in the form of extra. 2024 GPL Utsav. The man who executed the Indian Parliament project. Mr. Dinesh, a cricketer himself, who has graced this occasion and is present with us for this mega event of the year, GPL 2024. A hearty welcome to you, sir. So 4 valuable runs have resulted from the bat of Pundalik, and their score now moves on to 7. GPL 2024 event Young Achievers Award. Young Achievers Award hard work. So at the end of first over, the team have scored 9 runs. Venkatesh Prabhu will be the new bowler who is going to bowl the second over of the innings, and he will be operating his over from the Arch Pharma Labs end. Pundalik is batting on 6, Srinath is on 1. Ball is in the hands of the bowler Venkatesh Bhatt.
The meantime, we watch Venkatesh for the first time in this over from the far range to Srinath. The left-handed batter Srinath is batting on 1. Tashichi Abhay Mukari. Next, young achiever. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. Hamil Alama, Krishnaraj Shene and Lakshmi Shene Modu. The ball went straight to the hands of the wicket-keeper, so no runs resulted there. First place in international art competition. So dot delivery there by Venkatesh Prabhu. Once again we come back to Venkatesh Prabhu. Big round of applause from the audience. Well, he was looking for a switch hit, but couldn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke, so he gets only a single here. Score moves up to 10 now. We are in the second over of the match. This is the second power play over. As the next delivery from Venkatesh now for the third time in this over. And the man on strike is Pundalik Pai. Venkatesh to Pundalik. In the right arm, over the wicket fashion he bowls. That's a very, very fine delivery there, which beats the batsman Pundalik. The ball went straight to the hands of the wicket-keeper Sharat Prabhu. Sharat Prabhu collects the ball behind the stumps, so no runs resulted. Dot delivery there by Venkatesh Prabhu. Score remains on 10 without any loss. Once again, they are making some change in the field placement here. Venkatesh to right-handed batter. Pundalik is batting on 6. Srinath is on 1. Srinath is batting on 2. Well, he goes for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it. And the fielder made no mistake here. Vignesh Bhatt takes that catch easily. So first wicket has gone down for team Amchigale Cherkes. So Pundalik Pai is out for 6. Amchigale Cherkes have lost their vital wicket. Venkatesh Prabhu is the most successful bowler there who has picked up that important wicket of Pundalik. Pundalik wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. It was in the air for a while, and fielder takes that catch easily. Ramesh Pai is the newcomer now, who will be joining with Srinivas. Ramesh Pai is all set to face Venkatesh now. 5th ball of the second over. Venkatesh Prabhu to the newcomer Ramesh Pai. Outside the off-stump delivery, batsman gently glides the ball to the offside region. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. With that single, runs on the scoreboard is 11 with 1 wicket down after 1.5 overs. Last ball to go of this over now. Venkatesh for the last time in this over to the left-handed batter Srinath. Once again, ball is in the air, but falling in between the wicket-keeper and the fielder who was standing behind the wicket-keeper. So, no damage done. They get a single here. That's the end of the over number 2. After the completion of 2 overs, Amchigale Cherkes are 12 with 1 wicket down.
So 12 for the loss of 1 wicket. Amchigile Cherkes after putting into bat first. They have lost the vital wicket of Pundalik Pai, one of the explosive batsmen. Kashiji, next. Akhil Bukari, Yamechi Vajawasapi, Vivekananda School, Pitra student, Ujwala Prabhuni, Raksha Prabhuya, serve as a chili, science Olympiad international level and 82nd rank given national level gold medal. Akshay Bhatt is the new bowler now. First standard and gold medal national level gold Akshay will be operating the third over of the innings and he will bowl from the Puzalana end. Man on strike is Srinath, who is batting on 3 runs. Ramesh Pai is on 1. Your claps are the best appreciation for young achievers. Akshay Bhatt balls and meanwhile he goes for a switch hit here. 1 bounce over the boundary rope for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Srinath. So 4 valuable runs have been added to the total of team Amchikila Cherkes, which takes their full score to 16. Gently pushing the ball to the offside. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Score slowly moves on to 17. Akshay will be bowling in the over the wicket fashion now. He is a left arm medium fist bowler with a short run up. In the over the wicket fashion he bowls. Ramesh is on strike. Ramesh Pai, the right-handed batter, pulled away nicely onto the onside. It was in the air for a while. Desperate effort there by the fielder. The ball was directly going to the fielder, but just falling in front of the fielder there. So luckily the batsman survives. Suhas Prabhu was the fielder who couldn't take that catch. Batsman gets a life here. Crashing drive to the offside, but there is a protection. They will have to satisfy with only a single here, not more than that. With that single, scorecard now slowly moves on to 19. 19 with 1 wicket down after 2.4 overs. For the 5th time, the bowler bowls. Steers it down to 3rd man region. He realized that there is no slip, so cuts it off. Down to 3rd man. And before the fielder collects the ball, there is ample time for the batter to pick up a single here. 1 more single has been added to the total. Score moves up to 20. Last ball of the 3rd over. Singles are coming more easily for the team Amchikila Cherkes here. They are rotating the strike. Singles are coming more easily. So over number 3 completed. After 3 overs, it is 21 with 1 wicket down. That means they are having a run rate of exactly 7 per over. Let's see how many more runs will come in the remaining 4 overs. GPL 2024 Ashwina Prabhu. तशी जी तुमके त्यांची फॅमिली चढू वापरण्यासाठी आता तुला नेक्स्ट इयर जो कॉम्पिटिशन आहे तुमचे नाव प्रदीप येतं आमचे फेसबुक पेज फॉलो करत इंस्टाग्राम पेज फॉलो करत तुमचे पार्टिसिपेशन काही कॉम्पिटिशन असणार माका दोन के एवढी मुखार कॉम्पिटिशनचा पुढे तुम्ही पार्टिसिपेट करत तशी आम्ही कशी चीफ गेस्ट मागा विनायक पै मामा एक 2 तरुण लोक
Venkatesh Prabhu now from the Arch Pharma Labs end. Thank you for your worship appreciation, ma'am. Trustee Chairman Udasnaji, Mr. Dinesh, cricketer himself who has graced this occasion, GPL 2024. So I would request you to kindly talk few words on stage. Single has been added to the total. Score moves up to 23. खूप खुशी आहे की की लोकांनी भुरग्यांनी हांगा बरे अचिवमेंट करून बरे जाग्यार पावले सो विश करता तांकां की व्हॉट इज क्रिकेट की दे कैन अचीव मच हायर अचीवमेंट इन लाइफ and maybe they can get healthy and happy and next year also we should get more and more people from and help get more achievements in life. Thank you very much. 24 runs on the scoreboard for the loss of 1 wicket. A good partnership is going on here between these two batters, Ramesh Pai and Srinath. Finance and marketing head Mr. GSB, Mr. Satish Played the shot all around the carpet, but only single will result here. Vignesh Bhatt Koteshwara, the fielder, collects the ball. 4 singles so far in the last 4 balls. They are not finding any boundaries or sixers. Venkatesh is bowling with a good line and length, is not giving any room for the batters to free their arms here. We come back to Venkatesh for the 5th time in this over. Once again, they will get only a single here. There is no possibility of going for the second run. So, GPL 2024, 2023 Score slowly moves on to 26 now. So this is definitely going to be a platform for all the budding talent in our community. Especially next year, cricket community cricket cricket Last ball of the over now. Venkatesh Prabhu, so far he has done a good job, very economical bowling figures. Batsman goes for a big one, but there is a fielder, some sort of misfielding there. The batsmen have taken the great advantage of that misfielding and they have taken the second run as well. They have completed the second run. So over number 4 completed. After 4 overs, it is 28 with 1 wicket down. Amchile Cherkes, after putting into bat first, these two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. A good partnership is going on here. And Varalanke Fighters Mulki will have to break this partnership now in order to come back into this game. Let's see what kind of strategy the bowler will adopt here. Picking up wicket is key for Varalanke Fighters. Pancham Bhatt has taken over from Venkatesh Prabhu. Pancham Bhatt, a young man having lot of future. The ball is in the hands of the bowler Pancham Bhatt now. And he will be bowling the 5th over from the Puzalana end. 3 more overs to go now. We'll have to wait and see how many runs they will be able to score in the remaining 3 overs here. Pancham Bhatt with a short run up is all set to bowl the 5th over. Here is the first ball. Batsman goes for a switch hit. He finds the gap there. Long chase for the fielder. 2 fielders are in a row. And finally, one of the fielder was able to stop that ball almost very close to the boundary ropes here. And before the fielder collects the ball and throws it back to the bowler, there is ample time for Srinath to complete that second run. So Srinath is batting on 15 runs after 12 balls. He's playing sensibly for his team. They had lost the first wicket of Pundalik Pai. After that, these two batters are playing sensibly here. Ramesh is on 7.
Short of line delivery, but straight to the fielder. Very good piece of fielding there by the fielder. Suhas Prabhu was very quick, collected the ball and throws it back to the wicket keeper. But before the throw reaches the fielder, there is ample time for batters to complete that single here. Very cheeky single, in fact. A good running between the wicket, good understanding between Ramesh and Srinath. Score moves up to 31. The meantime, watch Pancham Bhatt for the third time in this over from the Puzalana end, and he will be bowling to Ramesh Pai, who is batting on 7 runs. Here is the next ball. Played the shot all around the carpet, no risk taken. Vignesh Bhatt Koteshwara comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So Srinath's individual score moves up to 16 now. Ramesh is on 8. Left-hander Srinath is on strike. Well, he goes for a big one. Ball is in the air. It could be 6. We'll have to wait for umpire decision. No, it's a boundary signal there by the umpire. One bounce over the boundary rope for 4 runs. That was a too short of line delivery, and batsman had enough time in freezing his arms, picked it up very nicely and hits that one over the head of the fielder, and the ball has gone to the fine leg boundary for 4 runs. All the way to the boundary ropes for 4 runs. The fielder couldn't do much. He couldn't do anything. He just became a spectator over there. Score moves up to 36 now. Well, again, he wanted to go for a switch it here. Well, the batsman, wicketkeeper, was trying to hit the ball to the stumps, but direct hit has not happened here. If it is a direct hit, certainly the batsman could have been in trouble. On that occasion, batsman wanted to go for a switch hit, but he found complete failure in playing that one. Meanwhile, they get a single here. Pancham Bhatt bowls for the last time. Again, he goes for a switch hit, but this time there is a protection straight to the fielder there. So single in the last ball of the over to keep retain the strike. That's the end of the over number 5. After the completion of 5 overs, runs on the scoreboard is 38 for the loss of 1 wicket. Ramesh is on 9 and Srinath is batting on 20. So you are watching the match between Vadalanke fighters Mulki versus Amchigere Charke. Vadalanke fighters, after winning the toss, they had decided to field first. They got the wicket of Pundalik Pai early in the innings, but after that, these 2 batters played sensibly and they have built a very good foundation now. So they are in a very good position. In 5 overs, they have scored 38 runs. That means their current run rate is exactly 7.6 per over. So beautiful Sahyadri cricket ground. We are witnessing a fantastic cricket tournament in the name of Arch Pharma Labs GSB Premier League 2024, the 8th season of this GPL cricket tournament. We can see a beautiful LED screen in the ground. There is a digital scoreboard as well. Colorful flags, advertising boards. So 2 more overs to go now. Let's see how many more runs will come in the remaining 2 overs. Satvik Baliga will be the new bowler to bowl the 6th over. Satvik from the far end, that is from the Arch Pharma Labs end, and the man on strike is Ramesh Pai, who is batting on 9. Well, crashing drive to the offside, all the way to the boundary. No, the fielder was not able to stop that ball. Some sort of misfielding there. He had to cover a lot of ground there because the placement was perfect. He played the shot over the head of the fielder there, and he finds a boundary easily. It was an effortless stroke there by Ramesh. 4 valuable runs have been added to the total of Amchigile Charkes, and with those 4 valuable runs, their score now moves on to 42. This time straight to the fielder.
Vignesh Bhatt collects the ball almost very close to the boundary ropes, but before the throw reaches the bowler, these two batsmen have taken a single here. Strike is now to Srinath. 43 runs on the scoreboard with 1 wicket down after 5.2 overs. Satvik Baliga for the third time in this over. He will have to improvise his bowling now. Well, the batsman wanted to go for a switch and there could be a chance of run out. The throw was accurate, but wicket-keeper made some mistake here. Sharat Prabhu, the wicket-keeper, was not able to receive the throw properly. As a result, the batsman survives here. In fact, it was a very, very risky run. Have a look at the replay. Batsman was well home, so no damage done here. Very good running between the wicket. Good understanding there, and this is the kind of running between the wicket we need. Played the shot elegantly to the offside, played all around the carpet. They come back for the second and completed the second run as well. Once again, aggressive running between the wicket here. Good understanding there between Ramesh Pai and Srinath. Sensible cricket. Ramesh Pai is batting on 16, Srinath is batting on 21. A very good partnership here between these two batters. And Varalanke fighters will have to look for wickets now. They need to break this partnership in order to come back into this game to put the pressure on the batting side. So everything is good going for the team Amchigila Cherkes at the moment. They are in a very good position. They have scored 46 runs so far in 5.4 overs. This is a dot delivery there. Batsman wanted to play that shot to the offside but misses it. No runs resulted. Last ball to go of this over now. After this over, one more over left in their innings, so they are in a position to reach a target of around 55 to 60 runs, which will be a very respectable target. Satvik Baliga is going to bowl the last ball of the 6th over now from the Arch Pharma Labs end with a long run-up, and the man on strike is Ramesh Pai, who is batting on 16 of 12 balls. At the non-strikers end, we have got Srinath, who is batting on 21. This is a fine delivery there, which beats the batsman Ramesh Pai. Ball went straight to the wicket-keeper's hand, and wicket-keeper Sharat Prabhu collects the ball behind the stump, so no runs resulted. Dot delivery to end the over. Over number 6 completed after 6 overs. It is 46 with 1 wicket down, Amchigile Cherkes. Current run rate is now 7.67 per over. The projected score is around 54. Let's see how many runs these two batters will be able to score in the last remaining 6 balls. Varalanke Fighters captain, after winning the toss, he had decided to field first, even though they got the wicket of Pundalik Pai early in the innings. After that, these two batters played brilliantly, and a good intelligent cricket is going on here between Ramesh Pai and Srinath. And I think Sumit Bhatt is going to bowl the final over of the innings. This is the second over of his quota. In the first over, he had conceded 8 runs, and he's going to bowl the last over of the innings from the Puzalana end. Sunit Bhatt to Srinath. First ball of the last over. Left-handed batter goes for a switch hit here. There could be a chance of run out. Unfortunately, the direct hit has not happened here. The batter was looking for a single. He was short of his ground. If it's a direct hit, certainly the batsman could have been out. Have a look at the replay. Yes, he was far away from the crease. Certainly the batsman would have been in trouble if it was a direct hit, but direct hit has not happened here. Very, very lucky indeed. Fortunately,
batter Srinath survives here. Srinath's individual score moves on to 22. Wanted to pull the ball onto the onside. It was almost pitching between the middle and leg stump, and batter Ramesh Pai wanted to pull the ball onto the onside. He was trying to hammer the ball to the mid-wicket region, but misses it completely. No runs resulted. Second ball is a dot delivery. Once again, the ball is in the hands of the bowler Sunit Bhatt, and he's bowling the third ball now. Played elegantly to the long off, straight to the fielder. There is a protection. Good piece of fielding there by the fielder who was standing at long off region. So only single resulted here. So World Lanka fighters will not mind if singles comes. Only thing is they need to restrict the batsmen in going for big hits. After 6.3 overs, it is 48 runs. Sunit once again. To the left-handed batter, ball just falling short of the fielder at fine leg region. Fielder fumbles, some sort of misfielding there, allowing the batsman to go for the second run easily here. Suhas Prabhu was trying for a catch, but just falling in front of the fielder, short of the fielder. As a result, they get 2 runs here. Couple of runs have been added to the total, and that brings up 50 for team Amchigere Cherkes. 50 runs comes up after 6.4 overs. Full toss, goes for a big one, played the shot into the gaps, into the vacant region. That was a long chase for the 2 fielders there. He had to cover a lot of ground here. Meanwhile, before the fielder collects the ball and throws it back to the wicket keeper, these 2 batters have completed the second run, and the square leg umpire has now referred it to the third umpire. Well, square leg umpire wants to check with the third umpire whether it is a no ball, because he was assuming that the ball was going above the waist level of the batsman. That is the reason square leg umpire is now reviewing that with the third umpire. It is not for the run out. Actually, square leg umpire wants to know whether the ball was above the shoulder level of the batter here. 52. No ball is 53. So already 52 runs in their scoreboard. Ramesh Pai is batting on 17 and Srinath is batting on 24. So you are watching Arch Pharma Labs GSB Premier League 2024, brought to you by Kodiyal Sports Association of Mangalore. Youth of GSB Worldwide are the broadcast partners. You can watch each and every actions live streaming of this cricket tournament in the Youth of GSB Facebook page as well as a YouTube channel. So 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Sahyadri College ground. The match has been stopped for a while because the umpire has referred it to the third umpire to check whether it is a no ball, whether the ball was above the waist level of the batter. Well, the third umpire decision is a no ball. So 1 plus 2, totally 3 runs have been added to the total. With that, their score moves on to 53 for the loss of 1 wicket after 6.4 overs. Since it's a previous one was a no ball, there is a free hit delivery for the batsman now. So we have Mr. DJ Nitin Kamas in the dais. We would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of Kodiyal Sports Association of Mangalore. He goes for a switch hit here and played the shot over the head of the fielder.
and it has gone to the boundary rope for 4 runs. What a magnificent shot it was. Explosive batting performance. This man, Srinath, is showing all his caliber. 4 valuable runs for his team in the right moment. My bad. Mr. Nitin, Mr. Kiran Kamath has come to the main stage here. We heartily welcome you on behalf of Kodial Sports Association. So here is the last delivery of the final over of the innings now. Score is at the moment is 57. Well, it was going down the leg side. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper, because since the ball was going down the leg side, wicket keeper was not able to collect the ball. Meanwhile, they get a run here. 1 plus 1, totally 2 runs have been added to the total. 49 runs partnership so far between these two batters in 32 balls. Runs on the scoreboard is now 59 with 1 wicket down. Ramesh Pai is batting on 17. Srinath is on 30. Srinath came as an opener and he stayed there till the end. Crashing drive to the offside, but there is a protection. Will they get 2? They come back for the second. And I think they have taken the second run as well. Out, So 2 runs have been scored in the last ball. That is the end of the innings of Amchigala Charke. We will have to really appreciate the batting performance of Srinath and Ramesh. Both these two batters played brilliantly, and they have given a very good foundation for their team. So altogether, team Amchigala Charkes, after putting into bat first, they have scored 59 runs. Now 60 is the victory target for Varlanke Fighters to win this match of 8 overs. That means they need a run rate of more than 8.63 per over. This is not an easy target because as far as Amchigala Charkes is concerned, I beg your pardon, score is 61, so 62 is the target. 62 is the target for team Varlanke Fighters Mulki. नेक्स्ट मॅच जयका स्ट्रायकर्स मूडबिद्रे आणि यूके एकादश सारस्वत या 2 टीमांमध्ये जावचार आसा. जयका स्ट्रायकर्स मूडबिद्रेचे कॅप्टन आणि दैकोर नंग मेन स्टेजला येवका ऑर्गनायझर्स वेट करता आसती टॉसा खातीर. द कॅप्टन ऑफ जयका स्ट्रायकर्स मूडबिद्रे प्लीज कम टू द मेन स्टेज फॉर द टॉस. So 62 is the target for Varlanke Fighters Mulki to win this match in 7 overs. So after putting into bat first, Amchigala Charkes, the opener batsman Pundlik was out for 6. Srinath scored 30 runs and he remained as a not out batsman. Ramesh scored 19 runs and that has helped their team to reach a respectable target of 61 runs. So 62 is the victory target now for Mulki Varlanke Fighters to win this match. Let us see who is going to win this match. After this match, the next match will be between Jaika Strikers Mudabidri versus UK Ekadash Saraswat. That will be the second round match for both the teams. Meanwhile, I have got Mr. Amit Pai is with us in the commentary box. Very warm welcome to you, Amit. Please come in for the further commentary.
Welcome back to the second innings of the eighth match of the day. It's between the Amchigale Cherkes and the Wolalanke fighters. The toss earlier was won by Wolalanke. They elected to field first, and the Amchigale Cherkes have put a wonderful score on board. They've put 61 on board, and hence the target for the Wolalanke fighters is 62 from 42 deliveries. That's 7 overs. It'll be Venkatesh to ball to Ashwin. The two opening batsmen for the Wolalanke fighters is Vignesh Bhatt and Ashwin K. 62 is the target for the Wolalanke fighters. They've got a very good batting lineup. Here's the first delivery. Full length delivery there this time. The batsman able to pick up a single on they run another one on the misfield. This is wonderful running. Very good start for the batting team. It was only one run there, a slight misfield there by the fielder, and they're able to pick up another run on the misfield. With that couple of runs, the scoreboard says 2 for the loss of no wicket. It's Venkatesh again. Another good delivery. This time he's hit it straight down the ground, and it doesn't go all the way. The fielder picks it up in time. In the meantime, the batsmen pick up a couple of runs. With those couple of runs, the score moves on to 2. Very good start this from the batting team. A couple of runs on each of the 2 deliveries they faced so far. The captain having a slight change in the field. I think we have a floodlight going off. A slight delay in the proceedings here. A slight hold in the proceedings as there's a floodlight failure. The maintenance team is on it, and we shall have play soon.
Yes, we are back live now after the short interruption there due to a floodlight failure. It'll be Venkatesh who will be bowling his third delivery of the first over. It's the power play over. Another good shot. This is driven straight down the ground. Fielder coming underneath it. Here he is not able to stop it. That was a wonderful effort there by the fielder. But it's gone to the boundary. Boundary signal, huh? That's the boundary signal there by the umpire. With that boundary, the score moves on to 8 for the loss of no wicket. A very good start for the batting team. They've taken the bowler for a boundary on the first delivery after the break. Here's Venkatesh, fourth time, bowling to Ashwin. Again drilled straight down the ground, but it's near the mid-wicket region. There's no fielder there. And in the meantime, it's a poor throw there from the fielder in the deep. And they're able to pick up 2 runs. With those couple of runs, the score moves on to 10. 62 is the target for the Wallalanke Fighters. It's a 7 overs match. They've got on to a wonderful start. 10 for the loss of no wickets after 4 overs. It's Venkatesh to Ashwin for the 5th time in this over. Another good delivery there. This time better length. And the batsmen are only able to pick up a single. So good comeback there from Ashwin after conceding 10 runs in the first 4 deliveries. The first 2 overs are the power play overs in this contest. It's a 7 overs match. Now it's Venkatesh who will be bowling to the left-hander Vignesh, but we know Vignesh is a very big hitter. He's played almost all the GPL seasons, and in the last couple of years he's been playing for the Wallalanke Fighters. 11 on board already for the team Wallalanke. They're chasing 62. Here's Venkatesh for the last time in this over. Good delivery there. Very good delivery there. Fuller length. A lack of foot movement from the batsman there. And he was completely beaten. The wicketkeeper gathers it at the end of the first over. It's 11 for the loss of no wickets. The captain of the Amchigale Cherkes has given the ball to Shanmukh, who will be bowling the second over. That's the second over in the power play. Wallalanke Fighters off to a very good start. They're 11 for no loss. Here's Shanmukh. A very loose delivery there. A short ball. There's fielder coming under it, but he's not able to get the catch. And in the meantime, the batting team are able to pick up 2 runs. A very, very short ball there, and it's against this very slow breeze which is there here at the ground, and the batsman not able to time that slower delivery from Shanmukh. Here's Shanmukh again. Not good, very good delivery this time. This time the batsman hits it straight down the ground, but the fielder at the long off region is able to cut it down, and the batsmen are only able to pick up a single. With that single, the score moves on to 14. It's back to the left-hander Vignesh, the big hitter. He'll have to start going big now, because the target is 62. They've got 14 of them already so far. The first 2 overs are the power play overs.
in this contest of the 7 overs. 62 is the target. He has a check of the ball as Vignesh. We didn't see much of foot movement from him. During his first delivery, he's just able to tuck it down on the offside. And he picks up a single to bring Ashwin back on strike. Ashwin is already on 14. There's a lot of movement in the crease from Ashwin. He'll be facing Shanmukh for the 4th time in the 2nd over. Another short delivery. This time again drilled straight down the ground. This is actually really good bowling there from Shanmukh. He's able to restrict the batting team with his short deliveries, and the batsman not able to time that and hit it out of the ground. And with that single, the score moves on to 16, and it's back to Vignesh with the strike. Last 2 deliveries of this power play over. Wallalanke Fighters would love to end this power play with 2 big shots. A change in the field when you have right hand left hand combination on the ground for the batting team. It makes it that much more difficult for the captain of the fielding team to set his field right. Another single there. Vignesh taking his time. He's on 3-2 from 3 deliveries. He's not going for the big shots. He knows that. He's got 5 overs after this to capitalize. They need 45 runs from 31 deliveries. Again, back to Shanmukh. He's going to bowl his last delivery. It's Ashwin on strike. Ashwin will try to move around the crease and try to confuse the bowler as to what to bowl to him. And the bowler, trying to outthink the batsman, has gone to round the wicket. He's going to bowl his last delivery. Again, this time it's up in the air. A fielder coming under it. This, I think, is going to get out, but he drops it. What a sitter that was, and it's gone down. That was the big wicket of Ashwin. He is really thankful to his stars now that that catch was dropped. He's on his knees. And another single to that total. The total moves on to 18 for the loss of no wickets. A good start this for the Wallalanke. 44 runs to win for the Wallalanke in the remaining 30 deliveries. It's Anup Kamath who's going to bowl the 3rd over. Wallalanke Fighters have off to a good start. They've not lost any wickets. They've got both the danger men, Ashwin and Vignesh, on the crease. There's Sharath to come, the icon player for the Wallalanke. Scores 18 for the loss of no wickets. 2 overs up. Here's the first delivery from Anup. Another good delivery there. This time he plays it straight to the fielder at the cover region, and a good dot delivery there. Ashwin couldn't do much about it. It was a Yorker delivery. He plays it straight to the fielder at the cover region. Here's Anup again for the 2nd time in this over. You can see Ashwin is moving around his crease. Another delivery there, a bit wide there from the bowler, and the umpire has widened his arms and says that that's a wide delivery. He'll have re-bowled that again. With that extra, the score moves on to 19. It's again Ashwin on strike. He would really like to go big here. He's set already now. He's played 2 overs so far. Very good delivery there. Yorker length delivery there. Very full. And he actually out-thought the batsman there with his length.
and the batsman just hit it in the deep cover region for a single. With that single, the score moves on to 20. Good steady start this from the Wallalanke after the first over, which went for 11. It's a good comeback this from the Amchagale Cherkes. No more boundaries after the first over, so a good comeback this. Anup is going to ball his third delivery to the left-hander. Vignesh has only been picking up singles and trying to rotate the strike. Another full toss there. Vignesh just hit it to the deep cover region and picks up a single. He's not going for those big hits. Not sure when he's going to launch. Scores 21. They need around 8.5 runs per over. So it's not that they can do it just by singles. Here's Anup. Another good delivery. This time the batsman goes down the ground. There's a fielder there. That's the end of the first wicket. Very good catch there by the fielder and the long on region. The catch was taken by Venkatesh Prabhu. Wonderful catch there. That's the end of Ashwin. A bit of pressure there by put by Vignesh on the other batsman, because it was Ashwin only who was going for those big shots, and Vignesh was quite happy picking up those singles and giving Ashwin the strike. That took and put a bit more pressure on Ashwin to go for those big shots, and he has to perish. So that's the first wicket down for the Wallalanke Fighters. So Ashwin is out, and he's replaced by the captain. That's the icon player for the Wallalanke. That's Sharath Prabhu. We know he's a wonderful batsman himself. A bit of dew starting to fall here at the Sayadri grounds. They are 21 for 1. 2 more deliveries to go in the third over. A very good over this from Anup. He's only given 3 runs. Picked up the important wicket of Ashwin, who looked very dangerous in his time when he was out there. A bit of, again, a field change. It's very important to get your fielders in the right areas, because we know that Sharath is a very unconventional player, a very unorthodox player. Again, trying to confuse the batsman, and he missed it, but it was a full toss. It's a no ball, kind of a beamer there, and Sharath will be very disappointed that he didn't put that away. It was a very slow beamer, and we expect Sharath, with his standards, to deposit that for the maximum, but he could not connect it properly, and the umpire called that a no ball, and with that no ball, the extra run gets added to the scoreboard. It's 22 on board. It'll be a free hit for Sharath. It'll be a very good free hit for him to open his account. It's 22 on board now. 62 is the target. And a big shot there at the mid-wicket region. There's no fielder there. Well, the fielder comes from the long-on region, and he's able to cut out that shot, and the batsmen are only able to pick up 2 runs. With that couple of runs, the score moves on to 24. Last delivery coming up in the third over from Anup to Sharath. 24 on board. Very good start this. 38 runs required from 25 deliveries. Just a tuck to the offside, and the batsmen are able to pick up a single. So with that single, the score moves on to 25. And after the end of 3 overs, the score is on 25 for the loss of 1 wicket. The Wallalanke Fighters need 37 runs of the remaining 24 deliveries. To continue the commentary, it will be Ajay, my favorite commentator in the Hindi language, to take you through to the end of this match. हेलो चेक थैंक यू अमित बहुत बहुत धन्यवाद
जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 में बैठे तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत है। और इस वक्त अंचुगेलेचर के और वोलालंग के फाइटर्स के बीच में संघर्ष चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया वोलालंग के फाइटर्स ने। 62 रनों का लक्ष्य उनके सामने। दो ऐसे शानदार जगमगाते हुए सितारे मैदान पर दिखाई पड़ेंगे आपको। एक जिसको शरद प्रभु कहा जाता है, आइकॉन प्लेयर हैं, और दूसरा विघ्नेश भट्ट, बिडिंग में सबसे सर्वाधिक बिडिंग में चुने गए खिलाड़ी, अगर मैं गलत ना हूं तो लगभग 22,000 के लिए चुने गए। और कहना होगा कि दो खिलाड़ी 1 और 1 11 का कहावत को साबित कर सकते हैं। सामने आपके 62 रनों का लक्ष्य, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद इस बार शरद ने गेंद को धीरे से दबा दिया, जब तक फील्डर के गेंदबाज खुद गेंद के ऊपर आकर गेंद को उठा ले। तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा कर दिया शरद ने। वो बढ़कर पहुंच चुके हैं 4 पर। कुल रन संख्या 26, 1 विकेट के नुकसान पर, 26 for 1। शानदार दृश्य है। जीपीएल 2024 चल रहा है। आकाश अंधेरों में डूबा हुआ, चारों ओर जो घने पेड़, बड़ी बड़ी चोटियां आज सवेरे से हमारा साथ दे रही थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। कुछ धुंधले से दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। अंधेरों में फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी में ये मैदान नहा रहा है। और जैसे मैंने आज आपको शाम को कहा था कि धरती पर एक चांद उगाया हुआ है। कैमरामैन ने आकाश में चमकते हुए चांद को कैप्चर किया। दूर वाली छोर से ये गेंद उधर इस बार विघ्नेश भट्ट को, क्या बात है, अनंतेश ने क्या चतुराई दिखाई। वो जानते हैं कि विघ्नेश भट्ट ऑन साइड पर बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं। जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा अंतिम क्षणों में धीमा रिलीज किया, और उसको देखते हुए विघ्नेश भट्ट ने अपनी बुद्धिमान जी हाँ, थोड़े से बुद्धिमान बन गए और इंतजार किया। ऑन साइड की दिशा में धीरे से गेंद को टैकल करते हुए पुश कर दिया। अपने साथीदार शरद को जिम्मेदारी सौंपी है। आज फार्मा से ये गेंद शरद के लिए। शरद ने पीछे हटते हुए गेंद को धीरे से कट कर दिया। ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी। और मात्र क्रिकेट जैसा अक्सर कहते हैं दिमागी खेल है, सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं। गेंदबाज और बल्लेबाज आपस में एक दूसरे को जिस तरह से वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दूसरे को मात देने का उनका जो दिमागी प्रयास है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। वो छोर से अनंतेश की गेंद है और विघ्नेश भट्ट के लिए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और वाइड का इंतजार किया। जब अंपायर ने नहीं दिया तो खुद उन्होंने संकेत किया और बाहर आकर गुहार लगाई। आखिरकार अंपायर जी को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी हां भाई, आपको पुरस्कार दिया जाता है। वाइड घोषित किया। 1 रन और खाते में विघ्नेश। स्ट्राइक एंड पर यह गेंद आउट साइड पर लपेट कर उछाल दिया है। गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीपीएल का सिक्सर। क्या कमाल का स्ट्रोक है। और भले ही कितनी चतुराई क्यों न करें, लेकिन विघ्नेश भट्ट जब लय में आ जाते हैं तो अच्छी अच्छी गेंदों की पिटाई कर देते हैं। गेंदबाजों की खूबसूरती के साथ ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था। जब आप स्टेप आउट करते हो तो आपको एडजस्ट होना पड़ता है, चाहे वो किसी भी कदर से गेंद क्यों ना आए। उसको देखते हुए अनंतेश ने गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया था, लेकिन ये बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा था विघ्नेश का। एक स्विंग के साथ उन्होंने गेंद को लपेट कर पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के छक्के के साथ। कुल योग बढ़कर 35 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 62 रन बहुत बड़ा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विघ्नेश भट्ट आए, लय में आ गए तो लगता है कि आसान बना सकते हैं, लेकिन क्या अनंतेश उनका विकेट लेंगे। वो छोर से ये गेंद सेंसिबल बल्लेबाजी इस वक्त देखा। फ्रंट फुट पर फॉरवर्ड डिफेंसिव होकर गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया। कवर में जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाते और थ्रो कर पाते, दोनों बैट्समैन तेज कदमों के साथ 1 रन को चरा चुके हैं। तो दोनों बैट्समैन बिल्कुल मेरिट पर खेल रहे हैं। बीच बीच में एक आध स्ट्रोक आक्रामक लगा रहे हैं और विघ्नेश भट्ट ने साबित किया, दिखा दिया कि आखिर उनको क्यों चुना गया है। जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं डिफेंसिव और आक्रामक तरीके से, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। चुन चुन कर गेंदों की पिटाई करते हैं, फिर डिफेंस भी अपनाते हैं। उस छोर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाद शरद के लिए। शरद ने गेंद को हल्के हाथ से, धीमे हाथ से, सॉफ्ट हैंड से पुश वर कर दिया। 1 रन चुरा कर नॉन स्ट्राइक हैंड की दिशा में पहुंच गए, लेकिन स्ट्राइक का मौका उनको मिलेगा। 37 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। 37 for 1। आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2024। डीजे स्मिथ हालांकि आज सवेरे से यहां पर मौजूद थे, लेकिन न मालूम क्यों, कहां, कैसे गायब हो गए। उनका इंतजार है। शानदार धुन वो बजाएंगे तो बात बनेगी। और दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, और जैसा मैंने आपको कहा कि बड़ी बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं में अगर
पूरे कर्नाटक में सबसे बड़ी क्रिकेट श्रृंखला अगर इस जीपीएल को कहा जाए तो इसमें कोई गलत ना होगा। 3 दिन और रात का ये खेल जिसमें बहुत, जी हाँ, बहुत खर्चा लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और फूड काउंटर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं सवेरे से शाम तक जो हॉस्पिटैलिटी चलती है उसको देखकर आप भौचक्के से रह जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ और इतना परिश्रम लगता है। उसके अलावा इस मैदान को सजाना, ईडन गार्डन जिसे हमने नाम दिया सह्याद्री का महाविद्यालय का ये मैदान जहां पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है, हरियाली से भरा हुआ वातावरण है, पिच बहुत मजबूत है, अच्छे अंपायर, स्कोरर, कमेंटेटर्स को चुना गया, स्कोरिंग आपके किरण भी मौजूद हैं और उसके अलावा M9 के सौजन और उनकी टीम काम कर रही है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूथ ऑफ GSP पर और स्कोरर की जिम्मेदारी रश्मिता और नितल निभा रहे हैं। उसके अलावा स्वराज जो कि M9 की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ लैपटॉप के सामने बहुत शानदार तरीके से सहयोग कर रहे हैं। 37 रन से 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त आक्रमण पर अनूप कामत आ रहे हैं। वो क्या असर दिखा पाएंगे, क्या इस भागीदारी को वो तोड़ पाएंगे? एकमात्र विकेट अब तक गिर चुका है, विकेटों की सख्त तलाश है। शरद आइकॉनिक प्लेयर यूं ही नहीं कहे जाते हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शातिर हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, कदकाठी में छोटे हैं लेकिन बड़ा धमाका करते हैं। इस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज अनूप कामत तैयार। शरद मात्र 6 के व्यक्तिगत योग पर 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि योजना बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं ये बहुत कंसिस्टेंसी के साथ। ये गेंद सफल किया, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, तेज कदमों के साथ 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन विघ्नेश ने मना कर दिया। अगर देखा जाए तो जितने तेज शरद दौड़ते हैं विघ्नेश शायद उतना तेज न दौड़ पाए, क्योंकि कदकाठी में और अगर शारीरिक बनावट देखी जाए तो शरद हल्के फुल्के हैं उनके मुकाबले में, तो निश्चित तौर पर तेज दौड़ लगाते हैं। 38 रन से 1 विकेट के नुकसान पर उच्च छोर पर विघ्नेश भट्ट स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और गेंद को लेकर अनूप कामत तैयार हुए, राउंड विकेट। ये गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव किया गेंद को, लॉफ्टेड ड्राइव था, एक्स्ट्रा कवर डीप में गेंद गई। जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते बैट्समैन तेज कदमों के साथ दौड़कर 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इसे के साथ रन बढ़कर 39 पर 1 विकेट के नुकसान पर ऑन फील्ड इस वक्त दिनेश आचार्य और श्रीनिकेत जो कि स्क्वायर लेग पर मौजूद हैं। और अंपायरों का जिम्मा एक बड़ा डिग्निफाइड पोस्ट होता है, इसीलिए बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं पे अच्छे अंपायर्स का होना बहुत जरूरी है और प्रयास उनका यही कि 100% है। फोर्थ विकेट ये गेंद शरद के लिए, शरद ने गेंद को हल्के हाथ से पुश कर दिया, 1 रन चुरा लिया। फिर दूसरे रन के लिए कहीं ना कहीं लालसा थी लेकिन अपने आप को रोक लिया, बांध दिया और 1 रन से खुश हो गए। रन बढ़कर 40 पर 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। अनूप कामत गेंद को कभी कभार मुझे लगता है कि शायद वो ब्लॉक होल में डालना चाहते थे लेकिन फुल टॉस रह गई। उस छोर पर विघ्नेश भट्ट 12 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया। फजल होना एंड से ये गेंद इस बार स्टेप आउट किया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए और इसी के साथ ये बड़ा विकेट, ये बड़ी मछली, ये शानदार बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट रहा है। विघ्नेश भट्ट आउट हो गए, डीजे तैयार होगा धुन बजाने के लिए। इस शानदार विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2024। थैंक यू डीजे, क्या बात है। डीजे स्मिथ आ गए तो अब रंग जाएगा इस पूरे माहौल में, उनका धुन और वातावरण चकाचौंध हो जाएगा। क्या शानदार दृश्य है। विघ्नेश भट्ट का विकेट गिरा, जैसा आपने देखा जब शुरुआत में आज सवेरे से हम बात कर रहे थे कि दिन का खेल अलग होता है, शाम के बाद पिच का मिजाज बदल जाता है, आउटफील्ड में भी काफी धीमा पड़ता है, लेकिन कुछ एक आक्रामक स्ट्रोक जो पावरफुल स्ट्रोक रहते हैं टाइमिंग के साथ वो क्लियर करते हैं ग्राउंड को। लेकिन इस बार विघ्नेश भट्ट का ये स्ट्रोक सीधे फील्डर की दिशा में और वो ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाए, लॉन्ग आउट क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन आपको बता दें, 5 ओवर इस वक्त प्रगति पर है। अनूप को यह शानदार विकेट मिला है और कप्तान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा कि निश्चित तौर पर बहुत शानदार गेंदबाजी वो कर रहे हैं।
अनुप गेंद को लेकर बार बार रिप्ले में देखा जा रहा है कि किस तरह से कैच को लपकने के पश्चात उस फील्डर का जो उत्साह था बिल्कुल गर्मजोशी के साथ। और विकेट छोड़ से गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा में गेंद को पुल कर दिया, कैच हो सकता था लेकिन इस बार फील्डर काफी पीछे खड़े हैं। और सुनीत भट्ट जो कि गेंद को धीमी गेंद थी टिप्पा खाने के बाद, और अनूप बड़ी योजना के साथ गेंद को धीमा कर रहे हैं ताकि गेंद की रफ्तार अगर कम हो तो स्ट्रोक भी उतना पावरफुल नहीं लगेगा। इस अनुमान के साथ उसको खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 41 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। पूरी जिम्मेदारी अब शरद पर आ चुकी है। शरद क्या कर पाएंगे? काफी ओपन स्टांस है लेकिन वो बार बार शफल करते हैं। और विकेट इस छोर से गेंद इस बार ऑफ स्टंप की ज्यादा बार थी। एम्पायर दिनेश जी ने दोनों हाथों को फैलाते हुए संकेत किया कि वाइड है। 1 रन अतिरिक्त के खाते में, रन बढ़कर पहुंच चुका है 42 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। शरद सफल करते हुए आखिरी मौके पर गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी। और इस छोर से एक और गेंद को लेकर अनूप तैयार हुए फुजलाना एंड से। शॉट ऑफ लेंथ थी, पलट कर गेंद को खूबसूरती के साथ शरद ने खेल दिया, स्विच हिट किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। थैंक यू डीजे, क्या बात है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, स्कोरर, कमेंटेटर, अंपायर्स, डीजे अगर साथ में मिल जाएं तो कोई भी क्रिकेट श्रृंखला का स्तर बढ़ सकता है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? स्मिथ बिल्कुल तैयार थे, उनको पता लगा कि चौका छक्का विकेट्स पर शानदार धुन को बजाना है। बात करते हैं स्ट्रोक की। शरद ने क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, पलट कर स्विच हिट किया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और मानो कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा हो उस अंदाज में उन्होंने स्ट्रोक के पीछे इतना ताकत लगा दिया कि गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई 4 रनों के लिए। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर शेष बचे हुए हैं, 12 बॉल्स टू गो। 16 रनों की दरकार है, 16 रन टू गेट इन 12 बॉल्स। वेंकटेश गेंद को लेकर तैयार। और छोर से गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बार थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को पुल कर दिया, 1 रन तेजी के साथ दूसरा रन चुराना चाहते थे लेकिन फिर अंतिम क्षणों में शरद, हालांकि सुनीत भट्ट ने मना कर दिया। सुनीत भट्ट बढ़कर पहुंच चुके हैं 2 की व्यक्तिगत योग पर, शरद 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच शरद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीत के बाद ही दम लेंगे, उस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश प्रभु की गेंद दूर वाले छोर से, आज फार्मा एंड से वो योजना बनाकर तैयार हो रहे हैं। क्या योजना बनाएंगे, उनके पास कौन सा तीर है तरकश में जो वो शरद पर चलाएंगे? धुएं की जो धुंध आपको दिखाई पड़ रही आकाश में, दूर दूर पटाखे बज रहे हैं और उसका धुआं मैदान के ऊपर हवा में तैरता हुआ इस वातावरण को थोड़ा सा धुंधला सा बना रहा है। उस छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए वेंकटेश की गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और शरद ने जी हां परिस्थिति के अनुकूल जो बल्लेबाजी करते हैं गेंद के ऊपर आ गया, थोड़ा सा फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक था, कवर की दिशा में गेंद को धीरे से पुश बर कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन चुराकर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। बढ़कर कुल योग 48 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 48 for 2। वेंकटेश इस ओवर में अब तक 2 गेंद कर चुके हैं, 2 रन वो खर्च कर चुके हैं। आज फार्मा एंड से उनकी अगली गेंद, इस बार उछाल दिया, बहुत कमाल का स्ट्रोक है, गेंद हवा में तैरती हुई गई लेकिन फील्डर के इस प्रयास को हाथ ऑफ कहना कह पड़ेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया,
खूबसूरती के साथ हाफ वॉली पर लेकर पिछला पैर स्ट्रेच किया, शरीर का संतुलन उसके ऊपर ट्रांसफर किया और जितनी सारी ताकत थी पूरी लगा दी उस गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया इस छक्के का। इस छक्के के साथ कुल योग बढ़ चुका है। रिप्ले में देखा जा सकता है कि किस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और उसको बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया। एक और गेंद, इस बार थोड़ा ऑन द अप खेलना चाहते थे, कवर क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 55 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। और वेंकटेश थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। लक्ष्य है कुल मिलाकर 62 का, 62 का टारगेट। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर बीट होगा, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन को समय मिलेगा कि वो 2 रन तेज कदमों के साथ पूरा करें। शानदार रनिंग है, कमाल की तेज रनिंग। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 57 पर, 57 for 2, यानी कि अभी और 5 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। शरद आज इस मैच में एमएसडी की भूमिका निभा रहे हैं। अलग अलग अंदाज में गेंद को सफल, जी हां, पुष्ट भर करते हुए रनों को बटोर लिया है। वो छोर से अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बहुत आसान बनाकर रन आउट का मौका हो सकता था। स्ट्राइक एंड पर फील्ड बैट्समैन थोड़ा सा विलंब से आ गए सुमित भट्ट और 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें शेष बची हैं और 4 रनों की जरूरत है वालोलंग के फाइटर्स को इस मैच को जीतने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि आइकॉन प्लेयर शरद जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और सबसे सर्वाधिक बिड में चुने गए बैट्समैन विघ्नेश भट्ट आउट होकर डगआउट में जाकर अपने गलती पर अफसोस कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। और उसके अलावा इस वक्त वालोलंग के फाइटर्स जीत के द्वार पर खड़ा है। आमची गेले चरके कुछ चमत्कार अगर हो, जादू कुछ हो जाए तो बात बनेगी। कैमरामैन तैयार हुए, खेल जैसे ही थोड़ा सा रुक जाता है वो अपने काम में लग जाते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख रहे हैं दूर दूर दर्शकों के, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना शानदार महोत्सव चल रहा है। 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर उस छोर से गेंद को लेकर दूर वाले छोर से, जी नहीं, इस छोर से फजल एंड से नया ताजा और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। मात्र 4 रनों की जरूरत दरकार, 6 गेंदें शेष बची हुई हैं। स्ट्राइक एंड पर शरद 14 के व्यक्तिगत योग पर 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया। पुंडलिक आ रहे हैं इस छोर से, कटकाठी में छोटे हैं और अंपायर के पास खड़े होकर 11 नंबर की जर्सी में क्या वो 4 रनों को रोक पाएंगे। फजल एंड से उनकी गेंद राउंड विकेट और शरद ने क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला, फॉरवर्ड होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ बेखौफ बेझिझक गेंद को उन्होंने आसानी के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए पुश पर कर दिया। और इससे पहले कि फील्डर आकर गेंद को उठा ले, आसानी के साथ छोर बदलकर अपने साथीदार सुमित भट्ट को उन्होंने जिम्मेदारी को सौंपी है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। पुंडलिका चाहते हैं कि कोई कसर न रखें, इस वजह से अब गार्ड बदल दिया उन्होंने। ओवर विकेट वो गेंदबाजी करेंगे सुमित भट्ट को। इस छोर से फजल रन से उनकी अगली गेंद, क्या वो 3 रन को रोक पाएंगे। ओवर विकेट थी, ड्राइव किया गेंद को, कवर क्षेत्र में रनआउट का मौका शायद बन पाए, जी नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ। 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। रन बढ़कर 60 पर 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 2 रनों की जरूरत है, दरकार है। क्या इस गेंद पर शरद विनिंग शॉट, विनिंग स्ट्रोक लगा पाएंगे या नहीं, या फिर पुंडलिका कुछ चमत्कार कर पाएंगे। जादू भरी गेंदबाजी वो कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। 4 गेंदों में उनको सिर्फ 2 रनों को रोकना है और मुश्किल है। राउंड विकेट, एक छोर से गेंद उसी अंदाज में शरद ने गेंद को पुश भर कर दिया और मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, लेकिन विश्वास की चरम सीमा देखिए कि कितने आसानी के साथ शरद ने गेंद को ड्राइव कर दिया। मिड ऑन के फील्डर के पास से गेंद डीप में गई, 1 रन पूरा कर दिया, यानी कि अब रन्स बराबरी पर पहुंच चुके। 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें शेष बची हैं। 1 रन की जरूरत है वालोलंग के फाइटर्स को इस मैच को जीतने के लिए। एक छोर से वो विकेट फजल एंड से ये गेंद ड्राइव कर दिया, रनआउट का मौका मिल सकता है। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ, रनआउट का चांस बनेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। दिनेश आचार्य ने संकेत किया कि तीसरी आंख को काम में ले आया जाए, तीसरे अंपायर जिम्मेदारी को निभाएंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी, डीजे
दिल दिल के धड़कनों के धुन आपको सुना रहे हैं। थैंक यू। धड़कने किसी बहुत बड़े विशाल का इंसान की सुनाई दे पड़ रही थी और बहुत धड़कने अब रुक गई है। निश्चित तौर पर अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट का संकेत किया। आगे 1 रन की जरूरत, 61 रन कुल मिलाकर। इस छोर से ये गेंद बैट्समैन तैयार हो चुके हैं शरद के लिए गेंद और उन्होंने आसानी के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है वॉलरलंके फाइटर्स ने शानदार तरीके से। लगभग 7 विकेटों से कमाल की बल्लेबाजी उनकी की गई है। उनको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मेनी कंग्रेचुलेशंस। 7 विकेटों से उन्होंने इस मैच को जीत लिया। अमचिगेले चरके को अगले मैच में अच्छा करना होगा, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार धुन बजा रहे हैं डीजे। और इस बीच इस वक्त समय है प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार की घोषणा करने का। और आप जानते हैं कि किसको दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं अनुमान तो लगाया होगा। वॉलरलंके फाइटर्स के एक ऐसे खिलाड़ी को माफ कीजिएगा जो हमेशा